उनको फेवर यहाँ पर करता हुआ। 2 पोकेमॉन फेंट करने की कोशिश, लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं होता। वो बहुत ही बढ़िया हेवी स्लैम, लेकिन उससे भी ज्यादा सुंदर साल का वो ड्रैगन डांस आता हुआ बिल्कुल ब्लॉक के साइड से निकल गए एंड द सरीना विल डेफिनेटली गो डाउन। जीशॉल की कोशिश अच्छी थी, स्विफ्टी के ऊपर भी काफी ज्यादा डैमेज पड़ता हुआ एंड ही विल इवेंचुअली गो डाउन बिकॉज़ उनके ऊपर डैमेज काफी ज्यादा है। वो जो डीपीएस है वो हाई अमाउंट में यहाँ पर पड़ता जा रहा है, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज लीड तो रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के पास है। ये ज़ैप्टोस चाहिए नो शो को। जी हाँ, किसी भी हाल में चाहिए एंड वापस से वो आ भी चुके हैं कंटेस्ट करने के लिए। देखिए ऑलरेडी ब्लॉसम थोड़े कम एचपी पे, ओमेन इज समहाउ ट्राइंग टू काइट देम आउट और नोवा इनफैक्ट ऑन द ड्रैगन नाइट हैज बीन डेल्ट विद, बट ज़ैप्टोस काफी लो एचपी पे। यहाँ पे रेवेनेंट को पूरा ताकत यहाँ पे लगाना पड़ेगा। एक बॉम्ब से शानदार स्टील यहाँ पे देखने को मिलता हुआ रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के तरफ से एंड कहीं ना ब्लिज़र्ड कैरी आउट। अरे यार मैं मिस कर जा रहा थोड़ा भाई स्टार्टिंग का। यहाँ पर कोई नहीं भाई, मजा आ रहा है भाई देखने में। रहने वाली रेवेनेंट के सरीना के ऊपर की कुछ भी कृष्णा भाई वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। 5 सेकंड लगने वाले बिकॉज़ 5 का उनके पास 50 का स्टैक है। ऑन द अदर साइड जीशॉल एंड उनकी पूरी की पूरी टीम को जस्ट वन टच कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी कोशिश स्विफ्टी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही विल गो डाउन। तब तक यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के ड्रैगनाइट बॉटम पाथ की तरफ आते हुए, और क्यों मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है यहाँ पर फिक्सेस कि ये गेम रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के नाम जा सकता है, जा चुकी है इनफैक्ट। आई डोंट थिंक किसी भी हाल में हम कह सकते हैं कि नो शो का यहाँ पे शो था, बट रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स ने कुछ अलग आजमाया, कुछ ऐसा जो किसी ने शायद सोचा ना था। हेलो भाई, हेलो केशव भाई वेलकम टू द स्ट्रीम एके लूसीफर। बट देन अगेन वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। लग रहा था कि इस गेम में दे वर नॉट गिविंग देयर 100, बट उसके बावजूद भी वी आर गोइंग फॉर अ थर्ड। ये क्या है? अरे ये वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहा है ना लंदन में, वही है भाई। ये लो भाई फर्स्ट विन आ गया भाई रेवेनेंट के लिए भाई। जी भाई अभी के लिए थोड़ा चिंतित जरूर है, उनको पता है रेवेनेंट हग देगा लग रहा है। अरे ये उनका सेकंड मैच है, फर्स्ट मैच तो हार गया, बट ये लो भाई मतलब फर्स्ट विक्ट्री तो आ गया भाई रेवेनेंट के लिए। स्कोर कार्ड की बात करें, आप इस बार बात कर रहे थे कि पिछली बार हमने बात करी थी द स्नोलैक, जबकि अभी भी थोड़ी बहुत है। ब्लॉसम गॉट द एमवीपी टाइटल, बट टीम रेवेनेंट गॉट दिस विक्ट्री एंड पहली विक्ट्री इनके नाम गई है पहले मैच भी से। हां आप भी हो क्या? नहीं रे हम तो बाहर हो गए तेरे भाई, टॉप 8 से भाई बाहर ही हो गए भाई। हम खेले थे बट कोरिया वाली टीम बहुत मस्त खेलते हैं। हाँ भाई बात आती है नो शो, व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम, बट जीसॉल ही रियली प्लेड आउट ऑफ हिज। भाई ये नो शो वाले भी सही खेल रहे हैं। नो शो जीत गए बस। हाँ भाई फर्स्ट विक्ट्री आया भाई रेवेनेंट के लिए। जी जी वाइस इधर हमने ऑन ड्रैगनाइट एंड देन उस टाइम पे ओमन ने ट्राई करा था हुपा हैशटैग प्रमोशन। हाँ भाई कुछ अलग ही यहाँ पर करके दिखाई थी। ये जो ग्राफ है ना बहुत सारी चीजें दर्शा रहा है। देखिए रेवेनेंट के पास जो स्टार्टिंग के 2 मिनट के अंदर बहुत स्लाइट लीड थी, टोटल 5 यहाँ पर कूल्स की। देन उसके बाद उन्होंने उसको हल्का सा डेवलप करने की कोशिश करी थी, 98 पे वो लाके खड़े कर दिए थे। नो शो के पास पहला रॉटम आया एंड देन उन्होंने पेस थोड़ा सा चेंज कर दिया, उनके पास लीड आई, लेकिन वो ज्यादा देर तक रही क्योंकि उनके पास बार बार उनके हाथ से वो ड्रेडनोस आ रहा था। लेकिन हाईलाइट्स के ऊपर भी फोकस करते हैं और इस गेम के अंदर एवरीवन वाज स्टन्ड। आई थिंक सो हर एक प्लेयर के साथ साथ यहाँ पर एनालिस्ट भी स्टन्ड हुआ कि भाई क्या कर दिया रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स। एंड एक पॉइंट ऐसा था मुझे क्या चल रहा है इस गेम में, बिकॉज़ वी वर लुकिंग एट दोनों टीम, एक हुपा उनके यहाँ पे चोपो आ चुके इतना डीप एनिमी टेरिटरी जंगल में, और वो भी अपने एबिलिटीज का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बेसिक ऑटो अटैक से फाइट वहाँ पे फार्म कर रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा था कि काफी सारे मोमेंट्स में हम लोग को ओवर एक्सटेंशन नो शो की तरफ से देखने को मिली थी, जहाँ पे आइडियली वो ये ना करते। डेफिनेटली देखिए अब आप अपने हुपा को भेज रहे हो, उनके पास एस्केपिंग एबिलिटी क्या है? सबसे पहली बात हाइपर स्पेस होल है, कोई कुछ कितना भी डैमेज दे दे आपने उसका इस्तेमाल कर दिया बीच की तरफ वापस चले जाएंगे। स्नोलैक्स के पास ऐसा नहीं है। हाउएवर वो ब्लॉक करके पहले सेफगार्ड ले रहा था, इस बार शॉर्ट वॉइल एक बॉम्ब लिया तो विन हुआ। देखते भाई नेक्स्ट मैच में मजा आएगा भाई। नेक्स्ट मैच मतलब 1v1 मतलब दोनों का एक एक राउंड जीता है ना, तो ये फाइनल डिसाइडर राउंड रहेगा। उन्होंने इस्तेमाल करा, साल ने अपना यूनाइट मूव इस्तेमाल करा, तब उनके सारे के सारे प्लेयर्स चार्ज इन कर गए थे यहाँ पर टीम रेवेनेंट के ऊपर। और उस वक्त जैसा हम लोग बोलते हैं वो काइट करना क्राउली की तरफ से वो उसको परफेक्ट वन और जीसॉल का सपोर्ट अच्छा मिला था। और इस प्लेयर ऑफ द गेम बनते हुए यहाँ पर क्राउली द कैप्टन हिमसेल्फ प्लेड सेरीना विद द सिमिलर बिल्ड में बार बार देखने को मिलता हो। सो द यंग प्लेयर्स, द यंग लैड्स, अगर आप सेरीना पिक कर रहे हैं, गो फॉर दिस वन पर्टिकुलर बिल्ड एंड क्या पता आपको विक्ट्री मिल सके। थोड़ी देर के लिए ऐसा स्टाइट मुस्कुराहट तो आई हो कि भाई एक गेम तो जीता है। चलिए एक गेम तो जीत लिया, बट अभी भी ये भी जीतना है। यस एंड कहीं ना कहीं हम बात कर रहे थे रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के सफर की, राइट? जो कि ऑलरेडी 2 गेम्स हार चुके हैं। इतने सारे गेम्स हारने के बाद वो पहली जीत मिलना एक राहत की सांस की तरह है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, जो हमारा पर्टिकुलर रीजन था
डायरेक्ट रीजनल फाइनल्स हुआ था, राइट? एओस कप हमने नहीं देखे थे, नॉर्मली हम लोग टीम्स को खेलते हुए देख रहे थे, बट एट दैट सिचुएशन रेवेनेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। देन उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे जाना, अपने पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट करना और अपने नाम एक विक्ट्री नाम करना, राइट? हिस्ट्री आपने लिखी है फॉर नाउ, बट ये पर्टिकुलर मैच अब आपको जीतना पड़ेगा, जिसकी वजह से देखिए हम जैसा कि हमने यहाँ पर ब्लॉटर के साथ भी बात करी थी, दैट वाज खोने को कुछ नहीं है ज्यादा टीम रेवेनेंट के पास, बट नो शो के पास है। आप एट द एंड उनके लिए थोड़ा सा शो खराब कर सकते हैं, एक थोड़ा सा ऐसा स्पाइसीनेस डाल सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि अभी अगर बात करें कि ग्रुप ए से जहाँ पे 4 टीमें मौजूद है, Yes. टॉप 2 ही कोरिया वाले सब छोटे लग रहे हैं अब बात भाई। आ जाती है कि अगर गलती से नो शो ये मैचअप हार जाती है तो फिर प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा एंड T2 और नो शो का मैच सॉर्ट ऑफ विल बिकम द डिसाइडर। एंड ओरंगुटान भी एक मैप ड्रॉप कर चुकी है, सो इंटरेस्टिंग चीजें हो जाने वाली, क्योंकि T2 अगर जीत जाते हैं अपने अगले गेम्स तो देन बी गोइंग ऑन द कंप्लीट टॉप। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी तक हमने ब्रॉडकास्ट पे T2 को खेलते हुए देखा भी नहीं है। वी स्टिल डोंट नो, क्योंकि ऑफ स्ट्रीम पे शायद T2 और ओरंगुटान का मैचअप चल रहा होगा, जो कि ओरंगुटान के लिए भी एक डू और डाई सिचुएशन हो गया होगा। तो मामला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कर दिया यहाँ पे किसी तरीके से नो शो ने, लेकिन कंपटीशन में जो वो मसाला है वो थोड़ा सा और जो स्पाइसीनेस है वो बढ़ा देते हैं। बट नाउ इट्स टाइम फॉर ड्राफ्ट। क्रेजी थिंग्स तो हमने देख ली, आखिरी मैच होने वाला है रेवेनेंट के लिए, नो मैटर व्हाट, एंड ड्राफ्ट में कोई खास तौर पर चेंज तो नहीं देखने को मिल रहा। आई लिटरली थॉट कि आप नो शो थोड़ा सा ऐसा ग्रीन इंसा लेके आ सकते, लेकिन इनको शो को थोड़ा सा हमें डरा रहे थे, लाइक ठीक है मैं तो हुपा ही लेने वाला हूं, देयर इज नो वे। नो शो स्टिल ऑप्टिंग फॉर द सिमिलर जो कॉम्पोजिशन है, और टीम रेवेनेंट इज गोइंग विद द सिमिलर कॉम्पोजिशन जो कि उन्होंने पिछले यहाँ पर मैप के अंदर देखा था। और अगर हम स्पाइसीनेस की बात करें, वी लव स्पाइस, राइट? एंड दैट्स व्हाट रेवेनेंट इज ऑप्टिंग। बट अब ये मैच जीतना बहुत ज्यादा चीजें क्रूशियल बना देगा फॉर टीम नो शो। कैसा लगा इको भाई पिछला मैच? अरे भाई मजा आ गया भाई, जैसे कि आपने मेंशन करा, वन साइडेड हरा दिया भाई इनको तो सीधा। इसका मतलब ये कि आप अभी भी कंफर्म नहीं है। क्या लगता है रे ये लास्ट राउंड में कौन जीतेगा भाई? वही बात है ना कि पिक्स तो भाई सही है। T2 और नो शो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपटीशन हो जाएगा। T2 और ओरंगुटान बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाएगा, क्योंकि वहां पे ही हमारे टॉप 2 डिसाइड होंगे। कहीं ना कहीं रेवेनेंट सिंस दोनों मैचेस हार चुके हैं, तो वो और क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं बचा। इट्स जस्ट अबाउट कि द लास्ट डांस। कोरिया जीतेगी, देखते भाई। आखिरी मैच है इस एंटायर प्रतियोगिता के अंदर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ऐसे पड़ाव पे आ चुके हैं, कोई भी यहाँ पे ड्राफ्ट में चेंजेस नहीं देखने को मिली है। बट इस बार नो शो को पता है कि उनका गेम प्ले देखकर डर लगता है भाई। उनके भाई बंदे कैसे अरे डोमिनेट करते रहे भाई, स्टार्टिंग से ही डोमिनेट करते भाई बंदे। देखते भाई इस बार देंगे या फिर नहीं, या फिर रेवेनेंट कुछ हमें इंटरेस्टिंग करके दिखाई दी। ओ भाई सरीना जंगल, अभी के लिए हमारा रेवेनेंट की तरफ से सरीना जंगल है और इधर ड्रैगोनाइट जंगल है भाई। राउंड 3 होने वाला है। अगर रेवेनेंट जी जी यहाँ से जीती है तो अपने नाम टोटल एक विक्ट्री करके जाएगी। अगर नोशो यहाँ से जीती है तो उनके नाम ये दूसरी विक्ट्री हो जाएगी, बिकॉज़ लेडीज एंड जेंटलमैन उन्होंने इससे पहले ओरंगुटान को हराया था इससे पिछले मैच के अंदर। ओमन के ऊपर थोड़ा सा अर्ली प्रेशर यहाँ पर बुलेट बनाते हुए, लेकिन अच्छा जीशॉल का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आता हुआ पाउंड का इस्तेमाल करके उन्होंने थोड़ी देर के लिए उनको पीछे धकेला, वेरी कलेक्ट करेंगे एंड देन उसके साथ साथ वापस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश। टॉप पाथ पे हमने पिछले मैच में भी देखा था यहाँ पर फिक्सेस कि रेवेनेंट esports अच्छी लग रही थी, राइट? उनको ब्रीदिंग स्पेस बहुत मिल रहा था, और नोशो ने जब वो ब्रीदिंग स्पेस जब दिया ना, रेवेनेंट उस पे कैपिटलाइज कर रहा है। एंड मोर देन दैट हमने बात करी थी कॉम्पोजिशंस की, राइट? और काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे थे विदाउट द ऊपा, गेटिंग द स्नॉरलैक्स इन, हैविंग ज़ीसॉल, यू गेट दैट एक्स्ट्रा लिटिल बिट ऑफ अ टैंक, एंड उसके पीछे से आपके एजिस्लैश खेल भी सकते हैं। ड्रैगनाइट ऑलरेडी इतने ज्यादा टैंक पोकेमॉन है ही, तो ये बिल्डिंग दैट रूम एंड स्पेस। एंड वहां पे अगर आपके सरीना जो कि क्राउली थे, इफ ही इज ऑन फायर, और क्या चाहिए आपको? तो वो सारा एक जो मिश्रण बन चुका था वो रेवेनेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन था। बट अभी के लिए अगर आप बात करें, कहीं ना कहीं नो शो प्रेशर थोड़ी सी अप्लाई करने की बात चल रही थी, बट देन अगेन लेवल डिस्पैरिटी कुछ खास तौर से देखने को नहीं मिला है। वही 19-20 का मामला है। देखिए ब्लिसी और स्नोलैक्स को अभी भी अपना जो पावर स्पाइक है वो हिट करना पड़ेगा, स्टिल ऑन लेवल 3, बट कोई ना कहीं इवेंचुअली उनके नाम आ जाएगा जैसे ये वो छोटे छोटे डंक मारने वाले। मीनवाइल अगर हम बात करें, रूटीनी ने भी यहाँ पर 7 का गोल मारा, इट्स गोइंग टू बी नोवा, उनके पास उनका ड्रैगन ब्रेथ प्लस अवेलेबल जरूर रहेगा। मीनवाइल कोशिश अच्छी थी यहाँ पर सरप्राइज करने की सिंटाची को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बैकफायर कर गई। हाउएवर फिर से एग्रेसिव यहाँ पर खेलते हुए स्विफ्टी एंड ब्लॉसम के बीच में एक अलग ही सा टू एंड फ्रो मोशन जरूर चल रहा है, इनफैक्ट एक फाइट चलती हुई। बट इस बार नोशो कितना आराम से खेल रही है, ठहराव है उनके इस बार गेम में। जी हाँ, इस बार वो ओवर एक्सटेंड ओवरकमिट बिल्कुल भी नहीं भाई। ये तो भाई अलग ही खिला रहे हैं बंदे तो भाई, बॉटम पे एजी स्लैश खिला रहे हैं भाई बंदे, देख रहे हो?
गोल्स यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं। लेवल की बढ़ोतरी में ज्यादा कोई फर्क नहीं देखने को नहीं मिला। आप देखिए नो शो के ड्रैगनर ऑलरेडी 7 हिट कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है जब तक ड्रेडनो आता है वी आर गोना बी लुकिंग एट अ फुल फ्लेजेड ड्रैगन नाइट, बट सैल ट्राइंग टू अप्लाई सम प्रेशर, बट दैट्स जस्ट अबाउट इट। काफी अच्छा शोबो की तरफ से वो कंफ्यूजन आया, इनफैक्ट एस्टोनिश्ड टू बी स्पेसिफिक अगर हम लोग बोले, दोनों के दोनों प्लेयर उसी में यहाँ पर फर्स्ट स्टन जरूर हुए थे। हाउएवर अच्छा प्रेशर बनाने की कोशिश, जीसॉल लेवल 5 है, वोलन के यहाँ पर अभी के लिए पोजीशन कॉम्प्रोमाइज होती हुई जीसॉल के ऊपर अभी भी उनको टारगेट करा जा रहा है। विस्पीकन हमारी स्पॉन होती हुई इस समय के लिए, एंड द साल इज नाउ ऑन लेवल 8। टॉप की तरफ अगर हम बात करें, स्विफ्टी जस्ट गोज डाउन, क्राउली के ऊपर अभी के लिए प्रेशर जरूर बन जाएगा यहाँ पर फिक्सर्स। एंड नाउ दैट वी थिंक अबाउट इट, अगर कोई एक काफी बेहतरीन हाइपर बीम का इस्तेमाल एक्चुअली साल की तरफ से देखने को मिला, मैसिव चंक्स। अब यहाँ पे अगर ये ऑर्डिनोस भी सिक्योर करने में जी जी भाई, फर्स्ट डेड फाइट होने वाला है इधर भाई। नो शो वाले पहले ही पोजीशन लेके बैठे हैं भाई। ये तो गया भाई, ये लो भाई, गया भाई, डेड तो लग रहा है गया करके, बट रेवेनेंट वाले क्या कर रहे हैं भाई? अच्छा रेवेनेंट भाई हाइपर बीम का भी इस्तेमाल करेंगे, रोटम के ले जा रहे क्या? कोई परेशानी हाँ नहीं भाई, होती, आराम से यहाँ पे ड्रेडनो सिक्योर किया। अब इनकी निगाहें रहने वाली है रोटम के तरफ। सो बेसिकली रेवेनेंट यहाँ पर स्कोर के लिए उसी टाइम फ्रेम के बीच क्राउली नियर द ज़ैप्डॉस डोम वो ओपोनेंट के सेंटर पाथ की तरफ चले गए, एंड देन उन्होंने ल्यूडिकोलू एंड बाकी जो बफनट होता है उसको अपने नाम करा, लेकिन वो पिक होए जा रहे हैं बार बार, वो ओपोनेंट को भी एक्सपीरियंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। बट फाइनली नोवा लेवल 8 अपना हिट करते हुए हाइपर बीम उनके पास अवेलेबल रहेगी। फॉर नाउ स्लाइट यहाँ पर एडवांटेज है नो शो के पास, इतनी भी ज्यादा नहीं है। जीशॉल एक ऑफ गार्ड सिचुएशन में फंसेंगे भाई इंग्लिश वाला देखो, पीछे धकेलने के लिए अच्छी कोशिश। क्यों भाई हिंदी वाले कमेंट्री में मजा नहीं आ रहा क्या? बताओ तो फिर मैं चेंज करता हूँ। नो शो अपने यूनाइट मूव्स जल्द से जल्द फार्म कर रही है। वी नो कि एक और ड्रेडनो होने वाला है, एंड क्राउली जस्ट गेटिंग कॉट ऑफ गार्ड सांची की तरफ से। भाई इनका ऑलरेडी यूनाइट चल गया भाई, यूनाइट मूव सैल वापस जाएंगे, वो भाई खत्म है, मार दिया, नाइस जीजी। बट रेवेनेंट के प्लेयर्स एट दिस पॉइंट यहाँ पे टॉप लेन पुश, इंग्लिश वाला 3 मिनट आगे है, ठीक है फिर इंग्लिश वाला खेलते हैं, इंग्लिश वाला देखते हुए। वॉल का इस्तेमाल दोनों ही तरफ से खदेड़ दिया गया, बट रेवेनेंट स्टिल इन कंटेंशन ऑफ दिस। किधर है, किधर है भाई? इधर तो जैफ फाइट चल रहा है, चलो रेवेनेंट भाई है, मतलब लीड में है भाई। भाई 209 ज्यादा पॉइंट का लीड नहीं है। ड्रैगोनेट देखो नीचे बॉटम पे स्कोर करने जा रहा है। फाइट तो हो गया भाई, फाइट स्टार्ट हो गया इधर। भाई ये फाइट, अरे भाई रेवेनेंट के 2 बंदे मर गए, 3 बंदे मर गए भाई, 4 बंदे मर गए। अरे यार भाई क्लीन स्वीप हो गया क्या? क्या ब्लीसी चोरी करेगा क्या? अरे भाई नहीं भाई, मैं तो बोला था गया भाई ये मैच तो। भाई 243 443 खत्म है भाई रेवेनेंट। अरे यार नहीं होगा रे भाई, रेवेनेंट के लिए खत्म है भाई। हेलो हबीबी, कैसे हो आप? बताओ आप। मैं तो बढ़िया भाई, तू बताओ। वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। अरे यार रेवेनेंट का गेम तो गया भाई, ये उनका तस्वीर ना ओपी है एकदम भाई। देखो यार क्या ही निकाला भाई उन्होंने, उनका एक बंदा नहीं मरा। हाँ कोई नहीं रे, जी जी भाई, नाइस ट्राई। टीम फाइट भाई, जैफ फाइट पे टीम फाइट थोड़ा ये हो गया भाई, पीटी दे दे इनको। आज तो आप गेम नहीं खेल रहे
पर फिर भी आपका कैरेक्टर कंट्रोल क्यों पकड़ा बैठा है? अरे किसका कंट्रोलर हटा दूं क्या? चलो भाई कंट्रोलर हटा देते हैं। इधर से हटेगा रे इसका कंट्रोल। Unfortunately, Revenant Esports, the rest of the team didn't really materialize like they did in Game 2 here in Game 3. I'm sorry, S4L. Are you doing 100,000 damage on your Dragonite? Let's go. I mean, no-show just looking incredible right here. I think there's something on चलो S4's भाई। controller that says Hyper Beam to 3. अच्छे खेले रेवेनेंट। हाँ भाई अच्छा तो खेले। अरे लीड में थे रे, आखिरी का जैप फाइट में थोड़ा ये हो गया भाई। Usage out of that Hyper Beam. If you take a look at the scoreboard here, Dupes, next, you can see Revenant actually had that little score advantage, but of course what you don't see here is the massive level advantage from No-Show. They were really in control of that Zapdos pit the entire time. You see that they KO'd the entire team and then took the bird off the board. Well, let's see how No-Show won this series here in Game 3 with some highlights. Here we go. S4L down in this bottom. ब्लिसे ने अल्ट किसको दिया? ये देख लो भाई, हाईलाइट में देख लेते हैं। Pokemon, but sometimes with the Dreadnought. Yeah, absolutely. Here we see Crowley and Nova doing a very unique push. We saw a lot of Unite moves. अरे उनका ये था कि ऊपर का जो बेस है ना वो तोड़ देते। अगर रोटम वाले स्ट्रेटेजी खेल रहे थे ना, अगर ऊपर का रोटम मतलब ऊपर का बेस पूरा क्लियर करते हैं ना, डायरेक्ट लास्ट में फिना फाइट लेके सीधा सेंटर स्कोर करने जाते भाई। To put onto No-Show, but No-Show was able to handle it, uniting. ये सब कोचिंग लेके आए मेन टीम्स वर्ल्ड में। मैक्रो समझने के लिए आरएनटी खुद से प्रिपेयर करके आई है, स्टिल अच्छा कंपटीशन दिया। हाँ रे, उनके भाई कोचेस वगैरह रखे थे भाई बाहर की टीम के। चलो कोई नहीं भाई, वैसे भी इंडिया के लिए फर्स्ट टूर्नामेंट है जो बाहर का होने वाला है। इसके बाद तो और अच्छे मतलब मजा आएगा भाई कंपटीशन में। Yep, No-Show getting their points in. Those double ducats in the final 2 minutes. Anything you're carrying when it's deposited, worth double. And of course, that's how जी जी श्रू रेवेनेंट। हाँ भाई जी जी भाई। And it was an incredible game. You could see the heavy sigh of relief. Woo! We got through that one. I mean, what a player. And our Santachi, incredible. Zarina, I feel like our Zarina players are going to be a lot of the MVP. सरीना का ये देख लो भाई, बिल्ड क्या यूज कर रहा था ये। अटैक वेट मसल ये फोकस क्या कौन सा है? कोच भी होता है क्या? हाँ भाई कोच होते हैं भाई, वो सब पूरा स्टडी करके बंदों को बताते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी के हिसाब से खेलना है। Stomping 'em down. No-Show once again showing off. भाई अपने लिए नया है रे, अपने इधर भी आएगा रे भाई, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है अपने इधर। अभी सीक्रेट शिप आना बाकी है, जापान की जहर टी। हाँ भाई खत्म आरएनटी। बाहर हो गया क्या आरएनटी? जापान तो जहर है भाई। नो लुकारियो वाले जीते थे। रेवेनेंट का पहला मैच हुआ था रेवेनेंट के साथ, फिर दूसरा नो शो वर्सेस इसमें क्या बोलते हैं ओरेंगुटान हुआ था ना। ओरेंगुटान वर्सेस आरएनटी में आरएनटी बाहर हो गया था। ये दूसरा मैच आरएनटी का लास्ट मैच था। अच्छा भाई नो शो 2 मैच जीती है, ठीक है 너무 축하하고요. भाई। 그리고 아주 힘들은데 हम 잘했습니다. क्या 그리고 이제는 최고의 8개 브래켓 भाई हम क्यों हारे? अरे कुछ कोई नहीं रे, चलते रहता है भाई, हार जीत तो चलते रहते वेंडी, क्या है उसमें। जी जी भाई नाइस ट्राई। नो लुकारियो ओरेंगुटान ओपेक की है, T2 जापान और नोशो कोरिया की। नो लुकारियो हाँ ओपेक की है। अरे ये सिंगापुर की है ना नोशो वाली। on the top group and रोना आ रहा है। अरे कोई नहीं रे भाई, Oh, well, we are looking forward to it. We had two incredible अरे उनको games एक्सपीरियंस from मिलेगा so भाई, far. मतलब अगली बार अच्छा ट्राई करेगा This बंदे। group stage हाँ against T2, a very formidable opponent. Are you excited? 지금 이제 한 게임 남았는데 T2랑 할 게 남았잖아요. 아주 기대되는 힘든 게임일 텐데 기대되십니까? 네, 굉장히 기대됩니다. 아, 굉장히 기대가 됩니다. 네. I'm really looking forward to it. Okay, wonderful. Well, so are we. Congratulations on making a top 8 bracket and good luck in the rest of the tournament, S4L. Thank you. 8개 그렇게. To our casters. All right. I mean, wow. No-Show looking incredible right here. They are moving on to day 2, and they are a team that I think people need to watch. I think this is a team that you need to figure out how to beat. Yeah, they're sitting on top of the standings of their group.
However, we've got a little bit of a surprise that we can bring to the folks here. T2 क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसा फीलिंग थी. हाँ भाई. अरे अभी तो और भी आ गया रे. एस्प्रिंट भाई विदाउट प्रोफेशनल कोचिंग इतना अच्छा फाइट दी. दूसरी टीम के पूरे कोचेस सब एरियाज के मेटा उनके काउंटर स्ट्रेटेजीज बाहर रही थी. अपनी टीम खुद से इतना अच्छी अकेली. हाँ रे. they just looked great, of course. I know T2, we haven't gotten to watch them देखते yet. भाई और मजा आएगा भाई मैचेस देखने में. Let's take a look at that match right now. Last 2 minutes, T2 and Orangutan. बट कोई यहाँ तक पहुंचा पूरा बढ़िया खेले. दैट्स मोर देन इनफ. हाँ भाई नेक्स्ट टाइम और अच्छा ट्राई करेगा भाई. ये देखो ओरेंगटन से T2 चल रहा है इधर. बस जाए फाइट पे देखो भाई क्या ही खेलते भाई. खत्म भाई. Two players down for Orangutan. T2 looking strong. 3 players down. The hoop is snuffed out immediately. T2 is all over this thing. Solo's trying to find their way in, but Mame एजेस स्लैश अच्छा ये कर रहा है भाई क्राउड कंट्रोल. खत्म है भाई. ओरेंगटन के 3-4 प्लेयर खत्म है. सरीना बचा है खाली. T2 रनर अप्स ऑफ द जापान. भाई T2 की तरफ जाएगा क्या? गया भाई. trying to fight their way through 3 players and find this goal zone with 50. इतना टाइम बचा है. 1 मिनट. इस चैंपियनशिप में एजेस स्लैश बहुत यूज करा बंदों ने. हाँ रे बंदों ने भाई बॉट लेन पे एजेस स्लैश ही यूज किया रहा है भाई. खत्म है भाई. ओरेंगटन की तरफ से पुश आएगा भाई एक. कितने भाई 2 बंदों पे 25 सेकंड का कूल डाउन लगा. मतलब 3 बंदे हैं एजेस स्लैश क्रैमरंट और विगली. भाई विगली यूज कर रहा है भाई T2 वाला. भाई ये क्या ये लो भाई सस्ते लोग बंडी. They're going to try and find their mark. They're pushing forward on Aerie. Aerie's going to try and find that's a Unite move back. They're trying to get a KO. They do. The Serena goes down. That's Solo off the back of that wiggly tough, baby. You kidding me? Chucking mitts out here. KST rolling through, but Orangutan is just too far behind. Too far behind, and T2 taking a big win here, winning both of their games. I cannot wait to watch. भाई ड्रैगोनेट तो सब टीम में है भाई. वो सिक्योर के लिए है ड्रैगोनेट भाई. ड्रैगोनेट का सिक्योर अच्छा है भाई और टैंक की भी पड़ता है ना. T2 एंड नो शो क्वालिफाइड हो गए. ओरेंगटन बाहर होगी. T2 2-0 भाई. T2 जीत गया रे. T2 और नो शो. ग्रुप ए में से 2 टीम क्वालिफाई है. ओरेंगटन और रेवेनेंट बाहर है क्या? बाय भैया चलता हूँ पढ़ाई के लिए. ओके भाई बाय बाय. अच्छे से पढ़ना भाई. एक तो स्प्रेगल है. दूसरा बंदा कौन है ये? बस स्प्रेगल और कोई तो रुक जा बताना था मैं. बंदे 3 ऑलराउंडर खेल रहे हैं. ड्रैगन सरीना एजेस स्लैश. अटैकर तो दिखाई नहीं रहे भाई. अरे T2 वाले ये देखा है कब T2 का गेम प्ले? अभी उसमें वीकली दिखा था पता है. वीकली खेल रहे थे T2 वाले. Once you do, that energy is automatically added to your Unite Ball. Wild Pokémon are worth different amounts of energy, and this is indicated by the number above their head. Another way to get energy is to knock out a Pokémon on the opposing team. You'll need to walk over the orbs they drop to collect their energy. You can deposit any amount of energy into your opponent's goal zone. T2 जापान है. अलग मेटा खेलते हैं वो. अरे उनका मेटा देखने में मजा है. देखेंगे भाई क्या मेटा के लेके आते हैं भाई जापान वाले बंदे. आया रे मैं 2 मिनट में. देखना थोड़ा. Secondly, take notice of how much health your opponent's goal has. Once it reaches 0, the goal will break, and you will have to go deeper into enemy territory to continue scoring. Lastly,
Points are doubled in the last 2 minutes of the game. So if that time is approaching, you may want to consider waiting to score during those final 2 minutes to maximize your team's score. That's all from us on the basics of scoring. भाई अभी किसका मैच है? रुको यार, मैचेस का टाइमिंग देखते किसका मैच है तो अभी भाई अभी T2 वर्सेस नो शो होगा। अरे ग्रुप ए में से हो गया ना क्वालिफाई, तो शायद ग्रुप बी के मैचेस हो गए। अभी है T1 वर्सेस नो, हाँ T2 वर्सेस नो शो, ग्रुप ए राउंड 1। चलो भाई पोल डालते हैं, कौन जीतेगा भाई, पोल पे वोट कर देना। T2 आ जाओ। भाई ये मैच स्टार्ट होने से पहले पोल पे वोट कर दो रे, कौन जीतेगा भाई ये मैच। Welcome back, everybody, to the Pokémon Unite World Championships. भाई ट्रॉफी देख लो भाई। London, the first ever event of its kind, and it has already been so exciting. My name is Zoinks, and I am joined yet again by my partner in crime, Jeff Hoagland. That's good, baby. Back on the desk here with you, Zoinks. We are heading on into the last match of. खत्म हो गया, अभी क्या कर रहा है? अरे बाकी को की मैच देखते ना, T2 एंड नो शो दोनों टॉप 8 में है। अभी तो उनका मैच हो रहा है भाई। आजा वीसी में आ, बैठा होगा तो। This is for not only position in the bracket, but also bragging rights from your group stage. You know, one of these teams gets to be the 3-0 undefeated through the Swiss here, and one of them has to just progress to 2-1. मैच बाकी है ग्रुप 1 का। हाँ भाई, इंडिया से कौन है भाई? रेवेनेंट था, अभी उनका मैच हो गया, खत्म हो गया, मतलब बाहर हो गया शायद। In their AOS Cup as well, making consistently deep runs in the tournaments that they play in competitive Pokemon Unite. This is the first time we're going to be able to get to see हेलो आवाज आ रहा है? main stage. They have been playing on the other side. क्या रेवेनेंट बाहर हो गया ना? I'm very excited to be able to cast this team. रेवेनेंट बाहर हो गया ना? Teams I've been looking forward to casting बाहर हो गया ना, वो तो पहले हो गया था, इनके मैच के पहले हो गया था बाहर। हाँ क्या? ऑफ स्ट्रीम मैच में हार गया था। अच्छा, किसके साथ था ऑफ स्ट्रीम में? T2 का, T2 हो गई क्वालीफाई। T2 भाई T2 वाले वीकली खिला रहे थे बे, देखा तूने? क्या? T2 वाले वीकली खिला रहे थे। हाँ देख लिया। लास्ट का 2 मिनट का मैच दिखाया वो लोग का। हाँ वही 2 मिनट का ही देखा। वो समझा नहीं उन लोग को ऑफलाइन क्यों दिखाया बट T2 वालों का। हाँ मतलब ऑफलाइन था उन लोग के सारे मैचेस, यही मैच छोड़ के बाकी सारे मैचेस ऑफलाइन हुए।
ऑफलाइन मतलब स्ट्रीम नहीं हुए। क्या पता भाई। अरे बॉटम की टीम होंगी शायद इसलिए। क्या मतलब जो जीते जीते ना उनके मैच जीतेगा, मतलब जो पहले नंबर पे क्वालिफाई हुए ना। अबे पागल है क्या? जापान की टीम है वो। तो जापान से 2 टीम है ना। हाँ तो दोनों टीम एक ही ग्रुप में थोड़ी ना है। क्या पता भाई, उनका कुछ होगा फिर। दूसरी टीम दूसरे ग्रुप में है। हम्म। इधर तो कोरिया की थी, सिंगापुर की थी, एक इंडिया और एक जापान की। आज पूरा मतलब हर हर ग्रुप से ये होने वाला है क्या? हर ग्रुप के मैचेस होने वाले हैं ना आज? क्या इतना नहीं पता रे, कल भी होने वाले मैचेस तो पता नहीं। आज शायद से 2 ग्रुप के होंगे शायद। हम्म। टीटू और नोशो का भी थोड़ी ना मैच है, कल है मैच। क्या अभी है? अभी जो है। अभी है क्या? एक ग्रुप का खत्म कर रहे हैं। हाँ खत्म शायद। क्या कर रहे हैं? वो तो गया खत्म भाई। ये तो सिर्फ देखने के लिए मैच है बस। एक्सॉल बिल्ड गलत खेल रहा था स्नोलैक्स पे। असॉल्ट वेल्ट स्पेशल अटैक नहीं ही नहीं था कि कोई ओपोनेंट में। वेल्ड गलत नहीं खेल रहा था भाई, एनर्जी डिप हुआ है इधर। अबे उनका देखना भाई, ग्रुप फ्रेंड कितना स्ट्रांग है भाई। वही बोल रहा ना, एनर्जी डिप हुआ है। हम्म। तो बिल्ड के ऊपर नहीं था वो। guaranteeing their spot in the double elimination bracket tomorrow. Yes, they are not the only ones उनका एक्सपी शेयर लेके खेलता वो और जल्दी मरता फिर तो। Sitting at 2 round robin wins. Sitting at 2 round robin wins, have been playing amazing in this tournament so far. We got one more team preview for you. Let's take a look at No Show. ओरांगुटान भी बाहर हो गया बे। नहीं हाँ हो गया वो भी। बोला ना टीटू ने हरा दिया। 안녕하세요. 저희는 한국에서 온 유나이티드 대표팀 노쇼입니다. 그리고 여기는 저희 후보 초보 선수입니다. क्या लगता है टी2 और नोशो में से कौन जीतेगा? 우선 메타가 좀 और नो शो 바뀌어가지고 में अब मेरे को तो टीटू लग रहा है जीतने का 같은 전략을 चांस है। मतलब वो भाई कुछ भी पिक खेलते हैं भाई वो लोग जापान वाले। 같은 생각을 할 수 있기 때문에 여기서 언급은 비밀로 하겠습니다. 어쩌다가 하게 된 देखना वो 게임인데 열심히 विगली 하고 खेला है ना अभी। हाँ हाँ। 좋은 성적을 거뒀어요. अरे भाई वो देख भाई बिना ऊपर के खेले ना, सारे मैच बिना ऊपर के खेले रहेंगे वो लोग। 마인드 그리고 이제 그냥 정신적인 그런 멘탈적인 부분이 가장 중요하다고 생각됩니다. 한국을 대표해서 이제 2팀 중에 한 팀으로 온 만큼 그만큼 또 열심히 해서 좋은 성적을 거둬서 응원을 해주시면 저희가 그에 보답하듯 좋은 성적을 낼 수 있을 것 같으니까 많은 응원 बहुत 부탁드립니다. गंदा लेवल डिप दिया भाई। ये देख नोशो वर्सेस एंटिटी। इनका मैक्रो बहुत स्ट्रांग है, पता है कब क्या करना है भाई। वो तो सिनर्जी है रे, उनको पता है कब क्या करना है भाई। बहुत इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल लिया ना ये लोग। भाई लो भाई जे स्लैश लेके आए बंदे। अरे टी2 वाले क्या खेलेगा भाई? कुछ बोल नहीं सकता, कुछ भी खेलते हैं वो लोग जापान वाले। विगली है वो तो साला इधर इंटरनेशनल खेल रहे हैं इसके लिए कुछ थोड़ा डिसेंट पिक ले रहे हैं। अपने इधर तो वो कुछ भी खेलते हैं। चालीदार उठा है ना। हाँ भाई चार्लीजार्ड खेल रहा हूँ भाई, उनके उधर चालीदार बहुत उठा के खेलते हैं। अंदर खेलता है चालीदार उधर के। चार्लीजार्ड में मसल फोकस है। वही लगा दिया भाई उसने भाई, देखा ना बॉटम लेन पे। अरे पूरा पूरा मतलब पूरा प्रेशर कर रहे थे जो उनका फार्म है ना रेवेनेंट के खिलाफ। देखा ना जो ये लेके आए थे भाई, क्या बोलते अपना 9-10 रोल आउट विगली खेलते हैं सुपर सेल भाई। रोल आउट ही चलता है भाई उधर जापान में तो। यहाँ पे रोल आउट खेलेगा क्या? नहीं यहाँ पे तो नहीं खेलेगा रोल आउट। देखते हैं क्या खेलते तो। सिंह खेल रहा था पिछला मैच। सिंह रोल आउट नहीं खेलेगा, स्कोर कॉम खेलेगा तो रोल आउट खेलेगा ना। Yeah, I'm going to be interested to see how this incredibly durable lineup that T2 locked in is going to work out for us here. Their squishiest character that they locked in was a Charizard, which while it is a damage dealer with its auto attacks, it is an all-rounder at its core, meaning it's डिस्कॉर्ड का म्यूट करके तेरा आवाज में कोई इधर सुनने के लिए।
पर मैं बोल नहीं पाऊंगा फिर डिस्कॉर्ड में ना। अरे कर सकता है तू, मतलब देखो डिस्कॉर्ड का आवाज कम करना है ना खाली। कम नहीं, बंद ही करना, मतलब तेरा आवाज हाँ इधर आएगा। सुन यार, मोबाइल में पता नहीं रुक जा। मेरे कैरेक्टर के ऊपर क्लिक कर और वहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन होगा तो वॉल्यूम कम कर सकता है तू। हाँ अरे हाँ, पूरा बंद कर देता है तेरे को। हाँ एक मिनट रुक। What a fantastic suit there, I must say. Yes. Oh yeah. At the Pokemon World Championships, attire seems to be the name of the game. We have some amazing looks. I mean, our caster's desk is looking pretty clean, I will admit, but the स्ट्रीम का आवाज फुल crowd is करता हूँ। filled with so many good looks. I mean, every Pokemon in the entire कमेंट्री की वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा करो हिकराज भाई। हाँ it truly is a celebration of all things Pokemon. Yeah, in addition to just the ठीक है, massive इतना साउंड ठीक है। games going on here this weekend, like you said, it's like a कुछ बोल Pokemon जरा। celebration. हेलो, आवाज आ रहा You है? see here, just the hall is तेरा filled साउंड with इंक्रीज people करना। that are just काय का? sharing their love of this absolutely amazing काय का साउंड इंक्रीज करो ये इधर का स्ट्रीम में? मतलब स्ट्रीम पे तेरा साउंड इंक्रीज आना चाहिए वैसा। अरे स्ट्रीम पे फुल साउंड है मेरा तो। Maybe a little bit of a wish list of what we want added to Pokemon Unite. We gotta wait our turn, I think. ये लगता है डिस्कॉर्ड की वजह से मेरे को आवाज ही नहीं आ रही है। there, but we have some already in United. I spot a छोड़ जाने blastoise in the मैं background. डिस्कॉर्ड पे Character तेरा आवाज we कर रहा might see हूँ। at some point this weekend on this stream. Yeah, we have not seen a Blastoise सही है so अब, far. Now, ठीक है भाई। Blastoise has had an interesting story in Pokemon Unite, भाई right? It स्टेडियम has तो that देख defender कितना role, सही है। so and it has a couple of movesets that are great for that tank देखियो style ना, of gameplay. But where we've वो seen it रख दो most फिर उधर often अंदर। in top level competitive Unite is actually in the central पानी area. दे, Yeah, that एवढं काय द्यायला rapid spin पानी देना। plus water spouts turns you into kind of a more जितली durable, का इंडिया consistent stream हारली of बाय। damage. Kind of assuming a role more similar to like what Charizard does, where it outputs damage but is still a little bit more durable than what you हारली traditionally का think of as a damage dealer. All three of the Kanto starters honestly love to find themselves in the central area, if we were being honest. Venusaur takes it after a couple of ओए मोबाइल rotations, हैंग हो गया makes था sure that अभी। they can hit that level 9. Blastoise and Charizard, of course, want to be on the fast track to the same way. We see our teams getting ready to do battle here. This is our last match in the first Swiss pod of our day. बाकी पोकेमॉन यूनाइट के टूर्नामेंट भी इधर ही हो रहे हैं ना? 2-0 playing for हाँ the इधर ही हो first रहे हैं। seed बहुत coming बड़ा out of this स्पेसिंग एरिया bracket रहेगा। with that 3-0 position. इस साइड कोई ग्राउंड पे कर रहे हैं। Win-loss record is about to be blemished for one of these teams. स्टेडियम I mean, मीडियम we're लिया going रहेगा। to have a अरे winner पूरा and a ये करके loser, रखा है as is उन्होंने, the way of Pokemon Unite. So टीम we अगर are सेट going to करके see रखा one of देख these रहा है। teams headed into bracket with that much more confidence. वो देखना ऑडियंस देख कितनी सारी है। तो भाई ये सब पोकेमॉन के कुछ आधे तो ये वो रहेंगे, कॉम्पिटिटर रहेंगे जो उधर आए रहेंगे देखने दूसरे गेम के। दूसरा भी चल रहा है लाइव, देख रहा था। वेंजर के साथ खेलो, मूड खराब, आरएनटी हार गई। अरे तो आरएनटी हारे तो क्या हो गया भाई, बाकी हो गया तो मैच देखना है भाई मेरे को। वे आरएनटी का तो वैसे भी चांस कम ही था। तो उतना प्रैक्टिस ही नहीं है बाहर की टीमों के साथ, ना बाहर की टीम खेलती है। बाकी ग्रुप के तो और हालत खराब होने वाली भाई। 3 ही है एक ग्रुप में। अरे एक ग्रुप में 4 थे क्या बंदे? हाँ, 3 टीम वीजा की वजह से आ नहीं पाई, तो देखना ग्रुप कैसा हो गया भाई। भाई उनकी तो और हालत खराब है। उनका तो एक मैच हारे बाहर सीधा। ऐसा है क्या? अरे यार देखना क्या है, कोई एक टीम समझ 2 मैच जीती, कोई एक टीम अगर एक भी हारती है तो उसको ऐसा डर लगेगा ना भाई। हाँ वो तो है। रीजनल में तो अच्छा खेला था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या हो गया? अरे वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनका अलग चलता भाई, उनके मतलब जो इंटरनेशनल जो बंदे रहते हैं भाई, उनका स्ट्रैटेजी कुछ अलग ही रहता है भाई उनका। और वो ऐसा नहीं कि कुछ भी पिक उठा के खेलते हैं, वो बराबर स्ट्रैटेजी के हिसाब से खेलते हैं भाई। वो लोग खुपा नीचे खिलाते हैं, देखना टर्न बिन दे के सिक्योर करने के लिए बॉटम का। भाई उनके पास हर मतलब वो ये लेके आते हैं भाई काउंटर अपोनेंट बंदों का। T2 जीतेगा शायद, नेम से ही प्रो टीम लग रही है। सारे नेम पे गए जाते हो भाई। नेम नहीं भाई, कंट्री देख के जापान की है। अरे वोट कर दो रे, इधर पोल पे वोट कर दो भाई, कौन जीतेगा।
Blissey stonks, and they are gone. So, you know, don't bet on eggs, I suppose. But that being said, this is just Group A. Like, we are living in a small little microcosm of whatever kind of meta we can see. We have a lot of tournament left, and there's a lot of games being played out. हाँ ये इसका आवाज क्यों नहीं आ रहा है किसका अनाउंसर का? किया है रे उसका आवाज आ तो रहा है for your match to start. There's a lot of strategy that goes into this game, and the top teams are भाई डिस्कॉर्ड के आने का तेरा स्ट्रीम का आवाज पूरा लो आ रहा है मेरे को. something exciting to share with you here. डिस्कॉर्ड का आवाज ज्यादा आएगा ना तेरे को. Another map to play on with lots of new fantastic objectives and wild Pokemon tick and tests. Let's take a look at what that's going to look like here. कर दिया T2 का ज्यादा है. देखते हैं भाई कौन जीतेगा तो. ये भाई नया मैप देख लो भाई. भाई देखना सरीना डिप गिर रहा है हर टीम का. भाई वो देखना क्या खेल रहा है सरीना पे बिल्ड. बस ये रखा है उसने क्या बोलते हैं अटैक वेट मसल बैंड और वो क्या है मसल बैंड है ना रेड वाला बैंड और ये वीकनेस पॉलिसी. मसल बैंड नहीं रखा है अटैक वेट फोकस बैंड और वीकनेस पॉलिसी है यार. वो रेड और येलो बैंड में कंफ्यूज होता भाई कौन सा है भाई मसल और फोकस में भाई. यही बेसिक है भाई. हाँ भाई. आज तक और साले वो स्टैक करने के लिए इतना मरमर नहीं करते भाई. स्टार्टिंग में जितना स्टैक हुआ फिर बाद की बार में देखना कितना अंदर घुस के मार के निकल रहा है बंदा. भी ब्लेसी नहीं खिलाते हैं लोग अलग से नो शो वाले. कोई भी टूर्नामेंट में ब्लेसी नहीं खिलाते. आई सपोर्ट आ रहे हैं वो लोग जो बोल रहे हो उसका साउंड बहुत कम है. ऐसा क्या इग्नोर भाई कहाँ इग्नोर क्या. कोई लुकारियो खिलाओ टॉप लेन. हाँ भाई मार खाने के लिए क्या. इधर भाई सरीना भाई घुस के मार रहा है. तो सरीना ही पेल देगा भाई लुकारियो का तो. वो ब्लैक कैंड किस कौन से ग्रुप में है ग्रुप सी में. कौन सी आई सब अच्छा आई ना रुक देखता. वो ग्रुप में आएगा लुकारियो. आई सपोर्ट आर्यनस. लुकारियो ने तो ये आएगा एप्सल तो रहेगा आयरन गेमिंग एप्सल उठाएगी बॉटम के लिए. लिक्विपीडिया टैरेंटार आने दो फिर पेलेगा तस्वीर को. टैरेंटार बैन होगा ना शायद. बैन है भाई. हाँ भाई टैरेंटार नहीं खेल सकते भाई इधर. अभी नया पॉकीमॉन है. नया पॉकीमॉन जब तक स्टेबल नहीं होता तब तक उसको अलाउड नहीं करते भाई बंदे. अबे टैरेंटार का काउंटर करता है माइम में. माइम ग्लेशियन और टैरेंटार बना है. हाँ हाँ माइम अपना अल्ट मारेगा टैरेंटार कुछ नहीं कर पाता फिर जब तक माइम के अल्ट में. ग्लेशियन भी दे देता भाई अच्छा खासा डैमेज पता है टैरेंटार में. माइम का देखता है ना उस दिन क्या था वन शॉट कितना डैमेज दे रहा है. सिल्वियन भी ये मतलब ग्लेशियन भी खेल सकते टैरेंटार के खिलाफ. हाँ इनको मेटा में से लुका टेलन एंड मिस्टर मैन रखना चाहिए. देखे भाई 1 मिनट के बाद होगा. 1 मिनट 36 के बाद नहीं 1 मिनट 32 सेकंड के बाद चालू होगा. तक रेडियो वाला आया था मैं बोला हाई मोबाइल कैरेक्टर काउंटर है क्रैमोनेंट वगैरह. देखो भाई अभी क्या क्या लाते भाई बंदे उठा के. हेलो भाई रोस्टिंग सरदार वेलकम टू द स्ट्रीम. फाइट में बिना ऊपर के ज्यादा फायदा रहता है. बिना ऊपर के अगर 5 मैन अपने जैप पे है भाई. और अगर ओरोंगेटन वाले साले मतलब ये फाइट में बस ऊपर को छोड़ दिया था उधर
दोनों मैच में देखा था। and moves a Pokemon can learn. Every Pokemon starts with सीधा a फाइट basic करने attack 4 मैन फाइट कर रहे थे और औरंगुटान वाले two attacks. Be sure to pick out ऊपा को छोड़ दिया था, तो मतलब playstyle उन्होंने पहला बेस तो तोड़ दिया था ना। हाँ T2 वाले वीकली खिलाएंगे समझ, ठीक है। हम्म और ये लोग हुपा खिला रहे, ठीक है। हुपा ने यूनाइट दिया, मतलब उनके बंदे तो आ जाएंगे बराबर, हाँ हाँ पर वीकली अपना अल्ट खोलेगी, कुछ को टर्न नहीं पड़ेगा उसके वजह से। all of this in mind when picking out a Pokemon, and be sure to और try ऊपर out से as स्लीप खेल many रहा है ना, as you can हाँ। to find out which playstyle एक ना एक बंदे को fits you स्लीप दे best. देगा कि कोई ज्यादा कर Stay tuned to फुल learn अपने more ये नहीं खेल and be रहे, the very क्या best बोलते हैं, trainer on फुल Eos एज। Island. तो जितने देर में सोएगा उतने देर में तो ये गायब कर देगा क्रैमो और रेंट और ये क्या बोलते हैं सकीना। The Pokemon Unite World तो डाई वाला क्रैमो Championships रेंट is खा still जाता है भाई। continuing. We have had so many good games so far, and only more to come. I cannot wait. इन्हें कुछ नहीं आता, मैं होता तो 1v5 करता पोलो पिन माई ड्रीम। हाँ भाई तुम होते तब ना भाई, उधर क्वालिफाई करने के लिए करने में ही लग जाओगे भाई तुम्हारा तो। इधर हम क्वालिफाई नहीं हाँ हुए। ना भाई, इधर हमारे ही लगे पड़े और तुम भाई तुम होने की बात वो कर रहे बोल हो। रहा है मैं हमारे ग्रुप में, मेरे ग्रुप में ऐसे इंशन नहीं होती ना, हम्म। और वैसे को एक मैच निकाल दिया था, ठीक है। पहला मैच जीत भी गए थे वैसे इंशन के हाँ हाथ। सेकंड मैच वो जैप लेके गए हरामी को, एकदम क्लोज गया। थर्ड मैच में भी वही सेम सीन। and I saw that the Aegis Slash Top Hat Hollowware was now available, and I just purchased it right away. I mean, it was one of my favorite characters. It was a wonderful. भाई बोलना आसान है करना मुश्किल। हाँ ना भाई, जब तुम करोगे ना तब बोलना भाई, बोल के नहीं करके दिखाना, तब मानेगा भाई। 1v5 1v3 कर हाँ देंगे इंटरनेशनल। वही ना भाई। वो उतना नहीं जैप स्टील कर दे बस। Yeah, it's a character that the thing that sets it apart from the other melee brawlers is just incredible ability to secure objectives, and with ब्लैक हैंड का ओवरलॉर्ड मस्त लुकारियो खेलता है, कुलदीप भाई को पता होगा। वाले तो ग्रुप में बोला उधर तुमको लुकारियो दिखेगा, ये ग्रुप में नहीं दिखेगा तुमको लुकारियो। कौन से वाले ग्रुप में? उधर ही दिखेगा। अरे जिसमें ब्लैक हैंड ने तो आईने हाँ गेम किया ना, हाँ वो में अरे दिख यार। सकता है। एप्सॉल लुकारियो दिख सकता है, मतलब कंफर्म नहीं बोल रहा। इसके पास खुद की टीम भी नहीं होगी। हाँ भाई सही है भाई। लो भाई मैच स्टार्ट होने वाला है। हो गया चालू। हाँ T2 क्या खेला जा रहा है? चालीजार्ड खिला रहे भाई। चालीजार्ड ले लिया ना, सिर्फ चालीजार्ड को देखना टॉप 10 में। अरे वो ये खेलेगा ना, क्या बोलते फायर, वो नहीं क्या दूसरा वाला मूव खेलता है ना, फ्लेम व्हील नहीं खेलता ना? पता नहीं ये इन लोग का ये खेलता है, पंच वाला हाँ खेलता हाँ है। पंच वाला। अरे वो शील्ड देता है ना पंच पे। हाँ पंच वाला ही खेलता है, देखते हाँ। हैं कौन सा खेलता है। T2 फॉर द विन। अल्फा को भी बुलाओ VC पे, हो सकता है तो शायद, देखता मैं आएगा तो। भाई पर अगर आ गया ना वो, मतलब ये टॉप पे नहीं खेलेगा, सेंटर खेलेगा शायद से बराबर। पर जो टॉप पे खिलाते हैं ना जापान वाले टूर्नामेंट में, बंदा खेलता है भाई वो। दो बंदे के बीच में घुसता है भाई, मार के निकलता है बंदे को। अरे इसको सर्वाइवल एबिलिटी अच्छी है रे, बट बंदे अपने इधर खिलाते ही नहीं बंदे इसको। कैप्चर फिर तो बिना हो पागे। ये दूसरी टीम में भी ऊपर नहीं लिया क्या? मैं देखा नहीं। कहाँ गए तुम? Yeah, I think the Dragonite is an excellent call out. Charizard क्या हो is गया a स्क्रीन को? character that अबे यार क्या हो गया स्क्रीन को? brawls better than a Dragonite does, but Dragonite's Hyper Beam secure मैं तेरे on को these पूछ रहा, तू important मेरे को objectives पूछ is हाँ just वही not हो गया matched by anything ब्रो। else. मोर स्टन मोर चांसेस टू विन कॉम्बैक, दैट्स व्हाई फायर पंच। देखते अभी, चलो कौन किधर खेल रहा है। अरे सरीना खड़ा हो गया भाई, ये मैच ये होने वाला है। सरीना खड़ा हो गया, डबल से लगने वाला मैच। सरीना भी खड़ा हुआ है, वो भी खड़ा है, सब खड़ा हो गया। रिसेट होने वाला मैच, रिसेट होने वाला मैच। अबे जिस हिसाब से सरीना जंगल घुसा है ना, मेरे को लग रहा है भाई 40,000 टॉप खेलेगा ये लोग का, गारंटी बोलता। टॉप पे ही है। क्या हो गया भाई? वही उसका विगली का नेट गया रहेगा। खड़ा हो गया भाई। अरे इनका साउंड क्यों बंद हो गया भाई? भाई स्ट्रीम का साउंड बंद हो गया। स्पेक्टेटर वाला फटक से मैच कैंसिल कर सकता है ना? क्या पता, हाँ कर सकता है, कर सकता है। टेक्निकल प्रॉब्लम।
hits when it's at that first evolution of Charmander. टेक्निकल ब्रेक आया भाई, टेक्निकल ब्रेक. मेरे को तो कॉल है, एक मिनट रुको. Power spikes are coming up faster and faster, but when the wild Pokemon are contestable and the other side can actually take it from you, it is going to be very, very difficult to hit those huge power spikes when you're on the way. Yeah, the Zarina in the central area, I think you Can I join you? It's kind of like the melee Cyber gaming. this weekend in terms of raw power level with those stomps. यार. T2 is really kind of giving that nod in that direction by saying, okay, this character stomps fast and really tough when it gets in there. We किधर ज्वाइन करना है? अरेंजमेंट सही है, किसी को कंट्रोलर से खेलना है तो खेल सकता है. हाँ भाई, क्योंकि उधर देखो रे आधे बंदे, मतलब ये भी है ना, क्या बोलते हैं अपना निंटेंडो वगैरह भी अलाउड है ना, तो उस वजह से वो दिया है भाई. मतलब जिसको मतलब कंट्रोलर पे खेलना है वो कंट्रोल पे खेल सकता है, और जिसको मोबाइल पे खेलना है वो मोबाइल पे खेल सकता है. Show so far. I think both of these teams have demonstrated throughout the bracket, obviously 2-0 runs, that they have what it takes to go far, even to उन बंदे लोगों को थोड़ा जोर से बोलने को बोलो. किसको रे? कमेंटेटर का आवाज कम आ रहा है क्या? फुल कर दूं क्या मैं? Did they traverse their way through incredibly difficult seasons I am mobile player, huh? in their region. But these teams are undefeated at Worlds on the day. This top path Charizard has already proven off this stream that it knows what's up. Yes, yes. Proof may be the name of the game here. If there's any doubt in your mind about either T2 or No-Show, I hope it is completely vanquished, because these two teams with a perfect record so far. I mean, some close games for the side of No-Show. We saw them on the main stage here. They had to work for every single win they got, but that's what separates good teams. इक्वलाइज तुम्हारा आवाज ज्यादा आ रहा है और कमेंटेटर का बहुत कम. अरे वैसा बताओ ना तुम, अब बताना. इतना ठीक है? और मेरे को साउंड का बताओ फिर. When we watch like regionals and AOS Cups and smaller tournaments, there's often a lot of one-sided matches where one team's kind of obviously a higher caliber. And what we've seen देखो और बढ़ाना है तो बताओ भाई कमेंटेटर का साउंड. is all of these high-level teams थोड़ा कम करो. close competitive games of Unite where both teams understand the game at a very integral level. Okay. अब बताओ, अब बताओ. मेरा कम करो. To go watch a new game. Unfortunately, our last Group A game is taking a little bit long, so we're going to get you right into the action. Let's take a look at the game coming out of. अब स्टार्ट हुआ. अरे ये एब्सोल लेके आ रहे. We have Renaissance versus अच्छा दूसरा टीम, मतलब दूसरा मैच दिखा रहे हैं. इट्स ओके फॉर भाई. ये रेनी से वैसे ये कहां से आ गया? मैं दूसरे ग्रुप का भी शायद मैचेस चल रहा है. दूसरा गेम का चालू हो गया. हां वाह भाई, जिसका पोल लगाया था वो उनका मैच ही हुआ ही नहीं. हाँ ठीक है, ये भाई सही है भाई. भाई एक तो मैच उनका स्क्रीन पे आया था, वो भी मैच हटा दिया गया लोग. ओ भाई. हेलो सर, बिग फैन. अरे भाई एस्ट्रो भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. क्या तू भी वॉच पार्टी कर रहा है ना? ये आरएमएस वाले ना. हां आरएमएस है ना. हाँ आरएमएस तो कब से फॉर्म खेलने लग गए. क्या बताओ भाई. तो अरे इटर्निटी वाले भी ये लेके आए हैं बिजली. इनको T2 से प्रॉब्लम है, एक भी मैच नहीं दिखा है. वही तो भाई, एक तो मैच आया था भाई उनका, वो भी हटा दिया इन्हें. देखते नहीं ना भाई. माइनक्राफ्ट से ही खुश है. हाँ भाई सही है भाई. तेरा इसी की S12 का चलने दे भाई. आता हो रे देखने. एस्ट्रो आया है रे. अच्छा आजकल माइनक्राफ्ट खेल रहा भाई. X-Speed, the difference maker there. Eject button was a nice escape tool, but it only lasted so long until the X-Speed Blissey was able to catch up in that case. We see the ever-present Zarinas in the top path here, brawling back. Absol is not competitive, man. अरे मैच देखो यार तुम. भाई कॉम्पिटिटिव भाई i9 गेमिंग वाले खिलाते हैं बॉटम लेन पे. भाई ना भाई, तुम मैच देखो फिर बताना भाई. पूरा ब्लैक हैंड वाले खिलाते हैं, i9 वाले खिलाते हैं. पूरा टूर्नामेंट जीते उससे तो. एक्चुअल बॉटम
Cool. Well, this has been a really exciting moment. We're going to head वैसे back उसका to stack main हो जाए ना, stage right now. खत्म Sorry for कर just a देगा little bit of बंदा। teaser. We will catch you up on the score of that game coming up very soon. But क्या we लगेगा gotta कि नहीं give the लगेगा आज के attention दिन? back to this high, honestly, a match I'm anticipating for I9 so गेमिंग long. का नूडो खेलता है एब्सोल। चल आ गया भाई T2 नो शो। I want to see this chart लग गया ना? हाँ लग गया भाई। 40 रन आ गया भाई। मैं तुम्हारे साथ पोकेमॉन यूनाइट खेल सकता हूँ। अरे यार अभी यूनाइट नहीं कर रहे, हम तो वर्ल्ड चैंपियनशिप देख रहे भाई। अमंग अस खेले। हाँ भाई अमंग अस खेलना है तुमको। आज तो कुछ नहीं खेलेगा रे, आज तो ये मैचेस ही देखेंगे हम तो। हाँ कोड दे रहा है। हाँ कोई भाई। अरे यार मैच देखो रे, क्या भाई मैच देखो सीखो ना थोड़ा। हाँ ना भाई, देख के थोड़ा सीखो भाई। अभी भी थोड़ा ज्यादा है तुम्हारा माइक का वॉइस। दोनों फुल कर दूं क्या भाई? ले भाई। क्या लगता है चालीदार टॉप क्या सेंटर? मेरे को तो टॉप लगा। टॉप पे ही जाएगा वो। सरीना जंगल होगा मेरे हिसाब से। अब बताना, अब साउंड बताओ भाई कैसा है फाइनली। Yeah, definitely something you're excited to भाई see here. जितने देर में कोई इनका बकबक सुनने से माइक कोई मैप का थोड़ा दिखाता है। वैसे भी मैं म्यूट कर दिया था, मेरे को कुछ पता नहीं क्या बोल रहे हो। T2 is my favorite team। और जापान की T2 और कौन सी टीम है? सीक्रेट शिप। चलो स्टार्ट हो गया भाई। एक 40,000 तो ऊपर गया है। हाँ वो भाई अब टॉप पे दिखा देना भाई, मजा आ जाएगा। Who else finds himself in the central area? That Wigglytuff running right across the map there. अगर पंच खेलेगा तो मजा आ जाएगा भाई। Looking to get an invade there, and look at this for T2. Have they left their entire central area uncleared here? They have. Well, I believe, yeah. T2 ने भाई किया ही नहीं जंगल। वही मैं वो सोचा 40 ये तो अभी Blossom going in on one against Ruin, and Ruin holding their own. They got No Show actually getting in some stacks previously. ले लिया भाई उसने किल। But Ruin finds the KO. भाई 40,000 ने किल ले लिया। Has an auto attack that's a little bit different than most characters in Pokemon. It is a continuous stream of damage. Revenant esports give their best। हाँ भाई दिया तो है बेस्ट। Pokemon would just do one, meaning he can keep out these really tiny scores from characters like Zarina. भाई जंगल देख रहा है, आधा जंगल कर रहे क्या? Is true. Japan spreading out entirely across the map. T2, like you भाई mentioned, जापान वाले कुछ भी खिलाते हैं भाई, पागल कर देते हैं बंदे। इनका माइक्रो देखो भाई, वही ना भाई। भाई 40,000 को देख लो बस ना, पहले का ना नीचे ये मर गया इनका। Yeah, we see the Balissi here in the top 8. Actually, दोनों टीम में हो पाया, अच्छा एक टीम में हो पाया ना। so its XP share not currently in use, but this अबे ऊपर वाली टीम को एक ही फायदा है, अर्ली गेम में एक जगह 4 मैन पुश कर सकती है किधर भी। Yes, exactly. एक साथ। Do not want to give up that passive Sarina को at डिग any दे दिया time भाई। here. Blossom, one of the superstars we've seen emerge so far this weekend, is pushing up and trying to get a lot of extra damage. XP भाई used मरने to वाला try है to get on the other क्या? side of Ruin मर and cut गया off the escape, and it works. They get the first KO. Takashima भाई हो will जाएगा, be able स्टैक हो to जाएगा get इधर जा। dunk here Side from ना the क्या? Zarina here, getting that attack. उनका प्लान है तसीना को अंडर फार्म रखना। Piece of experience away, and there we go. हो तो गया भाई, 6 का हो गया भाई। सरीना इधर That heavy slam was timed not to find a KO. तो फिर भी नहीं, वो उतना एग्रेशन करेगा देख, मार खाने के got बाद। the last hit and got the evolution. Yeah, we see T2 again not really नीचे देख, नीचे prioritizing क्या their पहला है central area सबको। here. Instead, kind of fanning out around the map, looking to be disruptive more than anything else. They are not getting their own, but they are trying to make sure that No Show gets none of their own either, taking every contestable auto no as much as they can. Fortunately, the Wigglytuff caught out a little bit too far. Supercell is teamed up on by No Show. किल बहुत देते हैं बे ये लोग जापान वाले। Sing on the Wigglytuff from T2, it looked like there. So फिर भी पता नहीं लेवल में कैसे आगे आ जाते हैं। That gives you a little bit of increased movement speed and provides अबे वो अभी फार्म कर रहा है 20 पे, देख रहा है सरीना। और वो अभी भी 40,000 ऊपर ही है। इधर डुओ खेल रहे भाई, डुओ से ट्राई हो रहा है इधर। गया ये रेड जाने वाला शायद है ना? अरे वो रेड पे ज्यादा फोकस नहीं करते ना, जंगल जाएगा शायद वो, उनका जंगल फार्म करने के लिए। क्या लगता है तेरे को? पे ज्यादा फोकस करते हो लोग। Must say, really
fantastic eject button there from esports. The Wigglytuff ran up on them, looking to sing them to sleep to stop that secure. And was like, no, I am jumping out of here and I am getting this Dreadnought for my team. That is just phenomenal. S4L showing why they're one of the best in the entire game. And No Show also able to secure this Rotom and setting it down towards lane. And we see the Rotom walking in there. अरे नहीं खेल रहा बे वो अरे ब्लिसी पे है एक्सपी शेयर है ब्लिसी पे There is actually some दोनों एक्सपी शेयर पे खेल letting the opposing team break your हाँ तो हो जाएंगे फिर तो you see those अंडर लेवल yellow dots on नहीं the रहेंगे top left of that mini map there are extra experience that you can clear, and we see Charmeleon immediately heading that way and looking to push towards its level 9 power spike of Charizard. Ruin needed that, if we are being honest. They have to get there. Mame भाई जंगल देख लो भाई जंगल फाइट हो रहा है इधर they get a little bit of shielding under the drop kick, but it's दे not दिया enough. They are खत्म है KO'd भाई by the Aegis of Wulong. They close the gap, and now we're looking at not 2 but 3 level 9s. कितने देर टिका हो देखना before second Dreadnought. Yeah, we see a number of level 9s on the left side too. They level 10 from Right. Zarina गोल में despite the कुछ भी आगे जा रही है भाई कितना प्रेशर कितना गोल किससे हो गया That's true. अरे वो You like the top जब hats, I like the शायद kicks. बॉटम पे Both कुछ किया था got क्या it all. उन्होंने So, a very fan बे that's टावर showing तो फिर भी नहीं up. टूटे Limited दोनों engage on फिर भी Chobo, इतने but गोल they were कैसे able to लोग के escape no problem. Not having as many boosted auto attack stacks भाई yet. नीचे but 4 look का at बचा है Wulong. ऊपर भी They got a छोटा ही full पड़ा set of होगा 4. They're ready to throw down. Yeah, भाई this कितने कम इसे तोड़ा उसने the second Dreadnought, apologies, is kind of sets the tone of how team fights are going to go in the late game. 152 Which team is 99 looking भाई to engage, which team is looking मतलब to take ओरडंग the देख रहा है कितना objective किया on the map, उन्होंने and most notably, T2 does not have a Hoopa. They need to walk their entire ओरडंग team कहाँ out किया to अभी अरे वो देख डंक दोनों नहीं दोनों का देख सेम ये बैठा है ना fanning out the rest of their team while sending अच्छा that मतलब supporter ऊपर in में भी to स्कोर किया break बंदों ने Forest down. T2 वालों ने ऊपर का खोला ही नहीं अभी तक उन लोगों ने उल्टा ऊपर का खोल दिया है मोटो वालों ने Fire blast lands on top. A Charizard unite move, but this time No Show is able to take it. They actually are able to secure the Dreadnought. भाई वो देखना कैसे मार रहा है Still raining down fire from the चालीसगढ़ sky. किल उठा रहा है भाई भर के Pyrotoss staying alive. They are Sacred Sword in with the 3 boosted autos, but they're in attack ये form. Their defense isn't high enough, खत्म मर गया and Serena is able to KO them. Yeah, really not a fantastic engage from T2 there. They decided to try and take that objective off the map. They not only lost the objective, but they decisively lost the team fight. इसमें 5 man fight ले लिया ना अभी 4 man ही लिया that Dreadnought provides. Yes, it's true. देखना वो गोल कर रहा है ऊपर Composition is set up for fighting, but that fighting is supposed to be in the late stages of the game around the 2-minute mark. I'm looking for them to really turn it on in the final stretch. Yep, we see that Unite move coming out of the Aegis last year to rip that Rotom down quickly, and that's because we're at that 4-minute mark. And those you at home, at 4 फाइनल minutes, फाइट होगा ना अभी basically use it or हाँ lose 3 it. मिनट You have to 53 tap the सेकंड भाई button now, or you have to hold it until you make it to that Zapdos fight at the ये तो 2 मेल्ट minutes. हो जाएगा The old better safe than sorry, I think is how the expression goes. Make sure that no one's stealing away that objective from लेवल you. डिफ है क्या मैं T2 साला is going to collapse लेवल डिफ तो नहीं है to knock it out. Now we are at नहीं the है 30-minute mark that you were mentioning. नहीं होगा डबल नहीं है एक्सपी है नहीं ना है But right now, Ruin and सरीना और 40-12 का है एजेस स्लैश 11 का है बाकी दोनों सपोर्टर 10-10 लेवल के हैं इनके अपोनेंट में भी सेम ही वैसा ही दोनों सपोर्टर 10-10 लेवल के हैं 12-12 भाई किधर मार रहे देख भाई भाई इधर जैप के पहले ही फाइट स्टार्ट हो गया भाई सरीना ने यूनिट दे दिया सरीना चालीसगढ़ दोनों ने अच्छा मतलब जैप के पहले वाला फाइट 3 मिनट मार्क पे मतलब एक यूनिट देना था ना अच्छा ये फ्लेम थ्रो वाला मतलब फायर ब्लास्ट वाला खेल रहा है किधर जाके किल उठा रहे देखना गोल भी मारा है ऊपर से अलग से 40 बना सेकंड वेव पे गोल मारा है लोगों ने मरेगा तो जल्दी अल्ट आएगा उसका एक भी डेड नहीं जीता फिर भी लेवल डिफ नहीं है हाँ ना भाई डबल एक्सपी है ना उनके ऊपर से गोल भी कर रहे हैं उनके बंदे अल्ट आ जाएगी जो लोग एक एक बफ एक एक ऑडिनो उठाते हैं They have a slight advantage. If they get 2 or 3 KOs in this team fight, they could win this even despite losing a Zapdos. Well, it's important to note here, while T2 is currently up a little bit of points here, they have this outside point in the bottom path, which can actually be a little bit of in these endgame engagements, because it means No Show can easily put 100 points into this less defendable spot. Exactly. They are going to want to try to take that team fight probably around the bottom side, but no, T2 starts a rotation around the top path. No Show, despite being behind the points, is being very patient and waiting to engage T2. They engage, but they are... अरे अकेला घुस गए तो मर गया सरीना
मरेगा, तुम बोलने से पहले ही मर गया। खत्म है, 50-50 हो वो रहा है 40 मिनट का कैंसिल होगा भाई। ना? हाँ कैंसिल हो गया। Yet again, the Dragonite मिलेगा showing क्या? off what they can अरे नहीं do. मिला। Yeah, ठीक भाई, little अल bit थक दी too soon, चालीगार्ड and ने। they are able to go ahead and secure the last hit for no-show, meaning that small lead that T2 had is not अरे going to ये be होगा enough रे, to keep them in उसका this नीचे game. होगा It क्या? looks like नहीं हुआ, नहीं हुआ, 500 points हो are गया, going to rain in हो for गया, the side of क्या नहीं no-show. हुआ? So many points for no 300 show. हो They गया, have a gigantic हो गया lead 40 now. हजार का नीचे सब, और एक पुश होगा। Charizard was able to dump पुश in हो a जाएगा, अल्ट हाँ है इजी इनका पुश है। those last final stretch, but still, this will Snorlax not change मरेगा। the game for them unless they have a miracle play here. Yeah, those बस एक numbers that ग्रुप he फाइट said तो is जीतना है उन लोग को, represent the amount of AOS जीतने के लिए energy मैं। in pocket for our players. You can see here there isn't टाइम 400 points to ओ deposit भाई 40 even रन with इधर ही the अल्ट दे दी। 2x bonus that we get in these final moments of the game. We're दो saying बंदे that मारे there पड़े will इनके। be a 30-second cooldown on the respawns for दो no show सपोर्टर on है, 2 of their रिकॉर्ड अगर members. बचा। If T2 really could find a भाई वो couple more सुला देगा, KOs, कोई ना कोई this गोल could मार ही देगा। happen. They gotta go and they gotta go right now. The timer is ticking सेंटर को ही down. देंगे We क्या hit सीधा? 0 हाँ पूरी seconds. तरह This सेंटर game में। is over. Regarding who is going to be able to have the अरे most स्नोरलैक्स AOS भाई energy. पुश करा दिया They उनको। need 3 full scores and then some. They need 4 to happen, but now no मारना show पड़ेगा is रे इनको। returning. Blossom is doing the best defensive भाई performance I've ever गोल seen, होने and से पहले Choco इनका does it गोल on the होना Hoopa as चाहिए। well. Mame tries to खत्म get है, points. Supercell नो sent शो back की to तरफ the गया भाई। enemy base, and Mame is pinned up नहीं against the होगा, wall नहीं by होगा। Blossom as well. A KO streak at 2 from the Aegis Slash. Woolan is अरे ना shut गलत, down the hopes at T2, 40 and की no यूनाइटेड भी show कैंसिल हो गई secures उधर। game 1. ये तो You know what? It फाइट is होल्ड होता। so difficult to try and get points in on these Snorlaxes defending. The block goes up, the enemy team goes out, and none of the AOS energy goes in. It is so hard to score against a Snorlax. GG, It may भाई। be even harder to score against Blossom. Truly my pick for the best Snorlax in दो the अल्ट entire world so नहीं far. दिया A T2, superstar वाह player, हार गए। and they secured अरे a तो स्नोलैक्स game मतलब इसका ये अल्ट पड़ जाता ना, क्या बोलते हैं, against one of 40 the अल्ट का best teams तो हो in the जाता। world, T2. वो जब तक फाइट होल्ड कर रहे थे ना तब तक सरीना आ जाता उनका, पता है? इसलिए जाके मारा था वो, पता है? और उनका सरीना जो घुसा था ना T2 वाले का, वो सीधा जाके घुस के मर गया। मतलब वो सरीना का अल्ट मतलब वो नो शो वाले यूनाइट दे देता ना उनके सरीना ने, फिर जब तक वो फाइट करते तब तक उनका सरीना आ जाता पीछे से T2 वाले का। पर हाँ वो आ उनसे जाता, हाँ, 40 कैंसिल हो गया ना। वही। 17 each. These teams are team fighting extremely well. T2 could not find a way to win a team fight. Yeah, we look at the damage numbers here. Damage It's तो दिया really भाई। evenly spread. 70 डैमेज कितना दिया? अरे ऊपर का डैमेज देख, damage on Chobo for Hoopa. 78। What an absolute क्या crazy कर रहा है? support. देखना नो शो वाले का। Strong, I believe that might अरे be आया thanks भी to नहीं, their तो item मेरा ही डिले build-up. चल It's रहा है। definitely a damage build and opting an X attack. They are going to find some good value here. अरे 40 डिडंट डू एनीथिंग भाई। 71 का डैमेज दिया, 71 या 78 का डैमेज दिया भाई 40 ने। वियर्ड मेटा है T2 का, फिर भी लेवल डिफ स्कोर लो नहीं था। हाँ भाई, अरे जैप फाइट पे उनका थोड़ा मतलब सैटेलाइट का यूनाइट नहीं चला, मतलब स्किप हो गया, उस वजह सीन हो गया। No show seemed to have a really good read on T2's composition. सैटेलाइट कल They बहुत wanted कैंसिल the होता team है। fight, but they knew अरे that उनका No Show did not ये था need कि to मतलब push जैसे ही into them 40 का यूनाइट देता ना वैसे T2 भी was अगले gonna नहीं do दे that जाता on भाई their हम own. यूनाइट। Their composition can sit and wait it They out are and F trap around. T2. Yeah, No Show just did an excellent job picking up objective after objective after objective all the way down to the most important objective at the end of the game in Zapdos. Yes, of course. They finally secured the big Zapdos and were able to get many scores in. T2 had a little bit of hope here at the end of the game. I liked that push into the enemy central area. Yeah, we see the chaos that erupted in the pit, but again, just that secure from the Hyper Beam. It's just so difficult. It feels like anytime an objective gets started, that Dragonite is present, it is danger for the other team. I think chaos is a good description, Jeff. I'm not sure if you saw where that Bliss assistance went, but it hit Supercell's Wigglytuff. So definitely not the target you want on a Blissey Unite move. Sometimes that can be a tough situation of where to aim it, especially when you're trying to play it optimally. Bro, this should use Greninja with Blissey। खत्म है भाई Greninja, अगर अंदर जाएगा तो पेल देगा भाई, वो जिस स्लैश ही पेल देगा उसका तो। Have our player of the game here in Oh, bhai. One here in that Aegis slash that had knockout after knockout and assist after assist with this very durable build. Dragonite का secure बहुत OP है। Focus band to survive on the held items, but भाई Greninja लेके जाएगा तो पेल देगा भाई Greninja को तो, एजेस स्लैश ही पेल देगा भाई शील्ड ओपन That करके। is true. Potion, a great item दो for, of course, दो buffing उस up पे, your health दो whenever you're sword getting में। low. But not to mention, it has one of the shortest cooldowns of any of the battle items in the game. So you're going to be able to use it. भाई ये बंदे quite Nintendo often वाले
वाले खेल रहे हैं भाई, Nintendo पे खेल रहे हैं for sure they change Charizard. देखते हैं भाई. really does well on these melee characters early is that you control when the potion happens as opposed to something like focus band that just happens for you automatically. So you can dictate, so, okay, I want to use my potion here, and frequently that potion use lets you save your focus band for a more key fight. मैच का क्या हाल चल रहा That's है? right, folks. Even अभी when start to होने use का a है. potion is an important skill in Pokemon Unite. This game has depth all over the place. Battle items, held item loadouts, what moves you choose, and how you play the game. Seriously, these teams have had to focus on so many things, and right now they have to focus on who is on the other side of the stage from them. No Show having the advantage here of going up one game, but trust me when I say T2 may be down, but they are not out yet. Yeah, even just talking about character loadouts, it's been really interesting to see the Charizard range of क्यों loadouts बोलते हो? from these उसका नेम teams that are the Charizard है. best हाँ in भाई, the समझ region. तो गए ना We भाई see तुम. Chobo on the Hoopa here, Charizard. favoring that X attack, muscle band, no XP. Spam This message भाई, Hoopa क्या है is भाई really बंदों में becoming भाई. an attacker कुछ when भी it कर goes देते हैं भाई. unbound, whereas other ones have been favoring more passive XP share builds, filling that more support role that you think of that character. That is true. A damage build of Hoopa can be terrifying when you get hit by a hyperspace Hiri or that side beam. You're going to take so much damage in that ये unbound भी है ना, form. अरे It can take you by ये लोग को surprise a लैंड lot of इतना the time. एक्सपीरियंस नहीं है क्राउली का. फर्स्ट टाइम था ना रे इनका. खाली क्राउली था, वो तो ठीक ठाक ही खेला बाद में. ये कौन था भाई, पता नहीं भाई. ऐसे स्पैम करते थे भाई मैसेज. लिंक उन पे ऐसे क्लिक मत करना रे, ऐसे स्पैमर के. That Pokemon selection, is it that there really is so many ways to play this अबे हाँ, Pokemon, or is तेरे this Pokemon a little bit unsolved तेरे in इसमें this वो कमेंट क्या आते हैं भाई? अबे वो स्पैमर रहते हैं भाई, स्कैमर. हर बार देखो सिर्फ दो कमेंट, दो सेम कमेंट दिखते हैं मेरे को. अबे वो रिमूव करना पड़ता मेरे को भाई. टाइम वो बॉट फ्रॉम साइट्स. हाँ भाई, अरे वो साइट वाला मतलब जो प्रमोशन वाले रहते हैं ना भाई, वो ऐसे फेक मैसेज करते अरे वो रहते हैं भाई. कुछ लिंक कुछ नहीं रहता भाई, कुछ कुछ लिखा रहता है उसमें. क्या लिखा है मेरे को कुछ समझ अरे नहीं लिंक रहता है उस पे, देखना भाई. लिंक उन पे क्लिक मत करना. But what I have been looking forward to is No Show's play around the Hoopa. Now, अगर लेके मैंने क्लिक करता notably है. not taking that Pokemon selection, and honestly, I think they paid for it a little bit. Those Dreadnought rotations were all no-shows because of how good the hyperspace portal can be to rotate very often. Yeah, in the second gen on that first game really वो jumps बोलते out at समय me as निकल one जाता है where flow. like almost all of T2 had shown up, but they had a Zarina split pushing in the top path, so they ultimately lost a fight where they were भाई आज fortified कितने ग्रुप से होने? आज सारे ग्रुप से होने वाले हैं. somewhere else, but then couldn't सारे pull ग्रुप their से हो रहे opponents शायद. down. That is true. Speaking of my friends, there नहीं they फिर are. कल क्या रहेगा? अरे हाँ 3 दिन का है ना, 3 दिन का या 2 दिन का है. बराबर बराबर. सारे ग्रुप के होंगे. कल टॉप 8 के मैचेस होंगे ना. टॉप 8 का फिर टॉप 8 का कल होगा, फिर 5-5 रहेगा ना टॉप 8 में. BO5 वही है ना, कितना लूजर ब्रैकेट के साथ है ना. कल सेमीफाइनल तक जाएगा, फिर लूजर ब्रैकेट के फाइनल तक के पहले तक का मैच जाएगा. थर्ड डे पे लूजर ब्रैकेट का फाइनल होगा शायद से, और अपर ब्रैकेट के सेमीफाइनल में तक है पूरा. So it must have not found very much value there in their game 1. They were swapping off of it. So Eternity- yes, this is Eternity by the way a versus Group B Resonance round 1 game. So if you're just joining, we are kind of hopping back and forth a little इटर्निटी bit. एक We जीता wanna है be भाई. sure ये भी you have बिगली all the खिला रहे थे ना action all the time. The big thing that jumps out इटर्निटी भाई. हाँ बिगली ये खेल रहे हैं, देख क्या बोलते हैं तेरा ग्रेडेंट है. ग्रेडेंट है भाई. वो ना भाई ग्रेडेंट बहुत दिक्कत है. Do you see Indian coming back? Not an all-rounder, but a melee brawler still. ये रेनी से देख बोला ना मेरे को खिलाते वीना वाला. To be Machamp for Renaissance in this game. वीना ब्लेसी Heard whispers that कोई that खिला Pokemon रहा is extremely strong considered by the इटर्निटी रोलआउट बिगड़ी खिला रहा था. later on in the day when we hit group अरे वो बिगली ये भी खिला रहे, मतलब गोल वाला कौन खेल रहा है ना. game number 1 victory are looking to आरएनटी का मैच हो गया क्या आगे? होगा क्या आगे? नहीं रे हो गया, वो बाहर हो गए शायद आरएनटी वाले. The thing that jumps out at me is Hoopa has been kind हाँ, of बाहर हो गए भाई omnipresent in a आरएनटी lot of the वाले. teams that we've seen so far today, and Eternity up a game and ahead in the second game तो so अर्ली far, लेवल डिप खा रहे choosing थे not बहुत to play the powerful hyperspace Pokemon. Yeah, you're right, opting instead. सामने वाली टीम को देखा अर्ली लेवल डिप खाने के बाद भी एंड गेम में आते आते इक्वल लेवल कर रही है अपने बराबर. कैसे पता नहीं. That must be a tough अभी burden for हाँ Renaissance. सीखेंगे रे भाई अगली टाइम. Another character अगले that's टाइम also और अच्छा very good करेंगे at भाई नीले वाले. securing objectives. Its belch move Hey, after its operation powerful के जैसे Unite really gives you a
big amount Pressure of की वजह burst से हो रहा है damage सब। straight to those last hits with. Not to mention, we have Sejun on the green, who is running the Fluffy Tail, which is going to give you that wild Pokemon secure. We see all the shields and heals happening here Oh, as right. Blissey unites Right, and sir. Wigglytuff भाई, वीना खा unites जाता है and so many सबको। people falling down खा here around गया this right now. खा And look जाता how है Divel just takes their time too. They know they don't need to get into the action. इनके They'll आगे wait खेल there with their जीतना है ना भाई, hyper. पहले Kamiro, ब्लेसी को though, निकालो, does get the वीना KO को on the छोड़ other दो side. पहले। Yang with a clutch Giga Drain heal and a little bit of ये soft देख, ये देख, गया गया This भाई वीना सर Venusaur को दे दिया almost इसने immortal, but finally, देख रहे there हो, we मतलब go. अभी The मरा है Blissey वीना, ठीक है, was able to वो secure वीना the को KO. मार रहा है, पर Easily उसमें can देखना see why ब्लेसी there are पीछे से कितना Blissey's हील on ले full रहा है। teams ब्लेसी here, गया तो वीना providing कुछ नहीं कर पाएगा। incredible amounts of sustain inside of these engagements, making these melee brawlers भाई like Serena भी go into overdrive, कितना but देर तक eventually टिका रहे fall हो to क्या two melee brawlers from Renaissance. सरीना वीना ना, Kamiro, one of सरीना the भी most popular and best सरीना भी players coming out of भाई, the सरीना APAC region, वीना make him a champ look सरीना ने amazing देखना in this case. Yeah, love this इनका engagement फाइट here कॉम्प है, from इनका Renaissance. स्टील Like, कॉम्प I am नहीं है। not dealing with this Dragonite वो right now. जितना हो सके Secure उतना is फाइट gonna लेना run है। you down फील before we करने का take this नहीं मिलता है Dreadnought लोग को off the board. time। So Renaissance collecting a Dreadnought there. It'll be now tied up 1-1. So Eternity was picking up the first one. Yeah, भाई we ऊपर see गोल कर देंगे तो push क्या? here in the top path with Hoopa on a quick rotation. ये but अभी ultimately खुलना नहीं push चाहिए था, off of this लेने के second बाद point. खुलना Just चाहिए था ना। very difficult positioning to force in this kind of mid-game spot with so much healing and shields provided by those inner points. So हम true. लेके Neither कर team सकते थे giving अच्छा खासा। any screen time स्कोर to करने जाएंगे Rotom ना right now. नीचे Finally, Renaissance showing a little bit of presence, especially they नहीं should be भाई the ones. They want to send it down towards that काम second कर tier रहे goal थे zone. But डिफेंड look at करेगा the भाई clock, Jeff. If they can take out this Rotom later into the game, it can threaten कराएगा double क्या? points पूरा in होल्ड the करा के final लेगा stretch. लगता है। Yeah, we see here kind of positioning around it, and Eternity not really under a lot of pressure to take this either, because with the outside top point for Renaissance available, it doesn't really have a lot of value for them. And you see here, the Rotom goes down, and Eternity's like, okay, this will be annoying वीना for का a जाएगा couple of देख 1 seconds, लाख but के we're ऊपर going to clear डैमेज it before it ब्लेसी का 1 लाख के Eternity ऊपर can हील। definitely team up and knock this Rotom out in due time, but Renaissance wants to change the game. A surprise attack from the फाइट boost to होगा भाई join इधर the ही तो 6th member of their team, Rotom, and they do not get any KOs फाइट with तो that नहीं huge लेना चाहिए भाई, Eternity with इस a वाले great ग्रुप amount of फाइट defense. जो I'm पोकेमॉन looking ने सामने towards वाली टीम Jamju's के amazing सीधा पीछे heals off the भगना soft चाहिए। boiled. Yeah, we see here kind अबे of the दो ये power खेल of रहे भाई Hoopa. Several members of Renaissance got खत्म over, भाई like, इधर ही oh, चला there दिया goes. There's huge टच हो Dunsier's गया run. Whoa, the Venusaur didn't get खत्म to भाई cap, 5 मैन Zoinks. खत्म The Venusaur didn't get to cap. 5 members are down for Renaissance. Eternity gets a Bye, huge bye. amount of KOs. Sarina, They do 4. invest 2 Unite moves on their side, but Renaissance did stick. invest 1. The अरे Machete भाई एक Unite वीकली move ले will गया रे not 5 be हो around जाता for है that Zapdos fight. A lot of scoring going in for 14 Eternity लेवल though का as है well. भाई वो। The respawn timer is a little bit too long और to क्या get back ज़ैप into तक bed. 15 हो Yeah, जाएगा। I mean, if you're Renaissance, you did what you were तो looking स्टैक to do करना there, पड़ेगा which was 1-2 force that Rotom अल्ट नहीं है ना in. इसके पास। What cost? As we see Unite moves popping off भाई for the इधर चल गया very खत्म early है Zapdos fight breaking up. Holy gosh! Rebounds gets the जीत boost जाएंगे assist, भाई so a रेनेसेंस huge वाले। buff to their भाई healing and वो damage, उसका and they're देखना able to stay up and out. अरे वीना का Kamiro अल्ट नहीं throws चला गया। themselves into the fray, but they get KO'd. Now Mervius in the Hoops Unbound form is trying to land a couple Hyperspace Series to भाई वो stun them ड्रैगनाइट up आ and जाएगा रे जब slow तक the फाइट डिले damage. करा रहा Yeah, है that ये very early वो Unite move वीना from भी है अल्ट के Hoopa साथ, gonna वो force them देखना। to walk back when फिर Renaissance वीना को कैसे respawns. So मारेगा? we're gonna have a refight सरीना here, की अल्ट but आएगी बट Eternity उनकी। kind of has the Eternity advantage. वालों More की। members up as this goes on. Heyron with a lot less damage, but Rebounds wants to head back into the Zapdos pit. It's got too low of HP to give it any time of day. Yang, sorry, and the points, but Renaissance is able to take it. Rebounds with the Zapdos secure. खत्म What an भाई amazing play. The beam is too late, and the stomp runs हक on दिया भाई through as उनका Renaissance ड्रैगनाइट ने runs across the map with just one of their members looking to score. This game is very winnable for काउंटर Eternity स्कोर if they किल can नहीं put गया something एक ही together. स्कोर हुआ That है is इनका true, especially with a Machamp being knocked out on the side of Renaissance. Kamiro Hey, goes down, अभी and एक ही स्कोर हुआ needs to stack हाँ up and play this well. They have 3 members रहे waiting थे। in the respawn timers, but the Dragonite खिला uses रहे their थे क्या? Unite to push in quick. हाँ Yeah, माचा भी the खिला रहे थे Wigglytuff walking up here to try and get that cap. I mean, they're backing up. They're playing defense. कुछ They need आएगा to ना wait भाई for their team एक to ही get स्कोर हुआ है back Hold हो भाई to do this final हाँ push at like Hold this नहीं 30 to मिलेगा। 40 second mark here. I see 2 yellow माचा pips पे on my यूनाइट है screen, बे and one of them is माचा on पे the यूनाइट Serena है Unite move. That could be वीना है ना, वीना एक monumental साइड in this प्रोटेक्ट final कर सकता है push. वीना They और have ब्लेस 45 seconds to ऊपर से score ऊपर over भी पोर्टल देके 150 भेज देगा points. उधर But that
That is the name of the game. If they विना और ब्लेसी को मारना तो कम से कम 3 बंदे लगेंगे इन लोग को मारने, and almost assuredly secure themselves खासकर सरीना चाहिए उस साइड तो। You see these people far clearing सरीना these पे अल्ट है रे, wild Pokemon, looking to try and get those Unite दोनों moves. सरीना पे अल्ट है, Push green दोनों once पे है, Unite move is दोनों up, पे but अल्ट so is है। Machamp and वो Zarina सरीना for ने Renaissance सब here. जीत We है। see these powerful attacks start popping off. There we go. The engage has finally begun. To Serena, Unite moves out of the way. Save
Sejun on this grid and is trying to play this cover belt as best they can. A big hoops unbound though from the side of Renaissance. वीना ऊपर ही रुके. अरे वीना नीचे क्यों है? 17 points doubled up. अरे बेच जा रहा है. Going in the top half. वीना ने हक दिया. 17 का स्कोर हुआ. 34. Another Bliss assistance. Are you kidding me? And that is times up. अरे Renaissance has tied this game up 1-1. Yeah, we saw that score shield from the Greedent. They're looking to try and sneak in those score shield है वो काम ही नहीं आया but ultimately getting pushed past on defense by भाई गया भाई. tying up their series. That's true. You asked at what cost did that happen? Well, a game 2 win. Yeah, they net themselves that one. समझ नहीं आ रहा है. एक स्टेज मैचेस लगा रहे ठीक है. फिर बीच में से साइड में मैचेस क्यों करा रहे हैं लगता was enough for them to win the game. That is true. देखना मेन स्टेज मैचेस साइड स्टेज मैच क्यों लगा. शायद इनको आज पूरे ग्रुप का मैचेस खत्म करने का इसलिए करके रखा है शायद. ये लोग ने क्या डिसाइड किया है ये टीम. आज ही पूरा खत्म करने का. Yeah, definitely. The fact that we're seeing teams मतलब ये बाहर हो गए रीजनल्स वाले. रीजनल्स वाले जीत गए ना, क्वालीफाई किए हैं. बिना के एंड के अंदर कैसे भाई अभी तो और मैचेस भी खेलेंगे. First debut of Venusaur in this time around. That Pokemon, and they look really, really good. ये तीन टीम का मैच है ना. अगर किसी टीम ने 2 जीत गए ना, तो जो टीम एक में जीती है वो क्वालीफाई होगी. ये तो जीत गए ना एक मैच. हाँ ये कि जीते समझ. अब इनको एक और जीतना गारंटी क्वालीफाई के लिए. They were able to get a couple of kills thanks to it and able to get out just in time. So I think realistically that support play coming out of Renaissance was so impressive, and that's going to be my moment of the match from game number 2. Yeah, definitely. The Wigglytuff rolling all around there. We saw it use that to good effect to try and get those scores in at the end, but then also successfully be able to pull back out when it realized it was no longer safe. Just very difficult to catch up to that character when it doesn't want to be caught. Exactly. Speed is the name of the game sometimes, whether that's engaging or escaping. So these players obviously utilizing that to the best of their ability. Yeah, so these games have been so exciting. I can't even pick a favorite match. Honestly, every single game that we have seen has been amazing. And I mean, what am I expecting? This is the World Championships. Every game is going to be a banger. Yeah, we've had fantastic match after fantastic match here. We've had a great range of character selection so far. And we aren't even through to every region in the game yet. I'm sure as we get through into these groups B, C, and D, we're going to see even more strategies emerge as these players that have been testing from regions all over the world show us what they've come to. It is highly unlikely that we see every single Pokemon selected in one tournament. We might be on track to do just that. I mean, we are seeing a lot of Pokemon being selected in these matches. So many strategies on display here at the World Championships. And that, I think, was the thing I was most excited for. These regions have developed their own strategies, their own meta games, and getting to see them face up against other strategies, that's the most exciting thing for me. Yeah, and how we see some of these teams make adjustments when they run into something. You know, Snorlax kind of being the character that's jumped out. We saw other teams flex into that character after they ran into it, and we use against them to good effect. I think that's what really separates, you know, these higher caliber players from some of the others, where they're able to go, oh, that was really good. We should just be doing that. Let's execute. Let's watch that again. They'll give you those highlight reels of that last game we just watched between Eternity and Renaissance. This tie-up match that Renaissance was able to take. A really impressive play from them here. Sejun on this Greedent was definitely getting some good displacement on Renaissance, but they seem to adapt to it a little bit more in game 2. Yeah, we see them kind of hyper-mobile from Eternity here. Even Dragonite being able to dragon dance around the battlefield or have incredible amounts of movement with its Unite used to really good effect by Eternity. We've seen a lot of Dragonite so far. Renaissance choosing to not play that Pokemon, instead sharing the central area with a Serena and a Venusaur. Grass types definitely the play for Renaissance. Yeah, grass types and melee brawlers here on this both sides as Machamp and Serena teamed up to excellent effect for Renaissance in these games, allowing them to push their lead ultimately Look at that, Kamiru is a walking highlight reel on this Machamp. These final moments for Eternity were definitely possible, but when Kamiru comes back out of respawn, jump pads in and Machamp unites you right in the face,
इससे अगर ना वीना को आने की जरूरत नहीं थी, पता नहीं। Yeah, when it comes to single Pokemon's impacts inside of team fights, I think Machamp might actually have one of the biggest impacts in the game. Being able to catch multiple people for high amounts of damage and displace them as Machamp punches across a number of people is just unmatched in the game currently. और उनके हेवी डैमेज डीलर है भाई। वो माचियम एक को मारेगा टूट जाएगा स्कोर से। माचियम सरीना एक स्टॉर्म से तोड़ देगी। 50 गोल है, इजी थोड़ी ना होगा। I must say, I'm pretty excited for this one. More Venusaur, more Machamp. Do I get to see a return of the absol? I have a big wish list, Jeff. It's too long. More Wigglytuff, more rolling out. We can see we've seen a number of new things just in this match alone as we get into one thing that I am assuredly we will see is Seijun on their iconic greedent pick. Any large fluffy-tailed Pokemon seem to be their favorite. I know they are wishing Pachirisu to be entered into the game, but there they go. They have it locked in with the Buddy Barrier, Focus Band, and the Score Shield. The one thing that really jumps out at me about Seijun's greedent build here is this character can be loaded out in a couple of different ways, and Seijun is electing for one that's a lot more durable with these three defensive items and that Score Shield letting you get a little squirrely in the mid to late game and get in dunks that would otherwise be kept out. That is true. Now, on the side of Renaissance, we are going to see two stacking Pokemon. So, both the Serena and the Machamp are going to be wanting to get in as many scores as possible, up to a maximum of 6, to make sure that their attack stat is getting scaled up by percentage. On the other side, we're only going to see one Pokemon doing that. They are going to give it to the Serena. That Pokemon just benefits from that held item so much. Yeah, the stacking items are some of the most powerful held items you can play in Pokemon Unite, but it's also difficult at the same time to put them on too many characters because it's difficult to get that many early dunks on too many people. Sharing is caring, but sometimes caring is hard, I suppose. So this time I'm only going to give it to one Pokemon, but 2 I think you can make work pretty well, right? Yeah, I think 2's about the upper limit we see from a lot of these teams in competition. We see Machamp. Machamp jungle जा रहा है भाई। जंगला Machamp इनका। Might be a selection of Renaissance saying, Kamiru, we know you can take over games. We know you can win us one of these things. Let's get you the most experience. Yeah, I think looking at Renaissance team composition here, the Venusaur and the Machamp are definitely the characters that scale the biggest into the late game if they get a lot of experience. Machamp jungle है भाई। To start makes a lot of sense. Could not agree more. The stacking attempts have already started. 6 going to be going in there for the Bonsweet, who gets the Steenie evolution thanks to it. Oh, huge first knockout here for Renaissance as they push on over. Be interested to see, does our Zarina here look to get their first dunk as well? Hoopa being in the top path, it's going to be really tough to get stacks, or at least get stacks and get away. Asan is such an early game power move that stun and damage can take you by surprise. We see Machoke showing up here to the bottom. Machamp, हाँ भाई Machamp jungle कर रहा है. In the central area to get this early push and get all of these stacks in. Remember, while these aren't playing the stacking items, getting those dunks converts to experience in addition to getting you on the scoreboard. Yes, scoreboard wins you the entire game. Experience helps you get there, but scoring also helps you get experience. So they are doing everything they can to level up faster than Eternity. Right now, Kamiru is sitting almost at level 6, whereas Eternity has their Dragonite at about the same. We're going to see an engagement. भाई खत्म है भाई, Dragonite खत्म है, मरने वाला है Dragonite. देख रहा है damage, देख रहा है Machamp को. They can't get a second soft boiled off, and Dragonair goes down. Huge knockout here from Machamp. Getting that experience early means that Machoke is likely to be Machamp for that first Dreadnought objective at the 7-minute mark. Speaking of Pokemon that need to level up, Yang on your screen on this Ivysaur has hit one evolution, but they really want to hit the third one, letting Seijun get their stacks and even letting them walk away to their own central area in exchange for trying to last hit the Autonos. Yeah, Venusaur, a character that power spikes at both level 7 and level 9. Getting that pedal dance before आप कौन सी टीम से के साथ हो? Venusaur is incredible. देखते भाई, अभी तो हम देख रहे भाई, मजे ले रहे भाई, सीख रहे थोड़ा. भाई बाहर की टीम से सीखने को बहुत कुछ मिलता है भाई, देख लो भाई, इनके कॉम देख लो.
देख रहे हो? अरे खत्म है भाई, माचम जंगल कर रहा है भाई रिनाइंस टीम के साथ, टीम की तरफ से। Last bit of value out of that move there. They now have Giga Drain available to them, as well as, of course, NT going to be giving them some support. The sustain is on lock for Renaissance. I like the patience from Renaissance here. Looking like we're never going to push this Blissey Wigglytuff on point. Let's just back up and try and secure. Eco is a gradient helpful in team now. I don't think. भाई वो आप पे डिपेंड है, आप कैसे यूज करते हो, आपके टीम के स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड है कैसे काम करता है वो। देख रहे हो भाई, उनका टीम कम देखो, वीकली भी देखो, वीकली भी खिला रहे बंदे। भाई जरीना ले गया भाई। Unbelievable rebounds with the most clutch of stunts I think I've ever seen. Dynamo was actually able to dodge a stun from the Hoopa with the Dragon Dance, but they still couldn't secure it. Now the siege starts a little bit. Renaissance trying to push in, but Eternity scares them away enough that they have to Renaissance running this push a little bit nicely up until the Hoopa gets knocked out. The Hoopa was their lowest level at Sarina OP भाई। अरे वो देख लो भाई, सरीना देखो कैसे घुस रहा है अंदर और बाहर भी निकल रहा है। slowing down Sejun, but also giving them a shield to make sure they stay up in that moment. ऐसे सोलो ले लिया भाई सरीना। Louis is going to be able to send the Rotom to that first goal zone. It enters. If they can get a big dunk, that could be huge. Yeah, I'm going to be interested to see, does Eternity choose to break this top point? Something that happens in competitive Unite on occasion is you skip breaking these outside goal zones too early, because doing so gives the opposing team extra experience. We see a brawl breaking out on the bottom outside point. It all starts with Camiro every time. A pretty nice 25-point overdunk there from Renaissance. They do break the top goal zone though, as you were mentioning. So a little bit more experience on the side for Renaissance, but the bottom goal zone breaking is going to mean Eternity gets a couple of Audinos themselves. Yeah, the important thing to note here though is that Dreadnought is the more important objective between these two, and Renaissance still having their bottom point here means that they're going to have a positional advantage on the map for future Dreadnoughts, the second of which should be spawning here soon. Exactly. This next Dreadnought coming up could really mean a lot for the late game that we are headed into right now. Maybe it's hiding out in this bush in the central area. They find a nice little dive here onto Louis, but they are able to escape. कॉम्पी मैच में मजा आता है, मैं क्लैश ऑफ क्लैंस का टूर्नामेंट खेला था। तो भाई इसके साथ से खेले थे भाई टूर्नामेंट क्लैश ऑफ क्लैंस का। Every player into the game here. We're going to be heading on in to this Dreadnought at the 4-minute and 40-second mark thereabouts. We're going to see all those buttons pop off as Renaissance is incredibly out of position for this objective. I'm honestly surprised they're not chasing down those Audinos on the other side they just created. But yeah, Dreadnought is getting absolutely demolished here by Dival. They have a triple Dragon Net stack up. Their Hyper Beam's able to take it easily, but Renaissance is starting to engage on the other side. इधर फाइट लेते रहते तो भाई इधर दोनों ले गया भाई इधर Dreadnought ले गया भाई इधर। An egg bomb slows the damage. Jamjoon tries to lock him in place, but Renaissance ain't done yet. The goal zone siege on tier tower 2 is starting to engage. Dival starts dealing a little bit extra damage. Serena finds a KO, and now Eternity is starting to throw in their own damage. Gradient देख लो, Gradient भाई उनके पूरी टीम को ये कर रहा है और पीछे से Dragonite और Serena डैमेज दे रहे हैं भाई। देख लो भाई, हाँ फिर डिसाइड कर लो भाई Gradient हेल्पफुल है टीम में या नहीं। Running them down back to their first goal zone here, but ultimately able to defend it thanks to a timely hyperspace hold from Hoopa, bringing in easy जो पुश हो रहा था ना Resonance की तरफ से, वो easy रोक लिया भाई। Third fight was about to begin. Eternity gets a little bit wise and starts to run. Yeah, I think Eternity got the better end of that entire engagement as they were able to knock out a number of members of Renaissance, but then they were ultimately able to back up before they took a bunch of KOs themselves. I'm looking at Eternity. Serena at level 12 is going to be a huge asset for them. Rebounds just at level 11. They do get the Rotom and set it down path, but little does the Rotom know, they're all already there, knocking out Audinos. As we head on into what will soon be the final stretch of this game, the big thing that stands out in my mind looking at these levels is, can this level 11 Venusaur find 2 levels before we hit that 2-minute mark? Venusaur gets not only additional cooldown reduction on its skills at that level 13, but it also gets a कोई एक्सट्रीम स्पीड लुकारियो ट्राई क्यों नहीं कर रहा भाई? लुकारियो की जगह ये सरीना चला रहे भाई बंदे, सरीना ज्यादा वैल्यू निकालते जा रहा है इसलिए। देखो भाई क्या जापानीज मेटा
चलता है क्या? एक टाइम पर तो सब जापानीज मेटा यूज करते थे भाई, जापानीज वाले भाई कुछ भी बंदे उठा के खेलते रहे। अभी वो आने का मतलब T2 वाले तो हो गए शायद बात नहीं, T2 वाले को एक ही मैच हुआ था ना, उनका मैच देखने ही नहीं मिला रहा। नो शिप्स वालों का देखना भाई, उसमें आएगा भाई। हेलो कैलाश, हेलो भाई ड्रैगो भाई, वेलकम टू स्ट्रीम ब्रो। And trying to hide out there. I don't think Renaissance expects this at all. Yeah, we see not a level 13 on that Venusaur yet, but we're also missing level 13. भाई इधर तो पहले ही फाइट हो गया भाई, जैप के पहले ही फाइट पूछ हो गया। The fraternity Blissey Knight goes onto the Wigglytuff again, but Seju starts doing their own damage. They knock out Machamp. Kamiru out at a pivotal time. We're 10 seconds to Zapdos. We fight early here. Yang is going to keep fighting. Heron is जैप के पहले ही फाइट खत्म हो गया था। Hoopa finds a KO streak at 2. A great evening force, but they are going to be on respawn timer for 15 seconds. Yeah, it looks like we're going to realistically have a refight here. Dragonite still भाई down ड्रैगोनाइट पे ये लगा है भाई, but their teammates ड्रैगोनाइट running पे into कूल the डाउन पड़ा center है। look like they should be able to hold this off, I imagine. This could be who gets their Unite move first. Dragonite not being here means Hyper Beam भाई 50-50 is हो not रहा going to है। be the secure tool that they need. अरे Rollout starts making भाई its ले way गया, through लो there. भाई Seju's लो Greedent भाई, finds the secure ग्रेडेंट ले गया भाई। Greedent is able to secure it. खत्म है Eternity भाई। down a few points, but not for long. देख रहे ग्रेडेंट भाई ये लगा के रहे, कोई इंडियन टीम है भाई, RNT थी रेवेनेंट गेमिंग, वो बाहर हो गया भाई। देख लो भाई, वो ग्रेडेंट का स्टील देख लो भाई। Kind of acknowledging here, hey, I'm going to make it to the inside. One of the other squishier characters might not make it. Let's make sure we get the most points in here as Renaissance is counter-scoring here, only up by इजी स्टील कर लिया भाई ग्रेडेंट ने for तो। Eternity at this point. That is true. This game is possible. And instead of fighting over that home goal zone, they're going to go to the secondary goal zone. देख लो भाई, यूज करने के ऊपर है भाई ग्रेडियंट भाई। Wild Pokemon on the way to try to find a couple of Unite moves. Yang is there. Divo maybe united too far in. They get shut down. Serena unites ड्रैगोनाइट गया, and now the goal zone is the focus. Kamiru with ग्रेडेंट the भी खत्म है। but the enemy Serena of Eternity finds big value. Yeah, we see knockouts happening here as some of कमबैक होगा क्या? अरे ग्रेडेंट टाइम बाय कर लेगा, यूनाइट है उससे। खत्म है भाई, नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, बनने मर गया भाई इनसे। Seju, that is gross, and I mean that in the best जी जी भाई, way. इटर्निटी जीत गया Belching भाई। all over the enemy team. Eternity defense stands strong. 30 seconds left in the game. They have a over 150-point lead. Not to mention a full 5 members down. खत्म है भाई, पूरे बंदे खत्म कर दिए इन्होंने। Has just secured up game number 3, 2-1. Looks like they are going to be one of our first winners in this second group here today. We have 4 groups playing out in Swiss, where the top 2 from each group will be progressing to our double elimination bracket tomorrow. The Korean region has looked amazing today. भाई फ्लिप क्यों किया जब RNS वाले लीड में थे? अरे उनका मतलब ये था कि ड्रैगोनाइट खत्म था ना, तो उनको लगा ले लेंगे भाई, बट ये क्या बोलते अपना, उनका ग्रेडेंट ले गया भाई, सील कर लिया भाई। 96 here in favor of Eternity. और RNS का फाइट कौन था भाई? उन्होंने फाइट निकाल लिया था, फाइट में जो उनका स्टीलर मतलब जो सिक्योर वाला था बंदा, तो वो ले लिया था भाई। पता नहीं भाई, वही ना यार, ग्रेडियंट का सिक्योर भूल गए RNS वाला। Yeah, we saw the big engagement जी जी भाई, at the very end, इटर्निटी but वाले honestly, I think the thing Eternity क्वालिफाई did really well was they pushed at key भाई। points, शैंक्स, but they didn't really हेलो भाई, push to the वेलकम टू point स्ट्रीम where प्ले they विद got वेंजर। knocked out अरे यार आज overall. तो शायद नहीं खेलूंगा रे भाई, आज यही देखेगा भाई, वर्ल्ड सीरीज के मैच। अरे खेलते तो रोज ही रहते भाई, टूर्नामेंट के मैचेस देखो भाई, मजा लो भाई। Zapdos fight play, or not even Zapdos, 2 minutes and 10 team fight section. They were hiding in that bottom left bush so that when Renaissance came into the central, they could cut off both their escape and their engage spot and completely pincer maneuver them. Not the Pokemon, the movement. Yeah, just really fantastic macro play from Eternity throughout the course of this game, as we see one of the early pushes here that gave Renaissance a decent start, even if they weren't able to fully convert on it. I mean, Renaissance was competing this entire match for sure. I mean, they are not out of this tournament yet, and I think they are going to have a good showing during the rest of the day in this group stage. They looked really phenomenal. I love Kamiru's Machamp. Yang was getting good value in one of the games we saw in the Venusaur. Couldn't quite make it work in game number 3. Yeah, this was just an incredible steal
still at the start here. I think Eternity would have been really far देख के ahead कुछ in the सीख early लो भाई, game हाँ ना had their भाई, hyper beam secured, but हाँ then सीख लो stop भाई, आज well टूरने timed from से Serena was able to go ahead and हफ्ते get that तो on the रोज है scoreboard रैंक for में हम, Renaissance. हाँ Renaissance भाई, was वही finding ना themselves भाई. a lot of dreadnoughts, but yes, Eternity finding value throughout the entire game. Seriously, this rollout Wiggly देखो ये making it look good, and कैसे of हो गया course, ग्रेडियंट का डैमेज Seijun finds 72 themselves के on कैसे आ Zapdos. गया Yeah, भाई, it's वो really easy ग्रेडियंट to है just भाई, look at that पूरा Zapdos मैप pit घूम के and go, डैमेज oh, देते रहता भाई. Seijun got it because Seijun is great, but their teammate knocking up the opposing team with that बोला ना wall भाई, वो Wiggly at ग्रेडियंट that भाई खेलने वाले key पे डिपेंड है moment भाई, वो टीम made कॉम के हिसाब से Seijun खेलना that पड़ता है. much more likely to be able to secure that important objective. Heron, a worldwide pinball champion. I don't know that for a fact, but it sure looked like it on my screen. So I think they were making it happen. And yes, you are right. Maybe the MVP should get awarded to the Wigglytuff. 3 Pokemon displaced is an incredible feat. Yeah, definitely fantastic angles there from the rollout Wiggly, ping-ponging around the battlefield at many points throughout the course of that set. Rollout Wiggly is intelligent because of the trigonometry. So yes, of course, angles always going to be important when it comes to playing Rollout Wiggly, and sometimes just back and forth is the best one. Definitely. Yeah, so and a very, very exciting game there from Group B. We still got T2 and No Show hanging out on the stage here. We're going to get to those ये games T2 और as नो शो soon का as सेकंड राउंड होने possible. वाला है. Fantastic. Really excited to see which of चलो भाई, those देखेंगे two भाई. teams ends up finishing the 3-0 from our first pot, getting to move on to the double elimination bracket as first seed from your group stage is phenomenal. Yes, yeah, exactly. I mean, we have games all day. They're going to be going back and forth, but having that security, knowing you're going into day 2, has got to be the biggest load off your back ever. I mean, having that security, knowing you're going into. So that's going to be मेरा interesting. 43 का डैमेज ग्रेडियंट से भाई, टीम के साथ खेलो और भी डैमेज आएगा तुम. They both know they are headed into day number 2, but they do need to play for, like we said, bragging rights. देखो ना भाई, उनका ग्रेडियंट वगैरह कैसे खेल रहा है भाई. knowledge of how to play against this enemy team. Yeah, it almost जब makes me टीम फाइट में भाई because सबको both these डैमेज teams दे रहा are है टीम locked फाइट for में. day जब 2, टीम like फाइट in में the बंदे पुश first कर रहे हैं game ना of 4 that मैन, set, we वो इजी saw डिफेंड कर दे one रहा of the भाई. teams break out that Charizard in the top path. Is that something they're doing in all of these matches? Is it ये something देख they लो भाई, want to T2 try वाले out? का भाई If you've 40,000 got खिला रहे a थे. spot to kind पिछला वाला of मैच थोड़ा मतलब during 40,000 the का World यूनाइट नहीं चला था ना, उस वजह से Championships, the match that you हार गए have to शायद. give ब्रो आंसर माय क्वेश्चन. huge penalty for doing so is ठीक है definitely भाई. the best spot to do that. ब्रो कॉम्पी टीम्स ऑलराउंडर को अटैकर से ज़्यादा प्रेफर दे रही है, एनी रीज़न भाई? उसका रीज़न देखो यार, जो जितने भी ऑलराउंडर है ना, उसका मतलब वो उनका हील ज़्यादा है भाई अटैकर के हिसाब से, ठीक है. और I guess it's our job to peer into the shadows, but we only get to see और what क्या, you all get to see. पर वो टैंकी है भाई, मतलब जो अटैकर है ना, अटैकर से ज़्यादा टैंकी है भाई. क्राउड कंट्रोल इजी कर सकते हैं भाई, Fantastic. Definitely इस वजह से वो both of those ज़्यादा teams प्रेफर कर रहे हैं on ऑलराउंडर. the double elimination bracket tomorrow since they are 2-0 in our 4-player group A. और ऊपर से जो अटैकर का जो है ना, हेल्थ बहुत कम रहता है, जो टीम फाइट में उतना होल्ड नहीं कर सकते. अगर एक ऑलराउंडर जंप मतलब कोई मार जाने, जैसे मचाम्प वगैरह हो गया और सरीना हो गया भाई, अगर ये दो बंदे मतलब एक अटैक करते हैं ना भाई, आधे से ज़्यादा एचपी कम होता है. जैसे अगर मचाम्प का डायनामिक पंच और उसका क्लोज कॉम्बैट पड़ गया ना, तो उसका आधे से भी कम एचपी हो जाता है भाई इसका अटैकर्स का. तो भाई अटैकर्स टीम फाइट में थोड़ा ज़्यादा स्क्विशी होता है, इस वजह से शायद ये ऑलराउंडर ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं. ऑलराउंडर टैंकी है ज़्यादा टीम फाइट में, प्लस लास्ट हिट भी है फॉर एग्जाम्पल. जैसे हाँ भाई वही, और वो भी यही लास्ट हिट वाले पोकेमॉन रख ले रहे. देख जैसे कि अभी एजे स्लैश आपको ज़्यादा दिखाऊंगा भाई टीम फाइट में. स्टन पोकेमॉन बहुत टोल करते हैं. Welcome back to Pokemon Unite. Now we're going to cover the map layout, features, and key objectives. Remote Stadium, the crown jewel of Eos Island. There can be a lot to take in here for a new trainer, so let's go over key areas, mechanics, and objectives to get the most out of your game. मैंने वही है ना भाई, टैंकी है भाई ऑलराउंडर, और कुछ नहीं. Let's start by talking about key features of the map. You'll notice the stadium is divided into 3 major sections: a top path, a bottom path, and a central area. At the start of a game, 7 मिनट के बाद your मैच team होने will वाला split है off इनका to तो. control these areas by defeating wild Pokemon and gaining experience. Be sure to utilize different aspects of the map, like tall grass to hide from opposing Pokemon, and jump pads to quickly traverse to other areas. T2 वर्सेस नो शो का राउंड होगा 7 मिनट के बाद. As you may know, this is where you सेकंड dunk your AO's सेकंड मतलब energy. सेकंड But मैच, these पहला zones राउंड are तो नो used शो for वाले more जीते than ना. just scoring. When you're in a friendly goal देखते zone, भाई. your Pokemon will gain a shield,
A बस movement सीक्रेट buff शिप और and रेजोनेंस heals slowly over आरएनएस वालों का time, देखने में मजा आएगा making भाई. combat more favorable for your team to ward रूबी off opposing Pokemon. सीक्रेट शिप जापान का है Also, ना. when multiple देखते भाई वो friendly क्या खिलाते हैं Pokemon भाई are in जापान your enemy goal zone, you and your team will score faster. 7 मिनट ब्रेक ले ले. हाँ भाई उन लोगों को देखकर मेरे को भी ग्रेडियंट खेलने का मन करेगा. फिर खेलना आता ही नहीं. अरे भाई तुम जब तक खेलोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे भाई. नहीं आता तो भाई खेलोगे तभी तो सीखोगे ना यार. इधर ही देखो भाई इनसे देख के सीखना पड़ता है वेंडी. आता तो कुछ नहीं है बट देखोगे कैसे खेलते हैं तभी तो खेलोगे ना भाई. पता चलेगा भाई कैसे खेलते ग्रेडियंट. But be aware the enemy team can knock Rotom out before it gets to their goal. Once it arrives, it will score your team up to 20 points and charge the goal for a limited time. That means your team will be able to score goals without the need to charge your Unite Ball, scoring instantly. Plus, the enemy team will no longer be able to heal or gain shields in their zone for the duration that the goal is charged. Now let's take a look at the bottom of the map. This is Dreadnought, an elite Pokemon. Pretty intimidating, huh? This tough Pokemon also spawns at the 7-minute mark during a match. Whichever team defeats it will receive a ton of experience and temporary shields for their team. This opens up a fantastic opportunity for your खेला team था to भाई push 2-3 and मैच score on भी the opposing भाई. team. Once कोई Dreadnought is हगना defeated, तो it will spawn again after 2 minutes. मेरे Keep an से eye on सीखे. the timer at the bottom of the map, indicating its next spawn. Consistently taking Dreadnought will give your team a significant lead in experience and excel in late game. Speaking of which, once there are 2 minutes left in the match, Zapdos will spawn in the कोई नहीं रे भाई. legendary pit. This is often the जितना होगा climax of उतना a ज्यादा match. सीखोगे भाई. Taking Zapdos will grant the player that knocked it out 30 Aeos energy, and 15 Aeos energy will be जब तक distributed ट्राई नहीं to करोगे तो each क्या ही teammate सीखोगे still भाई. left in the fight. Plus, all enemy goals become charged for 30 seconds. ग्रेडेड टाइम भी कितना बाय करता है टीम फाइट में. कोई मार तो कोविड से. हाँ भाई वही तो सीन है भाई. उसने देखा ना टीम फाइट में क्या किया. वो खाली टाइम बाय कर रहा था. मतलब जितने भी पोकेमॉन आ रहे थे ना उनको बस डिस्टर्ब कर रहा था और पीछे से बंदे उनके डैमेज दे रहे थे. ये क्या लिख रहे हो भाई ड्रैगो यूनिट भाई. ये जापानीज वगैरह नहीं आता भाई हमको. Let's go over battle items first. Battle items are active items, meaning they need to be activated with a button press and they have a cooldown. There are several battle items to choose from, and your choice should be determined by your playstyle and by your choice of Pokemon. You won't start with many, but as you level up, you'll unlock more and more. Let's cover a few you'll probably see quite a bit throughout the series. One of the most common items you'll see in the current meta is the eject button. This item is simple. It teleports your Pokemon a short distance, and while the effect is simple, the applications for it are vast. You can use it to escape an opponent, rush a goal to get a quick score, कितना टाइम बचा है स्टार्ट होने के लिए. 3 मिनट 38 सेकंड. 3 मिनट के बाद मैच स्टार्ट होने वाला है. T2 वर्सेस नो. भाई जिसने वोट नहीं किया जल्दी से वोट कर दो. stats in a pinch. X-Attack is an excellent choice for offensive Pokemon, giving a big boost in attack and special attack. This is a great option for Pokemon focused on offensive objectives and who plan on being in battle a lot. That's just a few of the battle items that you can use in game. Be sure to check out more for yourself and try them out. Now let's talk about held items. These are items you can give your Pokemon that grant passive effects. There are a ton of held items, so we won't cover them all. अरे जापानीज में मत लिखो भाई. नहीं समझता मेरे को. Held items to a Pokemon, and you'll want to make sure that you're using items that will benefit a specific Pokemon. For example, Pokemon that deal physical damage use their attack stat, so you'll want to equip an item like Muscle Band that will boost your attack. Pokemon that use special attack would benefit most from a held item that increases their special attack, like Wise Blast. In addition to passive stat boosts, there are also held items that activate with certain triggers. Buddy Barrier is a perfect example of this. When a Pokemon holding this item uses their Unite move, the user and the ally Pokemon with the least amount of health both gain a shield to help them last during major team fights. When a whole team has this item equipped, it can really help everyone from getting knocked out. There are also items that have stacking effects. For example, attack rate will increase your attack each time you score a goal. The effect will become more and more powerful each time you score a goal up to a certain amount.
So try and score early and often with items like these to get the maximum effect throughout the battle. Held items are extremely important to giving your Pokemon an edge in battle. So be sure to always take some time to equip your favorite, most optimal items for each of your Pokemon and for your team. All held items can be upgraded using item enhancers that you earn throughout your time on Eos Island. That's all from us on items. Enjoy the show. Like कर दो. Hey fellow Pokemon trainers, welcome to Pokemon Unite. Hello bhai Ash bhai, In this welcome to video, the stream we'll bro. explain the basics of how a match on Eos Island will go down. Pokemon Unite is a team battler that takes place Like कर दो on भाई. Eos Island. In कैसे हो भाई Pokemon Ash bhai? Unite, each Pokemon बताओ plays a क्या हाल है भाई? specific role. All roles have their own strengths and Charger? weaknesses. So you'll have to work with Don't your know. team to create a composition to cover all your bases. During a match, Pokemon will learn a wide variety of moves as they level up and get stronger. Some cause damage, defend your teammates, or heal your allies. Once a अरे आपने Pokemon कहा is था leveled नो up enough, it'll लुकारियो learn its अच्छी Unite टीम है वो है कहा. This is an ultra अरे नो powerful लुकारियो move that वाले can turn the को tide of मतलब battle. ये क्या नाम है ओरांगुटान वाले जो है ना उन्होंने स्पॉन्सर किया था तो To collect Eos उनका मैच हो गया रे स्टार्टिंग में वो शायद बाहर हो गए. enemies' goal zones, turning it into points for their नो team. लुकारियो वाले बाहर हो गए शायद. Whichever team deposits the most ओरांगुटान energy नाम after से 10 खेल रहे थे भाई minutes बंदे. wins. Well, that's Pokemon Unite in a nutshell. We have so much more to अभी tell T1 you, वर्सेस so if you नो want to शो be the वाला very चल रहा है best भाई. trainer on Eos Island, देखते हैं भाई stay कौन tuned. जीतेगा. चलो 10 सेकंड में स्टार्ट होने वाला मैच. ये देख लो भाई स्टेडियम देख लो भाई पूरा फुल है भाई. आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भाई तुम बताओ. Hey fellow Pokemon trainers, welcome to Pokemon Unite. Now भाई it's हो time तो to गया talk भाई about टाइम तो team खत्म हो गया. composition and picking the best Pokemon for your team. रेवेनेंट क्यों हार गई? अरे कोई नहीं, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था भाई Let's go इंटरनेशनल over the पे different roles तो होते रहता भाई. Pokemon can have. बाहर की टीम अच्छी है रे थोड़ा. Attackers excel at dealing tons of damage from a safe distance at the cost of a भाई हमारी lower इंडियन health टीम के पास थोड़ा एक्सपीरियंस कम है ना मतलब इंटरनेशनल में are proficient in तो इस वजह protecting से their कोई नहीं allies होता रहता by नेक्स्ट टाइम locals अच्छा and ट्राई करेंगे abilities भाई. that fend off and absorb damage from enemy attackers. Supporters, as the भाई name इन्होंने और suggests, 3 मिनट का और support लगा their लिया भाई team with a टाइमर. wide variety of abilities, from inflicting हार status जीत तो चलते conditions रहता and भाई. walling off foes to applying buffs and healing teammates. Speedsters usually control the 6 subs central और area of भाई the कर दो map रे and are जल्दी generally से. the कितना quickest to 500 होने level वाला है up ना. on your team. They also कर दो will भाई usually 500 switch जिसने between सब्स the नहीं किया top जल्दी से and सब्स कर bottom दो of the भाई. map to support सब्सक्राइब current कर दो भाई objectives. जल्दी से चैनल को. All-rounders have an equal balance of attack power and health and are a great option to use in most situations. नेक्स्ट टाइम आप भी पहुंचना इन लंदन भाई. ट्राई तो करेंगे भाई. In addition to the variety of roles a Pokemon can have, Congratulations. there's even more of a इस variety चीज के in लिए भाई. moves a Pokemon can learn. Every Pokemon starts with a basic attack, but will quickly level up to learn one of 2 attacks. Be sure to pick out which attack works best for your playstyle and your team composition. Once a Pokemon reaches a certain भाई level, 72% T2 को वोट मिला है Unite move. और These are very powerful 28% moves that can नो change शो the को. course of battle, देख लो especially भाई when combined with other कौन Unite जीतेगा. moves from your teammates' Pokemon. So trainers, be sure to keep all of this in mind when picking out a Pokemon, and be sure to try out as many as you can to find out which playstyle fits you the best. Stay tuned to learn more and be the very best trainer on Eos Island. भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो. लाइक भी कर देना स्ट्रीम को. Today we're going to explain वी आर how क्लोज टू scoring 500 works in सब्स भाई. Pokemon Unite. जल्दी से The very 500 first सब्स thing करा you दो need यार. to do to score points is collect Eos energy. One way to do this is by knocking out wild Pokemon. Once you do, that energy is automatically added Who to is the your best Unite team ball. according to you? Wild Pokemon भाई are कुछ worth बता नहीं different सकते भाई. amounts of जापानीज energy, की टीम तो and सही this is खेलते भाई. अलग ही indicated by मेटा the पे खेलते हैं. number अभी above पता their चलेगा head. भाई. Another way ये to get energy टूर्नामेंट is खत्म to होते knock out होते ही a पता चल Pokemon जाएगा on the अपने को opposing team. बेस्ट टीम कौन You'll सी है need to walk वर्ल्ड over में. the orbs they drop to collect Which their one is the energy. best team in You the can world? deposit any amount of energy into your opponent's goal zone, but there are a few things to consider before making this move. Firstly, the amount of time it takes to dunk points depends on how much energy you're trying to deposit. The more energy कुछ your बता नहीं सकते Pokemon भाई. has, कौन the कोई longer भी it है will भाई. take to dunk those points. फाइनल्स कब होगा? Players can interrupt शायद ये your 3 दिन का है ना. scoring, so तो take कल caution तो and wait टॉप for 8 the का right मैचेस होगा. opportunity. परसों होगा शायद फाइनल्स. Secondly, take
Take notice of how much health your opponent's goal has. Once it reaches 0, the goal will break, and you will have to go deeper into enemy territory to continue scoring. Lastly, points are doubled in the last 2 minutes of the game. So if that time is approaching, you USA may want to consider टीम बेस्ट waiting to है score देखेगा during भाई those final 2 टूर्नामेंट minutes खत्म to होते ही पता maximize चलेगा your अपने को team's कौन सी टीम बेस्ट है भाई That's all from us on the basics of scoring. Until next time, happy training. Welcome back, trainers, to London. Here we have the first ever Pokemon Unite World Championships underway right now. So many incredible games have been going on so far. We have even more yet to come. आरबी टीम भी है क्या जो टॉप 1 में है We've seen amazing नहीं plays from पता नहीं रे players, वो है and क्या we तो have seen just ये such a शायद मेरे great हिसाब से variety of strategies today, Jeff. Yeah, and we've only seen half of the region so far. I We know. are into Group B at this देखना point. देख लेना भूचा ला A देंगे still left to फिर fill देखेंगे in, यार and as we move on through the देखने course के of लिए it, तो बैठे हैं expect भाई a range of strategies and characters देखने के लिए तो we'll see बैठे हैं selected मन will इधर continue to grow. Yes, no worries there. We have so much more good game action for you underway very, very soon. But we even have had so much good stuff so far. And I really want to dig into what we have seen so far today. हिंदी कमेंट्री लगाओ क्यों इंग्लिश में मजा नहीं आ रहा क्या भाई अरे वो हिंदी वाला 3 मिनट लेट है ना इस वजह से अपन ये देख रहे हैं इंग्लिश इंग्लिश वाला Speaking of our teams, let's take a look at some excellent player profiles here for No-Show and T2. Oh, yes. बताओ आप अगर हिंदी में सुनना है तो हिंदी में सुना सकते या फिर स्प्रेगल्स कहाँ है वो भी था ना अरे वो तो आएगा रे भाई भाई अकेला कितने देर तक ये कमेंट्री करेगा वो भी है भाई मेन कमेंटेटर है वो दिखेगा आपको रुक जाओ दिखाता हूँ भाई स्प्रेगल्स आपको 表の竹島グローパンチバージョン 2.0 です。WCS で世界一を取るためにロンドンに来ました。はい、ロンドンはやはり日本と違って街並みがとても綺麗でいい国だなと思いました。やはり海外の選手とベストな環境でプレーできるのが初めてなので非常に楽しみにしています。はい、ポケモンワールドチャンピオンシップスで、優勝するということは、今シーズン中に仕事を辞めてポケモンユナイトに捧げてきたので日本でポケモンユナイトが、盛り上がると信じて I want to see different meta more of Upas Arena and Dragonite भाई तो अभी तो पिछला मैच देखे नहीं क्या तुमने उसमें ये थे भाई क्या बोलते अपना आपको नया ये भी देखने मिला भाई ग्रेडियंट का गेम प्ले ये मैच में देखो तुमको चार्लीजार्ड मिलेगा भाई चार्लीजार्ड दिखेगा मेटा में चार्लीजार्ड और वीकली T2 की तरफ से चार्लीजार्ड दिखने वाला भाई कोई अटैकर क्यों नहीं खेल रहा है एक भी नहीं दिखा अरे क्योंकि अटैकर थोड़ा स्क्विशी होता है ना टीम फाइट में थोड़ा ये होता है मतलब टीम फाइट में वीक पड़ता है थोड़ा उस वजह से 안녕하세요. 저희는 한국에서 온 유나이티드 대표팀 노쇼입니다. 그리고 여기는 저희 후보 초보 선수입니다. 우선 메타가 सिंडरसन ग्रेंजर भी लाइक गजब बेइज्जती है 여러 가지를 준비해서 같은 अभी तो मेटा से मारे हो 이런 생각을 저희가 했다면 이제 이터니티도 같은 생각을 할 수 있기 때문에 여기서 언급은 비밀로 하겠습니다. 어쩌다가 하게 된 게임인데 열심히 하다 보니 어떻게 이렇게 좋은 성적을 거둬서 런던까지 오게 되었고 그냥 이겨야 된다는 그런 마인드 그리고 이제 그냥 정신적인 그런 멘탈적인 부분이 가장 중요하다고 생각됩니다. 한국을 대표해서 이제 두 팀 중에 한 팀으로 온 만큼 그만큼 또 열심히 해서 좋은 성적을 거둬서 많은 응원을 해주시면 저희가 그에 보답하듯 좋은 성적을 낼 수 있을 것 같으니까 많은 응원 부탁드립니다. 체력 상태가 좋지 않은 상태에서 이게 될까요? 자 볼록으로 밀어내고 썬더 Hey trainers, welcome back to the World Championships of Pokemon Unite. We have the next game getting queued up already, one I am so excited for. This is going to be Renaissance from the नो शो कहाँ की टीम है नो शो of Japan. Yeah, secret ship, one of the kind of नो शो superstars out of यार नो शो Japan रुको बताता हूँ region, consistently innovating and bringing fantastic things that no one else really seems to have thought of to their high-level Pokemon Unite tournaments throughout the course of their season. That's true. Definitely counter-playing into the enemy seems to be Secret Ship's best part of their arsenal. Now, we have seen a variety of compositions from them over the course of this entire year. They performed very well in all of their monthly finals, EOS, and
No course, ship. regionals, they won the whole thing. कहाँ गया रहा But teams in का? regionals, that was the only tournament they actually won. Otherwise, they have been in the top 4 spot in Japan. A very competitive region, but actually hitting first place. Let's take a look at these two teams. No show ना. Listen, if you're gonna pick a spot to peek at, you definitely want to do it during the regional. कोरिया की टीम है भाई, no show. Into Worlds is a great time to hit हाँ your भाई, stride. कोरिया की टीम है भाई. Looking to keep that stride in lockstep here. कोरिया की है. Not agree more. Now on the other side, Renaissance here is going to be wanting to actually get a round robin win under their belt. They did lose that first game versus Eternity, so now they are in a desperate spot to get a win. Yeah, definitely. Remember, only 2 of the 3 teams out of each of these. इंडिया का कोई बच्चा नहीं भाई. इंडिया का टीम खत्म हो गया भाई. इंडिया का मैच जो रेवेनेंट गेमिंग का था वो बाहर हो गया भाई. रेवेनेंट वाले. Let's get a closer look at Team Renaissance. Right now, Renaissance is ready to roll, and RJ. ये देख लो भाई, इनका चल रहा है मैच. How am I gonna deal with this pesky team? We are Team Renaissance from Apex. इनका टीम प्रोफाइल दिखा रहा है भाई. RNS वालों का. कोई तो अटैकर खेलो, देखना है कैसे खेलते हैं भाई. अरे यार, अटैकर के अलावा कुछ और भी देख लो यार. तुम थोड़ा ऑलराउंडर भी सीख लो भाई. देख लो इधर ऑलराउंडर ज्यादा यूज कर रहे हैं बंदे. एजे स्लैश सीख लो भाई. रेवेनेंट किससे हारी? रेवेनेंट हारी है भाई, नो शो से हारी है और ओरांगुटान से हारी भाई. पक्का ग्रीन आएगा. मेरे को नहीं लगता ग्रीन आएगा. हाँ. If I win first place, I guess I'll be getting using the money to get a Pokémon tattoo on myself. Maybe on my forehead. Yeah. Thank you for supporting us for like this whole journey. I think we will win it now. There you go. That's going to be poured down into the side of RJ Gaming, and no one else is going to be alive here. Z-Ray is going out as well. That's why I told you, dude. That's what I told you guys. That is going to be a 5-man sweep here. There we have it. That is Team Renaissance, a formidable squad here at the World Championships. They have been working for 6 months to make this happen. Really fantastic energy there in their player interviews and their dancing around at Poke. You can tell that they don't हुपा आएगा. हुपा तो खेल रहे हैं भाई. अरे क्या मैच से डिलीट कर दे भाई. That's true. Well, let's take a look at the competition they're going to be headed up into next. It's a secret ship from Japan. Yeah, ग्रींजा देखने को मिल गया ना तो मजा आ जाएगा. मेरे को नहीं लगता भाई ग्रींजा दिखेगा करके. You could call it a comeback story, but honestly, Secret Ship's story has been a bit more than that. I mean, these monthly finals outside of just AOS Cup have had some top 4 finishes and some a little bit lower, as you see on your screen right now. But you mentioned it, Jeff. Peaking at the right time is so important, and winning the Japan region was what Secret Ship was doing. Yeah, let's take a look here at their player profiles here and see what they have to say to all of our audience at home about what Worlds means to them. の目を倒している。後ろから豆が最後の気合を希望を託して攻めてくるが、着地をスクラッシュアルトライタここまで。ये भाई सीक्रेट शिप भाई. इनका भी मैच देखने में आएगा भाई. जापान की टीम है भाई सीक्रेट शिप. いろんな人に応援されてここまで勝ち上がってきたので、ここまで来たのを誇りを持って頑張っていきたいなと思っています。何度もランクマッチとかでトライアンドエラーを繰り返してもう負け続けてきたけど大会では勝ててきたっていうところですね。このロンドンっていう歴史あるところ街で、観客の皆さんの前で僕らシークレットシップの戦いをお客さんの前で見せる。जापान से 2 टीम कैसे आ गई भाई? 2 स्लॉट है भाई कुछ टीम पे. कोरिया से भी 2 टीम है. साउथ अमेरिका से भी 2 टीम है भाई. 2 स्लॉट है भाई कुछ कंट्री में. मतलब 4 कंट्री से 2 टीम आ रही है भाई. 2 टीम को स्लॉट्स मिले हैं. One of the best teams we have here at the World Championships, depending on who you ask, suppose. But if you're asking me, I think they are an absolute threat towards this championship. Yeah, I think they're going to be the team that we're going to see probably counterpick the opposing team more frequently than some of these other. They seem to really adapt and respond in really fantastic ways to what their opposing team brings to the table. Could not agree more. The adaptation will definitely pay off here. So far today, we have seen a lot of Serena
and the Secret Ship in that regional final won the entire thing by making a composition that was hard focused on shutting down that very Pokemon. I do believe, if I recall, it involved a little Decidueye, friend? It did. A Pokemon on my wish list. So yes, a Decidueye was utilized, as well as two other winged friends. We had both a Talonflame and a Cramorant. Now, I gotta give a shout out. I love some Talonflame, not Garchomp. Love Talonflame. And that Pokemon is great in conjunction with Hoopa. Now, if you are watching them play, they are amazing on this Hoopa. Giving, of course, my shout out to कब मैच स्टार्ट होगा भाई? अभी हो जाएगा भाई 2-3 मिनट में. जैप स्टील बाय ग्रीनिंजा यूनाइट देखने को मिलेगा. एवरीवन विल बी. हाँ भाई. अरे यार अभी तो देखा तुमने ग्रेडियंट का भाई? ग्रेडियंट का देखा क्या? जैप स्टील बाय डिसुडाई देखने को मिलेगा क्या? नहीं भाई, मेरे को तो नहीं लगता कोई अटैकर दिखाएगा आपको. कुछ बता नहीं सकते भाई, कुछ भी खेलते भाई बंदे इधर. T2 के तरफ से आपको 40 देखने मिलेगा, ये तो पक्का है. Yeah, and that's a place that where Talonflame really struggles, right? Because the get in and engage is great, but then your buttons are on cooldown for a while, and you have to kind of try and survive with the squishy kind of melee character to be able to jump back out. And Hoopa, with the trick, allows them to mitigate that a little bit. That's very true. Yeah, Talonflame has its strengths, it does have its weaknesses, and if you have that was awesome. इसलिए तो वो ग्रेडियंट है. हाँ भाई, पूरे टूर्नामेंट की स्ट्रीम करेंगे आपके साथ, देखने में मजा आता है भाई. पूरे टूर्नामेंट देखे करे. वैसे भी खेलते तो रोज रहते भाई, टूर्नामेंट थोड़ी ना रोज होने वाला है. तो भाई देखो भाई, थोड़ा मजे लो भाई टूर्नामेंट के. टूर्नामेंट में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है भाई. नई मतलब नई टीम के साथ कॉम्प वगैरह भाई, वर्ल्ड की बेस्ट टीम के भाई कॉम्प्स वगैरह कैसे खेलते भाई बंदे. देखो भाई. When we land these abilities in conjunction, what can we create? We've seen a lot. We've seen Snorlax Heavy Slam be an iconic combo piece. So far, it feels like at the start of Unite, but now, on the bookend of year one, Snorlax is back. Yeah, Blissey, another really fantastic supporting character that we see it kind of keep these melee brawlers topped up with that endless stream of soft-boiled eggs, it feels like sometimes. Not to mention that Bliss assistance, when landed on that Pokemon, they can be unstoppable in a team fight. So, very exciting. I believe it's Wiggly. वेंजर बोलूं क्या? उसका कुछ मुझको कुछ सीखने को मिलेगा. हाँ भाई, आईक्यू लेवल बहुत है इन टीम्स में भाई. आईक्यू लेवल उनका सिनर्जी देखो भाई, सिनर्जी भी सही है भाई. सिनर्जी भाई, उनका रोटेशन देखो भाई, टाइम पे होता है. वो सब देखो भाई, टीम फाइट में देखो कैसे इंगेज करते हो भाई. वो सब देखो यार, देख के तो सीखने मिलेगा यार तुमको. तुम्हारा गेम इंप्रूव होगा भाई. I am honestly not sure which one I expected more. Like, if I'm seeing Wigglytuff, I thought rollout, but Sing's good, I think. I don't know. Now, Sing has a lot of effects, of course. It gives that sleep. चलो guys, मैं आता थोड़ी देर में. Stuns up a lot of Pokemon. They cannot move. तब तक मैच भी स्टार्ट होगा. Right, वेट करना है. When that timer ticks down. Of course, though, Sing has a great added benefit of having every enemy Pokemon's special defense well under that Sing ability. So, if you are combining it with a Pokemon like Venusaur, who has great special attack damage, it can help out a lot, especially in the early game where Venusaur doesn't quite have the damage to keep up with other attacker-style Pokemon. Yeah, then again, that just goes back to that kind of 1-2 team-building punch where the game's not just about your individual characters, it's about the whole group of 5, or at the very least, your duos and pairs inside of those 5 and how they can work in tandem together. That's exactly right. So if you're at home and wanting to know how to get better at Pokemon Unite, get yourself a duo like Jeff Hoagland here. So he'll be able to get those combos off with you and make sure that everything is looking good. I'm dragging him down. We should get a new duo for Jeff so that I don't have to be there with you anymore. But very soon we are going to be headed into this next game. This is Secret Ship's debut on the mainstream, and it is very, very exciting. I know they have a lot of fans at home and abroad, so I'm very excited to deliver on some Secret Ship action. Yeah, I am definitely one of their fans from abroad. I've watched their matches in these regionals and AOS Cups from the Japan region, and they are just a delight to watch. And I'm curious to see not only what they open on here in this first game, but games 2 and 3, I think, is really where they shine when it comes to figuring out, hey, how are they counterplaying? Well, let's take a look. The draft is ready. We'll get you to the set, but we have Renaissance versus Secret Ship.
We see in Alolan Ninetales. Oh, and my boy Blue that we talked about earlier, a Blastoise locking in here for a secret chip on the right side screen, and a Gengar. That's the one that's taking me by surprise. It is Gengar, and that Gengar has not one, not two, but 3 spectacles on their face. That is a triple glasses Gengar. I mean, if 1 pair of sunglasses makes you cool, Zoinks, then 3 pairs must make you super cool. Geometry is definitely a big theme in our block here for casting today. Yes, that is true. 3 glasses better than 1. At least the Gengar on Secret Ship is thinking that way. Now, what does that give you? A ton of special attack damage. Why does that mean so much to Gengar? Yeah, Gengar is like an assassin-style character in Pokemon Unite. It is squishy and a melee character, but it does incredibly large bursts of damages. And there's 2 different Gengar builds. So usually the triple glasses build implies that we're going to see Dream Eater plus Shadow Ball for an incredible amount of burst and kind of jumping around the battlefield a little bit, but Sludge Bomb plus Hex is also a very viable skill set that we can see from these characters. And Gardevoir from Renaissance here as well. This is a pocket pick of Camiro's. They are an exceptional Gardevoir player, and I love watching them play this. Now, another Pokemon that struggles early in the metagame, but when sent to the central area, you can circumvent that weakness a little bit. I'm going to double check my eyes here, Zoinks, but are there 0 Hoopas in this match of Pokemon Unite? Yeah, get those checked. There is one. No, there is one. There is one. Renaissance is rocking the Hoopa, and they are bringing it down here to the bottom, the top path this time around. I gotta get mine tech too. Speaking of week 1 Pokemon Unite, eldegoss here as the support character on Secret Chip, a character that's capable of providing healing and shields in a circle around it, as opposed to the more targeted healing that we see on something like Blissey. AoE healing is so good on the side of eldegoss, and Yakko, an expert on this Pokemon, I can personally guarantee it. Now, a Ghastly coming down here in the bottom path gets the evolution off of an Apom. Not only do we have the evolution there, but we have Psyshock on this Gardevoir. My personal favorite. Look at these bees just get absolutely deleted from the path with those 3 quick hits, but Gengar almost taking Gardevoir off the map here. You're walking that razor edge when you're playing a Pokemon like Gardevoir. A glass cannon, if you will. Now this contestable auto-no does get absolutely demolished, and Yang gets the evolution thanks to it. This Blissey has been doing so much soft boy healing work. I need to see the numbers after this match. Yeah, Gardevoir is what I like to refer to as an artillery character in Pokemon Unite. It's a glass cannon that it does take a lot of damage, but it blasts really heavily and from a very incredible distance with those Psyshock bursts. Yeah, Lisa here now hitting that level 6, but you are right. They are going to have a tough time closing the gap between that Gardevoir to get those big chaos, especially when there's a Blissey standing between you and your target. Look at these rotations from Secret Chip. Haunter came to the bottom path after doing the first center rotation, but then gives the second center rotation to the Aegislash, who ultimately goes down inside of this fight. Renaissance starting to turn this thing around. They do have a Serena thanks to some great top path performances, so they're going to push forward to find a couple of KOs. A KO streak of 2 for Camiro. They're at a level 8, 40 seconds until the first Dreadnought. We see Renaissance declining to break this bottom point here. They know if they break this point, it's going to give Secret Chip a ton of additional experience early, and not wanting to do that before the first Dreadnought goes down. Yeah, great way to hold off. Yes, you may destroy the hyperspace highway a little bit, but still getting that team fast but lower level is more important. These bees go completely over. Camiro's on a fast track to have the Fairy Singularity Unite move unlocked for this Dreadnought fight, one of the most powerful ones in the game. It's powerful, but it's also very difficult to position correctly. It puts this giant circle on the ground that sucks everything in its radius in, but is also easy to duck out of if the opposing team is being careful. That is very true. The Dreadnought rip has begun here. Ivysaur starting to deal some early damage, but no! Secret Chip's Alolan Ninetales take it. Camiro lands the Fairy Singularity though, and starts getting a bit of an exchange. Aegislash for Secret Chip starts taking the fight up, but they are one of the last ones left fighting on this beach. We see those Psyshocks tearing through this Aegislash here from Gardevoir. Renaissance losing this first objective, but winning the team fight in a dominating fashion that follows. Yeah, definitely. I mean, they had the Unite moves up first. They definitely had the big advantage in the team fight. Now they are taking that Hoopa portal all the way up to the top. They are in position to fight over the Rotom as well, but it looks like they're itching for another team fight. Yeah, we see them pushing up on this top point here. They do break it
before this rotom happens, breaking the outside point in the top before the rotom allows us to march down at that second goal for Secret Chip, providing an incredible amount of map pressure. And they have Bliss Assistance and Verdant Anger, two massive Unite moves. This siege will be worth it, and we're probably going to see some pretty heavy investment here from Renaissance. Yeah, and this is that kind of important mark in the game where the Unite moves are popping off, but there's no jump pad here for Secret Chip to come back in and disrupt you as you push on this point. That is very true there, but Q this time around with the Blastoise was able to stop him with a really big Unite move there. Alola Ninetales slow go, but also gets involved in the team fight a little bit. A big reset, gets a few of them back. Yang sticking around here too. NC and Kamiru doing a ton of damage still, but they pay for their insolence. Huge Unite from the Aegislash here, chopping down not just Gardevoir, but another as well. And we see the Aegislash trying to score here, but not able to get in before the Zarina can make it back up. That's still worth the style points, and the style points are very high with that cape. Cape and the top hat here as that wide guard looks to protect the Alola Ninetales, who ultimately goes down to that powerful Unite move from Zarina. Yeah, good shot trying to take away that Serena Unite move that Rebongs was trying to implement. Unfortunately, not quite in the right position. Rebongs still lands it on the Alola Ninetales. A truly kind of strange position for both teams here as we head on in to this engagement at the second Dreadnought. Not a lot of Unite moves up for either team. No, and Renaissance is getting this Dreadnought for absolutely free. Secret Chip instead trying to knock out some wild Pokemon and maybe hide out for an ambush to knock out that Serena. Serena giving them no such opportunity and instead going away. Now, something to note here is that even though Secret Chip lost this Dreadnought, they're actually not that far behind in total levels because they've had this extra catch-up experience in the top and bottom path because their outside points have been broken. Yeah, exactly right, Jeff. Now the onslaught keeps continuing. These Bees are going to be finally knocked out, and Renaissance needs to escape, and they need to do it now. A great use of the Giga Drain and Petal Dance gets them the escape route they need. Kamiru hangs around a little bit longer, but mostly just for intel. We see Venusaur moving into the central area for Renaissance, perhaps wanting to prioritize the very important level 13 on that character as a very pivotal breakpoint to get your Petal Dances happening more frequently and let them hit a wider radius. That's a great call out. Secret Chip was able to net themselves that first Dreadnought, so the experience lead is not too far in Renaissance's favor right now. Psyshock starts off the damage there. A little bit of a reset. I assume they're going to be coming right back to keep on swinging. There are 5 Unite moves here for Renaissance. I wonder if we're going to see them try and push this in here at this 3-minute and 40-second mark, or if we're going to back off and play a little more passive. They're playing quite careful, and yeah, that Hoopa portal resetting, they're not going to be able to come back right away. It's still going to be on cooldown. Hoopa Hyperspace Hole having a short cooldown once you use it, not able to spam that ability that often. Yeah, this is kind of the use it or lose it moment, and it looks like we're choosing to hold all of those Unite moves on the Renaissance point until we get closer. Hello, bye, welcome back, भाई. A lot of patience for Renaissance, but hey, they have not allowed a आ गया भाई वापस में. क्या हो गया भाई? जापान की टीम के गेंगार कुछ नहीं कर पा रहा. भाई गेंगार ले आया भाई. नहीं है, सही है भाई. देख लो भाई, नाइनटेल दिख रहा है तुमको अटैकर में. सीक्रेट शिप भाई. एल्डेगॉस भी है भाई. जापान वाली टीम का देख लो भाई, अलग ही कॉम खेल रहे हैं. गार्डियोर भी है. नाइस भाई. अटैकर तो देखने मिल रहा है भाई. अटैकर तो है. हाँ भाई, गार्डियोर देखने को मिला भाई अटैकर में. भाई सीक्रेट शिप भाई स्ट्रगल हो रहा है भाई इधर. सीक्रेट शिप वालों का. The big thing you want to look at when you're looking at these endgame engages of Pokemon Unite are 2 things. The first is, does everybody have their Unite move on both sides? These teams are excellent players. That's a check. The second thing is the total levels that you see on your screen. And Secret Chip, because they've had this catch-up experience, is incredibly close. That is true. Rebong's going to start this fight off here with a little bit of a drop kick into some action. Secret Chip takes the second dance this time around, and they start doing some damage as well. But Guardior का Unite खत्म भाई. Blastoise Unite absolutely massive to try to circumvent that very singularity. खत्म है भाई, एक ही Unite में खत्म हो गया. गेंगार बचा खाली. Unite नहीं है गेंगार पे. But Renaissance wins this team fight. Gengar hiding out. Yeah, Gengar looking to try and proc a steal, खत्म है भाई. कुछ नहीं हो सकता भाई. क्या है गेंगार का? Big scam. Dominating position in the Zapdos fight. The ship has RNS वाले निकाल गए भाई ये मैच तो. Chaos energy is going to rain in here for Renaissance, likely pushing them up to over 600 points scored. I'm not going to say the word because I don't want to curse it. भाई नो शो वालों को मैच देखने ही नहीं मिला रहे. छोड़ो भाई. We will see though. 2 members down for Renaissance. Secret Ship has a chance to come back and score some points, but yes. Guard is destroying everyone by RNS came over. That was I was saying they should play attacker.
अरे गार्डियर से कंटिन्यूस डैमेज आता है ना उसका. Eldegoss does have a unite move available, so they were ultimately knocked out before they got to. भाई 509 भाई सीक्रेट शिप का 0 भाई एक भी स्कोर नहीं किया है, देख रहे हो. They have almost 500 points AOS energy between their team here, but they need to put भाई. all of it in and then some to break this 509 line. A lot of unite moves being utilized on खत्म भाई सीक्रेट शिप defending all the way out here भाई. could be a danger, but खत्म भाई 0 किल. no danger found here. We are getting all KO5 भाई वन साइड डोमिनेशन 0 किल है, मतलब 0 स्कोर है, देख रहे हो. Yeah, we saw that fairy singularity pop off for Renaissance and suck in not only most of Secret ग्रीन निंजा भी दिख सकता है मे बी, क्या पता भाई. That is true. You were mentioning the game was quite close in terms of level lead and experience there. Secret Ship was able to find enough wild Pokemon and utilize the comeback. भाई 8-1-1 हो गया स्कोर और सीक्रेट शिप का 0 है भाई, वन साइड निकाल दिया इन्होंने. Too dominating of a factor, and they are going to win a dominant game number 1. Yeah, I think the big thing that stands out to me in my mind watching that end game engagement. गाड़ी ओपन द चैट भाई, कर दो भाई गाड़ी ओपन द चैट. They just had far less sustain on the Secret Ship side than they expected to have inside of that fight. That's a tough place to be for Secret Ship, right? Their composition is completely built around diving and collapsing on an enemy, and there we go. 851-0 is the scoreline. But Gengar कुछ नहीं कर पाया. Gengar, even Blastoise on Rapid Spin, they want to dive a target, but to do so, you need to clump up. And you know who loves when you clump up? It's Kamiru's Gardevoir with very singularity. You're going to trap the entire squad in one place and shut them down. Just what happened. Q was able to dodge it with a great Blastoise Unite move, but unfortunately, Yako was not able to do so. Yeah, and Blastoise, you know that Rapid Spin, you're unstoppable. भाई गाड़ी और निकल गया भाई मैच पूरा, देख रहे हो वन साइड डोमिनेशन कर दिया भाई आरएनएस वालों ने. A heck of a hindrance to try and resist when that fairy singularity is hitting you as hard as it is. That's true. Shout out to Snorlax, by the way, coming back in a major way. But there we go. There are your teams competing on our B stage. So we have as many stages as possible to get as many games as possible for you here today. Right now, these two teams are playing their hearts out. Let's take a look at what happened in game number 1. Yeah, we saw this big push here from Renaissance, getting that Gardevoir to its final evolution nice and early, letting them push up and deposit this AOS energy, which not only gets you ahead on the scoreboard, but look at that half a level at level 8 for that 30 deposit. That was wild. Yeah. The Gardevoir got leveled up so Sideshow खेल रहा था ना. Kamiru was a force to be reckoned with. That was a 3-person fairy singularity around that first Redknaw fight. Kamiru making this Pokemon soar up the tier list of all these YouTubers. Yeah, क्या ही सही यूनाइट दिया था उसने लास्ट में भी. ओपी भाई गार्डियर भाई. Decisive victory for our left side team here. Look at this too. 2 or 3 members of Renaissance on just slivers of HPs. I mean, Hoopa and Venusaur particularly, but still the sustain of those Pokemon won out in the end, and a Zapdos for free. Kamiru also snuffing out the Gengar trying to steal. Great heads up play. Venusaur बहुत यूज होता है कॉम्पी में, अरे क्योंकि वो टैंकी है और उसमें बस वो क्या उस गिगाड्रेन से हील होते रहता भाई. तो टीम फाइट में जितना ज्यादा गिगाड्रेन यूज करे उतना ज्यादा देर तक वो फाइट में रह सकता भाई बैटल करते हुए. इस वजह से भाई वेनुसॉर बहुत दिखता है भाई कॉम्पी में, और ऊपर से ब्लीसी उसको शील्ड प्रोवाइड करता रहता है, शील्ड और हेल्थ, तो उस वजह से और ब्रोकन है भाई वो पोकेमॉन. Basically a Pokemon convention here this weekend, and the energy in the room with fans watching in addition to competitors competing is just so phenomenal. That is true. The amount of fist bumps I have done must be criminal for how much I'm throwing around my fist today in the venue, but it has been so much fun. Wouldn't trade it for anything else in the world, but these teams are playing for a lot more than I am right now on these stage. They are playing for a shot at, what's the prize pool देखते हैं अब किसका मैच होगा. तो $500,000 total prize pool with our first place team walking away with $100,000 of it. Yeesh, that is a lot of कितने बजे तक चलेगा टूर्नामेंट क्या पता भाई, टाइमिंग्स पता नहीं कितने बजे तक चलेगा. Night Championship Series, it's all coming to a head here today, and Secret Ship is going to need to find a way to come back in game number 2. A shutout is not a common thing we see in Pokemon Unite, but it is what we saw in game number 1.
Renaissance did not let up. Yeah, and like I said, like we mentioned during the intro, talking about Secret Ship, I think one of this team's biggest strengths is their ability to kind of counter pick once they see what the opposing team is doing. So I would be kind of surprised if we see that exact same 5-character lineup selected for Secret Ship going into this. $100,000 is equals to 10 crore. Dumbfounded even because सही में yes, क्या? I think Secret Ship भाई प्राइस पूल तो बहुत है भाई. is excellent. So we will see. It was प्राइस पूल अच्छा खासा है रे. all in on some special attack damage and a ton of bursty damage, right? I mean, Aegislash obviously the outlier, but Blastoise, of course, Hoopa, Alolan Ninetales even, a lot, and Gengar, of course. So much big SP damage all at once, but did not find them the win this time around. They're going to need to switch up their strategy. What would you like to see at a Secret Ship this time? Speaking of picks, maybe we could take a look at what's been being picked so far in our tournament here. We've got some stats here. Top 5 pick rates by region. Looks like we've got a lot of Blissies and Hoopas and Zarinas. Not a huge surprise there to me. Those wonderful pink Pokemon in the first 2 especially are really powerful. That is true. Shout out to APAC though as well for being maybe the discoverers of how good Serena भाई was. टॉप पिक्स भाई देखो यार सबसे ज़्यादा तो यही यूज़ कर रहे हैं बंदे. ब्लीसी तो सबसे हर टीम में ब्लीसी है 91%. हुप्पा सेकंड पे है, फिर सरीना है, फिर ड्रैगोनाइट और फिर ये क्या बोलते हैं अपने विनोसॉर. हाँ भाई लुकारियो तो दिखने को ना भाई. This is really interesting from their regional tournament. So Blissey and Hoopa still the most picked, but significantly lower than an APAC. Yeah, no kidding. A 62% for Hoopa. That's rookie numbers. Japan is taking it easy on this, you know, mischievous Pokemon, magician Pokemon. I can't remember which one is its subtitle, but still 62.5%. लुकारियो स्पीड दिखाओ. क्या देखते यार कौन सबसे पहले दिखाएगा भाई लुकारियो अगर. देखते यार कौन सी टीम के साथ अपने को लुकारियो खेलते हुए दिखेगा भाई. What we see top teams in Pokemon Unite doing regardless of their region, the teams that come out on top the most successful most often are the ones that are looking at what's going on, and they're not just perfecting that, they're looking to go one step beyond that and beat it. Yeah, exactly. If you can solve the meta, great. If you can break the meta, even better. And Japan seems to be one of the teams trying to do so. Now we have them in lobby for game number 2. We're going to get you there very shortly. Now, Secret Ship, we're definitely expecting some changes. What about Renaissance? Do you just keep that same build? Do you run Gardevoir 2 games in a row? Gosh, the Gardevoir pick could, I think, be the one that you are most likely to move off of. Next time पहुंचना है आपको लंदन. I do feel like Gardevoir is one of the easiest characters to counter pick into specifically. While its raw power level when it's left unchecked is obviously very high, we saw a lot of high impact fairy singularities. If कंपटीशन तो रहेगा भाई अच्छा खासा. तुम भी ट्राई करो यार. क्या पता तुम भी लंदन में होगे. तुम भी अपना टीम बनाओ. खेलो यार. Just for fun. अरे स्क्रीम्स वगैरह खेलते जाओ यार. मेरी एज नहीं है. अरे हाँ अरे तू कितना एज है तुम्हारा वैसे? Yeah, definitely. And that Aegislash is one of those characters where it's really hard to evaluate where it fits into a given team composition because RNS का मैच कब है? अभी रहेगा शायद. ये देखो ये है RNS वर्सेस Secret Ship. I am 16 year old. अरे तो भाई स्क्रीम्स और टूर्नामेंट खेलने में थोड़ी ना एज लगता है भाई जो रीजनल वाली होती है. वो तो ऑफिशियल टूर्नामेंट के लगेगा ना तो रीजनल तो खेल ही सकते हो भाई तुम. अरे हाँ तो एज नहीं है तो क्या हो गया भाई. बट तुम स्क्रीम्स तो खेल सकते हो भाई. स्क्रीम्स में थोड़ी ना ये कुछ होता है. तुमको मजा भी आएगा भाई कंपटीशन खेलने में. मैं 12th भाई जब तक तुम्हारा एज हो जाएगा तब तक कर सकते हो. वैसे एज का भी रिस्ट्रिक्शन तब तक रहता है जब तक घर वाले मतलब ये नहीं होता. अगर घर से तुम परमिशन लाते हो तो तुम हो सकता है भाई. डूरा दिख गया. I did see an Espeon there briefly as a character. We could see how that goes. The Mamoswine went back and forth here. We'll be into the lobby momentarily as our players load up to confirm exactly what those folks are doing. 16 तो हो जाता है मतलब तुम खेल सकते हो भाई. रीजनल टूर्नामेंट तो खेल सकते हो जो इंडिया में जो होती है वो खेल सकते हो. ऑफिशियल पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है तो ऑफिशियल में उसका कुछ नहीं. बट कुछ एप्लीकेशन वगैरह मतलब कुछ उनका जो रिक्वायरमेंट है तो पूरा करना पड़ता है. For our players here, as it looks
looks like we are getting things underway. You can see our players geared up here on our B stage. Shout out iClan, OCE waiting पता नहीं भाई patiently वो to ग्रुप का play होने their का इशारा own अभी तो वो group ग्रुप stage बी matches for बी sure. ग्रुप डी But चल of रहा है course, इधर they ग्रुप have बी a या front सी row का मैच seat चल to रहा है watch all of the action. Looks like we're going to have a little bit of a game reset. There must have been some issue with a couple of teams, but we will get that sorted momentarily. Yeah, characters bouncing around sometimes not a good sign. So we want to make sure these, as Pokemon Unite played at the highest level for the highest stakes, we want to make sure everything is working ideally for our players before we jump on into a really important match for this group. Very true. Competitive integrity is so important to us. But I honestly have to ask Jeff, do we count that as an Espeon being played? Do we count it? Does that another Pokemon off of my bingo card for being played in the match? I hope it does. They did have a check mark next to a Mamoswine. Okay. So we hadn't quite check marked an Espeon, but I think वहाँ पे when we मोबाइल get a पे remake here, पिन I लगा will bet we're going to see my favorite Icy. खेलना पड़ता है I think so too. The Mammut is कहाँ here पे to play, and I am अच्छा excited, पिन I'm excited to see it. चार्जिंग वाला अरे वो ये करते ना क्या बोलते हैं Evolutions here on the stage. मतलब रिकॉर्ड करते हैं ना गेम प्ले इसलिए वो पिन लगाते थे इग्नोर क्या इग्नोर किया अरे पढ़ा दो यार चाहे MSPYI कहाँ है अरे वो उनका ग्रुप पता नहीं भाई कौन से ग्रुप में center type setup because they're not fantastic at contesting those last hits early, even if they do hit decent power spikes. That makes a lot of sense. देख लो भाई उनका लॉबी देख लो भाई ये जिनका जो ऑफलाइन जो मैचेस हो रहे हैं ना वो लोग इधर बैठे हैं Despite us thinking it's not so strong before, so maybe it could surprise us, but you are RNS तो यही है ना in a tough place right now. Yeah, the Renaissance वाले is very fantastic at clearing groups of wild Pokemon like those Combees and friends, though. So we could see that Nouns later in Group D is one of the groups that perfected that kind of split center area. That is very true. There's a lot of teams I'm looking forward to watching to at this event that we have not gotten to see yet. We've seen a lot of Group A and B so far. Group C and D are still waiting, and a lot of different teams there. We're going to see even more strategies upcoming. Honestly, the variety we've had at this tournament, I think, was a lot of people's requests and wish heading into this tournament. Like a lot of people, they wanted to see something new. कोई तो निंजा दिखाओ यार अरे पिछले मैच में देख लिया ना तुमने गाड़ी और देखते हैं मैच में क्या देखने मिलेगा ग्रुप ए में से नो शोर T2 टीम क्वालिफाई हुआ है ग्रुप बी में से इटर्निटी जीता है मतलब एक मैच जीता है ना सीक्रेट शिप RNS भाई एक मैच आ रहा है कुछ पता नहीं सकते भाई कौन जीतेगा अभी ग्रुप बी के मैचेस चल रहे हैं ग्रुप ए तो कंप्लीट हो गया for sure. Oh, again, yeah, we'll see iClan one more time. Make sure they get their team rep in there. Seriously, these teams are so excited to play. iClan has been working so hard as a team, but they all have, right? These last 2 weeks especially, these teams have been cracking down and getting as much practice time in as they possibly can. Yeah, I mean, Pokemon Unite is an incredibly skill-based game, especially at this top level. There's objectives that can come down to last hits, but the way you make those last hits skew in the favor of your teams with your engagements and your character selection, the execution of your attacks at the micro level, the teams that are playing the best are going to win the most. That is true. Let's take a look here at Renaissance. So Renaissance won a game from game number 1. So their first match, they did not get the win over Eternity, but this second match, they started out with a bang, a shutout victory against Secret Ship. Renaissance looks like they woke up. भाई Renaissance ये है भाई RNS वाला. Here to the World Championships, looking to prove something. A 3rd place finish, a 2nd place finish. They're on the way up, and there's only 1 place to go after 2nd. So. That is true. 4th, right? No, 1st. I'm so bad at counting, but luckily Renaissance is very good at it. They counted and they added a positive number every single time they scored. So great work from them. Yang's Venusaur play. They have played basically only this Pokemon in the tournament so far with the small sample size that we have, but they have made it look quite good. Yeah, just really fantastic character. You're able to hit those high break points. भाई USA के रैंडम्स प्लेयर पूरी फ्लैग लेट है कि टूर्नामेंट खेल रही है अरे वो रुक जाओ यार मैं देखता कौन थे वो शायद दूसरे ग्रुप में है That is true. Some good looking team members over there. Secret Ship looking to play here. USA के ना Guacberry and Lize are all here representing the Japan region. They won their regionals. They want to win worlds. Yeah, they know what first place tastes like, and they want a whole lot more randoms player as we work on through our Swiss rounds and ultimately our double elimination bracket.
bracket tomorrow here at the World Championship. That's true. And what utensils do you use to get it? Their Pokemon selection in the first one was very strange, but it did have a strategy to it, right? That is one of the things that we have watched a lot of North American and European competitions. You and I have casted a lot of those events. एजे स्लैश का होलोवेयर क्या लग रहा है? हाँ भाई एकदम ओपी लग रहा है रे वो एकदम. You know, formats has been all over the place for so long. It's really a blessing to see it in person. Yeah, definitely. And just letting it unfold in this really organic way that we have here, you know, these teams haven't had a chance to play against each other at this level, playing on different servers. There's always that kind of discrepancy where there's a ping difference. भाई इसमें से मतलब कोई टीम नहीं आई रे, मतलब किसी टीम को शायद वीजा नहीं मिला इस वजह से मतलब 2-3 टीम आई नहीं है इधर. क्या बोलते हैं प्लेऑफ्स खेलने. There is no more excuses. It is win or go home right now. That being said, we are in group stage. You probably could give up one, but you gotta win. पर वीजा की इशू की वजह से भाई कोई टीम मतलब 3 या 4 टीम शायद नहीं खेल रहे. इंडिया में किसी ने एजे यूज नहीं किया वर्ल्ड में, सभी कर रहे हैं. हाँ भाई वो तो है. हेलो भाई कृष्ण भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम. बाहर की टीम देखो ना क्या क्या खेलते हैं भाई. एजे भी यूज कर रहे हैं भाई, ये भी यूज कर रहे हैं भाई, ग्रेडियंट यूज कर रहे हैं, विगली टफ यूज कर रहे हैं भाई. अभी गार्डी और भी देखने मिला, और देखते भाई कौन सा अटैकर देखने मिलेगा भाई. I'm not one for bold predictions, but okay. I'm going to cast this one out there. देखते हैं गाड़ी और के काउंटर के लिए क्या लेते हैं. अभी किसका मैच है? आरएनएस वर्सेस सीक्रेट शिप करेगा मैच. एजे बहुत अच्छा चल रहा है. हाँ भाई देख रहे हो बॉट लेन अटैकर के सामने वो एजे चला रहे हैं, बॉट लेन पे एजे चला रहे हैं बंदे. उसका सिक्योर अच्छा है ना जो स्टार्टिंग में भी है. I had the chance to interview Yako recently about their composition and their path to regional victory, and honestly what he gave it a lot up to was just their way to predict the meta and find a great counter to it. Now we didn't get to see that. No great example of that in game number 1. Well, game number 2 is on the way, and there they are, Zeus OG Live from Brazil saying hello. And Charmander's there saying hello too. I have a strong belief that Charmander is going to find its way on stage. You think so? We did see a Charizard in one of our games this weekend already. That is true. That is true. He's got to go home. Go join the stage. Charmander's got to be up there. These teams are waiting patiently. They are excited to play. 2 thumbs up, ready to go. We know that Renaissance wants to get this game going. RNS versus Secret Ship का मैच रहेगा अभी. When you win a game like that first one for Renaissance, you are charged up. It's not just a narrow victory. It was we crushed this game and we are ready to do it again. Yes, exactly. Yeah, momentum is a huge thing in any competitive game, whether it be sports or video games or whatever it truly comes down to. Momentum is a factor. RNS out हो गई ना. अरे नहीं रे ये मैच के बाद पता चलेगा. The best fans of Pokemon Unite seem to be from iClan. Yeah, loving the absolute energy from our group of people there. By our B stage as we get ready to head on in to the second game in this best of 3. It's going to be an exciting game too. I am very excited. These players are headed into lobby. We're going to get the draft up in just a moment. So thank you for bearing with us, everyone. Seriously, we want these games to be the best they possibly can, and for that we got. भाई ग्रुप B, C और D में 3 ही टीमें रहे. मतलब 3 टीम को वीजा नहीं मिला उस वजह से आ नहीं पाई भाई बंदे. A lot of things fulfilled, but Mamoswine being locked in is on there, so we got to get to that point too. Right. Yeah, that is going to be a very, very interesting Pokemon selection. Why do you think they would opt into Mamoswine? So Mamoswine is one of the chunkier defenders that I think is better at deleting squishy carries on the opposing team. And we talked about counter-picking into that Gardevoir specifically. And I actually would kind of expect an Cinderace is best stealer, but no one use it. भाई इधर steal भी नहीं करना है ना, group fight भी लेना है भाई. Steal से थोड़ी ना काम चलने वाला है. With its other mobility move, you can kind of flip it back into your team and take it out of the engagement. High horsepower Ice Fang or even Earthquake Ice Fang if you're opting into the weakness policy. Steal के लिए थोड़ी ना कर रहा है भाई, इधर team fight जीतने का, जो team fight जीतेगा उनका game होगा भाई. On Mamoswine, not a popular pick by any means, but what it can do is completely
surprised and blindsided the enemy team. Yeah, I think Mamoswine's power level is probably a little bit higher than its pick rate वो भी gives है it हाँ credit ना for. भाई With the जो इधर asterisk टीम that फाइट it's जीतेगा उसका very गेम होगा weak भाई into ये specifically Blissey, I think gives a lot of problems. And like we saw those pick rates from the regional tournaments, Blissey's a very common character that wasn't picked by Renaissance, if I recall. Ah, there we go. Okay, so maybe having a bit of a free range there for TTAR Mamoswine to charge in. TTAR No बैन है क्या secrets to worry about, but who knows? Maybe we नहीं see पता भाई adaptation from Renaissance इस as well, TTAR counter moves on दिख तो counter नहीं रहा moves. मेरे That's को what कोई World TTAR Championships करके deliver. And it could also be, even if you are expecting something from Blissey, an Ice Fang or the threat of it on a Mamoswine kind of forces them into the safeguard role, which then pulls them off of the ability to get those healing eggs with the Blissey. So even when the counter to your character is present, you're still forcing them to be worse in other spots potentially against the rest of your team. Good point. Good point. All right. अच्छा One more short टैरेंटार hysterical video. टैरेंटार बैन है रे टैरेंटार और ये बैन है शायद क्या बोलते हैं ग्लेशियन टैरेंटार और ग्लेशियन बैन है भाई Tasteful. Dignified. Oh. Welcome to the Polite League. Hello, gentlemen. It is a pleasure to see you all today. My name is Lucy Challenger. I am an expert in British etiquette. I teach the world how to behave in a polite British setting. As you can see today, the nature of your work means that you travel around the world meeting different people from different cultures and customs. And today we find ourselves in Great Britain, home to the Queen, Downton Abbey, and Bangers and Mash. And for those of you who don't know what Bangers and Mash is, it's sausages and mashed potatoes. So it's important that you know how to handle yourself in formal and informal settings, following the specific etiquette of choice. After all, gentlemen, knowledge is power. Okay, gentlemen, we're going to be talking about how to handle something valuable. So I have some white gloves and we're going to pop them on. So I have something very, very special to share with you today. So I would like you to close your eyes for a moment, please. And you may open your eyes. I knew it. So you probably recognize it. I have the actual Pokemon trophy here. मैं Pokemon Unite का trophy भाई how to hold it carefully and in the correct etiquette. Now, if and when you win this, they're going to most likely want to take your photo. So you're going to want to spin it around so that they can see ये देखो भाई ट्रॉफी होल्ड करने के ट्रिक्स बताए जा रहे हैं भाई इधर आप भी सीख लो भाई आपको भी काम आएगा भाई ट्रॉफी कैसे होल्ड करके फोटो निकालना है तो What not to do? Our final section today in our etiquette lesson is how to eat food. मैं तो सिल्वियन गेम प्ले देखना चाहता हूँ देखते हैं भाई कौन दिखाएगा तुमको भाई इनको टिप्स एंड ट्रिक्स भाई तुम भी सीख लो यार हाउ टू ईट भाई and you can guess and demonstrate how to eat the food correctly. How do we eat the cupcake? Crowley bhai. So the spoon is incorrect. Peel apart the bottom of the cupcake. So push your fingers through the center. Yeah. गार्चम बैन क्यों है नहीं पता रे गार्चम शायद पता नहीं भाई मेरे हिसाब से बैन तो नहीं है वो And then you're going to place the bottom section on the top section to create a sandwich. Wow, that's very interesting. We have the hot dog. What do we think? Hands, knife and fork or spoon? It must be a trap, right? But there's no traps and forks. I mean, it must be the hands. Or am I cutting it? We are not using our hands today. Okay. We're going to be quite firm with these knives because the chef has forgotten to ये देख लो भाई चाकू और छुरी से देखो ऐसे खाते हैं भाई the banana. हाँ भाई वही बोल रहा गार्चम बैन in front of the queen, how would you eat it? Knife and fork. Okay, show me how. This is actually the way? Yes, this is actually the way. So you want to cut it open on the side. And now what do we do? Leave the banana in the skin. भाई यार बनाना भी इसको चाकू छुरी से खाना है भाई ये देख लो भाई Fantastic. We got that. Oh, that was ये खाना क्यों सिखा रहे हैं भाई पता भाई कौन बनाना ये चाकू छुरी से खाएगा भाई Come in handy next time you find yourself in a formal British setting or indeed have the pleasure of meeting the Queen. Thank you very much.
क्राउली क्या कर रहा है भाई? भाई ट्रॉफी उठा रहा है भाई वो पॉकीमोन यूनाइट का। Don't worry, we have the game ready this time. So we are going to be headed into Renaissance versus Secret Chip for game number 2. Secret Chip has got their work cut out for them. All right, bring on the Mammo Swine, my favorite thick ice lad. He is a good one. Is he my favorite? Yes, he is my favorite thick ice lad. All right. ओ भाई मैमोस्वाइन और डुरालोडॉन दिख रहा है भाई, और अजूमरिल लिए लो भाई। I think they had switched off of it momentarily. Maybe that was the problem in the previous game. But the big ये देख लो भाई, नया कॉम देख लो, देखते भाई सीक्रेट शिप पहला गेम आरएनएस से वन शॉट डोमिनेशन किया था, इस मैच में देखते भाई क्या होगा। माइम दिखेगा क्या? क्या पता भाई, कुछ बता नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते भाई। बट इस मैच में तुमको नए दो पॉकीमोन देखने, तीन नए पॉकीमोन देखने होते, अजूमरिल, मैमोस्वाइन और डुरालोडॉन। भाई ये तो that Gardevoir that was excellent in the first game of the set. That is very भाई ये तो चमचे से खेलना सिखा देंगे। हाँ भाई, फाइनली डूरा दिखा, देखते भाई क्या क्या खेलेगा डूरा, बताओ वो क्या बोलते, मतलब फ्लैश कैनन खेलेगा या फिर उसका जो ड्रैगन पल्स, बताओ कौन सा मूव खेलने वाला है भाई ये लोग। Yeah, Floatstone, an item that not only gives you passive movement speed in addition to the ability to get a bonus when you're outside of combat, but also gives you a flat attack boost, letting your character hit even harder with the melee brawler like Azumarill. Yep, Azumarill, a physical attack, Dragon so Pulse. using that attack stat to do damage. देखते भाई मैच स्टार्ट हो गया। Very well for that. जंगलर कौन है भाई? Leaving one of those A-bombs up and just ड्रैगनाइट जंगल कर रहा है। अरे शायद वो फ्लैश का ये खेलेगा, पता नहीं भाई, फ्लैश करने खेलेगा शायद मेरे हिसाब से, तो नहीं पता भाई। हेलो भाई रणवीर सिंह, वेलकम टू द स्ट्रीम। Ultimately getting the Blissey out. Yeah, just a small little Swinub is a surprisingly strong force in the early game. Do not count that Pokemon out before it hits its first evolution. We saw an attack weight on the Azumarill for Secret Chip, but not looking to get super aggressive in terms of getting those stacks, as that was stolen by the Hoopa there with the last. Hoopa लेके गया भाई ये तो। Had some amazing steals so far. Whether that's stunning up the enemy भाई Pokemon वो to allow their own teammates to steal the wild Pokemon, or भाई वो जंगल बाइट है। swipes, they definitely are. अरे जंगल का वो एक बाटा ना खाली। Gardevoir coming down here to the bottom path for these bees. That's Psyshock, an incredibly strong level 5 push. Yeah, exactly. गार्डियर देखते हैं भाई, पिछले गेम में डोमिनेट किया था ना गार्डियर ने। भाई बहुत दिनों से तुम्हारा स्ट्रीम नहीं देख पा रहा नेट इशू के कारण, सॉरी। अरे कोई नहीं रे, स्ट्रीम तो चलता रहेगा भाई, कभी जाकर देख लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तो हम वर्ल्ड लीग के मैचेस देख रहे हैं भाई। True. The one thing Renaissance is going to lack with this team composition, though, is any form of last hit secure on big boss Pokemon. So, Secret Ship, on the other hand, has that in spades. Yeah, inside of the engagements around objectives, तो 4 लेवल का ही है भाई ये तो। favoring taking team fight engagement, while Secret Ship is likely going to be more interested in just ripping the objectives off the map as they get a decent Dragonite मर गया। Hoopa. Are they going to push up and try and get some dunks here? A very aggressive portal there used for damage, but cannot be used to get अरे them out. खत्म है भाई, सीक्रेट शिप वाली खत्म हो गया भाई। अजूमरिल ने ले लिया भाई, 2 किल लिए, बट सरीना ने भी मार दिया। खत्म है भाई, मैमोस्वाइन भी खत्म भाई। गार्डियर ओपी भाई, वीडियो से अच्छा मुझे तुम्हारा स्ट्रीम लगता है। हाँ भाई, गार्डियर डोमिनेट कर रहा है यार, ये मैच में भी डोमिनेट कर रहा है। सीक्रेट शिप की तरफ से 0 स्कोर है इस बार भी। भाई वीडियो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता है मेरे को, इसलिए ऐसे डाल देता भाई स्ट्रीम से उठा के वीडियो मेरा। We see the 720 bees getting ready to spawn here. The next engagement point as we head on in to this objective. And speaking of भाई डुरालोडॉन ये खेल रहा है on this Gardevoir at level 9 before the Dreadnought even spawns. ड्रैगन पल्स वाला डुरालोडॉन है। Right now they're taking the front line for Team Renaissance, the most glass cannon Pokemon in Unite of Gardevoir, and they are starting the engage every time. भाई यूनाइट को या गार्डियर का kind of trying to box out Secret Ship here as they're pushing again, and there's that fairy singularity. भाई ले गया भाई ऊपर, सिक्योर कर लिया भाई शो। खत्म है भाई, ये मैच भी डोमिनेट हो रहा है भाई।
कोई चांस ही नहीं दे रहे भाई सीक्रेट शिप वालों को। मैं बोला था ना, हाँ भाई। Looks like Secret Ship is at least on the scoreboard a little bit here. Azumarill अरे इनको ये कुछ खिलाना था रे, लुकारियो खिलाते ना उससे अच्छा, क्योंकि डायरेक्ट उस पे चढ़ सकता था वो get many of those early, and they need to deposit गाड़ी और पे 6 different points over the course of this game to maximize that item they've selected. One of the iconic things about Japan is that they're great at finding experience on the map without just getting wild Pokemon to the most min-max capacity. They're able to move around the map, steal some, and get levels up too. So they are trying to keep pace. We see that Unite move popping off. वो भाई कितना डैमेज दे रहा है? Having one of the fastest. हो, और ज़ूमरल ने देखा डैमेज कितना दिया, बट खत्म है भाई। भाई ऊपर वाला बेस भी आएगा। माचम भी दिखा था एक मैच में। अरे माचम ने जंगल किया था भाई, दिखा क्या जंगल किया था मैं माचम ने पूरा। Yeah, Renaissance looking to clean things up here in the top path, breaking that outside goal zone and giving themselves a positional advantage on this map as they get rid of both the outside. क्या लगता है भाई कौन जीतेगा ये मैच? RNS वाले स्ट्रॉन्ग दिख रहे भाई ये मैच में। So we of course have Rebongs on the Serena with the engages, but we have Kamiru's absolute artillery level firepower backing them up. We see Unite moves coming up here for both teams. There's going to be a lot of fireworks to the second Dreadnought engagement that's about to come up here in 15 seconds to the bottom path. Murphy is hanging out here around the top path. They have their Unite move. They can bring the entire squad down, but the rest of Renaissance has chose to try to get a few scores in 5 seconds before Dreadnought. Here they come out. A big भाई खत्म भाई। भाई खत्म हो गए रे। मुझे क्यों लगा रहा है S2 जैप फ्लिप करेगा। भाई ये देखो किधर सीधा 5 मैन आउट कर दे रहे बंदों ने। भाई कुछ बता नहीं सकते भाई, सीक्रेट शिप करेगी लग रहा है भाई अब। भाई ये फाइट देखो कितना इजी निकाला उन्होंने। ऊपर पे चढ़ गए भाई जैसे यूनाइट चलाया ऊपर ने। Yeah, and we see Renaissance looking to kind of push up here. They have these Unite moves burning a hole in their pocket, and they are at the use them or lose them moment of the game here at the 4-minute mark. भाई इधर पुश हो गया। भाई इस बार RNS वाले getting one of their own too. Q, one of the last lines of defense. They're doing a pretty solid job so far, but it's too much damage to keep up with. A lot of goals are being scored. That is a second-tier goal zone being broken. Renaissance pulls the lead back into their direction. Not only did they break that भाई easy 5 man push कर दिया इधर तो यूनाइट चला गया। They got a full team wipe, collecting a ton of valuable experience, and they got themselves up another 100 points on the scoreboard. Just incredible engagement for Renaissance top to bottom. Efficiency is the name of the game, but again, I have to worry about their team composition. You might see a second purple dot beside that Dreadnought. The secure on these most but level diff तो ज़्यादा है नहीं। is going to be so tough for Renaissance to do. If I'm Renaissance, I am looking to start a team fight as early as possible so that we do not have to worry about any kind of flip scenarios. We see Renaissance kind of jockeying for position around this third Dreadnought. These Dreadnoughts either spell disaster for one team, or we just won't see a contestant. It looks like in Secret Ship. क्या लगता है भाई सीक्रेट शिप आएगा इधर कंटेस्ट करने या सेंटर पोजीशन लेगा? So now you have to ask yourself, what are they भाई वो स्कोर करने के लिए आने वाला है। Posturing up for a second-tier goal zone scoring maneuver in the top path. Instead, they're trying to bulk up, and they may actually favor this Rotom. Yeah, it looks like there's some रोटम के लिए जा रहे हैं भाई सीक्रेट शिप वाले। We see another character tick over कुछ कह नहीं सकते क्या होगा वही रहे। Secret Ship. If this Dragonite get to 13, that would be huge, but that doesn't look like it's going to be possible before the 2-minute mark. Q and Pui, definitely two players that have made themselves known here in the server in game number 2. We are only 20 seconds away, and they're posturing very aggressively from Renaissance. Yeah, and remember here on the Secret Ship side, they have sent their Mamoswine back a little bit, fearing that Hoopa Unite move, pulling everyone into their home base, I think, but this leaves them down a player inside of the Zapdos bed. That is true. They don't have too much intel either. They're pushing forward a little bit, but Renaissance seems to be starting the engage. Interesting. They definitely want to trap Secret Ship in a situation anywhere they can. You're right, the Mamoswine's still hanging out. Rebong starts to engage on Q, and they get a couple of hits in.
Yeah, we see the Zarina picking up that Azumarill. Can they get them before the Unite? And they can. This is huge. Hoopa भाई इधर fight हो गया. they are taking this team fight here. A big portal. Pui throws on the revolving road to try and trap anybody, but no one's भाई in the secret portal. chip के बंदे खत्म है. 2 बंदे खत्म हो Still गए. at half HP. You're right. They're taking as much as they can, but it's too much damage to overcome. भाई. Renaissance team fight composition is working well as a well-oiled machine. They charge forward. The 2 dragon Pokemon. खत्म भाई. Huge stops. Rebounds gets GG guys. RNS जीत गया भाई ये मैच. Trampoline below the Zapdos pit, and they secure the team fight, and they secure the Zapdos. Renaissance with a great fight. Azumarill might be able to take out 1, perhaps 2. No, the Blissey makes it out on a narrow margin here, but even 2 dunks, much less 3 from Renaissance, is likely game-winning in this spot. A gigantic team lead, and we called it out. I was scared about their last hitting secure ability onto the भाई क्या Zapdos, last but their push हो सकता है इधर? potential was phenomenal. They utilized that to the best of their ability. भाई time pass कर रहे थे. Down Secret Chip's composition. Yeah, Renaissance knew exactly how their composition lined up into Secret Chip. They knew that the name of the game for them to win was going to be let's have a brawl, and they had quite the brawl in the center, and they were Unite नहीं है इनके पास push करने के लिए. Again, Renaissance with a commanding lead, but 30 seconds is still left on the clock. A Secret Ship is going to attempt to their best of their ability to get these scores in. Renaissance stopping them at every turn, though. Rebound throws in another Unite move. I believe it got stopped due to an unstoppable keyword, though. We see this brawl on the point not going in खत्म है favor भाई. of Secret Chip here, and it looks like Renaissance might be RNS वाले ले गए भाई. B bracket. Renaissance gonna be GG getting guys. the win. The first 2-0 I think we've seen in a while. But yes, Renaissance. भाई Gardevoir भाई Gardevoir भाई क्या डैमेज दे रहा. Yeah, Gardevoir looking real impressive throughout the course of that set. Gardevoir ले गया भाई. One side domination का देने. Joyous for sure. This player is an amazing Gardevoir player. They played it in their region many times, and they got the crown beside their name for a reason. Yeah, 5-0-5. Gardevoir मस्त खेला भाई. वही ना भाई. दोनों मैच सही खेला भाई. क्लीन स्वीप कर दिया भाई. सीक्रेट शिप बाहर हो गया शायद. Secret Chip's journey does not end quite yet, though. This is group stage. They have more games to play, but they are going to be going up against a very fierce opponent of Eternity. Take a look at that. Eternity के खिलाफ रहेगा भाई सीक्रेट शिप वाला मैच. And hey, a shout out to the Blissey of NT for a 15 assist game. Yeah, when the assists are in the double digits like this for these teams, it's very easy to understand how these team fights are going. Everybody was present and they were brawling. Exactly. Great sportsmanship from both of our teams, of course. After a pretty crazy match, they're still going to give the best sportsmanship they can with the handshakes and GGs after the match. It feels like an eternity ago, speaking of, but we have word that looks like our main stage is almost ready, and I am excited to find out the end of T2 versus No Show. They are our 2 teams from Group A that are guaranteed to go on to our double elimination bracket tomorrow, but they are playing for that 3-0 spot and the higher seed from their group. With the competition as fierce as it is, I would take that higher seed spot every single time if I could. I mean, you have to beat everybody to make it to the World Finals and win that lion's share, the $500,000 prize pool, but still, भाई T2 versus No Show का मैच होने वाला है शायद अभी. Yeah, definitely. Any little extra edge you can get, and I mean, बहुत सारे मेटा देखने को मिले. हाँ भाई. Hungry for that 3-0 spot, the practice मैं and the पार्टी बदल लूँ क्या? that you're gonna have to beat tomorrow. बदल लो भाई तुम्हारे ऊपर है. ये लो भाई No Show versus T2. इस बार भाई क्रैम देखने को मिल रहा है. देख रहे हो? क्रैम है भाई T2 की तरफ से. Number 2, No Show already up 1-0. Yep, we watched that game earlier in the broadcast. If we recall, we've got इस बार 40,000 नहीं मिला भाई T2 की तरफ से. 40,000 नहीं है. Hoopa on the left and no Hoopa on the right, but Wigglytuff and Blissey for T2 from Japan. One of the best looks for Cramorant in this current metagame is thanks to the pink Pokemon of Blissey. That Cramorant Unite move, when in combination with a Bliss Assistance, is a ton of damage. With a huge range, it's very tough to get all the way to the Cramorant to stop that nonsense. Oh, I was going to say the best look for Cramorant is the cowboy hat, but I guess we could go with the technical breakdown of the Unite move as That's true. Shoutouts, Braggles. All right, so heading into this this first game, 7 minutes and 30 seconds. We've already seen the first row of Bs, but we're yet to see the Dreadnought. 30-second countdown until that happens. Yep, we're see the भाई इधर 7 level हो गया भाई. Here maybe can the glitter on the ground get him out? They can. भाई किधर घुस रहा है भाई? बेस में घुस रहा है फालतू. और अग्रेस कर दिया इसने. We got to sing.
Or do we have a rollout here? We've yet to और अग्रेस कर दिया भाई एज स्लैश ने नो शो वाले के नो शो वाले एज स्लैश ने खत्म है भाई T2 वाले नहीं भाई रिट्रीट कर ले रहे इजी बट मार दिया थे भाई एज स्लैश का ये देखो रे कितना सही दिख रहा है भाई नहीं सरीना ले गया भाई she is stomped out herself by this Dragonite. That is true. A 2 to 3 trade in terms of KO, so I would take the Dreadnought in that situation for sure. T2 coming out barely on top in that situation, but S4L absolutely Dragonite 4 KO ले जाएगा. We're in that pass fight, and they are continuing at Jukubo at Dragonite, combining for a KO on the Blissey. KO streak 4. Score in for their trouble. We see Dragonite using that Unite move, trying to get out of this engagement. Can the Wigglytuff and the Aegislash be disruptive enough to get them out? That's a Unite move, doesn't save the Wigglytuff. Can it save itself? अरे boy. My word! S4 क्या ही चला रहे ये तो. Streak of 2, unbelievable. The Hoopa does go down, but it seemed like it was in favor of the Dragonite to just keep on going. Say Aegislash could not close the gap. Next eject button, but here we go. Yet another fight. Right now, Ma maintains the ties to the Unite move on the opposing Serena. Yeah, we see the brawl on this top path here. Rotom not being looked at by either team yet. Both of them preferring, hey, I would like to break this outside point. भाई वो पको दे दिया इसने. भाई सरीना देखो भाई क्या ही टारगेट करता है. You can see the focus coming out of Blossom. Blossom has played such an amazing Snorlax day so far in the way to shut down individual threats. Mame is that threat on T2 right now. Yeah, we see Mame looking to kind of position around here, acknowledging, hey, this engagement on the top point is not going the way we wanted to. Let's try and get value somewhere else. And stealing their central area is a good way to get some value. There we go. Yeah, stealing that central area, even despite the हाँ भाई जंगल घुस गया भाई ऊपर की फाइट छोड़ गया. Mame still gets out with value. Yeah, we see that top point get broken on the T2 side is no show. वो भाई सरीना को मार दिया जंगल में. सरीना ने ऊपर को मार दिया अरे. Solid Rotom gamers, but you're right, they're not even using it as a distraction. No, and there we go. S4L finds themselves another KO. Ring the bell. We have a push with this Rotom reaction. Speaking of it, there's that Bliss assistance that we talk about as Cramorant plus Blissey absolutely decimates. I need to say, because I don't know how many times I will, the best Unite move in the game, in terms of name, is the Gulping Gatling Missile, and it paid off there. There we go. Dreadnought KO this time by T2. The Aegislash with a coup de grace is a fantastic. भाई Aegislash का ये देखो भाई होलोवर क्या सही दिख रहा है. Yeah, absolutely love the use of that there. We see Wigglytuff trying to use its Unite move to get out here. Not going to get much value out of that. Needs to start recharging it to have it back at the end. And this big push-up from No-Show here, but can the Unite moves keep them out? Mame, yeah, trying to shut down this push with their own Unite move here. And now we see Wolom getting actually a KO with the Aegislash. Mame trying to keep fighting it, but again, this shutdown from Blossom is so good. Santoshi needs to get it away. Mame goes down. Blossom with a great engage. Yeah, we see can T2 pick up some more knockouts here on their point, or will Aegislash be the one to go down as it tries to defend here? Yeah, here we go. We get another re-engage. They're coming back out of that portal. Wolon actually gets the 31-point score. That is no easy feat, but they're able to do it. Supercell has Cute Charm on cooldown, so Wolon has कब तक फाइट चलेगा रे बॉट लेन पे. Pop off from the Aegislash. Use it or lose it. 3 minutes and 40 seconds. Can we get some points in here? ओ भाई Aegislash कम HP बच गया, भाग गया भाई. And all of a sudden, No-Show is here to play. They are back in charge right now. A level 12 Mame, though, on the side of T2 is a fear, but they have a level 13 Cramorant headed in to the 3-minute mark. Gonna be interested to see how No-Show prioritizes their map presence here. There are a lot of wild Pokemon up on the left side of the map, but there's also a Rotom spawning in the top that could potentially give them some value here. That's true. You kind of have to read into what T2 is going to do to try to counterplay that a little bit. T2 showing presence around this Rotom, but only with their 2 tanky Pokemon. Yeah, kind of a similar presence from No-Show. They cleared their central area buffs. यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है और पर स्नोलैक्स हो रहा है. बस स्नोलैक्स भाई मजे ले रहा है भाई गेम में. ये देख लो भाई शील्ड देख लो भाई स्नोलैक्स का. वो देखो वीकली को कहाँ ले गया भाई. Even better than it normally does with that super speed. Yeah, we see kind of backing off here with this Rotom walking at the second point, looking for some map pressure as Hoopa pulls everyone down to this bottom path via the hyperspace hold. And because that bottom tier 1 goal zone is still available, they don't even need to use the Unite for that X-Speed block by able OP to get by the Dreadnought in no time at all. But look, T2 is giving all the presence around Zapdos. Gulping Gatling Missile needs a lot of भाई इधर फाइट होने वाला है.
Yeah, we see incredibly even levels on these teams. Maybe a small nod to T2 already position लेके बैठा है. into the end. The score total is low enough here that it's going to come down to this fight around the Zapdos. Who can decisively win this or not? No Show definitely has a tough task ahead of them to get in there, but Blossom does a great job isolating Supercell. They take a lot of early damage with the sleep, prevents them from getting KO'd. Gulping Gatling Isabel starts firing off. The Bliss Assistance has not been utilized yet. Takashima holding on to it. S4L utilized that Unite move really far early, and there we go. The Serena Unite move भाई no pops show वाले out. खत्म. Mame KOs Blossom in that central area, and now S4L is trying to hunt down Supercell. Yeah, we see 2 members going down for No Show. Now 2 members down for T2 as the objective is kind of getting started here, but trying to pull that objective down while Dragonite is still alive is not something you want to be doing. And let's take that खत्म है भाई. गया T2 के तरफ गया Zap. S4L bought so much time dodging every Mame drop kick there with the Dragon Dance, but still they were able to find them in the very end, and they get the Zapdos KO. An incredibly close scoreline. T2 up. कौन जीतेगा भाई? T2 के तरफ गया भाई मैच. टाइम तो है, पुश तो कर सकते हैं बंदे, और देखते हैं भाई. There is time to put together a push from the No-Show side and get back into this game before the timer ticks out here in 60 seconds. I think you said it perfect. I think time is भाई रोक दिया रे. one more Hundo Burger from going in this time. 50 का बचा लिया भाई. Trying to escape, the Hyper Beam brings them down to very, very low HP, but the chase is on. Blossom tries to throw a heavy slam, a little bit short. Yeah, मर गया huge रे. knockout here. Not letting them reset means you have one less person to try and decimate on point. Cramoran is level 15, but you know what it's not? It's not particularly durable. As we get some points in here, that's not quite enough. We need over 100 more. The Cramoran is down. Can we push? Can we make it? We don't have that many points in our pockets, and there's only 2 of us left here. The good news is Serena's not here to defend, but the bad news is Serena's dunking 40 in your home goal zone. This ain't good. 530 और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. Evening up that lead even higher. A huge play by the No Show के पास चांस है भाई. T2 हो गया भाई. T2 is too strong. T2 down in this T2 निकाल गया भाई मैच. Zap fight पे easy. Really fantastic macro play at the end there. Easy team fight निकाल लिया भाई. Even if they get pushed up on there, Mame's going to go ahead and get some more points across the goal zone and extend their lead that they already had. Yeah, exactly. 3:44 now 5:30. The victory screen is in full disclosure there as T2 has tied this one up 1-1. 1-1, game 3 in our series, another of many incredibly close and competitive series that we've seen today here, especially inside of Group A. Yeah, I have loved Group A so far. This is such an exciting game, so much back and forth. I could not stop watching that one. The numbers are going to look amazing. This is a seeding game, Jeff. This is a seeding game. 1-1 हो गया था दोनों की तरफ से. I love the Serena instead of defending did a goal. हाँ भाई. अरे वो उन पे थे बंदे डिफेंड करने के लिए, 3 बंदे थे, तो वो इजी डिफेंड कर लेते जब तक वो स्कोर करके आ जाता. टाइम बाय कर लेते इजी. चलो गाइस, दूसरा मैच स्टार्ट हो जाता तब तक मैं खाना खा के आता हूँ, ठीक है? तुम तब तक एंजॉय करो. T2 सबसे ज्यादा जीते हैं, देखते हैं भाई. चलो मैं तब तक खाना खा के आता जब तक दूसरा मैच स्टार्ट होता है. तब तक एंजॉय करो यार. Yeah, big damage on both sides here. There were a lot of brawls over the course of that set, and both teams had really solid images. Yeah, S4L and Blossom from No Show definitely emerging as the superstars for their teams, really showcasing that they can be massive difference makers there. Now, I didn't see too much in their Serena play. I think when we head into game number 3, their Serena is going to need to pick up their game to try to match up against the dominant force of Mame. Let's take a look at the highlights. We head on in here. This was that first Dreadnought engagement. It looks like here where Dragonite tried to get the beam and was a little bit too late for the Dreadnought, but did get 3 knockouts after the fact. Oh yeah, it looked good. You always gotta look good for sure. Those KOs happening. S4L just putting on a show of how to micro gameplay with Dragonite. Dragon Dance, yes, it boosts your damage, but it also helps dodge enemy Pokemon moves. Yeah, really loved the secure on the second Dreadnought with the coup de grace from the Aegis. Was kind of acknowledging, hey, I need to take this off the board before the beam gets here. Yes, absolutely, definitely making sure that every
again, like I said, I's were dotted and T's were crossed in this situation. We saw this fight around the endgame, and again, I think T2's just understanding of the micro here in this endgame fight was so good. Like, they could have just tried to flip the Zapdos, but they're like, no, we're going to lose this to the Dragonite. Let's remove that threat from the game before we go ahead and try and take this off. Yeah, it was honestly what I would love to call textbook. I think T2 read No Show like a book and definitely wrote their own ending to that game number 2 story. Yeah, I completely agree. It's like you say, this is a situation, what are you doing? And they line it up exactly correct. So we look at our player of the game, someone Zoinks has talked about a lot here in Mame on this arena. I am quickly becoming Mame's biggest fanboy for sure. But yes, Mame looked amazing. 9 knockouts in this game, 4 assists. And look at that, attack weight and weakness policy being their damaging items and focus band for a little bit of defense. Yeah, just a really fantastic character for bursting out damage, but also just having so much mobility. The ability to double dash with that Queen's Majesty reset on drop kick that also drops the glitter on the ground and lets people get slowed down if they try and chase after you. Very true. And Mame has not just proved themselves of recent events. This has been an all-year thing. This player has been incredible. T2, they did get second in Japan regionals, but have for a long time now been the favorite team coming out of Japan in terms of strength. Very consistent placings across all of the monthly tournaments, and a lot of that is thanks to the superstar play of Mame. Yeah, really, and we talk about Mame a lot, but teams are definitely a sum of their parts, and every member of T2 is showing up and putting in the work to let Mame shine in the way that they do. That is true, yes. Notably so, that last player on the end there we were just watching, Takashima, in the past has been the Aegislash player for this team. But instead, now Wolon has taken up that role, and they have moved over into, well, some call it jail, but Blissey duty. Is playing the support Pokemon here. And I do not agree. I think Blissey is a very fun Pokemon to play with a ton of huge capability to win you games. Yeah, and Blissey is a character that, you know, how many Egg Bomb Zapdos steals have we cast on these broadcasts over the course of the last year? I've lost count. Like, it is a character that has incredibly large impacts with your precision micro ability. One of the few Pokemon in the game too where the meta can honestly be either move selection, but let's take a look at what Game 3 has to hold for us. It looks like no changes on the side of T2. We are going to see Cramorant and Blissey, of course, and Supercell on their iconic Wigglytuff. Yeah, we see that Snorlax locking in here, looking to bring some heavy slams. Interested to see, can Chobo put up big damage numbers with that Hoopa like we've seen from them in the past with this X-Attack build? Sometimes you gotta work for the highlight reel, and Chobo has done that a lot so far this tournament. No Show has looked extremely good, but so has T2. A best of 3 always ends in a 3 when it's 2 teams that are this evenly matched. Yeah, definitely. We had to wait a little bit to get here, but I'm glad that we ended up at the spot that we did, get a 3-game set in this match to close out Group A in a spectacular fashion. Yeah, I wouldn't have it any other way. These teams are too good to only watch 2 games. I cannot wait until we see these final moments headed into game number 3. The players are headed in, so are we. Let's watch game number 3 between T2 and No Show. We see Mame in that central area and then jumping over to start here for T2 with that Wigglytuff invading as just a little baby Jigglypuff here. Yes, Jigglypuff has a pretty decent, Defense Scroll's a great early game mobility option that can actually get you in and out of danger pretty quickly. Yeah, this is something we've seen from T2 before, I believe, where they kind of just let their central area chill and go to get value in other places on the map. It's an interesting strategy that we definitely have not seen in a lot of regions, but T2 has found it's working for them. Yeah, we see Cramorant moving in to do the central area while Zarina splits the top buff with it. And the timing on this is all very surgical. You can see we're at the 9-minute mark here currently, meaning they will be back to path with these characters before those bees spawn at the 850 mark. Yeah, this is a highlight moment for T2. They did get knocked out, but this is a strategy they've employed even in the regionals where they would invade once and then invade a second time with a different Pokemon. Okay, yeah, and we see Zarina
looking to serve that function here as she heads on in to the opposing central area, looking to be there exactly when those buffs start respawning here in a few seconds. No Show getting a lot of scores here in this top goal zone. Definitely going to be experience from that. Santachi has to use the XP just to get away. Great peel there from Blossom to block the enemies that were trying to chase their teammate. We see a blue buff there on Mame getting one of these things out of the central area from No Show. It looks like as S4L has their orange buff. There we go. Yes, Mame was able to steal away the Bouffalon and now has a level 6 advantage over Santachi's only level 5. Be interested to see who does the second rotation for T2 here as these buffs start to respawn. We've got a little baby Aegislash here as we, speaking of baby Zarina, bullying her smaller evolved form here on No Show's side. Mame gets the chase down here, and now they're choosing to take the 1v2 against Blossom and Chobo. Not something I'd advise, and not something that Mame wants to stick to. They start bailing. We see Zarina backing up here, getting some heals from Blissey as that little baby Aegislash does head into the central area looking to get fully evolved before this Dreadnought spawns here in 30 seconds. It is so interesting. Both of these teams prioritizing different parts of the map completely. Some moving towards these contestable bees and things like that, and No Show even leaving their central area up like you were mentioning. So many different strategies to try to throw the enemy team off and predict what they are trying to attempt themselves. Yeah, we see the bees breaking out in the top and bottom path. The question is going to be, can T2 get their Zarina and their Aegislash down to the bottom with enough time without a portal from Ahupa as Zarina continues to bully with Mame here in the top. Mame? Sorry? Mame? Yes, okay. Aegislash gets absolutely dumpster. T2 with a great attack there in this situation. Dreadnought starts getting hit with a lot of damage here. Supercell comes in. Left side team takes this Dreadnought. No problem at all. No Show showing dedication at other parts of the map. T2 gets the first bout of experience from Dreadnought. Yeah, we see Aegislash there choosing to stop attacking the objective until the rest of the team can kind of work it down a little bit, so that way their boosted autos can cut across once it gets low, giving them the best chance to secure that last hit. Makes a lot of sense. Mame getting even more stacks in here thanks to the instant scoring bust of Rotom. So this goal zone defenseless, Mame is going to be fully stacked up on the attack weight. Yeah, we're getting lots of points in here in the top path thanks to that Rotom. I'm going to be interested to see. I assume we're going to break with the 40 here. There it goes. There we go. Ruin comes up the long way, all the way down, and actually uses a Unite move. Engages with the eject button. Will not have that for any kind of escape. Cancels the Unite movement. Stops channeling it because there was no one left to attack. Yeah, we see that central area coming back up from T2, and honestly, at this point, any of these characters I could see running in there. We've seen Aegis last year rotation, we've had Kramer, and we've had Zarina. Anybody but the pink blobs on T2, the center is up for eats. Very, very true. Wulon here, not quite to level 9. They need that coup de grace available for them. They did get it. If they want to engage onto Hakuda and Supercell, they have the option. However, Blossom does go down. T2 keeps on the engage. A Sacred Sword 1. Can Wulon get out? No, it looks like they're trapped in place, but a wide guard at the last minute keeps them up. Yeah, we see those defensive boosted autos from Wulon giving them a little bit of healing. Will they finally go down? And they do. Arta finally closes the gap with a nice Sacred Sword. They've boosted up 3 boosted autos into the gauge there, waiting for that moment to happen. Now T2 wants to get even more goals in, but Blossom is the enemy of scoring. Yeah, huge block there from Snorlax. Yes, okay, one more pause, everybody, until we get back in the game. But let's talk about Blossom and that crazy play that we just saw. This Snorlax has been a shutdown in a lot of varieties, but in scoring, it's been huge. Yeah, it's just been absolutely dominating in terms of dictating the positioning inside of every engagement. You heavy slam past the opposing team, you knock them up momentarily, and you say, you are going this way, which is the exact opposite of the direction they would generally like to be moving in. I personally like to move in the direction I want to move in. But yeah, Blossom is the enemy of all things scoring. Seriously, the best goalie if we had that role in Pokemon Unite. But they are making it look amazing. On the Snorlax too, which again is a bit of a resurgence for this Pokemon for some of us. But Japan does like to play this choice. Yeah, this Group A has kind of been a clinic on why is Snorlax an excellent choice in Pokemon Unite currently if you are into defenders. Yes, yeah. If that is your Pokemon selection of choice, Snorlax is looking a whole lot better these days. Yeah, and especially when you'll see Snorlax kind of go into overdrive mode and start running real quick. That X speed
battle item, when combined with that block, allows you to push people kind of into overdrive, whether it's across the map or into a wall so they can't move. You're going to have a big impact with the big lad that Snorlax is when you get going. Across the map might be an accurate description when you use X-Speed. When you are super speed blocking, you fly across my screen. It looks like a swipe to another camera view, honestly, when it really does happen. So that will be so fun to see. We're about to resume this game. Don't worry, the pause wasn't this long time. It wasn't too long this time. We're going to be headed right back into the action. Yeah, this is a game 3 for the 3-0 in the Group A. These teams are looking to be the lone undefeated as we head on into the double elimination bracket tomorrow. One last look at the stage before we head into game here. T2 Supercell still putting on the offense here. Has 40 that they would love to deposit into that goal zone. Yep, we see positioning on the beach here, looking to get the forward positioning, but it looks like T2 is going to have that honor. Yep, T2 gets it early, but Blossom could easily take that positioning away. Big heavy slam knocks up 3 of them, and only able to block 1 of them. And an Aegis slash coup de grace knocks out not only the Dreadnought, but also the Snorlax. Love the timing there from the Bliss assistance as well. Just a good 1-2 punch. If one of these things wasn't getting that objective, the other one almost assuredly was. We see a huge Crabbunite. Speaking of pushing people around, look at Snorlax pushing the Crabbunite out of the pit. Block works in mysterious ways. S4L denied the Citrus Berry there by Haruta. Great use of their motion in game. They're able to shut it down. Now, I've seen this before. S4L wins these sometimes, but no. Haruta gets a little bit of revenge in the bottom path. Finally losing a 2-1 S4L, making those look embarrassing to attempt a lot of the other times throughout the course of the set. Mame knocking out this Rotom in a 1v1 against this boss Pokemon and is sending it down the top path towards the tier 2 goal zone. Only Santachi's the one to defend it. Mame may choose to take this fight. And speaking of Mame, look at the level differential between Mame and the opposing team. Level 13.5, while the highest thing for no-show is only level 11 at this point in time. And all that starts with taking a little bit of that central area experience, but not all, and then immediately going to the top path and stacking up attack weight. While Mame was buying all of that time, the rest of T2 was dunking in Eos energy, and they just broke the bottom path tier 1 goal zone. Yeah, up to an over 150-point lead on the T2 side. They have an experience lead. This is definitely T2's game to lose as we head on in to the end game of this third and final game of the series. When I'm watching this, the word that is coming to mind a lot for T2's gameplay is just download. It really does feel like they know what no-show is trying to do, and they are counterplaying in a great few moments. Mame 1v1ing the enemy Serena along with a Rotom on the top path is just a great example of that. Yeah, we see no-show getting the forward position on the beach this time around. T2's kind of spread out here. I wonder if we're going to see him contest this Dreadnought, if they're just going to go ahead and give it up here. They're definitely showcasing some presence there, but if they get KO'd in this situation, it could be devastating. Rolling with a full 4 on boosted auto attacks, and Mame dunks in 50 in the top. All right, so you throw in a little bit higher of a score lead in exchange for the Dreadnought, but now that home goal zone is open. Yeah, and I mean, like, they got some experience. Look at this, your Aegis Slash is 14 now. Your Zarina Mame is sorry, Cramorant is 14 now. And the Zarina Mame is close to 15, if I recall. That is true. Yeah, I mean, Mame is absolutely popping off in this game. Takashima has had some great Blitz assistances so far. I would definitely look forward to seeing where they choose to use their powerful Unite move in this final fight. We're in the final stretch. Yeah, 14 3/4 here. Zarina likely going to hit that level 15 mark in the first knockout, but an objective rip here from No-Show, looking to leverage that Hyper Beam to get the last hit. It was out of range. Oh no, just barely out of range. The Bliss assistance takes it. Takashima on the Blissey last hits the Zapdos. T2 is now on the rush to get their Eos energy deposited. 602 to 114. Toss in another 76. This lead is getting absolutely massive. T2 with a huge lead with a minute and a half left in the game. Yeah, if you're new to Pokemon Unite, when that timer hits 0, these teams are done, and whoever has the most Eos energy deposit is going to be our winner. And it looks like T2 is going to be the team moving on as our lone undefeated from our A group. T2 from Japan, looking like the best team in this group for sure. Mame getting KOs in the enemy goal zone after they've already won. Victory Road starts here in No-Show's home base. Yeah, remember, if you are a No-Show fan, this was a match for seeding in Day 2.
both of these teams are guaranteed to make the double elimination top 8 bracket that will be playing out its way tomorrow. However, T2 will be doing so with the higher seed from our Group A. Very, very good point there, Jeff. Yes, both of these teams are going to find themselves in bracket. No Show have proved themselves game after game, finding themselves in another third game of a best-of-3 this time around. Unfortunately, T2 was able to get it, but fortunately for T2, they're going to be held into a great place in bracket. Yeah, we see one final push here from No Show. You're on the biggest stage. You want to make sure you keep it your all in every single game here, but the writing is on the wall, especially with this Cramorant Gatling Gulf missile. Keep pushing people out on this goal zone. S4L was playing phenomenally today too. They look like one of the bright spots of No Show for sure. I'm excited to watch this team move on in tournament. They're getting a bit of a highlight reel amount of KOs in this situation too. 4 down at the end. Congratulations to T2 on an undefeated route through Group A. Yeah, 3-0. You're only 3-0 team here in this group. No Show moving on at 2-1. All right, some great games there in Group A with a great game to finish off this group. Take a look at the results of this game here as we see that final scoreboard tallied up 678 to 214 here in favor of T2. Now, when I say that Mame takes over games sometimes, I truly mean it, because Ruin with only a KO line of 2, I mean, they weren't participating as much. Mame was taking over. Haruta this game, though, was definitely throwing their top hat in the ring. That was fantastic to see as we see big damage numbers from not only Zarina, but also the Cramorant there. And then the scoreboard that was run up in the favor of T2 again and again over the course of that game. There we go. There's the teams, of course, giving out the GGs. A well-fought match for sure from both sides. So you gotta give the respect where respect is due. Congratulations to those two teams. What an incredible game. That will be far from the last incredible game that we have here today, as this is just the culmination of Group A. We're going to have Groups B, C, and D to find out which 8 teams are going to be competing in our double elimination bracket tomorrow for the $100,000 first place prize. I'm excited. You're excited. I know they are all excited. We have so many more games to watch. Today has already been packed full of good ones. That last one may take the cake for my favorite one so far, though. Here comes some highlights of that match that is Zoinks' favorite so far. Let's take a look at why that's the case. I get to watch it again. This is great. Yeah, run it back. All right, there we go. So Santachi here having a really tough time in that top path against Mame, who we mentioned at the start of the game took one central area buff and then made their home in the top path. Yeah, really fantastic rotations from these teams, really kind of highlighting that the way I think a lot of people think about how those central area and other things are split up really are not nearly as rich as I think a lot of people imply. Now let's talk about Supercell's Wigglytuff, because I don't believe we got too much examination of it during the cast, but seriously, that Pokemon was a silent carry in my opinion. T2's Wigglytuff was so often stopping the advances of the melee brawlers like Blossom or Santachi or even Wallow with that great sleep play. Yeah, and the Wigglytuff passive is incredibly potent in a lot of these spots, and there was that beam from the Dragonite that ultimately pulled back a little bit too far, allowing T2 to secure that important objective and this third game. The game definitely could have went maybe a different direction, but T2 found some great KOs immediately after that moment. So I have to imagine T2 was destined to win this game. Mame, your player of the game. 7 knockouts, 3 assists, and 233 AOS energy scored. Probably the player of the match too, honestly. Just commanding fashion throughout the entire game. Excellent positioning, and the micro just superb on every level. That is very true. So much fun to watch. Mame, of course, was always my player to watch, so very excited to see them do their thing on the main stage here at the very first Pokemon Unite World Championships. Well, we have a lot more gameplay upcoming for you today and moving forward. We've had so much fun stuff so far. And Jeff, do you have a favorite moment? Before you get to answer that, I am going to give us a much-needed break. We've been up here for a while. These teams need a bit of one. Everybody watching at home, don't worry. It won't be long. More gameplay coming up soon. Don't go anywhere. Now we're going
going to talk about items. There are two types of items in Pokemon Unite: battle items and held items. Let's go over battle items first. Battle items are active items, meaning they need to be activated with a button press and they have a cooldown. There are several battle items to choose from, and your choice should be determined by your playstyle and by your choice of Pokemon. You won't start with many, but as you level up, you'll unlock more and more. Let's cover a few you'll probably see quite a bit throughout the series. One of the most common items you'll see in the current meta is the eject button. This item is simple. It teleports your Pokemon a short distance, and while the effect is simple, the applications for it are vast. You can use it to escape an opponent, rush a goal to get a quick score, or even teleport through walls. It's useful for nearly every Pokemon in many situations. There are also items that can boost stats in a pinch. X-Attack is an excellent choice for offensive Pokemon, giving a big boost in attack and special attack. This is a great option for Pokemon focused on offensive objectives and who plan on being in battle a lot. That's just a few of the battle items that you can use in-game. Be sure to check out more for yourself and try them out. Now let's talk about held items. These are items you can give your Pokemon that grant passive effects. There are a ton of held items, so we won't cover them all here, but we do want to give you some tips. You can equip 3 held items to a Pokemon, and you'll want to make sure that you're using items that will benefit a specific Pokemon. For example, Pokemon that deal physical damage use their attack stat, so you'll want to equip an item like Muscle Band that will boost your attack. Pokemon that use special attack would benefit most from a held item that increases their special attack, like Wise Glasses. In addition to passive stat boosts, there are also held items that activate with certain triggers. Buddy Barrier is a perfect example of this. When a Pokemon holding this item uses their Unite move, the user and the ally Pokemon with the least amount of health both gain a shield to help them last during major team fights. When a whole team has this item equipped, it can really help everyone from getting knocked out. There are also items that have stacking effects. For example, attack weight will increase your attack each time you score a goal. The effect will become more and more powerful each time you score a goal up to a certain amount. So try and score early and often with items like these to get the maximum effect throughout the battle. Held items are extremely important to giving your Pokemon an edge in battle. So be sure to always take some time to equip your favorite, most optimal items for each of your Pokemon and for your team. All held items can be upgraded using item enhancers that you earn throughout your time on Eos Island. That's all from us on items. Enjoy the show. All right, welcome back to the Pokemon Unite Championship Series, the World Championships here in London. Hello, I am Spraggles, and I am back with the one and only Doob Snacks. Hello, Doob Snacks. I feel good, well rested, you know, heavy, deep sleep, fired up the Poke-Flute, got us up, we sat up like the Undertakers, they blew the smoke on the stage, we're ready to go, we're back. We had to pull Jeff and Zoinks off this desk. They wouldn't leave, we had to physically remove them, and here we are. We have some exciting matchups coming up here. We have Secret Ship versus Eternity, and that is such an important match. But before that, we actually have an exciting game as well. Let's talk a little bit about these two teams. Snacks. Yeah, we're seeing Secret Ship and Eternity here. Secret Ship, they've got a road ahead of them, if I'm not mistaken. Secret Ship, in this particular showdown, if they want to make it out of the group stage, not only have to win, they have to win 2-up. That's what we're looking at. We're waiting for exact confirmation on that, but it looks like Secret Ship needs to win
both matches. They can't drop a single game or they are eliminated. It's do or die for Secret Ship. But before that, we have some exciting action happening on our B stage. Over on the B stage, we got some Group C action. Still got the B stage. Apprentice squaring off against iClan from the OCE region, and we're actually watching iClan from the purple side here, and we're gonna see what they can get done. This is going to be exciting. We've been waiting to watch iClan all day. I know you're a big fan, Dupe Snack, so this should be a real exciting game. Yeah, Pengu and Friff going to hold down this top path, and if I can say so myself, you absolute legend, Friff, on the slow bro this game. Finally, we're seeing some slow bro. We've been talking about all the Snorlax we've seen today, which is so exciting, but we've got the slow bro, we've got a Lucario, we've got a Machamp. I mean, this is a different setup. Well, we're literally on the other side of the world with these two teams, it would seem, as iClan and Apprentice have completely different strategies, and we're going to see how they can measure up against each other. I love seeing this little Machop, first off the gi high, but I love seeing this little Machop here in this bottom path, a real interesting place to play it. You know, you often see it in the top path up there with Lucario, but they're deciding to rotate it down towards the bottom. Friff just going to take a nap in their own goal zone after getting chunked a little bit, but here comes UTG, the captain of iClan, trying to get fed so they can hit that Dragonite. Yeah, they need that big Dragonite. Here we go, getting that slow bro, level 4 here before these bees. Let's see what kind of bro we got. Is it surfing? Is it scalding? We do got ourselves a scald bro. Hot water going right in the face of Apprentice. You'd think it'd be किधर मर गए? हेलो भाई, हेलो। इको भाई खाना खा के गया फिर बनाने। भाई हो गया भाई खाना खा के। Central area, taking as much experience as they can, running into a little bit of a blissy down there as well. We see Klaus heading back here, trying to stop Serena, but I mean, it's a Serena with 1 point. It's scoring. Yeah, it's stacking for sure. Downstairs though, you got a Zarina, Zante, and Gek stacking themselves here. Blissey getting some points in, and Shep still Machoke now trying to hold it down in the face of just always seeming to be outnumbered. The question is, who's got the bigger mitts? Is it the Machoke or is it the Blissey? Right there, able to steal that, even though Blissey was trying to get in there and take it from them. Yeah, good play by Shep. They're going to roll through the middle, and they're going to seal that up and get their get a good little power step here. As Azante is going to put the pressure back on ये कमेंट स्पैम को बंद करो। अरे यार बैन दे दिया भाई उसको, फिर से पता नहीं क्या दूसरी आईडी से आ रहा है क्या। तो कितना 2-3 इसको तो बैन ही करके रखा हूँ मैं। हाइड दे दिया भाई इसको चैनल में से, फिर भी आ रहा है। 4 members of iClan, 4 members of Apprentice. And Gek is getting eviscerated, but the Zarina gets the first KO on the Machoke. They're working through, Zante's pushing forward, and Puffs is trying to get back out. They get back in. Are you kidding me? iClan coming through, and the Blissey takes them down for It's a board भाई, क्या करूँ यार मैं? The slow bro forced to retreat. I believe that was an eject button used by Friff just to get out of traffic. आपका कैरेक्टर उड़ गया अभी। भाई खाना खाने गया था ना, इसलिए नींद आ गई थी उसको, जबकि लेने गया था भाई वो। किसका मैच चल रहा है? UTG staying up and away, trying to get that done before Dreadnought hits the map, but Apprentice is all over him. They're playing far forward in the face of iClan, not letting him anywhere near the beach. Yeah, it looks like iClan just can't get close enough to this. They're going to jump in, see if they can get a steal before this is ripped down by Apprentice. We got 2 Dragonites though, and here comes a big Hyper Beam secured by Apprentice. Yeah, but that was off the back of Friff getting a KO, allowing iClan first to match even no? test that thing, and they're moving 12 undefeated किसके लिए भाई? T2 undefeated। ओ भाई GG भाई। They've got some low HP Pokemon to get done as that KO streak of 2 hits. Unite move comes through, and can they convert? Chelvin on the chase with Klaus and Gek. ओ भाई गया BC तो। I cannot believe Machoke। क्या लगता है किसके इसमें जाएगा? ओ भाई अप्रेंटिस सिक्योर कर लिया भाई, डेड नो, फर्स्ट डेड नो, अप्रेंटिस लगा भाई। The hoop is going to allow them to quickly rotate to the top part of the map and start contesting this road. Apprentice looking great right here, and you know we haven't ओ भाई फर्स्ट टाइम लुकारियो, ये देखो पावर पंच वाला लुकारियो है भाई, अप्रेंटिस वाले लुकारियो खेल रहे भाई। Lucario and Dragonite, what an incredible combo, and what an incredible fight we got started. Yeah, the Hyper Beam comes through, chunks a lot of damage there. Friff, excuse me, आइसलैंड जीतेगा। देखते भाई लुकारियो है भाई, लुकारियो देखना है तुमको, लुकारियो देखने मिला भाई अप्रेंटिस की तरफ से। It's sitting at 1, big opportunity for an overcap, and here comes Chelvin. पावर पंच वाला लुकारियो है। Yeah, the question is how much do they want to put in this goal, and it looks like the answer is 40, almost a perfect overcap. Could only be better. वो इजी पुश हो जाएगा रे रोटम तो लग रहा है। यूनाइट है बंदों पे, पता नहीं यूनाइट चला देगा, सब पे यूनाइट है। हो गया बिना यूनाइट के टच हो गया। ओह नहीं तोड़ रहे भाई ये स्कोर, देखो 1 पे रखा है। शायद लास्ट जब
कितना जैप रहेगा ना, जैप पे स्कोर करेगा। ई स्पीड वाला देखना था, चलो भाई इससे ही काम चला लो। अरे दे दिया उसने 40 का भाई, फॉल बैक करने के लिए यूनिट चला भाई, खत्म भाई। Yeah, I thought that Bliss assist was going to be converted, hitting on the Hoopa, but that was more of a use it to gain it back later. But here we go, next Dreadnought is up, that Hoopa is unbound, it's going to be able to pull the team through on Apprentice. They're already throwing fists in the face of iClan, 4 players there and they're trying to contest. They're getting chunked up bid by the Dreadnought, and UTG's pretty low. So when he gets killed on iClan, that's huge, that's where you want to start. They're pushing forward, Dragonite going to take it, they've got the shields, they've got the Dreadnought, and now they're ये भी ट्रेंड हो गया भाई अप्रेंटिस की तरफ। despite them taking it, they're falling like dominoes as Gek is the last one on the chopping block. Shaq's going to go बट भाई आइसलैंड वाले पुश कर दे रहे, ड्रेड लेने के बाद भी स्टील कर लिया था उसने ना ब्लीसी भाई। अरे भाई अप्रेंटिस वाला ये क्या बोलते, ड्रैगोनाइट सिर्फ भागने के लिए ये ले रहा है भाई, यूनाइट चला रहा है। and really been able to hold their positioning and posture much stronger than they actually look in the face of Apprentice. भाई ये लोग नॉर्मली किसी भी ब्लीसी यूनाइट दे रहे हैं। If you were to tell me these two teams were going at it, I really don't know which team would be favored here. Both of these are great teams in their region. Apprentice, the only team to take games off of Nouns in recent memory, and iClan, the champion of their region. देखते भाई दोनों भाई देखो दोनों ड्रेड ये ले गए, क्या बोलते पूरा ऑब्जेक्टिव तो अप्रेंटिस ले गए भाई। दोनों ऑब्जेक्टिव मतलब दोनों ड्रेड और दोनों रोटम दोनों ये ले गए भाई अप्रेंटिस वाले। Points here in this bottom path. Break this goal. Ooh, but here comes Shep, that Machamp with the big close combat. Yeah, they're pushing back. अच्छा बॉट लेन लुकारियो था इनका है ना। They're hanging back and handbacking out as Get gets KO'd by the Machamp right there, and that's experience crucial to iClan to catch back up in this one because they're just a hair behind in experience, or were just moments ago. Take a look at this, just trying to take as much Take a look at experience as they this. can from Apprentice. थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा every single objective on this map, so iClan is just looking to take ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है, लेवल अप भी बराबर का ही है। Zapdos away from iClan. Well, they're positioning well to take this this third Dreadnought here, and they're taking all the bees on the side of Apprentice. Zap fight पे जाने वाला है ये तो fight. That big hyper beam falls just a bit shy, and iClan is still in a good position here to contest this Dreadnought if they want it. Now here we go. This Slowbro, it's actually really interesting that you're throwing Scald out towards these Pokemon that want to secure with their attack. And look at this right here, Apprentice ripping it down. ये भी Doesn't ड्रेड, look like there's much of a fight. Hyper beam coming ये भी in, ड्रेड power भाई up. अप्रेंटिस की तरफ। Yeah, locks it down. That Slowbro Skull just भाई ऑब्जेक्टिव्स भाई 50-50 होगा क्या लगता है भाई अप्रेंटिस 50-50 करेंगे? on the scoreboard here as Apprentice and iClan are going to try and position for that next crucial भाई कर सकते हैं भाई, उन पे दो देखो यार दो सिक्योर है, शायद हो सकता है भाई 50-50। They're close on score. This is still anyone's match right here. Although I gotta say, when it comes Zap to fight पे है securing भाई। objectives, it's not close at all. Every single one has gone. लुकारियो क्या कर रहा है ऊपर? अच्छा फार्म कर रहा without है। a doubt, but that's where Slowbro comes in. They're going to try and identify probably the Dragonite on the other team, maybe even the Zarina to keep them from heavy engages. Machamp is going to be responsible for भाई यूनिट चल गया। This is the fight. This is the final fight. Get खत्म भाई। भाई क्या बचा उनका ब्लीसी? अरे ब्लीसिन का यूनिट दे दिया। pushing forward here. One player down for each side, and they're moving through in each other's faces. But it's iClan getting the bad end in a raw deal here, as there's 3 players down for them. UTG trying to be a hero. Hyper Beam falls short. Klaus is on the pressure, and can they connect the KO? Power up punch. 3 KOs for the Lucario, and iClan is trying to get back into this one. Zapdos is at half HP, and we've seen क्या ब्लीसी लेगा ये? नहीं भाई टाइम ही नहीं बढ़ा भाई। जी भाई अप्रेंटिस के इसमें क्या भाई टीम फाइट तो लुकारियो ले गए। हाँ भाई अरे फाइट ले गए रे वो 5-5 अप्रेंटिस वाले इजी फाइट निकाल लिया। उनका ब्लीसी का यूनिट मतलब वहाँ पे अगर ब्लीसी मर जाता ना अगर अप्रेंटिस वाले का तो जीती था भाई। कमेंटेटर को बोलो सांस ले ले। हाँ भाई They need to win a big fight. They need to throw a ton of points in on one of these goals, and then they need to move into their center goal. मैं पुश करके कुछ नहीं होगा शायद, इतना स्कोर तो नहीं देखते यार, कुछ बता नहीं सकते। लास्ट पुश आ रहा है भाई अप्रेंट आइसलैंड की तरफ से। Every single member of iClan is down here. Here come the egg bombs. Here come the unite moves.
Yeah, they're trying to hold it down. That hyper move Value comes for in, unit. Chauvin lands with heavy impact Oh boy. onto that goal zone. एक Just has बंदा 1 खत्म. point left. Can they break it? They do. And nobody's falling BC in. 2 का players unit. down for Apprentice. They're looking pretty good as the hoop is trying to go back the other way. But look Bye. at Iclan making a push. Iclan keep 320 pushing, baby. भाई 5 मैन बचे 15 हैं. seconds left. Huge 2 Unite बंदे खत्म हैं इनके. down the Zarina, and they're trying to put these points in this goal. We got 10 seconds left. Can they get some of Bye. these big scores? Machamp is waiting there with 50. 18 points goes in, but Machamp not able to score. The egg bomb Oh boy. stops them. No, they couldn't do it. अरे यार. They were right there. ब्लीसी ने रोक लिया भाई. ब्लीसी मर जाता ना खत्म था. Racking up a KO streak of 3. Chelvin on the Dragonite holding it down in the home goal zone, making sure Iclan Oh can't boy. get those points in. स्कोर ही नहीं हो पाया सेंटर में उनके. Both of these teams here, but of course you have to give it up to Apprentice. They took everything. अप्रेंटिस वाला ले गया भाई पहला मैच. फर्स्ट मैच जीजी भाई. एक ओपी भाई. I think what's even just another note that's incredibly impressive to me is Iclan. Although not securing a single objective, obviously Zapdos was at the end, that's one you want. They were still in it on level. बट अप्रेंटिस वाले ने पूरा ऑब्जेक्टिव सिक्योर किया है. रोटम डेडनो से सब. Which means they were getting a primary portion of their experience. अब से अच्छा हमारा प्लेयर. Oh yeah, it was all KOs the whole time. They were fighting so well. I thought that slow bro might अंडे नहीं खाएगा. that Unite, the ability to grab an enemy Pokemon and basically take them out of the battle. They have Zarina taking them up into the air. They have the Unite move from Slowbro, the ability to just shut this team down. But they weren't able to do it, and that's secure. GG for Apprentice. And power up punch Lucario. I mean, it's just so hard to take anything away from him. Yeah, on top of a Zarina babysitting and stomping all over the place, which is also its own form of secure. I mean, it's tough sledding. स्प्रेगल्स वापस आ गया भाई कमेंट्री पे. That's a little preview of the action that Group C has हाँ भाई going ये on. तो है भाई स्प्रेगल्स दिख नहीं रहा We है gotta तुमको. sell out Group B, and we got Eternity and Secret Ship. Eternity and Secret Ship, and like लेफ्ट साइड में बैठा है भाई स्प्रेगल्स कमेंट्री करते हुए. incredibly exciting. Secret Ship is on a must. अभी भी वीसी में है क्या? हाँ वीसी पे हूँ भाई. आजा. They can't go 2-1. If they go 2-1, they go to the airport. किधर वीसी पे तो बैठा था मैं. वीसी पे हूँ. आजा. And here we go. Japan region Secret Ship, Korea's region Eternity. Sejun locking in that greeting. आजा ये सीक्रेट शिप वालों का मैच है भाई. Sideline, so excited to see, and I'm glad we get an opportunity to cast this one as rollout Wigglytuffs abound. Hey, you know what? This is so exciting. We've got Cramorant, rollout Wigglytuffs. We've got a Green, which by the way has just been sadly absent from some of our games. डिस्ट्रीब्यूट है भाई. डिस्ट्रीब्यूट लेके आए सीक्रेट शिप वाले. हाँ अरे हाँ देखा वे भाई. हाँ गार्डियन ने पूरा ये किया है. वन साइड डोमिनेट किया है इनको. अरे क्या इतना क्या बेकार खेले कि एक गोल नहीं कर पाए भाई. भाई गार्डियन ने पूरा पुश कर रहा था उनको स्टार्टिंग डेट पे. हाँ भाई अब अर्ली गेम पे ही और लास्ट आखिरी गेम तक कुछ नहीं करने दिया उनको. अर्ली गेम में एक गोल तो कर सकता है ना भाई. तो वो भी नहीं किया उन्होंने. एक गोल भाई इतना तो होता ही है. अच्छा ये बाहर हुई ना टिकट है. नहीं अभी ये है ना ये डिसाइडर. ये जीतेगा तो कुछ रहेगा शायद चांसेस वगैरह. कितने आ रहा है? इतने आ रहा है ना. आरएनएस वालों ने. हाँ तो आरएनएस दोनों जीत गए ना. नहीं एक हारी है शायद आरएनएस. आरएनएस किससे हारी? इससे हारी क्या? हाँ इटर्निटी से. नहीं आरएनएस जीती भाई. रुक जा बताता यार. आरएनएस विनाकॉम खेली थी ना. देख किधर है वेंडी. आरएनएस वाला एक जीता है. तो इनसे हारेगा इटर्निटी से. हाँ इटर्निटी वाले 2 जीता एक हारे. पता नहीं 2 कैसे जीतेंगे? इनका ग्रुप में 3 ही. ये रुक जाइए बताता हूँ. अभी इधर अपडेट ही होने का है. सबसे पहला मैच इटर्निटी वर्सेस आरएनएस का हुआ था ना. तो उसमें इटर्निटी जीती थी ना. अच्छा हाँ तो फिर अगर सीक्रेट सी पे जीती तो 1-1 हो जाएगा क्या? हाँ पता नहीं भाई. एक तो साल इनके ग्रुप में 3 ही भाई बंदे हैं. 3 ही टीम है भाई. क्या सीन है इनका. देख पहला मैच जो हुआ था इटर्निटी और आरएनएस का हुआ था उसमें इटर्निटी जीती. ठीक है. दूसरा मैच हुआ था सीक्रेट शिप और आरएनएस का. उसमें आरएनएस जीती.
अबे सीक्रेट शिप वर्सेस इटर्निटी का होगा, फिर उसमें जो जीतेगा फिर पता नहीं क्या होगा। हाँ तो दोनों इटर्निटी जीती तो आरएनए से इटर्निटी क्वालीफाई। हाँ 1-1 पे। हाँ अबे भाई वो रोल आउट देगा। खत्म भाई। इस गेम में भी इटर्निटी। हाँ भाई लुकारियो आया रे पावर अप पंच। सॉरी ई स्पीड वाला। ई स्पीड लुका भाई नहीं पावर अप पंच वाला है शायद। ई स्पीड इस पे काम ही नहीं आएगा। कितने टैंक मुझे पोकेमॉन पावर अप पंच सॉरी। नहीं इतने टैंकी पोकेमॉन के अगेंस्ट अरे गए खत्म भाई खत्म। क्या रोल आउट मारा है भाई। Yakubari going to be able to lead the charge here with this rollout really tough, and they're going to be able to chunk up Eternity a considerable amount before they can even get into the action. Take a look here. पीछे चल रहा है थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको। Dragonite for Eternity and no Dragonite to be found at all for Secret Ship. मेरा पीछे चल रहा है। Securing is coming from their Lucario. Serena up top with Dartrix as we're taking a look कैसे at भाई मैं तो लाइव पे देख रहा हूँ। हाँ तो थोड़ा आगे करना। करके वापस चालू करता ना। 20 पे फाइट चल रहा है इनका भी। हाँ 20 वाली फाइट आई। It's hard to say, isn't it? It's hard to say. Eternity's pushing very far forward. Cramorant, is that a Sing Wigglytuff? We got a Sing Wiggly from Secret Ship, a rollout Wigglytuff बहुत गंदा पकड़ के मारा उसने। They're going heavy into the surf, into the Sing. They're going to stun this Eternity team down. Cramorant का यूनाइट चला इधर। वो देख लिया। खत्म भाई लुकारियो ले गया। लुकारियो ले गया भाई रेड। खत्म है। भाई फ्री के हो। Wigglytuff ले गया भाई 2 kills। Getting in 30 points downstairs. Wow, huge. And Zarina Dead to gaya bhai. Secret ship pe taraf. Not to join this fight. They were up here. They were fighting over Rotom. They're doing their own thing. वो वाला is this a Razor Leaf decision? बिना तीर वाला। इसको तो पकड़ के फेल दिया। खत्म है भाई। इजी पुश हो गया भाई ऊपर तो। मरा नहीं रे डिसीडियो। नहीं भाग गया ना पीछे। हेलो भाई निंजा भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। हाउ आर यू डूइंग भाई? आई एम गुड ब्रो। Zarina pushing the entire enemy team back there. They just don't want to stand there after Zarina's united. No, and of course I was watching the same championship. I have no idea how many stacks those had before they started. They sure as heck have 6 now. I think it might be 1,000. I think they might have 1,000. देखते भाई ये मैच में कौन जीतेगा भाई। Stack an item up to 6 times. Don't think you can stack it up to 1,000. गोल तो सेम ही है। Official content cowboy 1. There you go. भाई सरीना घुस जाएगा ना डिस्ट्रीब्यूटर पे खत्म है भाई सर ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम। आरएनटी भाई जी भाई आरएनटी का। But it's slow, bro. Yakubari doing work downstairs. Wow, and look at the score here. Really close between these two teams. 99. Why DC without BC you get it? They want to be putting क्या more बता points भाई? in than this. It just looks like Secret क्या Ship सोच is खिला shutting रहे? them down. देसी दो सरीना को देखते ही भागो। We're just gonna have to see how that translates into the back half here. तो ऊपर नहीं इनके पास। और नहीं सीक्रेट शिप वाली तो विगली इस पे खेल रहे हैं स्लीप पे खेल रही है ना। हाँ स्लीप पे खेल रही है। They're all rotating down to Dreadnought. That second Dreadnought is ever so important. भाई बंदे इधर बता है माचम जंगल खिला रहे। Team is running a hoopa right here. Instead they've got the Wigglytuff big cram unite, and here come the unites from everyone. Yeah, Dragonite landed right in the middle. Look at all those players sitting on top of each other. Dreadnought's catching the bad end of those receipts, and we see the wanted posters starting to get cashed in. Of course, it's a slow roll getting it done. Telekinesis there with the surf combo. Cram gets the KO on Blissey, and Secret Ship takes another convincing team win. Once again, Eternity is wiped off the map when Secret Ship is near the objective, and this can't feel good as Eternity because they're going to run into a big Zapdos fight here in a minute. And if they get wiped off the map like that once again, they भाई आया मैं 2 मिनट में। That Cowboy Cram looking real good and really supporting this team. Never really getting KO'd, which is kind of its biggest weakness. And look at these teams just flying by each other in the night, trying to get those bees and then splitting away. Trying to just grab as much experience as they can. They know that they're behind on experience. They know that the score is very close right here. So Secret Ship, I think the only thing they could do to put themselves in a better position here is just start putting some points in that top goal. Absolutely. They're getting that experience lead, and now they have to be cautious not to give KOs up to Eternity. But like you said, the game is won on the scoreboard.
Here we go. Rotom slowly pushing in here. It looks like Eternity's going to defend it. And everyone from Secret Ship just walking away, looking for some experience somewhere on the map, maybe trying to catch that Wigglytuff in the central area there. Eternity with an easy defense. Well, that Wigglytuff started on Secret Ship's bottom goal zone, and it was pushed out convincingly by Yakubari down there on the slow, bro. Send them packing right in the face of a Cramorant and force them to retreat to their side of the map. Right, it looks like Cramorant doing a little hiding there in this bottom bush while Eternity continues to gather their experience here in this central area. We've got one more Dreadnought coming up here in about 30 seconds. But, you know, it's usually not that popular with Dreadnought. However, I think Eternity would really like that experience. All those solo queue players just saw that flag ping go down onto that beach for the third Dreadnought. That's where Secret Ship wants their team to be. Eternity's got different ideas. They're rolling upstairs. They're going to try to close out this goal zone in a big way. Oh, yeah, looks like we're getting some scores here. Oh, भाई बहुत बड़ा ओवर डिफरेंट नहीं है भाई. Right now, and Secret Ship is just hanging out. Dreadnought party of one, taking it down. ये Dread भी जाएगा There's a इनके little पास. turtle soup on the menu for Secret Ship. They आते need यार good. Eternity up on the scoreboard Dread तो again, दिखाई नहीं मेरे but को. on a level deficit going into the final throws of this game. So we're heading into the final moments here, and we do have confirmation, Doomsnacks. If Secret Ship drops a single game in this series, they are going home. This is a must-win right now. I know that there's still more series to be played between these two teams, but if they lose at this Zapdos, that's got to be sitting heavy on there with वही that बोल रहा है ना tiebreaker वो ये action पाँच on एक the गाँव में horizon. बैठ जाए Secret फिर Ship तो हो जाएगा postured, waiting हाँ for Eternity. Would आप देख रहे हो probably like चैंपियनशिप Eternity भाई for them to engage चैंपियनशिप in ने तो this क्या दिख रहा है भाई हम एस्टिमेट करेगा क्या जैप ओ भाई 50-50 हो रहा है इधर तो खत्म भाई इटर्निटी अरे हाँ इटर्निटी वाली तो लेके गए थे पिछले इसमें भाई जो आरएन से खिलाफ था ना उसमें वो 50-50 किया क्या आरएन डोमिनेट कर रही थी. हाँ ये ड्रैगनेट क्या कर रहा है उनका? ड्रैगनेट को लगाओ गोल. अभी ऊपर नीचे दोनों स्कोर हो गया उसका 299 अरे नहीं हुआ ऊपर में स्कोर नहीं हुआ खत्म है. after losing Zapdos, but Secret Ship can actually do it right here. This game is so incredibly close. We have 4 members of Secret Ship up. We have over a minute left in this match. It is not over. Secret Ship is not ready to go home. Decidueye has 50 points. Cramorant has 50 points. That gets you nearly the way there. तो Everybody else will keep second their base है ना pockets वो light लॉर्ड so they विगली can रोक get those सकती है quick easy second base का scores. गोल. That top goal zone is what they're going to be targeting down as they're trying to build up their Unite moves. Yeah, so what you're seeing right here is you're seeing these teammates walk around the map, get as much, of course, AOS energy as they can, but also charge their big Unite moves. खत्म हो गया भाई इधर जैप तो भाई 2 मिनट में 2 सेकंड में भाई and they're going to need them if they're going to win a big fight against Eternity. खुश होने वाला है देखते हैं अगर सीक्रेट शिप जीता ये फाइट कुछ बता नहीं सकते भाई. Excuse me, they've actually based back. They said defense is more important. No back cap action for this Greedon as the action's kicking off the surface there. और रोलाउट बराबर मारेगा ना तो एक किसका भी नहीं होगा भाई उधर. Just chucking those fish everywhere. Huge engage into the middle. No players down, but they're trying to find a KO somewhere. Cramorant comes through. Is the first player going to go down on Eternity? They need to open the gate somehow. Cramorant gets the KO on Seiju. Next goes Serena. 2 players still 5 up for Secret Ship. They've got the space. 60 359 बस 10 सेकंड. ओ भाई नहीं हुआ नहीं होगा नहीं होगा. 16 अबे 100 खत्म है भाई सीक्रेट शिप पे गया मैं. ओ भाई सेंटर में आ गया. हाँ ये सेंटर कब गया मैं थोड़ा पीछे देखो. ओ भाई भाई लास्ट सेकंड पे गया. ड्रैगनेट ऊपर गया क्या? बुरी भाई what that game meant, and they absolutely delivered. I see you too. We see you up here. ओ भाई जीजी भाई सीक्रेट शिप के लिए जीजी का दर चैट में भाई. क्या ही स्कोर किया है लास्ट उसमें. कैमरन एमवीपी है भाई. अबे ये एमवीपी है विगली. अरे वैसा नहीं बोल रहा. हाँ हाँ आप खेल रहे हो क्या? नहीं रे मैं तो ये देख रहा हूँ भाई टूर्नामेंट्स के मैचेस चल रहा है भाई वो देख रहा हूँ. मैच हो तो ऐसा मैं खेल रहा. हाँ
ये तू भी खेलता है बोलते नहीं रे भाई मैं नहीं खेल रहा भाई वो देख डैमेज देखना वो एनसीसी का डैमेज देखना इसकी वजह से कम है 50-50 कम कर देगा वो देख रहा है हाँ ग्राफ देख ग्राफ क्या ही क्लोज मैच हुआ है भाई Oh my! I want to see this game again. I wish I could see it in all its 10 minutes, but we only get the highlights. ये लोग लंदन में है मैंने सुना था चैंपियनशिप के बंदे लंदन जा रहे हैं अबे जा क्या रहे हैं भाई ये तो मैच चल रहा है भाई लंदन में सब पहुंच के खेल भी रहे हैं बैठ के खेल रहे हैं वही तो भाई बैठ के खेल रहे हैं बंदे अरे इन्हें 50-50 किया था पर दोनों बार रेड ये लोग ले गए थे इटर्निटी वाले नहीं ये सीक्रेट शिप वाले इटर्निटी वाले ने पहले इसमें 50-50 किया था They do clutch out Zapdos here, but Secret Ship turns on the tails. They have all their players still standing, and they hit on that quick retreat. As we saw, पे कौन लेके गया इधर वो इटर्निटी वाले ले गए ना सीक्रेट शिप बाद में कुछ किया ड्रैगनेट लिया ना लास्ट ड्रैगनेट ज़ैप का लास्ट peeled off. We've got Wiggly scoring 16, and then Cramorant off screen in the main goal for 100. अगर डेसिड का काम आया बट वो लास्ट फाइट में काम आया भाई बस उसके अलावा तो दिखा नहीं कुछ Wow, of course. ओ भाई वीकली को ये मिला है एमवीपी वीकली लेके जा रहे हैं फिर क्या है कोर्सिल किसके बाद में नहीं Beautiful. I mean, what a beautiful game. घटिया कौन है 50-50 घटिया There's never been a more important time to have a finish that good for this team. Never. They're on the world stage. If they don't have that, if क्या ही मैच गया भाई लास्ट सेकंड में बट उसने सेंटर कैसे स्कोर किया भाई doesn't put in 8, they go home. ना वो सामने से गया वो It's the game. मेरे को लगा उधर से जंगल से घुस के गया रहेगा नहीं सीधा स्ट्रेट गया पता है चल के अरे ऊपर साइड से गया मतलब वो यूनाइट दिया ना उसने उसके बाद ही गया शायद अरे स्ट्रेट गया सामने से गया पता है मेरे को लगा छुप के गया रहेगा छुप के नहीं गया सीधा स्ट्रेट गया और उनके बंदे ऊपर कूदे फिर से हाँ पर वही था ऊपर रोके क्या सेंटर रोके क्रैमरन ने निकाला वही मैच बट डिड यू नोटिस क्रैम का गोल टाइम्स अप के बाद हुआ नहीं रे पहले ही हो गया था नहीं तो काउंट ही नहीं होता टाइम अप होने के बाद होता था worked the way we wanted it to. We had just a few missteps. Heron getting KO'd, of course not covering the भाई जल्दी चालू हो गया रे सेकंड गेम तो Secret Ship looking to do it in a big way. Secret Ship, it's a क्रैमरन ने किया हाँ भाई वो सीधा इसलिए गया क्योंकि उसे लगा कि ऊपर ये नीचे उसके बंदे स्कोर कर देंगे तो ड्रैगनोट सेंटर में गोल करेगा Eternity can win one game and Secret Ship still win this series, but given the rules of this tournament, they need to win 2 in a row or they are heading home. That's how the tiebreakers shake out. So we're seeing Heron just going. अच्छा सीक्रेट शिप वाले अगर दोनों मैच जीतते ना तो क्वालीफाई हो गए दोनों मैच किया मतलब लगातार हाँ यही जीते तो ही क्वालीफाई होगा नहीं तो नहीं होगा Yeah, well, that's not something that Secret Ship 2-1 से नहीं हारना है when you're on Secret Ship's ocean. You know what I'm saying? They're trying to lock this thing down. And Yakubari, a very वाटर गोल टाइम्स अप होने के बाद आया है गोल एग्जैक्ट टाइम पे हुआ था हाँ वही उसकी टीम का सेकंड मैच है हाँ भाई उसी टीम का सेकंड मैच है ये लोग 3 बंदर छोड़ देते हैं वे लेने को देखा एक तो है कौन सा 3 बंदर छोड़ देते हैं टॉप और बॉटम के नहीं भाई नहीं देखा जो अर्ली चल के आते हैं ना पून हाँ बंदर रहते तो फर्स्ट लेते हैं अच्छा हाँ समझ गया 3 बंदर छोड़ के आगे आ जाते सीधा दोनों साइड में मतलब बस स्टार्टिंग वाला लेते हैं ना स्टार्टिंग का लेते हैं बस बाकी सिर्फ सेकंड वाले को डैमेज देके आगे बुलाते हैं
have to be afraid of when you have that wig gun. Look at this. Slowbro by themselves up here in this top path dealing with a Blissey. शायद easy level 4 होता है मेरे हिसाब kind से. of what their role was in the bottom path in the first game. फिर से डिसीजन पे सेम कॉम्प है दोनों को. Allowing the rest of Secret Ship to be an overbearing. तो लोग ने तो 50-50 बराबर ही किया ना. अब ब्लेसी मर गया रे ऊपर गोल करने से पहले. If you look around the map, I mean, they are licking their plate clean. Everyone looking for a piece of experience, but it's nowhere to be found. भाई ये ग्रेडेंट वो आरएनएस के खिलाफ हुआ था ना मैच जो थर्ड वाला मैच था उसमें ले गया था वही जैक वही जीता के ले गया देखा मैंने वही मैच से जीते क्या हाँ वही मैच से जीते अरे हर कोई अपना अपना मूव मिस कर रहा है बहुत दिक्कत देता है कौन रोल आउट These टाइम पे बहुत दिक्कत होता है We also do not have a drag. Oh, Cram is so close. It just बंदे ticked घुस नहीं over to पाते getting its Unite. बाकी बंदे इजी ले भाई यूनाइट को लेते दे As soon as Dreadnought hits the map, they're pushing forward and they're trying to get into the fight here. Sejune's trying to get into that action. Lucario खत्म gets भाई the KO on Sejune as well. तो क्रैमरन पहले ही होने फाइट लेने के पहले कौन ले गया रेड that to push forward their Dragonite. They're looking for damage. भाई बिगली ले गया रेड Warriors on the backside of nowhere. Heron comes through with a big time rollout in tandem with the Dragonite. Too easy. You're dust. Go home. बिगली स्टिल करेगा भाई Different fight from Eternity here. They were having so much trouble dealing with Secret Ship last time. However, right there, डेसी का यूनाइट नहीं All right, well, Q trying to seal this thing in before ऊपर ही खेल रहा हूँ their day. They do. That's a good start. पिछले मैच में भी ऊपर ही था वो If you couldn't get it done downstairs, head up to the attic and do some work up there. Got to Sidgewai up वो here पता है with ना the इनका Ignite move. I mean, it वो could है be used to push टीटी this है in. I'm सेकंड just बेस not खुल गया तो sure how खत्म much they really want this to even go in. Decidueye now heading back to the central area on Secret Ship side, and it looks like that Rotom is just going to be taken down. Yeah, Dival. Everybody, like you said, Oh, professionals low bro bhai. They understand where Secret Ship's priorities lie. They're looking to fight, and they're going to take the wild Pokemon instead. As Q is a much higher level now than they were in the previous game. साले बंदे तो माचा मुचा लेके जंगल घुस रहे थे भाई जंगल में माचा खिला रहे Both थे teams were happy to break some of these top and bottom goals, happy to put some points on the board, but right now, mini map clean. Gathering every piece of experience, and besides that, they're fine. Yeah, they've been gathering all the experience, बहुत bad but ऐसे तो है all over the map here. हम ही नहीं बचा भाई इतने देर क्या करेंगे Now लोग their pockets are so full, it's a little bit harder अब to यार score in the face of खत्म your भाई काम opponents, तो and both these teams guarding their goal zones well. Here we go. 5 minutes 26 seconds. भाई वो सेंटर का भी फार्म गायब कर रहा है देख रहा है अपने इसमें तो इतना टाइम तक पड़ा रहता भाई फार्म वो देखो लुकारी ऊपर वाला फार्म लेने गया ऊपर वाला बीज भाई ऊपर वाला क्रैप वो छोड़ देते थे गोल मारने देते बंदों को Yeah, there's also something to be said playing with desperation. आज खेल नहीं रहे नहीं भाई आज तुम मैच देखेंगे भाई आज पूरा They aren't looking to go home. Here we go. We've got this Dreadnought coming up here in 5 seconds. कौन सा ग्रुप है ये? Secret Ship रुक जा बताता मैं ग्रुप for this fight. This could be a big one. ग्रुप बी का है Took it last time. अभी सी कब करेंगे ये लोग शायद आज दोनों ग्रुप करेंगे भाई 3 दिन में खत्म करना है उनको ये वो देख रहा है वो भाई क्या लिया है उसने ड्यूटी कर करके आदत पड़ जाती है बंदों को अबे वो भाई क्या ही लिया है उसने क्या बोलते अपना ग्रेड एंड है भाई डेड नो ये इंडिया की टीम है क्या नहीं रे भाई इंडिया की टीम बाहर है उनके 3-4 बंदों के पास बड़ी है शायद 2 बंदों के पास तो बड़ी है शायद वो उधर खोल दे रहे डेसिडिया का पूरा अल्ट खा रहा है फिर भी मार रहा नहीं है for Secret Ship. Before, they were way over leveled, but right now, that is not the situation we're running into here. Eternity is very much on par with them. Yeah, Huey trying to do their best levels on the Secret Ship. क्या लेके जा रहा है ये तो क्रैम फार्म चोरी कर रहे हैं Here we go up to our top path right here. We do have this Rotom that these two teams could fight over, but they don't want to break any of these goals. One of the lowest scoring games that I've seen out of a team like Eternity here. Big secure there from the Dragonite. Dragonite gets it done, but of course it's the rollout Wigglytuff that pops up the opposing team so that Dival can get that clean shot on the Rotom and send it into the face of Secret Ship. Don't forget we missed a Cramorant get KO'd downstairs by this arena as well. Here we go. They're just putting this Rotom to sleep up here in the top path, and it goes down.
14 points to 32, meaning this game is so incredibly close. If any member of either team just peels away from a Zapdos fight for a moment, they are way up on the scoreboard if they can get a sneaky score. Absolutely. Everybody's going to have to keep their mind's eye on and watch these goal zones, make sure that back cap action doesn't happen too early, while at the same time having the presence of mind. आपकी टीम कब खेलेगी भाई? जब क्वालीफाई होगा तब खेलेगी भाई. Incredible what they have to deal with here. Secret Ship right now. Remember, they must win this game. Tough fight भाई. ज़्यादा स्कोर नहीं किया दोनों ने ऊपर. will not continue to day 2. We have a big Crimes here for the third Dreadnought. Is this the engage they're going to be looking for? Pewee getting pushed out by Dival a little bit. Is this Dreadnought क्राइम फिर से कितना मिनट हो रहा है? वो टाइम 3 मिनट 9 सेकंड. नहीं ये टाइम नहीं. भाई चढ़ गए भाई ये साइड लाइन से पहले. खत्म है. ओ भाई फ्लोरन एल्ड भी क्या? नहीं. नहीं दिया उसने. रीसेट होगा डेड. नहीं इतना कम स्कोर हुआ है क्या मैं ये वही. But I don't think they're too scared of that, Dupe Snacks. Last time they just jumped right in there. अभी दोनों टीम को फार्म बहुत कम है. दोनों टीम का लेवल कितना है मैच? लेवल तो अच्छा खासा. भाई 50 नहीं फाइट हो रहा है. 50 है भाई. खत्म भाई. फाइट हो रहा है. सीक्रेट शिप खत्म है. 2 बंदे खत्म है. 3 बंदे खत्म है. 4 खत्म. नहीं लड़ सकते. नहीं निकाल सकता है मौके का नहीं. बंदे वापस से कर दो. तो क्या हुआ इधर स्टैक हो गया इसका. Boy, Secret Ship is going to need to pull another one out of somewhere here, Dupe Snacks, because points are raining in. The burgers that are all over the place here. They're trying to get some of these KOs, but they cannot stop enough of them. Great and time pass करवा रहा है. 50 points in, it could इतना HP वाले पोकेमोन है ना, देख मरेगा ही नहीं. They do 414 to 95. गोल भी मार दिया देख भाई. Can Secret Ship pull off another miracle here? A wave of relief. 95. They know they just got to play defense, and I'm not talking chain link. They got to put up the iron walls here. Give up the outside goal zone. Don't even contend there. पहला टावर तो ले लेंगे, गोल कर देंगे आराम से. But Lewis says, Kirk, you're wrong. I'm going for the engage, no problem. Here we go. This is actually a really nice score for them. They're able to put 2 series of points in this goal. भाई वो एक्स्ट्रा मार गया सेंटर पे. 70. Nice little close combat right 496. here. We are fighting at this bottom path goal. Roll out Wiggly coming in trying to stop everyone here. Serena taking him up into the sky. Yeah, Hyper Beam comes through trying to find his mark. Nobody down for Secret Ship yet until the Lucario bites the dust. Cramorant Unite going to try and find his mark. Green gets a KO on this Zidua. They're too soft now in Secret Ship. This is the Titanic of ships. Is that when I'm seeing Eternity's doing so hard. They're taking everybody down. And poor Secret Ship, I think, is on their last breath as they're going to be sent home. Dusk is falling. अब कुछ नहीं कर सकते. Wow, here we go. 5 seconds left. There's not enough time. 2 incredible games, but Secret Ship is not able to stop Eternity. And because they couldn't win 2 in a row, we will not be seeing Secret Ship on day 2. Eternity locking in their day 2 spot. T2 वाले बच्चे हैं ना. T2 qualify है. This match is not over. This match is not over. We still have some incredible unite between these two teams. चैंपियनशिप में हम कोई भी पोकेमॉन ले सकते हैं क्या? भाई कोई भी खेल सकते हैं, बस कुछ पोकेमॉन जो बैन रहते हैं वो नहीं खेल सकते खाली. अभी जैसे इसमें बैन है कौन सा टेरेंटार और ग्लेशियन बैन है ना. हाँ शायद से बैन है. ये 2 पोकेमॉन खाली बैन है. ग्लेशियन I mean, they were able to get an early start here, but they weren't able to translate that to the same success that they saw game 1. I'm taking a look. ये सारे कहाँ बैठे हैं भाई? वो स्टेडियम में उनका जो सेटअप हुआ है लंदन में भाई. उधर बैठे हैं बंदे. लैन हो रहा है टूर्नामेंट. सब उधर ही बैठे हैं भाई. क्या है भाई? डैमेज देख. कुछ नहीं है डैमेज. सीक्रेट शिप वाले बंदे मार रहे डैमेज दे रहे. कुछ मतलब ही नहीं हो डैमेज में. बंदे ही नहीं मर रहे उनसे. भाई इतने भारी बंदे क्या मरेगा भाई? इसलिए बंदा ये नहीं खिला रहे भाई. अटैकर मतलब अटैकर वगैरह ज्यादा दिखे नहीं. इनके तरफ से ही दिखे भाई अटैकर वगैरह.
15 बाहर points से until Zapdos was done, but they were able to win that fight in आखिरी a फाइट में big सीधा fashion, ऊपर गया वो। wiping Secret Ship off the ये board. क्या स्ट्रेट गया है भाई Absolutely. Let's take a look at game 2 itself here as these teams are इतना trying to स्ट्रेट find their खुलता nerves बाहर to जाता है settle it in भाई here for this game 2. Dreadnought under fire with the Cramorant Unite, but it's Eternity that locks this one down. Yeah, I believe it was the Wigglytuff that actually ends up taking it with that dazzling gleam, and then here comes that nice Unite move from Decidueye here at Dreadnought number 2. Dival actually landing in front of the Decidueye to catch some of those stray leaves before it can get Windows, into the Windows guts of the कहना क्या? action there, and they're able to convert that Sejun, locking that one down. Take a look at this, the big Zapdos She's moment right getting here. younger Secret than the Ship Kanye, not right? able to किसी win के बाद। this fight. Eternity once again taking Zapdos. They've taken it in both games so far. नहीं कर And पाता। unlike last game, Secret Ship not वो तो able होता to है। pull off another miracle. Well, वीना वाला see फॉर्म this, खेल देना they हो didn't have जाता enough time, but Secret Ship trying to coalesce, come together. Eternity intelligently वो giving up that RNS far वाला goal zone as Secret Ship tries to push in. सही and ना the तू defensive अंदर अंदर stand घुसता है सीधा अटैकर पे It does. We can see Cram desperately trying to make something happen here. दो Just स्टॉम मार desperately के भाग trying to जाता get वहां away से from Arena at that point, but it was ये all टूर्नामेंट कोई over. 50-50 करने वाली टीम जीत गई ना Yeah. You got to understand पता this है is a भाई। pretty devastating moment for some of these players because their dreams of winning worlds just went out the window. Yeah. Let's give a nod to our player of the game here, Dival on the Dragonite. Just so meticulous with that hyper beam, securing objectives and finding some bodies at the same time too. ईश्वर 5 किसने रैप लिया? knockouts, 6 assists, and Dragonite tons ने? of points. Yeah, Dival, I mean, some incredible plays. Not only, of course, racking up those KOs, but securing a lot right here. And this is अरे just वो a tough टीम फाइट ही moment निकाल for लिया था ना Secret Ship. क्या Just पता you फिर have क्या to फर्क पड़ता है understand किसने लिखा that, when you get the news that you're not moving on to day 2, yeah, that's pretty hard. पड़ता है ना Yeah, फर्क you gotta buckle up पड़ता है here. Pride is on फर्क the पड़ता line. है Represent yourself, your region. आगे पता चल लेना फिर show कौन out and go out the किसको way हार you निकलना want on your इम्पोर्टेंट terms. है Get yourself a win ऐसे here. And you know, although it doesn't fall your समझ way बार बार in the उनका bigger ग्रेडेंट निकाल रहा है bracket जैप setting, टिप्टी में you can at least बंदे बोले hang your भाई hat on the सबको fact that छोड़ you पहले fought ग्रेडेंट को You बाहर know, I निकाल will say Secret Ship is just such an exciting team. I don't know what they're going to bring here into game number तो लाइक 3. काम आएगा बे ग्रेडेंट ले गया सीक्रेट शिप वाले We've got Secret Ship, our सब purple अरे team. मौका बचा है We've got अरे नहीं रे फाइनल our राउंड है orange team right here. And we've अच्छा got मेरे को लगा बाहर हो the गए हार same गए thing अबे happening right here. We've got the same kind of teams running it back here for 1-1 हुआ अरे उन्होंने नहीं फ्लिप हो गया भाई सीक्रेट शिप सेम ही 1-1 हुआ है बट कॉम सेम ही खेल रहे भाई वो चेंज ही नहीं किया उन्होंने कुछ अरे मेरे को लगा हो गया बाहर हो गया क्या? सीक्रेट शिप अरे वो तो बाहर हो गया ना क्योंकि देख उनको अगर क्वालिफाई करना मतलब क्वालिफाई करना था ना दोनों स्ट्रेट जीतना था तब उनको ज्यादा पॉइंट मिलते हैं स्ट्रेट हारे थे क्या हाँ इटर्न इसके पहले किसके था हाँ, आरएनएस से स्ट्रेट भी हारे थे क्या सीक्रेट शिप वाले स्ट्रेट हार रहे थे ना 2-0 से और इटर्निटी वाले कैसे जीते इटर्निटी 1 हाँ 2-1 से जीते वो Coincidentally, that does help leverage at least the इटर्निटी scores on the 2-1 back से end of the जीती है game, उनके right? अगेंस्ट If they don't happen to clutch out as Zapdos और here, ऊपर से ये but लोग Secret Ship, I can only नहीं इटर्निटी वाले हाँ देख हाँ 2-1 से जीते हैं और सीक्रेट शिप और इसका मैच हुआ था आरएनएस का वो इटर्निटी वाली 2-1 से जीती है ना हाँ आरएनएस से हाँ ठीक है आरएनएस से ये लोग हारे कितने से 2-0 से कौन ये लोग हाँ ये लोग सीक्रेट शिप वाले ठीक है हाँ तो आरएनएस अरे आरएनएस के पास क्या पॉइंट है इनके अगेंस्ट का 2 पॉइंट है मतलब हाँ 2-0 और उनसे 1 पॉइंट है ना अभी इटर्निटी अगर इटर्निटी ने 2-1 से हरा है ना इसको कि अभी ये लोग भी उसको इससे हराते हैं 2-1 से क्या बोलते तो इन दोनों के बीच में टाई होगा ना किन दोनों के बीच में सीक्रेट शिप और इटर्निटी के बीच में हाँ कि नहीं होगा पॉइंट वैसे पॉइंट देख इटर्निटी वाले जीते हैं सीक्रेट शिप से 2-1 से ठीक है हाँ अभी ये चल रहा है सीक्रेट शिप वर्सेस इटर्निटी का मैच
quite making it, might grab it at these हाँ points. और इटर्निटी वाले यार नहीं पता वेंडी का कंफ्यूज हो रहा है अब मेरे को। अरे देख मेरे को सिंपल बात है, आरएनएस से 2-1 से जीतते ये लोग। हाँ हाँ अभी इनसे अगर स्ट्रेट 2 पे जीतते ठीक है, इटर्नेट वाले स्ट्रेट 2 से जीते सीक्रेट जीतते ठीक है, तो वो तो ऊपर सीधा लीडर बोर्ड पे रहते टॉप 1 प्लेस पे बराबर। अगर इटर्नेट वाले अभी 2-1 से जीतते ठीक है इनसे, और अगर सीक्रेट शिप 2-1 से जीतती है इनसे ठीक है, तो इटर्निटी भी तो आरएन से 2-1 से जीती है ना, फिर वो स्कोर पे जाता है शायद, स्कोर पे जिसका मतलब पॉइंट स्कोरिंग अच्छी है वो जीतेगा। आरएनएस क्लियर है, आरएनएस क्लियर है ठीक है, आरएनएस के पास इटर्निटी के सामने एक पॉइंट है और इनको स्ट्रेट 2 से आ रहा है, तो आरएनएस गारंटी क्वालीफाई है। सीक्रेट शिप अभी 2-1 से इन दोनों के बीच में टाई होगा ना। देख आरएनएस इटर्निटी वर्सेस आरएनएस में इटर्निटी जीता था ना। हाँ इटर्निटी जीता था, 2-1 से जीता था ना ठीक है, एक ही मैच जीता मतलब, दूसरा मैच ये ठीक है, और आरएनएस वाले इनसे तो 0-2 से जीते ना, मतलब बिना हारे जीते ना सीधा, और आरएनएस उनसे एक मैच जीते इटर्निटी से, समझा, वो तो क्वालिफाइड हो गए ना सीधा सीधा, क्योंकि एक टीम से वो जीत गए हैं और एक टीम से उन्हें 1 विक्ट्री ली है, तो सीधा क्वालिफाई है वो। भाई ऐसा अच्छा 5 मैन बॉटम पूरा मैच भाई, ये तो खाली रेड पे होगा रे 5 मैन बॉटम। ओ भाई ले लिया, फिर एक मैच जैसा हारने का जैसा एक लगता है फॉर्म में आ गए वापस, ना तो उनको अपने फॉर्म पे भरोसा है कि चेंज नहीं कर रही। अबे इटर्निटी को हराना है ना, अर्ली गोल प्रेशर बनाना पड़ेगा, खत्म है बॉटम पूरा लेन खत्म है, वही ऐसे ही प्रेशर बनाना पड़ेगा। जब अगर वो लोग ले भी लेना 50-50 करके, इनके बंदे सेंटर पे गोल कर पाए। थर्ड मैच है ये, हाँ भाई अगर ये ज्यादा स्कोर मार्जिन से जीत गए तो सीक्रेट शिप वाले लगता है वही रैप मिलने से रहा इनको, अगर 50-50 हुआ तो फिर से बहुत कम चांस है उतने में, अगर ये लोग अगर एक बंदा भी जाके गोल कर देना सेंटर पे बड़ा 50 के लायक का, ऊपर का बेस ना तोड़े, अभी उनको ऊपर का बेस नहीं तोड़ना है, जितना है तो ऊपर का बेस इजी गोल हो सकता है बाद में, जैपुन ने ले लिया तो थोड़े गोल करे तो सेंटर में जाके करे, वही इनका जीतने का वो हो सकता है। इजेक्टिव्स कर रहा है लुकारियो इनका, जेट ने पंच की मारा था वो। Beautiful here, and of course another one there. Secret ship, the Crammer putting out so much damage here. We saw 2 100,000 plus point games from this Crammer, and without question, one of the best crams in the world. Pew pew, Cowboy Cram getting it done. Look at Secret Ship all over this ये तो मिलने का इनको गारंटी है, इसमें कुछ नहीं है। सेकंड पुश हो रहा है, इतना कवर बिठा के रखे ना, तो वो साले 50-50 वाले हरामजादे वो फाइट से ज्यादा ले गया भाई, अरे क्रैम ले गया भाई, क्रैम ले गया। 5 की बड़ी चलती देखना, कुछ नहीं कर पाते बंदे, तो बिना ऊपर खेल रहे देख। एक टीम के कितने मैच होते हैं भाई, एक टीम के देखो BO3 होता है, मतलब 3 मैच होता है जिसमें 2 पहले जीतेगा ना वो क्वालिफाई करेगा, वो ऐसा होता है फर्स्ट राउंड में। टॉप 8 में BO5 होता है, जो 3 मैच पहले जीतेगा वो जीत गया।
able to stop it there. Probably how they were able to hold down हिंदी वाला देखते ना भाई, हिंदी वाला 3 मिनट पीछे चलता है भाई। अब ऐसे डिले क्यों? क्या बता? Hello? Here we go. This Rotom, it looks like it's going down to eternity here, but we have members of Secret Ship coming on, and oh my gosh, is Cramorant scoring 50 in the main? No! They stop him! Come on! Pewee trying to repeat that magic from game one. जो बोला था वही करने गया I था, love to रोक see दिया। it. Unfortunately, they're not able to get this Rotom and just barely missed that score. What a play from Secret Ship. Secret Ship absolutely eviscerating this Rotom. They're going to be ready Play to take ठीक है। over all of the rest of the side of the map. Gyakubari's defense is immaculate. Their scoreline isn't as impressive as others. However, their usefulness on this team is clear. Play defense when the देखा क्या rest of the तूने team is क्रैमोनेट literally doing हाँ everything देखा, else they स्कोर need करके to भाग do. गया यहाँ Great work by them. से। नहीं किया, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया? नहीं, रोक दिया। मैं बोला ना, अगर इनको अगर वैसा एक बंदे को जाके 50 तक का स्कोर करना पड़ेगा सेंटर में पहले, नहीं करने दिया उधर। Right here in their central area, so we could have a bit of a fight here if they catch this. वैसे टूर्नामेंट जीतने वाले को क्या दिया जाता है भाई? डॉलर में उनको पैसे, हाँ, डॉलर में पैसे मिलता है। Here we go. कितना? Dreadnought करोड़ मिला है ना? here in this bottom path. 7 लाख कुछ है फर्स्ट प्राइज। So this is coming up quite a bit for Zapdos. फर्स्ट प्राइज 7 लाख है? नहीं रे, ज्यादा है। Any resistance. And I love again where जहाँ Gyakubari बताता is ना top goal zone protecting that. $500 है, $500K। Because they have First both prize. axes covered. Give up the Dreadnought, can't score up top. Good look by Secret. नहीं, टोटल प्राइस $500K है ना? हाँ तो देख, फर्स्ट वाले को कितना 10 कितना नहीं, $1 लाख है, $1 लाख। तो फिर $1 लाख कितना होता है? कितना होता है? रुक करता ना मैं। 70-80 लाख रहेगा। ओ भाई, सिक्योर शिप पे सारे बंदे गायब। ओ भाई, खत्म, कितना ही खत्म। क्या हो गया? भाई पूरी टीम गायब होगी जितने देर में तो कैलकुलेट करने गया। ओ भाई, निकाल दिया क्या सिक्योर शिप के बंदों ने? नहीं निकाल पाए, नहीं निकाल पाए। अरे आगे 3 बंदे जिनको 3 बंदे जिनको ले लिया विगली ने। ओह, विगली ले गए। अब तो जीत गए भाई, अभी सीक्रेट शिप वाले जीत गए। डेसिडर को करने दे रहे विगली, आगे जा। पागल लीगल हो गया क्या ये विगली? हमारी गाड़ी सुड़ा है, हमारी गाड़ी सुड़ा है, हमारी गाड़ी वही सुड़ा तो बोल है। रहा। 7 लाख नहीं है भाई, 79 लाख है। 79 लाख 79,89,400 रुपीज। 7 लाख पागल है क्या? इतना कम? वो तो इंडिया वाले जीते, उसमें जाके मिले इंडिया। मतलब पकड़ ले भाई, फर्स्ट प्राइज इतना है। स्कोर डिफ ही नहीं है, फिर भी स्कोर तो उतना ही है, क्या फर्क ही नहीं है। एक पुश का गेम है, कुछ तो होना चाहिए ना सही से। भाई ज्यादा स्कोर किया ही नहीं है भाई इन्होंने तो। 3 अल्ट है भाई उनके बंदों के पास। अलग बात है, इनके बंदों के पास भी 2 अल्ट है। इतने ज्यादा पैसे क्यों भाई? भाई टोटल टूर्नामेंट ही भाई बिना अल्ट देके मर गया करीना। थक दिया। पता होगा नहीं हुआ कुछ। और ये टूर्नामेंट साल में कितनी बार और क्यों करने पे होता है? हाँ भाई, साल में एक बार टूर्नामेंट होता है भाई, उसको क्वालिफाई करने के लिए भाई पूरा मतलब पूरे तुम्हारे कंट्री में से जो टॉप की 1 टीम रहेगी ना, वो जाएगी भाई ये टूर्नामेंट करने के लिए। समझ रहे हो? कुछ कंट्री से 2 टीम। अभी अपनी कंट्री से एक ही टीम थी, खाली एक ही स्लॉट था, पता नहीं अगली बार जाता है। ऐसे वीकली को तो प्राइस फुल का आता कसम मिलेगा, टूर्नामेंट जीतेंगे। लेके जाओ वीकली भाई। आप भी प्रैक्टिस करो इंजर के साथ, दवाई है प्रैक्टिस भाई। बहुत ज्यादा प्राइस फुल है ये टूर्नामेंट का। पहला साल है भाई, वो भी फर्स्ट पहला साल है भाई।
all those secures taken तो भी down सोच that एक साथ Zapdos. कितने टूर्नामेंट हो रहे पोकेमॉन के, सब में कितना प्राइस पुल रहेगा। वही तो भाई हर रीजन के हिसाब से मतलब हर रीजन में कितना सारा प्राइस पुल था, मतलब हर रीजन के हिसाब से भाई सबका टोटल करेगा तो कितना होगा भाई। वो तो वो वाला तो भूल ही गया, पूरा ये क्लिक तो भूल ही गया भाई। हर कंट्री में अलग अलग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। पूरे एयर्स तक में कितना पैसा बांटा रहेगा, टूर्नामेंट से भी ज्यादा बांटा रहेगा। इतना पैसा तो अंबानी नहीं कमाता होगा क्या पता भाई। गेमिंग इंडस्ट्री हाँ ना भाई, सीरीज चलता है, गेम कितने सारे गेम है। वही तो भाई पैसा है भाई इधर कंपनी के पास। कार्ड टूर्नामेंट होता है, कार्ड टूर्नामेंट। This game, Secret Chip says we are scoring, we are breaking goals here. Yeah, and it panned out, right? They get a ये जो टावर तोड़ा है ना, इतना पैसा गवर्नमेंट देती है क्या? नहीं भाई, कंपनी वाले देते हैं, गवर्नमेंट कहाँ से देगा भाई? गवर्नमेंट पैसा लेता है, देता थोड़ी है। कंपनी वाले इन्वेस्ट करते हैं भाई। Secure from a Wigglytuff. I saw Wiggly लिया कैसे? ये मारा उधर। डेज़लिंग रिम से, डेज़लिंग रिम से। Wiggly's got it in spades, and especially Yaku's Wiggly. डेज़लिंग उस तरफ था कि उस तरफ था? जिस साइड से उसने मारा ना, क्या बोलते हैं, हाइपर भी उस साइड से ही मारा उसने। Big match here from Secret Chip, and you can ये ऐसा ही चला जाता है। हाँ भाई, ऐसा ही चला जाता है, जब तक गेम चलता है तब तक esports चलता है भाई। मतलब जब तक हाँ वही Let's freaking go, singing him to sleep. जितना पॉपुलर होगा भाई गेम, उतना ज्यादा प्राइस पुल बढ़ेगा भाई। Yeah, that sounds good. Sure. Dazzling Gleam looked good. Yaku was the one that looked in the प्राइस पुल camera फिर and भी did कम the, है। did the IC. अभी तो पहला ही है ना। Yaku, great play, great work. Wigglytuff अभी तो played पहला ही the साल है best रे ये of वर्ल्ड season वर्ल्ड 2, लीग and का। I love it. अगले वाले इसमें तो इससे ज्यादा पैसा रहेगा भाई। लीग ऑफ लेजेंड देखकर तो फिर बोलता क्या प्राइस पुल बांटा है भाई। मुझे पता है पोकेमॉन कंपनी दे रहा है, वो बहुत ज्यादा पैसे कंपनी है, अंबानी से भी ज्यादा पैसा है। क्या? अरे ग्रुप स्टेज में पाया ना पोस्टर ग्रुप। हाँ हाँ। ये देख उधर देख, रेनिसन, इटर्निटी और सीक्रेट शिप 1-1-1-1-1। वही फिर भी सीक्रेट शिप आ रहा है। क्या बोला क्या उसने? वहाँ पे देखना येलो येलो करके दे दिया है ना, हाईलाइट करके। सीक्रेट शिप को स्ट्रेट जीतना था तभी क्वालिफाई होती है। Okay. Well, let's talk to a player from Eternity. I actually, you know what? I'm taking a look over here, and I'm कैसे बाहर you हो know गई? what? Both Hoagland एवरेज गोल स्कोर हो 0 स्कोर हुआ था उस वजह से क्या? शायद उससे ही होगा। We're gonna wash ourselves whatever that was, and we'll see you back in a couple minutes. Peace, love, and hugs. Goodbye. किसका मैच होगा? ग्रुप सी? हाँ, मेरे को लगता है आज के दिन तो खत्म करवाना है उनको। ग्रुप सी का है। अबे वो चारों ग्रुप का आज खत्म करवाएंगे, कल उनको वो करवाना है। सेकंड राउंड ना भाई। कितनी पब्लिक बैठी है? बहुत पब्लिक है। नीचे भी तो हो रहा है ऑफलाइन मैच। हाँ हाँ, फ्री मैच वो तो पता है। एपी का ट्रॉफी मिलने वाली है, सिल्वर और गोल्ड, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के लिए ना। हाँ मस्त है ना ट्रॉफी तो। एक सिल्वर पकड़ गया, एक गोल्ड पकड़ गया भाई। एक गोल्ड वाला भाई, गोल्ड ही पकड़ेगा। ये ऑडियंस नहीं, ये सब भी खेलने आए भाई, दूसरे गेम के बंदे। अरे उनका ये भी रहता होगा ना वहाँ पे, एग्जीबिशन मैचेस वगैरह, फन इवेंट वगैरह रहते हैं, फन इवेंट वगैरह भी रहता है इनका। बहुत कुछ है भाई, पूरा मॉल ही है देख। वही बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं इधर पब्लिक के लिए भी। कभी तो इतनी पब्लिक आती है भाई इधर। लंदन भर गया रहेगा भाई इतने में। तो भाई यूनाइट के लिए इतनी पब्लिक है, इंडिया में तो कभी नहीं हो पाएगा। अभी भाई इंडिया में तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है भाई।
यूनाइट निकले कि नहीं है भाई? हाँ ना भाई, गेम है वो, बहुत सारे गेम है। पोकेमॉन यूनाइट मतलब पोकेमॉन जो कंपनी है ना, उनके जितने भी गेम है उनका सबके वो वगैरह टूर्नामेंट है इधर। और एक साथ हो रही है वो भी। खत्म क्या? नहीं भाई, और तो बहुत मैचेस बचा है रे। अभी तो ग्रुप सी और डी का मैचेस बचा है, कल भी रहेगा मैचेस। तो रेम की एक टीम कम हो गई तीनों ग्रुप से। वही, नहीं तो और लंबा चलता है। ये तो एक मैच और होता, और 3 मैच होते हैं ग्रुप से और एक्स्ट्रा। भाई ये ग्रुप बहुत सही है, सी वाला। हाँ सी वाला, और ग्रुप डी तो ग्रुप ऑफ डेथ है भाई। मेरा फेवरेट पोकेमॉन को देखो, इंडिया को छोड़ के हर जगह चाहिए, ये है। हाँ भाई, सारे देखोगे? देखते भाई कब तक चलेगा, देखते हैं कितने बजे तक चलेगा। वैसे देखते हैं अपन। तेरी चार्जिंग उतर भी नहीं है मोबाइल की? मोबाइल में थोड़ी कर रहा मैं, पीसी से लगाया ना। मेरा तो मोबाइल लाठी 100 से जब से 24 पे पड़ा है चार्ज से लगा के। अरे हाँ, इसका भी मैच था ना यार, पबजी इंटरनेशनल का। इसका देखा नहीं मैंने कुछ, आफ्टर पार्टी इंटरनेशनल। मेरे को यहाँ तक स्काउट ने कुछ तो चिकन निकाला उसने पहले ही दिन। पहला मैच डुओ वाला था। पॉइंट वाला मैच था क्या? नहीं, डुओ मैच था, एग्जीबिशन मैच नहीं क्या? सिर्फ दिखाने के लिए। हाँ, एग्जीबिशन मैच था वो। अभी उसका अलग से पैसा था ना। अरे ये कैसा है, मतलब फन इवेंट है, टूर्नामेंट है बट फन वाला है। इसमें मतलब जो एक्स्ट्रा के मैप पे ना, जैसे कराकीन वगैरह हो गया, वीकेंड हो गया, वो सब मैच। हाँ नहीं, 2 मैच हुए थे। वो डुओ था, डुओ वाला मैच था। और बाकी 4 स्क्वाड वाले थे, 2 डुओ वाले मैच थे। जो पहला था वो पहले जीता। पहला डुओ खेला क्या स्काउट ने? हाँ, उसके बाद नहीं खेला। नहीं, उसके बाद उसको खेला ही नहीं, पता नहीं उसको खिलाया ही नहीं भाई उन्होंने। आज पता नहीं आज खेला क्या था, बस वो एक मैच खेला था। उसके बाद और एक जो डुओ था ना, वो भी खेला था। वो पता नहीं, देखा नहीं मैंने क्या हुआ था उसमें। दोनों में निकलता तो फिर अलग से आता। We are here in London for the World Championships, and take a look at this. Black Hand and Apprentice Unleashed taking the main stage. मैं जीतता तो मैं बोलता हूँ स्नोलैक्स मेरे को लेके आना है। बिना टीम के भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, बिना टीम के कैसे पार्टिसिपेट करेगा भाई? ये टीम गेम है भाई, तुमको टीम लगेगा भाई खेलना है तो। दूसरा है ना पोकेमॉन का दूसरी टूर्नामेंट सोलो वाली चल रही है। अब सोलो में क्या करेगा भाई? यार सोलो टूर्नामेंट चल रही है दूसरे गेम की। कौन से गेम की? हाँ वो, हाँ अगर तुमको खेलना है तो भाई सोलो वाला गेम खेलना पड़ेगा अलग से, जो दूसरा वाला है, जो क्या नाम है उसका, यूनाइट में नहीं कर सकते तुम। वो उसका पोकेमॉन वर्ल्ड ऐसा कुछ है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऐसा कुछ है। अभी चल रहा है उसका। फिर वो कार्ड वाला है, कार्ड वाला पहले कार्ड कलेक्ट करने पड़ेंगे। अपने कार्ड लेके आना पड़ता ना उसमें। गो का भी है टूर्नामेंट। हाँ गो का भी है, बट गो का टूर्नामेंट कैसा है बताएगा? हाँ मतलब मैंने देखा था एक वाला, उसमें पूरा एक ऐसा ओपन ग्राउंड है, मतलब पूरा वन की टीम ने पूरा एक ग्राउंड पूरा बाई किया है क्या क्या पता नहीं, पूरा जंगल बिंगल टाइप में। और उसको वो लोग ने पूरे पोकेमॉन में से डाल के रखे, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब गेम में चलता मिलता है ना वो गेम। उनको कुछ पैसे रेयर कुछ तो पोकेमॉन और कलेक्ट करने के रहेंगे, वैसा कुछ था। हो भाई, मतलब पूरा ये बना दिया ना जंगल पूरा, मतलब बड़ा सा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। सिटी की जितना बड़ा एरिया रहेगा उसमें जंगल विंगल सब पे एकदम वैसे एरिया में पूरा उन लोग ने डाल के रखा है। ब्लैक एंड आ गए भाई, इनका ही है ना, इनका है absol, इनका भी absol है।
One of the only ones smiling. They're ready for action. चलो सोने जा रहा जी भाई गुड नाइट बाय बाय time, isn't it? It's super exciting. Let's take a अरे look गैप at तो लेके उनका Apprentice absol right है here, i9 का getting ready वही इन for दोनों i9 वाला का मैच confusion है ना so many big names here. I feel like i9 तो Zante फिर is डी always ग्रुप a में है huge player to watch here on Apprentice. All those second place finishes. Is this tournament Worlds going to be their #1? Well, we thought the same thing about Black Hand in the regional finals. When they're ever going to there, Apprentice Unleashed looking to repeat. हेलो भाई हेलो एक्चुअली वेलकम टू द स्ट्रीम भाई साउंड क्यों बंद करते रहे भाई बीच में साउंड बंद हो गया रे This is the first match of their tournament right here. I can't wait to see these two आरएनटी teams हार go गई at भाई it. As वो we've तो said, बताया भाई Duke's next. I mean, I'm sure they've scrimmed, पहली they've बार been हो गई across the पहला pond, मैच but तो it's उसी ग्रुप का time for था them to be in the एक भी same नहीं जीते ना room वो on the main stage at the एक ही जीती World Championships and see मतलब who नहीं can बीओ really थ्री की एक Well, हाँ I भाई cannot wait for these teams to get underway. आउट ऑफ टूर्नामेंट है आरएनटी Specifically in हाँ the भाई top पता half, है you've got Overlord for Blackhand that likes to take that path, and Klaus on Apprentice that likes to be there as well. Both incredibly great top lane क्या players भी with प्रैक्टिस नहीं करके Lucario, गए with थे बंदे Machamp, with Zarina. They can play them all, and it's just about jockeying. Who's going to टूर्नामेंट make नहीं maybe बोला the first kind of wavering pick off of that and breaking the mirror of what we expect to see between the two. Now, a टूर्नामेंट तो question I ऐसे ही नहीं have in जीतने my वाली head थी is, what are we going to see at a एक्सपीरियंस में Jungle Book? मैं आता हूँ रुक खा पी के भाई स्ट्रीम एंड कर दे यूनाइट खेलते आजा नहीं भाई यूनाइट नहीं खेलना मेरे को आज आई मीन उसकी स्ट्रीम बंद करके पीयू की स्टार्ट कर दे On the other hand, though, in नहीं the other भाई pocket, they like to keep आज मूड themselves नहीं a pretty खेलने का sturdy भाई आज तो Dragonite, मैच and that देखेंगे Hyper खाली Beam is always looking to secure, and they are a phenomenal player on that Pokemon as well. One of the first people to pick it up when that Pokemon was released. So I guess the big question here is, are they looking to win big fights, which is maybe a little easier with Cinderace, or are they looking to secure big objectives, which is maybe a little easier with Dragonite? Obviously, we have seen so much Dragonite here at the World Championships. Everybody is loving the Dragonite, but ooh, I would हेलो love भाई to आयुष see भाई a हेलो Cinder here on वेलकम the टू द main स्ट्रीम stage. Blackhand is one of the teams that will take the body when they can. They will take the Dreadnought after they've dispatched the whole squad. They will take the Rotom after you're respawning. They will take the Zapdos after they sent you packing. भाई देखते यार क्या देखने मिलेगा इसमें नया कॉम्प Taking the body, and it's off the back of Jungle Book and Overlord, and the other three supporting the back end of that is how they're going to be able to convert onto that strategy. कौन सी स्ट्रॉन्ग टीम स्ट्रॉन्ग दिख रही है देखते भाई टीम कॉम देखते भाई उस हिसाब से बताएंगे कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग दिख रही है भाई देख के तो बता नहीं सकते हम So the question is, how does Blackhand want to deal with that? I mean, are we getting down and brawling, or are we looking to secure these objectives as well? I mean, look, when Apprentice steps onto this AOS island, into Remote Stadium, I think they need to prioritize getting to the objectives before they get dusted. Absolutely. That really helps take the impetus out of Blackhand's hand. You don't play into Blackhand's hand. And then you can leverage the game in different ways starting from that point. We have to be careful with Blackhand's hand because we might start getting into a no-show situation. There are just too many ways. कोई अटैकर यूज हुआ है गार्डियर के बाद मैं थोड़ा नहीं देख पाया हाँ रे उसके बाद डोराडॉन यूज हुआ था गार्डी ये क्या बोलते अपना डेस्टुडाई यूज हुआ था भाई और क्या अपना क्रैमोरेंट यूज हुआ था भाई ये सब अटैकर यूज हुए हैं आपके जाने के बाद ये लो भाई सिलियन भी है इसमें ये लो आपको सिलियन का गेम प्ले देखना था ये मैच में देखने मिलेगा भाई सिलियन और लुकारियो भी दिखने मिलेगा भाई ओवरलॉर्ड की तरफ से देखो यार लुकारियो वाली टीम ये दिख रही है स्ट्रॉन्ग दिख रही है मेरे को तो ये लो भाई दोनों मतलब दोनों पोकेमॉन देखना था ना दोनों पोकेमॉन एक ही मैच में देखने मिलेगा भाई तुमको तो सीख लो भाई देख के कैसे चलाते भाई वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर देखो कैसे चलाते भाई बंदे निंजा और सिंडी यूज हुए क्या नहीं अभी तक तो हुए नहीं देखते भाई आगे हुए तो ठीक है भाई Because Blackhand is not sure what they're stepping into,
they've reverted to a very static composition with key components that they know how they operate, that have good matchup spreads across the board, so they can't. अरे निंजा सिंडी के अलावा भी और ये पॉकीमॉन सीखो ना भाई ऑलराउंडर में, मजा आएगा भाई आपको. Jungle Book going to Dragonite, of course Overlord going to Lucario. Those are kind of safety nets for them and really still gives होगा भी नहीं मुझे पता है, बहुत पता है. भाई मचम जंगलर है भाई, देखो मचम जंगलर फिर से भाई. Goes on slow, excuse me, Snorlax as well, and they're doing the 1-1-3, the patented Western patterning, and Gek is getting pressured very hard because there's 3 players there. This is such an अबे interesting 3-1-2 Lucario, one of the क्या only स्टार्ट कर Pokemon रहा that can play that है? top. लुकारियो सोलो टॉप कर रहा है भाई ऊपर. And this used to be the most popular strategy, at least in North America and EU. You don't see it as much anymore, but here we do have that classic 1-1-3. 1 Pokemon top, 1 Pokemon in the central area, 3 in that bottom path. Huge preemptive rotation by Blackhand. That Dratini went up, and now Curios is going to have to babysit as the Blissey switches to come downstairs. That Slash came. Here we go, getting ready for this fight. We've already got level 5 on this Overlord right here, and it looks like we've got ourselves a power-up punch Lucario, bringing 4 up to this top path to deal with this Serena and Hoopa. भाई लो भाई, ओवरलॉर्ड ये देख रहा है भाई, एक्सट्रीम देख रहा है उसकी, कितना एक्सट्रीम चला है उसने. ये लो भाई, माचम जंगलर, हाँ भाई. I have to correct myself here. That is not power-up punch. That is extreme speed. I saw a quick dash, and I called it too soon. एक्सट्रीम स्पीड देख रहे हो भाई, लो भाई वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर देखो भाई कैसे चला दे भाई एक्सट्रीम स्पीड, देख लो भाई, सीख लो भाई. Overlord's going to be relentless. They're going to get their experience that way, and of course I say that they dart back out to Klaus to keep them from getting too much going, and Zervis has to catch the reset. And this is what Lucario is known for, Dupesnax, being up here in this top path and just making sure that they can still secure all of these wild Pokemon, even against 2 enemies at once. Yeah, Overlord has been up here by themselves a majority of the time, still out-leveling the other team, and that speaks volumes about their play skill. And you want to talk about a 1-2 punch that I mentioned before, JB rolling through with Overlord, just taking a look, seeing how they're doing. It's just so incredible to see them doing so well in this top path as 1 Pokemon when they have thrown a lot at Blackhand in that top path. And here we have Sante maybe sneaking into that central area trying to steal some wild Pokemon. Trying to. No pips on the map though, as we can see, so maybe a fruitless endeavor as that Machoke is coming down with the Sylveon, and Elo and Gek are scrapping over this Audino. We've got ourselves Dreadnought coming up here in just about 30 seconds. We're close to a Dragonite, but it's waiting for some experience there in that central area. However, Lucario looking very good already in level 7. Curio's trying to get up to level 7 themselves as Slash is pushing forward with Elo. They've got the presence of mind here because that Dreadnought is in 10 seconds. Sylveon goes down. मचम जंगलर भाई, हाँ यही तो बोल रहा हूँ तुमको, सेंडर्स और ग्रेनिंग जब हो गया भाई, अब देखो लुकारियो की पावर. हाँ भाई अब तुम देखो भाई, मचम भी देख लो भाई कैसे वर्ल्ड के प्लेयर कैसे खेलते हैं भाई. लुका इज अमेजिंग भाई, खत्म है लुकारियो भाई, Sylveon भाई. They're pushing forward. Klaus is trying to catch the reset. This Dreadnought's in half. And look at that big block trying to stem off Blackhand. But Serena steal. But it's the Serena that comes in and takes it in the face of Jungle Book. Wow, I mean, that Hyper Beam was ready to go, but that stomp was just a little bit faster. Lucario cleaning him up right here. Big 3 KO for Overlord. Is Overlord Lucario कैरी हो रहा है भाई इधर तो. That huge Unite move, catching a body, and then that quick E-speed dash, catching another, and of course they're rotating up top. Blackhand still keeping up in experience despite losing the Dreadnought, and now they're all over this road as well. देखो भाई Lucario देखो. Now they're pushing a little forward. Not sure if they want to break this first. Looks like they do. Unfortunately, Slash not able to get it done, sending this Rotom down towards this top path right here, and they're not going to be able to score before it walks in. Well, that's not that big of a deal. They got to be happy with the work they did there. 115 to 20. लुका की पावर ओवरलॉर्ड ही दिखाएगा, बेस्ट लुकारियो प्लेयर. फिर क्या होगा? Time to eat those bees, get as much experience as you can. Dragonite looking very, very fed here. Level 10 already. Hey, so is Overlord. Yeah, Overlord, the person that was in the top path by themselves almost this entire game, about to tick over to 11 in short order. This is why Lucario was so dominant for so long. They are able to take that entire path by themselves. It's so impressive. भाई ऊपर का पूरा बेस खाली हो गया, पता है? वो देखो भाई खत्म है. एचपी देख रहा हो कितना कम कर दिया उसका.
Hoopa is going to see, but we got to engage up top. That's a big भाई top पे push हो गया. Hyperboy's trying to find Elo. Dragonite Unite going to crash down for JB. Jungle Book going to look, but they're low on HP. They're forced to scramble. They turn around and dart back. Give me my reset counter. They're trying to get back on the map as quick as possible. Blissey and Elo trying to hold it down. Slash in the face of 4. Not going to be good. That egg bomb falls short, and all those points are going in. Big play here from Apprentice, using some Unite moves, taking down a massively fed Pokemon like that Dragonite right there, while everyone heads down to this bottom path. We do have Hoopas ready to bring the team down, and Apprentice is opening that portal right now. So is Blackhand. Yeah, Elo trying to bubble them out, and they're trying to play far forward. ये लो भाई, लूका देखो, खत्म है भाई, यूनाइट चल गया. Just a big Unite by Overlord back the other way. They're trying to dart out with that boosted speed. They're rolling back down in his book that's been on Dreadnought the whole time. They get chipped up with the फिर से and Apprentice takes it with the Hoopa. That is absolutely huge. Curious भाई 2 स्टील हो गया भाई. and the player for that on Apprentice is the Dreadnought. 2 Dreadnought स्टील किया Apprentice वालों ने. पिछले इसमें ये ले गया था, क्या बोलते हैं अपना सरीना ले गया था इस पहला वाला डेड, और ये दूसरा डेड अब हूपा ले गया भाई. Jungle Book before that hyper beam could find its mark, and Apprentice able to eke that out from under him. Apprentice has got to be feeling good about that exchange. Score-wise, nice little play happening here in the bottom. Lucario को देखो वेंडी. But you can see Apprentice looking to take down this Rotom. Do they know about this Lucario? We're going to find out if Lucario can steal it. No, they cannot. Nope, just Overlord trying to their best guess here at when they can get that thing. Say nope, I'm going to e-speed Bottom push होने वाला 5 man. Catch myself on a different day. क्या स्टील है भाई, वही ना भाई, देख रहे हो 5 बंदों के बीच में बंदे स्टील करके जा रहे हैं. All day, and they're a team that's great at it here, leaving Jungle Book up here, but we've got a fight here at the bottom path. Yeah, they're trying to make it happen on their own goal zone here. Apprentice tried to push, but fortunately just reel and say, this isn't where we want to give up the game. We want to give up too many KOs. Let's just back off. All right, heading back to the map. They are going to go ahead and get as much experience as you can. Looks like they just let that Rotom walk in the top path. Didn't even need to defend against it. Got it down to 8 points and just let it take a little walk. Well, I'm looking at Blackhand's levels here, and they're trying to press that advantage a little bit. They are just slightly above levels at Apprentice, but Apprentice has managed to get almost every objective on this map. Here we go. Big Hyper Beam right there onto Klaus. Egg Bomb finding its mark as well. They're going to have to run. Klaus just backing off. Hoopa Portal comes through, pulls through some AHOS energy. Klaus is like, my pockets are full, Chief. I can't pick those up. Yeah, I would have loved a berry right now, but the AOS energy, no thanks. All of Apprentice is going to rotate down. This is going to be the last Dreadnought of this particular game, as Curios is desperately trying to crank up their levels. They do hit that critical 13, though, as Overlord engages deep. Once again, Overlord getting very, very deep in this fight, but it's just such a difficult Pokemon to deal with, especially when it's piloted by such an amazing player like Overlord right there. Snorlax heading home. Everyone लो भाई Zap fight होने वाला है, देख लो भाई Lucario का e-speed. Hyper Beam finds its target right now, and we've got Zapdos here in 5 seconds. Zap पे fight already start हो गया. Start this fight, Machamp with a big Unite move. J-Boo Unite moves in. They're trying to find their mark, but they get stunned down really quick. Machamp gets the KO on Dragonite. Book is down. Dragonite खत्म है. The Zarina, it's 1-1, and they still got battles left. They're pushing forward, and the Snorlax goes down to the Blissey. That's 2 down. Now they have no defense. Curious, you find your way in. We're looking. Overlord is still tons of HP. So is Elo and company, and Elo's just sandbagging their Unite to bring the team back through. And here we go. Overlord just tapping the Zapdos a little bit. It looks like Machamp might be resetting. It is. So this fight stalled out. Couple KOs on both sides. A lot of Unite moves used, but double se fight होने वाला है another one here in just a moment. 2 Unite moves for Blackhand, 1 Unite move for Apprentice Unleashed, and they're looking. They're blocking them down, and Zante's coming through. They're trying to bone. Now JB still has their Unite move. भाई सरीना खत्म. अरे भाई 2 बंदे खत्म कर दिया. They're trying to find their way in. Klaus is getting stomped on, or excuse me, Elo's getting stomped on by Klaus. They 3 बंदे. 3 बंदे खा गया. There's 3 players down for Blackhand and just 1 Lucario that's used early, and they are on the edge of going down here. भाई क्या होल्ड करा रहा है भाई. हो Lucario. This Zapdos is so incredibly low, but it's still anybody's. Oh भाई Zarina ले गया. Big old stomps. That was
the Zarina show. KO streak of 3, getting another KO there, getting the Zapdos. Chelvin gonna hold it down, but now they gotta play some defense as there's a lot of players that are low on HP. Wow, almost taken down by the Blitz. GG भाई, Zap fight पे scene. Were able to score that egg bomb, not quite getting the KO right here. And Apprentice now going up 469 to 223. Blackhand still GG भाई, गया भाई ये गेम तो. Only 2 members of their team on the other side of the map, and I just don't Wallet carry है इनका, I think around 4000 लुका गेम्स है इसके. भाई लास्ट तक सर्वाइव किया रे उसने, ज़ैप फाइट में भी, बट थोड़ा सा हो गया भाई. Looking great here. Absolutely. On the back end of a game 1 loss. Now it looked like Blackhand and Apprentice both playing extremely well there at Zapdos. So much so you got a couple KOs on both sides, a lot of Unite moves used. Everyone needs to reset and then come back in for that fight. And in that fight, Apprentice was gone. Yeah, Zarina came back in. They got KO'd early, but they came back in a big way. They have 5 KOs on the game. 3 of them were in that last fight. And of course, they seal up the Zapdos as well. Chelvin with 6 KOs themselves doing tons of work. And again, just showing that the KO metric is not indicative of who wins a game. Absolutely not. Take a look at Overlord here, though. Oh boy, 101,000 damage. That's that Lucario who's all alone in that top path, able to hold off 2 Pokemon, able to put out 101,000 damage. But this is a team game here, Dupe Snacks, and they weren't able to win it. No, they were not. Of course, as we can see right here, Apprentice wins off the back of his Zapdos, taking that down on the refight. They had अपना अवतार बंदा स्ट्रीम से बंदों के नाम नहीं हटा. Came back in a big way, sealing this thing up for Apprentice in the face of a Blackhand stand. Just some incredible. अरे इधर देख लो ना बंदों के नाम क्या हो रहा है, इधर बंदे नहीं दिख रहे क्या तुमको. Players getting ready, loading in here. इधर सेंटर में खड़ा करो क्या उसको. 4 on 2 from Blackhand. Yeah, they really tried to get those Bs and push, and they did. They got a great amount of points in here, leaving that thing at 15, looking for a big overcap later in the game. Here we go, another fight down here at Dreadnought, and remember, Blackhand just had every Dreadnought seemingly slip through their fingers in some very, very wild ways. Yeah, takes this one. Blackhand was bought, excuse me, as Apprentice enough time by Gek on that big block and allows Apprentice to take it. And of course, another big block here opens up the goal zone. And here we go. Finally, a Dreadnought secured here. We had Overlord doing as much. लुका ने अच्छा खेला, 1 लाख का डैमेज दिया है, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिला. अरे ज़ैप फाइट पे भाई खत्म हो गया भाई बंदे. सारीना 3 KO निकाल लिया भाई, सेकंड मतलब डबल से जो फाइट हुआ था ना उसमें. Chelvin getting the nod, 6 KOs, 3 assists, score 140, close combat, dynamic punch, and stacking, doing tons of work. Look at that there. Yeah, every time they're scoring with that attack weight, called it a stack weight. Every time they're scoring with that stack weight, they are getting bigger and bigger and stronger and stronger. Let's see if either of these teams change up their strategy here heading into game number 2. Looks like Blackhand's confident what they brought to the table. You know, they're saying, look, JB got chipped up on that second Dreadnought by a Dreadnought stomp, made him miss that Hyper Beam. That's something going to turn the tides there. We really could have taken the body and leveraged some KOs. Apprentice, on the other hand, they're like, let's mix it up a little bit. We see Gek on the Snorlax not locked in, and Zante was hovering there for a moment on Decidueye, teasing everybody at home. Yeah, it's going to be interesting to see what they want to bring in here to game number 2. I mean, changing things up when you're winning is a really interesting strategy. You can throw your opponent off. Obviously, Blackhand is kind of expecting what Apprentice is going to bring in, what they just, lost to. Absolutely. But that is not what they're doing here for game number 2. Yeah, notably Klaus there. Just great work in the tail end of that game with Zarina. Just switched up, grabbed Lucario for that Lucario showdown that we've seen time and time again in the NA and EU regions. Yeah, of course. 2 Lucarios, like ships in the night, passing each other as they take every bit of experience up in that top path. But the question is, are they going to do that, or will it be a 2-1-2 that we've seen from Apprentice? Second match देखो भाई, second match देखते भाई. क्या होगा भाई second match में? क्या लगता है तुमको कौन जीतेगा? Let the Lucarios power up, stack it past each other, and then try and join into skirmish and leverage that way. Well, here we go. Game number 2 between Apprentice and Black. मैंने देखा किसी ने भी 100 का डैमेज नहीं दिया है. To stay in this series. Apprentice, your orange team. Blackhand, your purple team.
Well, as we called it, 1-1-3 going through, but an early Hoopa invade in the face of that Dratini is Apprentice Unleashed, putting work in early. Yeah, take a look at that from Apprentice. So it's not a typical 1-1-3, I guess, because that Hoopa is just messing with them there in that central area as we have Zarina and Snorlax fighting here in the bottom path. Yeah, it's forcing Blackhand's Hoopa to peel back and try and help out to make sure that the Dratini can get all the experience they need, as Curios and Slash are just taking all the stuff on their side of the board. Here comes Gekko trying to get some scoring. वाली टीम जीतेगी देखते भाई कुछ बता नहीं कुछ path for Apprentice right here, so their plan of bringing Lucario up and then sending up Dragonite is working, and now they're heading to that central area. They've got a heavy invade strategy going on here, pressuring Blackhand in different ways, maybe in ways that they weren't particularly anticipating. Overlord's good, one on two. Let's see what they can do here. 2-on-3 in tandem with Jungle Book. Overlord, obviously, just such an incredible player. And we've got two different Lucarios we're looking at. Okay, goodbye. I thought we were looking at two different Lucarios, but I only see one now. Chelvin absolutely just hyper-beamed through the chest of that poor Dratini as they're trying to build up to that point as well. And here we go, a power-up punch Lucario. Yeah, that big Dragonite boosted attack. Dragonair boosted attack. Two different Lucarios, one on extreme speed, able to dash versus Lucario either. One on power-up punch, able to secure big KOs and big objectives. We're going to have to see which one prevails here. Well, Slash is babysitting. They're keeping an eye on Gek and Zante there to make sure that they can't push too far forward. But look where the Hoopa is again. Just being a menace, being in the face, causing static for Blackhand, catching their own resets because they can, and then just coming back down. Literally just being a menace. Yeah, and this menacing Hoopa has kept this Dragonair to Power level punch 5 versus so E far. speed. You look देखते on भाई the कौन other side, you look at कौन Apprentice, किसको it is डिप a देगा. level 7 right now. I mean, that's exactly where Chelvin wants to be for sure. They've got to be comfortable looking across the map to see that they're out-leveling their counterpart. Without question. I mean, the first to 8 at this Dreadnought is such a huge thing for these Dragons. Ooh, Snorlax taking a little bit of damage here, going to get pushed out and sent back home through this hyperspace hole. Yeah, they catch that reset, they're coming back through. Zante gets their points, and Klaus there as well. As Zante's going to be stomping through these bees. Klaus sitting up top, and the bees downstairs are absolutely eviscerated. As all of Apprentice gets pushed back, they take a good chunk of damage, and Blackhand looking not bad. We got 10 seconds here until Dreadnought, and you can see that Apprentice has run back towards their central area. They are looking for that Dragonite. They know it will be a huge difference maker at this fight. The question is, will Blackhand just take this Dreadnought from them before they get there? They're trying to take the body, just Overlord in their face. Blissey gets a KO, that Slash gain. क्या लगता किधर जाएगा भाई? Dead fight हो रहा है इधर. They're eyeing down Chelvin as well, but it's the Snorlax that fights the dust to Curio. Slash close है भाई, कोई खत्म नहीं हुआ. Chelvin just going to try and line up a hyper beam. It's भाई a tad bit early. लेगा भाई. Gets a KO on Hoopa, and they're pushing Overlord him. लेगा भाई. Overlord seals it up. Two players down. GG भाई Overlord भाई. लेगा वेंडी. We were worried about their levels earlier. Not anymore. Not anymore. I mean, take a look at that. We saw the difference maker was that Lucario. The question I had on my mind, who was going to get the big secures? Would it be the extreme speed, or would it be Overlord coming in and winning a big fight? It's a little bit of both for Overlord. Blackhand trying to dial in another good little hyper beam here. Hyper beam off happens. Zante and Xerxes are both chunked on that hyper beam. Dragonite Unite move in a safe place so they can use that speed to push forward. They get a KO on Zarina. Jungle Book is absolutely heating up. The library is open. The books are free out here on AOS Island. Jungle Book 3 KOs in the last 30 seconds. Take a look at this. I mean, they are just doing so much work right now. It felt like Blackhand was quite a bit behind earlier, but not anymore. That Dreadnought has reinvigorated them, and they're looking for a big KO on Klaus here. Overlord domination भाई, वही ना भाई. देख रहा भाई. Solo carry हो रहा है क्या? Goal zone was at 3. Curios comes from downtown across the map to dunk in their 40 with 2 seconds left. Huge overcap. Blackhand up 223 to 88. I don't know what Blackhand was doing last match, because if this is what they're doing this match, it's a very different team. The score is crazy far ahead. They are winning every single fight in front of them. Maybe they just needed to adjust to what Apprentice was up to. Maybe this Lucario choice from Apprentice really wasn't the way to go. Well, they do still have this arena on the map, which means they saw an opportunity somewhere. Now, it hasn't paid dividends कौन yet. लुका अच्छा है भाई? Overlord खेल रहा है जो E-speed वाला, वो वर्ल्ड का बेस्ट लुका प्लेयर है भाई वो. Great job defending this goal zone, but we've got a Dreadnought on the horizon. Yes, we do. We have both Hoopas from both teams heading down
to this bottom path. But Apprentice Hoopa is only level 8. It's not able to bring the team down there quite yet, but we are able to get a big portal here for Blackhand. And we're going to get some points and a big portal. Yeah, well, the portals are in, and Chelvin's going to try and catch a reset as Zervis does go unbound just in time for Dreadnought, but the Dreadnought's getting dusted, the fists are flying. Overlord again takes it for the Hyper Beam, can even find his mark. Zarina used their Unite move on Jungle Book. Jungle Book's trying to find their way out. Zante's getting absolutely chunked, but they glide into safety here as the Dragonite Unite lands on top of Zervis. Can they convert into a KO? No, they're going to leave the feed to Overlord and Slash. Overlord secured by OP है भाई, Overlord playing like a secured by. team with something to prove right here. This is a very different Blackhand from game 1. They are crushing it right now, and this E-Speed Lucario securing all of these objectives in front of the power-up punch Lucario. Yeah, they're gobbling up this Rotom after that great Dreadnought fight, and they're going to get this thing pushing right in the face of Apprentice. I'm just questioning, are they going to miss Daisy this thing and drive it in? Yeah, you never know. It looks like they're just leaving it right now just so they can go run around the map, grab as much experience as possible, and let Apprentice deal with this Rotom. Well, they're dealing with इस वीडियो को 1080 पिक्सल में चला लो भाई, 1080 पे ही है. That's exactly what they're doing. Getting some good levels in wild Pokemon while they're at it. That's right. It just gives Blackhand an भाई यार ये ऑटो पे क्यों चल जाता है amount वैंडी. of time to get experience and get ready for another big fight. Right now, Apprentice is behind, and as we said earlier, they need to win these games against Blackhand. Without a doubt, having dropped onto iClan already, this is kind of a do-or-die match for Apprentice here. They want to seal this thing up and give themselves a clawing and fighting chance into getting into day 2. Blackhand ain't about that action. They don't want to leave it up to chance. They want to take it now. Absolutely. We see Lucario here just possibly waiting for a little bit of a catch coming out of this tall grass, but it seems like no one really wants to commit to a big fight here because if you give अब them some of डबल these टैप KOs, पे you're giving a lot of तुम experience आगे to the करो. other team. लुका देखने में मजा आ रहा है भाई. भाई देखो यार वर्ल्ड के बेस्ट लुका प्लेयर कैसे खेलते हैं भाई. And JB rolling down, the book trying to support as well and really deliver on that 1-2 punch we've been talking about. Now here we go, 10 seconds until this Dreadnought. And it looks like Apprentice is just going to kind of leave this one. They're not too interested in it. In fact, they're mobilizing up here in the top path. I think they're looking for a top score score होने right वाला है. now, and I think they're going to get something out of it. Hoopa possibly coming back up top to stop them, though. Here comes the opposing Dragonite to contest. That's Chelvin trying to find their way in because Blackhand had to rotate up stop to not keep that goal zone, intact. They're coming through. Elo comes in with the support. Hyper Beam finds its mark. 18 जी seconds भाई 30 लेवल का और रुका है भाई लुकारियो और अपोनेंट वाला 12. It looks like Lucario is a bit of a lookout right here. Snorlax coming out just saying, hey, we're here. We are ready to fight. The question is, who is going to fire this first shot and kick this thing off? Snorlax pushing towards low. They're trying to find it. That's a KO on Klaus as soon as a Blackhand back on the backside. Klaus and the Zapdos Radiant is going to fire this first shot पैर and फिर से kick दिखेंगे this यार. thing off. Fight. Snorlax pushing towards the Zapdos right here. The Hoopas are unbound. The भाई Unite द फाइट moves are स्टार्ट हो गया they're वैंडी. all over this Zapdos and they're trying to find their भाई way 50-50 हो रहा है. Picks up the Bliss Assistance. They're going to be able to leverage that for heavy damage back लुकारियो on the को ना backside. चला. Klaus is low. They're trying to find भाई it. That's a KO on Klaus कौन ले as गया soon as a भाई वीनसोर ले गया वैंडी. Chelvin uses their Unite move and Curios जी जी वॉइस गया भाई मैच अप्रेंटिस के हाथ से. down for Apprentice. They need to go for that back cap, but the goal zones are open. The ducats are coming in, and Blackhand is stretching out this lead. Blackhand just scoring more and more points, securing that. Blackhand जीत गया भाई मैच. Might have been a pedal dance that actually took it down. I saw two massive hyper beams. 633 287. That called the fight. The very slim margin and small window that Apprentice had to back cap after Blackhand secured that with a couple players down has completely भाई closed. ओवरलॉर्ड देखो भाई कैसे घुस रहा है. Do a big time defense as it doesn't look like टाइम भाई ओ भाई स्पीड देखो भाई इसका. देख रहे हो मार के वापस आ गया. Yeah, taking every little bit of experience, just making sure that they can't get their Unite moves back. They've got a minute left, and they are way up on the scoreboard here. Lucario just trying to get away from this Dragonite right now. It's a level 15 Dragonite. Klaus darting through though finds an opening. Let's see भाई ओवरलॉर्ड और ओजी दोनों क्रैक्ड है लुकारियो में. हाँ भाई that bell is rung and that's a big time KO. There we go. Blackhand just defending here at this bottom point, and it भाई लुकारियो देखो this match is over. खत्म है भाई. Looking for a reset क्या चल रहा है कौन जीत रहा है. हाँ भाई ओवरलॉर्ड का मतलब ओवरलॉर्ड खेल रहा है लुकारियो स्पीड वाला. पहला मैच हार गया, दूसरा मैच वन साइड डोमिनेशन करके आ रहा था.
मतलब जीतने वाले। ये ब्लैक एंड वाला ही चल रहा है क्या अभी तक? हाँ ब्लैक हैंड वर्सेस अप्रेंटिस, मतलब सेकंड राउंड चल रहा है। जीता पहला नहीं, अप्रेंटिस वाले जीते। कैसे जीते? डोमिनेट करके जीते कि नहीं, किया है? ड्रेड पे फाइट हुआ, पहला जो फाइट हुआ वहाँ पे मतलब ये हो गया था, रीसेट हो गया था। फिर दोनों बंदे मतलब दोनों टीम के एक एक दो बंदे मरे थे, वो रीसेट हो गया है। बाद में अपोनेंट जो अप्रेंटिस वाले है ना, उन्होंने उनके शरीर ने 3 बंदे मार दिए। फिर इधर जैप पे बंदे बचे थे, फिर वहाँ पे ले गए भाई जैप अप्रेंटिस वाले। आ गया ना लुका, आ गया ना ब्लैक हैंड। भाई वो ब्लैक हैंड वाला लुका रियो भाई मरा ही नहीं पूरे मैच में। वो बात ये सरीना का गोल हो जाता है। क्या ही खेल रहा भाई ये तो। सरीना कौन है भाई ये? दोपहर को ही बोला था इकोला शो और लॉर्ड का लुकारियो देखना। हाँ भाई I was wondering what was going to happen. I mean, would the power-up punch Lucario be able to overthrow the Overlord? 1-1 हुआ। Take a look at that. हाँ 1-1। मैं पिछले मैच में 1 लाख का डैमेज दिया था लुकारियो ने। इसे बोलता ना अभी आएगा लुकारियो। रीजन टू रीजन है ना, चेंज होगा। Exactly. Blackhand did have one standout, but that damage was universal across the other. अभी कितना डैमेज दिया? 2 ही किल लिया। 79 78 They found their rhythm as a team. किल देखना, इधर निकल रही नहीं किल दोनों टीम से। Yeah, literally the first game of the day. So this game too, they were heated up, warmed up, and they were able to deliver in game 2. डिसाइडर मैच होगा अभी तो। सरीना प्लस ड्रैगन एक डैमेज लेस देन लुकारियो डैमेज। ये लुकारियो ने कितना डैमेज दिया? 35 सामने वाले। हां वो पावर पंच कर रहा था। Really well for Apprentice. Absolutely. Off to a great start here. All Extreme extreme the counter Pikachu हो गए। They were being menacing with the Hoopa in the back in Blackhand central area, just putting the screws to him, and Blackhand really found their footing just in time for this particular Dreadnought. Yeah, what a great Dreadnought for them. And then after this moment, it felt like Apprentice just couldn't catch a break. Blackhand could do whatever. चालू भी हो गया इतनी जल्दी? Scoring at will, taking objectives, वो तो हाईलाइट भी कर रहा था। big wins. Ding, ding, ding. By 11 plus kill. Curious again for that one, traveling all across the map to get that big 37-point overdunk. And of course, this is the big skirmish. अगली गेम डोमिनेट कर दिया था ब्लैक एंड को। Very well, but it's on कौन सा फर्स्ट गेम में? They dove in, they picked up the bliss. कौन से गेम का दिखा रहा है? सेकंड गेम का दिखा रहा है। हां सेकंड गेम का ही। अरे ब्लैक एंड वाले पूरा डोमिनेट किया गया। I was wondering if it was a big pedal dance just running around near Zapdos, but no. 2 hyper beams and a Venusaur Unite move at the same time. So much damage coming down upon that Zapdos, and that is a big W here for Blackhand. Jungle Book with the player of the game. 5 knockouts, 5 assists, 164, and definitely found their rhythm in this game. Actually dealt more damage in the first game, but the better team player objective-based damage delivering this game and getting it done. ज़ैपर में एक्सट्रीम वाले से किल नहीं होता बड़ी की वजह से। And here we go. Oh my gosh, I would love to see them on Cinderace, but it looks like they finally got their footing here on Dragonite. I don't know if they're dropping it. However, Apprentice, yeah, they might not be bringing that Lucario back here for Game 3. You know, Zante looked great in the Machamp in Game 1. They might bring that back. I will say this. Apprentice is fighting for their tournament lives in this game. For them, it comes down to this. If they get a win, they stay alive and their chances still exist. Blackhand, they don't want to leave anything up to chance. They want to take the win, send the Lucario से एजेस स्लैश पे आ गया रे। This is a little bit of a bait just for us Overlord. on broadcast here, but did Overlord, the Lucario King, just switch over to the Aegis Slash? Aegis Slash is clean and Overlord. Blackhand का सब्स्टिट्यूट प्लेयर GG2 में है। ये लोग अपना फोन पे खेल रहे हैं या फिर इनके खेलने के लिए निंटेंडो या फोन वगैरह दिया है। अरे भाई अपने फोन पे कैसे खेलेगा भाई? इनको प्रोवाइड किया है भाई निंटेंडो। ये क्या है देख लो, उनके टेबल पे ही पड़ा है भाई, निंटेंडो पड़ा है, वो कंट्रोलर पड़ा है भाई, मोबाइल भी पड़ा है। अलाउड है? हाँ निंटेंडो अलाउड है भाई, निंटेंडो अलाउड है तभी तो वो दिया है वहाँ पे, निंटेंडो वगैरह सब दिया है, जिससे खेलना उससे खेल। Listen, their focus is dialed in. They're talking. अरे पर ये डिप नहीं होगा? कुछ आएगा डिप होगा भाई। मतलब सामने वाली टीम समझ इंडिया टीम है वो तो मोबाइल में खेलेगी, तो मोबाइल और निंटेंडो में बहुत फर्क है। निंटेंडो वाला बहुत गंदा खेल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, गेम तो सेमी खेल रहा है ना तू। तेरा गेम में बट ये है ना इजी है।
इससे थोड़ा पीछे इजी गिरता है मारने के लिए, टारगेट करने के लिए बंदे को। जो तो लॉक करता है ना बंदे को, उससे इजी गिरता है निंटेंडो पे। Yeah, nice job from Apprentice right there. And we've got the classic 1-1-3 here in this bottom path, trying to deal with a Bulbasaur and a Chansey and a Hoopa. Early Dratini rotation to support that Han Edge in the top path, and they're going to need tons of help that they can get, because finally they took over Dragonair, but it was tough sledding there for a second. This is going to be really tough for everyone on Blackhand once Klaus becomes Serena here, obviously. Level 6, such a huge break point for this Pokemon. Almost have level 4 on our Hoopa right here, and we're getting ready for a fight. Looks like they're sending just Blissey up. Slash right here, looking to secure and not get into a big fight. Trying to head back to goal, healing themselves. चार होगा तो टॉप पे जाएगा। अबे 2-1-2 खेल रहे थे, बट बाद में ओवरलॉर्ड ने ऊपर डिप दिया ना पहले मैच में, तो फिर 1-1-3 पे आ गया। अभी तो डिप ले लिया, अभी लुका नहीं खेल रहा था। अभी आएगा ऊपर टॉप पे आएगा, तीन जन पे टॉप but Apprentice does get a formidable amount of points in and a couple KOs to boot. Sneaky little play there from Blackhand, sending their Blissey up. What it was not enough. नीचे चार बंदे कैंप किए। For its trouble. We see Chansey and still Machop here in this bottom path, looking to maybe take a KO off Overlord, but they are back. क्या कर रहे हैं लोग, पागल ही लोग हैं। ऊपर का ऊपर आके मतलब ही नहीं है। That's a great place to be for Apprentice, because they would have hated to have been any further behind than they are. A lot of experience in the favor of पीछे चल रहा है Overlord here, and that's huge. लाइव करूँ क्या आगे? Careful right here. They know that they can heal. नहीं ना फिर मैच ही आधा मिस हो जाएगा थोड़ा सा। Overlord diving in for it. Whoa, look at that hologram. Top hat and a cape. We'll see what you can do. Big wide guard going to try to find the engage. Can they catch a reset? They do. Perfect timing for that. Klaus double stomping through the bees, but Overlord's willing to buy that action. Oh boy, खत्म कर दिया भाई। The Lord of the Sword is in fact here. Not only are they dapper to the nines, delivering on the KOs. Huge plays. Huge cape and top hat. Should I be wearing a cape and top hat? It looks so freaking cool. Dreadnought is up right now. Overlord trying to fight 3 members of Apprentice right here. It looks like, oh, wow, what a dodge of that hyper beam. Overlord is a master indeed. Lord of the Sword, we're going to keep calling that. Curio's trying to buy some time. This Dreadnought's at half HP, but Apprentice is finally making their push in. Can they catch it? But Curios takes it for Blackhand. One of the least objective securing Pokemon. हाँ मिला है शायद कोई तो मिला है। सब टीम के हर प्लेयर को दो स्किन फ्री में मिला है, जो उनकी मर्जी का चाहिए जो। भाई टीम फाइट भाई निकाल रहे थे टू टीम फाइट। कुछ ना दो स्किन भी फ्री में मिल रहा है। कौन सा स्किन फ्री में मिल रहा है? कौन सा भी 2 स्किन अपने ऊपर है। हाँ अपने ऊपर है, चूज करना है। सही है भाई। तो केप वाला क्या है, एजेस लाइस है भाई, क्या दिखता है? एक नंबर दिख रहा है वो। You don't throw $5 bills in Have I been doing that like that, Spraggles? I just really want my wishes to come true. In this bottom path, as Sword is just putting more and more in there. Blackhand up by about 60 points right here. Looking great on the experience as well. We don't even have a Machamp here on the side of Apprentice. No, the leveling has been very tough for Apprentice. They were really looking to get into that Dreadnought, but Overlord literally holding back 3 players at once by themselves, giving Blackhand the ability to rage in, and of course Curios to take over. And look at this, Klaus looking, what? They know they're there. They're saying, I'm throwing my attacks. Yes, I know you were here, Klaus. Get away from our goal. JB look at the spin. And you have to give credit to Slash, who's always been, again, on the opposite sides of the map from the rest of their team, really buying time, protecting their goal zones, and keeping their lead intact. ये ग्रुप वालों को थोड़ा इजी है, बट Overlord just kind of hanging out in this top path. I don't know what it is, but a मतलब कंपटीशन थोड़ा कम है, पर उतना ही है कि एक मैच हारेंगे तो प्रेशर आ जाएगा। When it goes in, it looks too crispy. Wide guard coming through, playing a little defense. That top hat getting scrunched a little bit, backing off and trying to find some respite in their old goal zone. But Gek getting too frosty, too froggy, coming forward. Big wide guard knifes through, comes through. They're gonna find their mark, and they catch the Hoopa reset because this Dreadnought action is underway. There's 2 players down for Apprentice. They walked through that portal and they got dusted. खत्म भाई, डोमिनेट कर रहे हैं ब्लैक हैंड वाले भाई। क्या मार रहा है एजेस लैग।
12 लेवल हो गया, 13 लेवल हो गया। भाई मैं तो सीधा 20 सेकंड पीछे देख रहा था। बोला किधर मार रहा है, इधर तो ऊपर घूम रहे, इधर से उधर में बोला 13 लेवल हो गया वो। खत्म है भाई अप्रेंटिस वाले। वीना 13 का हुआ है क्या लोग का? वीना 13 का हुआ है क्या? नहीं 12 का ही बड़ा है वो। वीना 12 पे है ना? अबे 12 पे उसका रेंज ही नहीं है पेटल का। भाई यूनाइट चल गया भाई। 13 अरे कितना टाइम हुआ है? अभी 3:40। माचो मल्ट के बीच में घर चले गया भाई। गलत हो गया भाई। माचो के साथ। 14 भाई गंदा मार रहा है रे ओवरलॉर्ड। भाई अब मैं बोल रहा है ना कि वर्ल्ड के बाद एजेस लाइफ में टाइम क्या देख ले। अबे देखना भाई, एजेस लाइफ देखना। इंडियन टीम ना एजेस लाइफ खेल के नहीं गई, खेली नहीं थी। वो जो हारे उन्होंने खुद ने ऑटम वो खिलाना शुरू कर दिया बिना प्रैक्टिस के। 14 लेवल हो गया भाई 14। ओवरलॉर्ड हर गेम में जंगलर के बराबर या उससे ज्यादा लेवल है। हाँ भाई मार रहा है भाई, वो मारेगा तो लेवल तो ऐसे ही बढ़ेगा उसका। ऑफलाइन कैरी करते हैं भाई बाकी देश यहाँ पे बेंचो टॉप लेन कैरी नहीं करते। 13 लेवल का हो गया भाई बिना। बस अब खत्म है भाई, वो मरेगा ही नहीं। देख ले ब्लेसी उस पे यूनाइट और उसको हील दी तो Apprentice Unleashed is in such a difficult position right here, putting some भाई ऊपर points on स्कोर the कर रहा board, but in general they are just स्कोर on the करने दे रहे bad भाई end लोग। of an upcoming मर Zapdos गया fight भाई। unless a मचान miracle तो can आने वाला है। Furio's putting the chase on a little bit. JB babysitting the Dreadnought, trying to turn it down, melt it down. Here comes Slash with a little bit of support, Egg Bomb, but we got a Zapdos in a couple seconds. Here we go. That brings our Zapfied Dragonite भाई, to level Zapfied 13. आ रहा There's भाई। a level 15 14 का हो गया भाई, If this वही ना भाई। runs wild, it is going to shing, 15 होने वाला है क्या? slice up हाँ? this entire enemy team. 15 होने वाला है क्या? Needs this win. हाँ हो गया 15। कहाँ होने वाला है? Such a huge Zapdos fight. Zapfied। 240 पे देख रहा हूँ, मेरे को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा लेकिन So much is ठीक है मैं बताता तेरे को, बता मेरे को। Lord of the Sword just हो गया ना 15। हाँ बिना 14 का हो गया है। ऊपर तो साथ में घूम रहा है ना ओवरलॉर्ड। वो तो ऊपर वो क्यों खेल रहा है वो वाला। खत्म भाई, ब्लीसी को निकाल दिया मैच में से। खत्म है भाई, ब्लेसी का ही खत्म है भाई। अब तो जैप गायब। इनके ऊपर ने अल्ट नहीं दिया अब तक नहीं ना। नहीं नहीं देगा अब देगा देख। ब्लीसी आया अब देगा भाई। अरे ब्लेसी अभी मरा था, वापस जिंदा भी इतना फटकता हो गया। कैसे? ज्यादा लंबा कूलडाउन नहीं पड़ा था ना उसको। Knife through by Overlord, and there are 2 players down, but it seems like they're so much more static than this as the Machamp Zante is trying to find their way in. निकल गया है मैच, एक एक करके आएंगे नहीं निकलेगा। Only 44 seconds उनकी left ब्लेसी right हील here. देती रहेगी, Blacken ब्लेसी is निकालना behind बहुत on score. इंपॉर्टेंट They're way है। ahead in this fight, but they need to put some points on the board. Right, Are they going to be Blissey. able to secure this Zapdos? It's almost at no health, and ले it लिया does भाई, go down. खत्म है। Blackhand with a big secure. And all of खत्म है भाई। taking a nap right here. ड्रैगनाइट सिक्योर के लिए और क्या चाहिए देखो। But does Blackhand have enough speed to convert? कितने किल लिया होगा ओवरलॉर्ड ने भाई? Take a look at this, and then of course किल the ज्यादा really नहीं nice लिया रे play मेरे there साथ। अरे लिया रे उसने 3-4 का स्ट्रिक कर रहा था वो। 3 का तो स्ट्रिक 2 बार किया उसने। 12-13 ही रहेगा ज्यादा मेरे हिसाब से। The Lord of the Sword. I'm buying a hat and cape. I don't care if I भाई हमें ये स्लैश खेलने वाले होंगे भाई। आपकी स्ट्रीम पीछे चल रही है यूनाइट की। अरे कर दिया रे मैं। तो ऐसे ही आने वैसे ही आने वाला बॉटम लिंक देख के। Let's cheer one time. Blackhand looking good. Apprentice Unleashed. Not playing. जीजी भाई MVP देख रहा है ओवरलॉर्ड। Dark horses or we'll say tier 2 favorites going in as somebody to make it out of their group. अबे डैमेज वाला दिखाया नहीं क्या? दिखाएगा दिखाएगा रुकना। ये ओवरलॉर्ड है क्या? नहीं ये नहीं। नहीं This is that moment that यही टीम है ना बट ब्लैक एंड। happens in these tournaments. You know, the incredible win here.
ये वाली है जिसने पोकेमोन वाला कंपनी का कपड़ा पहना है। भाई आवाज क्यों बंद कर दिए लोग? बोला 13 ना किल 12-13 किल 13 किल है। बोला ना देखो 12-13 किल रहेगा। किल्स नहीं मिलते वे ज्यादा, इनके क्या 3 ही किल है। हाँ भाई एक किल लेके भाई माचाम का तो कुछ भी नहीं है। 90 का डैमेज है। भाई मेरी याद क्यों आएगी भाई, मैं लूका का खेलता हूँ पहले। राइट से सेकंड वाला नहीं खेलता भाई लुकारियो। Take a look at this right here. I mean, Apprentice made some really exciting plays there near the end, scoring a lot, and look at that. I mean, of course, it's team picture time. Well, you got to take a picture on the stage if you get dubs, you know what I'm saying? You're on that picture player है क्या? एक सब्स्टिट्यूट है ना? Beautiful, beautiful. Substitute allowed है? Let's take a look at some of our highlights here. This was the allowed moment this game was starting. but है ना 19 में में कहाँ allowed? Regionals में allowed ही नहीं था, कहाँ से अब substitute आएगा यहाँ पे? अब उसका कोच वगैरह होगा फिर तो। हाँ कोच होगा। But Apprentice looking very sprightly and lively here in the top half. कोच भी नहीं रहे, वो लोग तो नहीं है, एडमिन तो नहीं है। हाँ एडमिन होगा। But at this point in the match, we already had a level 12 sword, and every single fight was just seeing how many KOs it can get. And a lot of the time, it was almost the entire मोटा दिख रहा है ना। अगर उसका पूरा केव भी दिख रहा है कोई ना देखना। मैं तो 240 पे देख रहा था, नहीं मेरे को पता ही नहीं स्किन है उसकी, मेरे को लगा कौन सा नया पोकेमॉन है ये। दिखाया मैं 2 Of course they could start putting some scores on the board, but it really didn't matter because Blackhand was able to win that big fight. Look at that, the joy on Team Blackhand. They are so excited. Yeah, you know, there's something to be said about the work that was done, but Overlord gets the nod. 13 knockouts, 4 assists, tons of points. Sacred Sword, wide guard, Lord of the Sword. I think they need to change their gamer tag. I think they absolutely do. I mean, how many Aegis slashes are we going to see in solo queue after a performance like that? Let's take a look at our groups right here. Again, T2 and No Show coming out of Group A, Renaissance and Eternity here for Group B. We right now are in Group C, Dubsnacks. Yeah, Group C, Blackhand. We just saw them win their first game, but because Apprentice lost both of their games, iClent and Blackhand get the nod. They will be moving on. That's right. What an incredible series so far. We still have a ton of amazing teams here at the World Championships, and we are finding out who's making it to day 2 for that double elimination bracket. Do not go anywhere. We are going to take a quick break. We do not have a player interview with Eternity. We will be right back. हेलो हेलो। एक ग्रुप का भी तो निकल गया। क्या? एक ग्रुप का भी तो हो गया, ब्लैक एंड और ये जा रही है ना।
अरे मतलब ये टीम बाहर हो गई, कौन सी है? APR अप्रेंटिस। हाँ हाँ बाहर हो गई। अभी किसका मैच बचा है? अभी इनका बचा है, ब्लैक एंड और उनका। कौन सी दूसरी टीम, कौन सी यार ग्रुप में? I9। अरे नहीं, ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा, अभी ग्रुप डी का चालू होगा अलग बात है। ग्रुप सी का भी तो एक मैच है, ब्लैक एंड और किसका था वो? दूसरी टीम कौन सी है? ICLN। हाँ उनका, मतलब वो दोनों क्वालिफाई हो चुके हैं वैसे तो, पर वो सीडिंग बनने में काम आता है ना ये। हाँ भाई I9 गेमिंग आएगी अभी भाई, जीजी को बाहर करने वाली टीम। सीक्रेट शिप का क्यों बेइज्जती कर रहा है बार बार दिखा के? बाहर हो गई भाई सीक्रेट शिप तो। 0 से जो हारी उससे भी कर देती भाई, स्कोर पे ध्यान दे देती। बोलती छोड़ दे, फाइट बीट छोड़ दे, गोली करते 100-200 गोल तो कर देती। everybody to the Pokemon Unite World Championships. We are heading to even more games yet today. That's right, the group stage. कैसा चल रहा है वॉच पार्टी भाई? चल तो रहा है भाई, बढ़िया मजा आ रहा है भाई मैचेस देखने में। और बता तो क्या चल रहा है तेरा? चलो कंप्यूटर स्क्रीन के बाजू में जो टेबल दिखा रहा था ना, उधर उनका कार्ड वाला चल रहा है। वही पे साइड में हाँ देखो टेबल से लाइन द कार्ड वाला मैच चल रहा है। That is right, North America versus Europe region here, and we are mid game 2 right now. चालू हो गया इन लोग का? हाँ चालू है सर। I9 गेमिंग। Yeah, we see them getting I9 versus the versus first important objective of the match here at that 7 हो गया होगा उनका खिलाफ। as the Dreadnought gets ready to spawn. एक टीम तो बिना ऊपर की खेल रही है टूर्नामेंट, ये देखना। जैसे ये टीम या तो टीम बिना ऊपर की खेल रही है। ना क्लीन फाइट है भाई लोग का, एक बंदा नहीं मर रहा दोनों टीम का। खत्म भाई, लुकारियो ले गया। खत्म है पूरी टीम खत्म हो गई। क्लीन लाइफ, क्लीन स्वाइप भाई। हाँ पर देखना कितने कितने अच्छे से कितने देर तक फाइट कर रहे हो लोग। A big secure there. Also, shout outs to Gatlu for a fantastic Unite move with the Trevenant. A lot of extra bonus damage in that team fight. It hit 3 or 4 players out of IX Gaming. Yeah, Trevenant, a character that's labeled as a defender in Pokemon Unite, but it really fills a role that's more similar to something like a Zarina or a Lucario in that it is a melee brawler, but it just happens to be a bit more durable than those other characters are. That makes a lot of sense here. Pikachu takes a lot of damage and gets knocked out by Adesu, who did have the Bliss assistance onto them. So Barav and Adesu combining for a fantastic KO. The defense is not able to hold. पुश होगा ना ये? We see this Rotom walking towards तो हो जाता है वैसे भी। 28 points on them. हो गया भाई पुश। 2 यूनिट 3 यूनिट है अंदर, चलाएगा तो नहीं फिर भी। लुकारियो चला दिया भाई यूनिट।
deleted by Nudo seemingly on this arena. Yeah, they got a couple of KOs. A few of them did make it out though. A pretty nice Hoopa reset there from Gives to try to get पिका डिफ है ना इसमें पिका डिफ बस नोलैक्स चल रहा है पिका तो but Nudo does keep on the advance, steals one of the citrus berries, but Redmond gets enough to get out and get some healing and stop OG from scoring. Yeah, the story of the tournament this weekend really feels like these pairs भाई झाड़ भी एक तो भाई teaming up inside of all these engagements. Here for IX Gaming, we see this Serena paired कैसे कर्स को ज्यादा बड़ा क्यों लग रहा है? Now on esports side, we see this Lucario and Gatlu's Trevin. यूनाइट चला था टूर्नामेंट ऊपर Wow, nice. Nudo turning the tides here a little bit. Then of course, भाई सरीना क्या मारती है भाई? ऐसी सरीना अपने टीम में क्यों नहीं रहती? भाई अपनी सरीना गुस्से खत्म होती है। या तो मैं हैक करा के खेल रहा है। अब उनको पता है भाई मतलब कैसे कितना एचपी मिलता है। जब ग्लाइड मारता है तब वो एचपी देता है ना। ये मेरे में कर दिया। Yeah, admin features like that useful to make sure we maintain the competitive integrity of our event while allowing our दूसरा दिखाएगा वो शायद जो शेड्यूल में गेम स्टॉप किया क्यों देखा क्या तुमने गेम स्टॉप किया एंड गेम कर दिया उसको क्यों क्यों वही फिनिश हुआ रहेगा उसको we do have some great admin features. We'll be headed back into game very soon. Now IX, we're joining this series mid-set. So IX Gaming is up 1 map to 0 against Nouns Esports. This is the team that everyone has had so much focus on. And one of those reasons is because they get dreadnoughts like that. मैं स्टॉप किया था देखा नहीं क्या तूने some sleuthing while we were on our break and I found out that प्ले हो गया क्या कंटिन्यू किया in the first game of this set. So I think you get to check that one off your हां ये तो रेवेनेंट के साथ भी तो सेम होगा एक मैच बीच में पॉज किया था 5 मिनट के आसपास में फिर कंटिन्यू किया था that it loves to take Unite move. Gatlu is able to escape pretty easily though, but we are so sorry about that. One more pause, but like I said, once we get it ironed out, we're going to be good to go, I promise you all. We saw that Dreadnought objective going over to Nouns there on the right side. Just objective securing machine there. तूने देखा था क्या मैच नहीं कौन सा वाला टोका था क्या अरे कौन सा रीजनल फाइनल के टाइम पे मतलब रीजनल से Perfect. Well, thank you so मुझे much everybody इसमें for being with us. We are स्पेक्टेटर back बार-बार पॉज into कर this रहा था second game. 1-0 like we said for IX. A very close scoreline, 152 to 153 right now. Picadiff trying to go into a little bit of a tank up against Gatlu. that time पे पॉज किया इसे लेके सामने वाला ग्रेडेंट चुरा के लेके गया क्या मजा कर रहे हैं वो गेम वापस खेला पर वो मैच वापस करो मतलब जीती वो टीम फिर भी वापस कर रहा है ऐसा गेम था एकदम एकदम लास्ट हिट के टाइम पे पॉज कर रहा था फिर प्ले कर रहा था ऐसा क्यों पता नहीं कोई बंदा घुसा था शायद से उसमें Yeah, OG is going to love that experience here in a second. We saw one Machamp Unite move from them so far. Didn't get too much value. I know that ain't going to happen again. मतलब लॉबी आईडी लीक हो गई रहेगी गलती से Gatlu pulling Pikachu to the other side, but तो they're घुस going गया to रहेगा do a स्पेक्टेड return के in the अंदर other direction. Nu tries to Unite move, but an unstoppable feature takes it away from them, and they are not able to do so. We see the elusive रॉकम को 16 कर सकते हो Dreadnought वैसे getting ready to spawn here in the bottom. Often taken for free, but sometimes it is the catalyst for an early end game team fight if both teams decide this is something they want to engage with. Good read there by Redma and Geese, knowing that OG is not with the rest of IX Gaming and wants to stop any kind of split push shenanigans. A huge engage there by Nudo. They take a lot of them. Pikachu tries to stop any of the resets, but they unfortunately do not grab Gatlu long enough to do so. Dreadnought starts getting hit up by the Dragonite. Pikachu looking for another heavy slam. And we see Dragonites looking to get in position here. We see that Unstoppable applied for right side. Their Dragonite. The mobility to अरे ये ले गया रे भाई डेड ले गया भाई खत्म है भाई आइलैंड के इधर नहीं गया थे Extremely short range though, it's going to probably only take about 50% of their Unite charge rate. Dragonite getting it a little bit back faster if the range isn't super long. So now definitely going to be looking to buy that Unite move back. दैट पोजीशन भी लेके बैठे हैं लुकारियो तेरा लेवल तो सेम ही है लगभग सेम ही है दोनों का Would love to hit 14, but giving Kratos that last hit with the hyper beam will be good enough. क्रॉस चॉप वाला प्लेयर है रे
पे smallest of point leads for IX Gaming. In fact, as small as it can be, as this fight breaks out here पकड़ as the लिया भाई, Bliss खत्म कर assist दिया। pops off and Zarina picks Gatlu Unite up. क्यों A नहीं huge चला रहा है? engage by Gatlu and actually has to use Unite to respond in kind and stay up. Keeps with a very late Hoopa portal. किधर गया Actually Unite paying off लेके? for them now. They're able to engage a माचम little को bit Unite later किधर with चला? Hyperspace Fury. They lock up Nudo in place and they are चलाया deleted. किस पे तो Redmaw उसने is able ड्रैगन to पे close चलाया combat उनके them back to the respawn zone. We see here I think dancing ड्रैगन around पे the चलाया pit था with उसने these dragons. Now it's esports Dragonite getting 19 low to बार the आएगा wire, तो but फिर तो भाई Gatlu खत्म coming ही in है with the assist, pushing the enemy chance to One back of away. Neo's Esports, one of the favorite team for being worlds है, बहुत strong है, तो भाई तो मार देता, माचन देख ये मार देता अगर एक डायनामिक पर्च पड़ता ना उस पे, दोनों खत्म थे, उसका हील कर लिया रे, Now the Zapdos is the main target for now. मैं ऊपर देख, Solo on HP, and Tetsu finds the last hit with the hyper beam. They're only down by भाई 20 लुका रे ले points, but गया, I can't imagine that's going to be for a long time. Gatlu gets तो stopped here, ड्रैगनेट लिया though. This रहेगा fight in the center took a long time. Even if Nouns Esports gets pushed out ये here a अंदर little bit, ड्रैगनेट की IX इज्जत ही Gaming नहीं has है the क्या ability to push. They really don't have time to mount anything here. These points are going to be pushed out by Dragonite jumping back, and रुका we क्यों have था बे a almost 200-point differential between these two teams. Kratos attempted to score that whole 50 there, but a Desu coming off the jump pad was able to stop them. Nice little वाह shield there, भाई, put up by Pikachu to ब्लिसी try का to भी stop a स्कोर हो Desu गया from इसमें, knocking out some of the weaker Pokemon on शाबाश Pikachu's team. They do escape and शाबाश stay up लौंडे and running here. IX Gaming भाई 22 to now उधर 473. ये ब्लिसी I स्कोर think करा you था are उसका भी right. I स्कोर think हो that गया, fight in the middle just took a bit too long, and we are burning the candle at both ends. Yeah, we कुछ see नहीं भाई IX Gaming सीधा sprinting across the board as quickly as they possibly अच्छा can. I9 वाले एक Even मैच in the जीते event क्या that this मैं Serena हाँ and एक Blissey were जीते, able to deposit their Eos energy, they still would not be in a winning position on the IX side of this game. Nouns Esports found the last hit on the Zapdos, but make no mistake, a lot of that came बस from the माचम ने अल्ट outlast की है and survivability that they were able to do as a सुन team. मिला ही नहीं बंदे Some ग्रुप great में, Unite moves by Brub, a great engage by Gatlu, as well as a Unite move for that अरे Buddy उधर तो barrier help. टूर्नामेंट सुबह के Nouns टाइम पे चालू रहेगा ना Esports with a great एकदम team fight सुबह to end this game, 9-10 and they बजे के take the आसपास second हाँ game win. Yeah, looking at the scoreboard here, Nouns knockouts really tell the story of what happened in and around the Zap Pit. It was a long fight, but it was one that ultimately went into Nouns' favor. I think that moment where Gatlu came in and kind of pushed out the rest of the IX Gaming to save a Desu on their गुड नाइट भाई, आज के लिए हो गया मेरा, ठीक है भाई, बाय बाय, मिलते हैं भाई, Agree more. Now, notably, one thing we've been talking about all day in terms of metagame, IX Gaming opting मेरे को लगा 13 हो not गया into the Hoopa नहीं play नहीं, this time अरे इधर around. बीतना Retsu, गया, newer to the Hoopa आई9 role, का but एजल has और जंगलर really को taken to it in the last few months. बैन लगा है, An इसलिए फुल exceptional player. स्ट्रेंथ Now they're moving नहीं है over to उनके Blissey, something that normally Pika Diff has taken up. But since करके है, this explosion रीने of करके है Snorlax, it भाई, seems वो like काय Pika के Diff लिए बैन has लगा है, become the player of choice to move into this new popular kid. बैन किस बात का लगा है वही तो किस बात के लिए बैन लगा है इनको, interesting. It feels like it gives your team more power बैन in all लगा of कि the वीजा नहीं engagements मिला where है your Koopa's not uniting, but वीजा का ही obviously प्रॉब्लम है you फिर, need to have better positioning to make up for your दो lack प्लेयर्स of तो that चेंज नहीं कर rings सकते unbound एक in ही those प्लेयर कर early सकते थे moments. That is a really, दो really सब्स good टू point. ग्रो, Well, let's take another look at that game. आरएनटी ने At a bit of a highlight जानबूझ के reel थ्रो here. किया है, OG getting in those early जानबूझ stacks. हाँ किया उसको भाई, ऐसा थोड़ी Pokemon, who we all used to think had a tough early game, but recently has started to be an up-and-comer even on the Machop. उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ट्विटर पे 3 मंथ का बैन है पोकेमॉन यूनाइट में, Puts up lots of damage when it gets his attack weight क्या stacked पता up. भाई, Just all out brawl here in the bottom path when we आगे came into this game at the 7-minute mark. ये नहीं Now, पता मेरे last को time we saw IX Gaming in official हाँ tournament आरएनटी play, की it was of जानबूझ के course in थ्रू करेगी उनको regionals थोड़ी where ना they were पैसा in मिल second रहा है place, वही तो a भाई, lot to the help of Nudo running Absol. इतनी भी This स्ट्रॉन्ग time टीम नहीं switching थी कि over to सामने वाली Serena, कोई टीम putting a stacking कंपनी उसको melee ये दे attacker पैसा in दे the हारने bottom के लिए path. Yeah, I think Yeah. फिर क्या तो तुम्हारे वाली सामने भाई टैलेंट फ्लेम लिया था आरएनटी ने भाई, तो उनका काम होगा भाई कि ट्रैवलर खिलाने का, ये टैलेंट फ्लेम खिलाने ओमन का मेन है भाई का, वो हाँ वही तो है, Pokemon selection has वो ड्रैगन से अच्छा वो here in खेलता game है number 2. I'm sure it was टैलेंट interesting in फ्लेम game number खेलता 1 when you said there was a Mr. Mime on the है वो battlefield. टैलेंट फ्लेम का तो डिप नहीं था, उसने तो अपना काम किया था बराबर, shape for आउटजोन game किया था number मेन 3. मेन And बंदों there को you go. Kratos अल्ट just मार के pushed out a little bit too far in that Zapdos pit. डीप to be सरीना here with डीप the पड़ा है hyper उधर beam, और and कुछ Desu नहीं takes it, and they took game number 2. Yeah, the displacement from Tread ड्रैगन था अपोनेंट पे, क्या कर लेगा टैलेंट से,
really looked अरे पूरा बाहर fantastic कर दिया था when it उसने came to बहुत कुछ देखना किया भाई zoning पूरा out the बाहर opposing मार के Dragonite from those key objectives मैच secures. देखा नहीं क्या भाई सरीना ही घुस के इतना डैमेज दे रहा था वो सब बंदों पे अल्ट मार के पूरा बाहर निकाल दिया उसने 2 के 3 बार ड्रेडनो के टाइम पे जैप पे भी बाहर निकाला था सरीना पूरा गायब कर दी उनकी अकेले बैठ के क्राउली ने बस एक मैच 9 लिया टैलन से ही खेला सपोर्ट नहीं मिला टैलन का हाँ वही रहे सपोर्ट नहीं मिला भाई उसको सपोर्ट मिलता ना अरे वो उसको बंदे डैमेज ही नहीं मिल रहे थे भाई फुल बंदे मतलब ज्यादा एचपी वाले बंदों पे जंप कर रहा था वो उधर फाइट लाइन से पहले बंदे खत्म हो गए जमीन पे खेला था वो बाद में वही हाल हुआ जो था उल्टा ड्रैगन इजी पकड़ा जाता है फाइट में तो एलन को स्पीड आता है ना क्या वो फाइट नहीं करता तो कुछ तो स्पीड का खुलता है उसका क्या रहता है वो एरियल से तो कुछ टाइप का है ना अलग से खुलता है उससे फोर्स टोन की तरह पैसिव अटैक उसका पैसिव हाँ पैसिव है क्या वो अरे स्पीड बढ़ जाती है ना उसकी हाँ तो पैसिव है ना उसका या दूसरा अटैक बोल रहा है उसका अटैक नहीं जैसे अपना फ्लो स्टोन लगा हाँ पैसिव अटैक उसका सेंडर्स होना किसी टीम में पर मेरे को नहीं लगता सेंडर्स ले जाएगा जीजे वाले रहते तो लेते भाई a huge game win. We've seen a bunch of upsets already so far in this मारता tournament. टून मारता भाई सेंडर्स से गंदा I really thought could go a long way in this tournament. Getting knocked out in the group stage is a surprise to me. No one wants to be that next surprise. Yeah, for those of you just joining us, day one of our tournament, we have our 13 teams broken up across 4 different groups. Where the top 2 खेलता इजेक्ट ही खेलता हो advances to ने ट्रैक अटैक an खेलता 8-team double elimination bracket tomorrow. टून ब्लैक हैंड का सब्स है $500,000 prize pool. मैं सब्स तो अलाउड है क्या इधर Is right, $500,000 prize pool. That is a chunk of change. Let's take a look at what these teams are selecting in game number 3. सब है पर इस टूर्नामेंट के लिए क्या ये टूर्नामेंट में नहीं है शायद That Snorlax there, and we see that Machamp plus Zarina looking to work in tandem again here on the Noun side. Will we see? तो उनको नहीं खिलाएंगे मेरे हिसाब से Unsure yet, but double experience share on the side of IX Gaming. Bruv with the energy amplifier Blissey. So, Nouns Esports जो तो प्लेयर चेंज किया है सब्स्टिट्यूट थोड़ी नहीं था प्लेयर ही चेंज कर दिया a lot of different ways. That knock-up ability सच sometimes बता it looks like a RNT bowling बॉटम pin headed लेन for a की strike. वजह If से you're हारा able to hit enough of the enemy teams on the way to make the move क्या happen, बता भाई you increase that damage with energy amp, it can work. I think if you squint, Trevnik kind of looks like a देखते bowling अभी कोई टूर्नामेंट में सब चेंज किया तब मेरे को पता चला सब चेंज होता है Perfect. Energy amplifier may give them an asset, but the Trevenant is on their team, so yes, you can only hit one स्टेडियम this में नहीं time है around. It is going to be an exciting game. स्टेडियम को इतना अंदर से इतना क्या किया वो लोगों ने This may be अरे the वो most अपर वाला सेक्शन है anticipated शायद match out of Group D. Yeah, definitely. These are 2 teams that Same many stadium people में listed कितना as their चल favorite to be able to win it all, and them getting paired off in the group stage is a ऐसा treat कौन for सा us. स्टेडियम है इतना बड़ा Absolutely, but if we're looking at Group D, there's भाई good उन्होंने games all अरेंजमेंट किया around. है We शायद still have ऐसा yet to see Z's OG live on the broadcast. Another team I'm excited उधर to see. अलग मैच चल रहा है इधर अलग मैच चल Competition's रहा gonna है look like. Now अगर Esports क्राउडी versus फर्स्ट IX गेम में डोमिनेट करता नाइनटेल से आराम से जीतते भाई ये लेके घूम रहे थे पता है अपोनेंट में एजेस लाइक भाई और बंदे भाई सीधा उनके फार्म में घुस गए भाई लास्ट हिट लेने के लिए क्या ही डोमिनेट करता वो उसके स्टार्टिंग में थोड़ी लास्ट के लिए है उसको 4 होने में ये हो गया पूरा स्ट्रगल हो गया था वो नाइनटेल भाई 4 लेवल का ही नहीं हुआ था 20 के पहले क्या डोमिनेट कर रहा है here to get a few stacks in and get their experience moving up quickly. Geese rotates into the top path though, तो भाई trying to दोनों help करेगा Gatlu close the gap. Retsu at a dangerous low amount of HP. ऐसे भी कितना डोमिनेट करता जब वो सरीना आ जाती फिर तो नहीं कर पाता इतना डोमिनेट So important. Yeah, hitting your break point for the क्या first खेला तो सोलो engagement भाई at those Bs can be the difference between your team successfully capturing all of that contested experience and not getting any of it at all.
Redmaw and Bruv combining for a nice KO. Obviously, IX Gaming got a little bit too close for comfort there. Nudo getting KO'd and sent back to base, but it seems like they will be back just in time for this first rotation of Bees. We see both teams look to have split on where they're putting players here. 3 in the bottom for IX Gaming and 3 in the top for Nouns Esports, as these Bees objective are very quickly deleted off the map. Nouns Esports instead investing their experience towards their Dragonair, wanting them to level up to level 8 as fast as possible. Giving Hoopa there will give you a little bit better chance of knocking out those wild Pokemon. See the Score Shield on Gatlu there as we get that small Eos energy deposit. We went unstoppable when we started dunking. Okay, well, very cool. Gatlu trying out a new item, maybe nerf, but maybe it will be the key to success for Nouns. Pikadev here deep into the enemy area, trying to create a little bit of space for Nudo, and they are successful. Another attack weight stat for that player. We see the Hoopa rotating back to the bottom path via the hyperspace highway there for Nouns Esports. Trevenant being left solo up top and getting some friends there as they push up. IX Gaming definitely pushed really far ahead to try to find some early scores, get this goal zone down to low HP, but most importantly, get OG online. Level 6 on Machop, they want that level 9 before first not possible, if not, very soon after. Trevenant is like the perfect character in Pokemon Unite to leave defending it has so much durability. इनके भी 2 Pokemon stack वाले हैं. Passive essentially providing you another focus band to survive with. It's very difficult to push off a contested point. Yeah, There's not many people I would leave a key to my house to protect, but I think Gatlu may be one of them as well. A great defensive player. Pikachu with a big engage here, though. Gets a 3-person heavy slam. They don't use it to push into KOs. They do it to grab some Bees. Nudo gets even more damage onto Redmaw, convincing them that pushing into this camp there was a possible task. We see 2 different blisters between these 2 teams. Nouns Esports choosing to take that safeguard, giving them some teaming unstoppable periodically, while IX Gaming Retsu is looking to instead provide more sustain via the healing eggs. Probably due to having a Snorlax on their side, so much HP bar to try to fill up. But no, IX Gaming gets this one. Kratos finds the Hyper Beam, last hit onto the Dreadnought, and now the push is on. Geese tries to escape the portal a little bit too late, and they cannot vacate. Yep, we see Kratos bouncing on in to clean up on Dragonite. Can they get this 40 camp in before they get disrupted? It looks like it. Dragon को कोल्टे में दबा के मारा है भाई. First Dreadnought succeeded for them. Kratos at level 10, OG at level 9. If they want to use them to push, they have not even done so yet. They don't need it. A goal zone broken there by Nudo. 16 points is not a large overdunk, but I know Nudo, and I know they like attack point stacks. That level 9 Machamp just knocked out a level 6 Lucario, so it's a little bit of a differential going on between fighting a type diff. OG Unite moves in here. A fluffy tail is put down by Gatlu, but they are now, the investment is not worth it. OG able to secure the Rotom and keeps on pushing. A Unite move there for Serena, launches the Dragonite up into the air. Now these Esports is getting absolutely knocked around here. IX Gaming with a great advance. Yep, we see that Rotom walk in, which allows one of their players to potentially get a little bit of an overdunk here. You'll note that they're waiting to break this. This Rotom counter has 13 seconds left, so even if they do break it, they want to break it as close to the limit as possible to delay that catch-up experience down to that is true. Lucario बेटे कब वो तोड़ेगा कब हमें गोल करूंगा. A bit of a dance floor, but OG takes the score for a full 40 points. 204-25 is an impressive scoreline for IX Gaming in the early game. Yeah, the really good positioning from Pikachu there on the side. ऊपर ही तो लिखा था कौन से रीजन का है भाई, मैं किधर देख रहा हूँ. Was to make sure when OG came back over at those 40 points were going in. अरे हाँ लिखा है, अभी देख रहे हैं. वही मेरा भी अभी ध्यान गया. They are going for the Autono that spawns close to base, so impressive play from them. पहले से नहीं आ रहा था. Run the Hyper Beam there. Makes you a little bit of Machamp movement here. Really love the Machamp skill set that OG is showing. बाकी रीजन के मैचेस से टाइम भी था क्या? हाँ सब mobility on this character that's वो Lucario stack कर रहा है बड़ी. अब BC ले गया. BC का यूनिट से लिया ना? Able to secure that on the Blissey. Lead with a little bit of egg-bomb action. OG is brought down mid-Unite move. They're going to have that one against us. They didn't launch the actual fist. हाँ भाई Unite मारा ही नहीं लगता है. able to kidnap the Blissey and they find the knockout as well. Snorlax getting the block to try to push everybody off. They run, but they get a big Citrus Berry. Gluttony passive coming in absolutely clutch there, but it's only for so long. Now Esports gets yet another KO on the board.
we're in London, but it's IX Gaming that was falling down inside of that engagement there as Nouns Esports secures not only the objective, but also a number of knockouts to push in that bottom point. I'm sorry, that one got me really good. Okay, OG here trying to get a little bit of wild Pokemon knockouts, getting leveled up as fast as possible. They are sharing a level 11 with Nuno right now, but both of them are all impressive with 12. On the other hand, Nouns Esports has 2 12s of their own in Gallo and Adesu. These are going to be gigantic threats for the side of the EU winners. 12 level का. Looking at the timing here, I wonder if we're going to see IX Gaming try and take some type of engagement. We've got a Dragonite, a Blissey, सबसे कम HP पे है 10 लेवल पे है बंदे i9 गेमिंग के Blissey और ये क्या नाम है Snorlax बाकी कितने 11 लूका भी 11 हो गया 12 का लुकारियो देखो भाई आज यूनाइट नहीं खेलोगे क्या भाई आज टूर्नामेंट देख रहा हो रहे आज मैच देखेंगे भाई and they ultimately back off, not risking any KOs here since they are reasonably leveled compared to Nouns. Yeah, that makes a lot of sense. 13 level हो गया इसका तो Trevenant का. They consider each other some of the best in either of their region. Unite moves being spent just for the sake of spending them. Definitely neither team are in the business of that here. Adesu finds that last in the core fish, a hair away from the last डेट तो फाइट होगा क्या भाई इधर 5 मैन हो रहा है भाई लुकारियो ले गया लुकारियो ले गया Nouns Esports better be thanking Redmaw और in the रुकता ना comp so डेट much पे for getting that last hit इधर ही right आज there. खुलता Both है hyper beams were about to miss the Dreadnought due to भाई displacement. 12-13 लेवल के बैठे बंदे इधर So incredible job to इनके shut down 11-12 लेवल के the हैं problem with Nouns is they just have too many. You shut down one, another one आज raises तो up बंदे in इधर its ही place. पिटेंगे थे Nouns loves to secure them and objectives. That's the best way to win a lot of matches of Pokemon Unite. And having Redmaw working in tandem with Adesu on this Dragonite has proven time and time again to be an excellent way to do this. हमारी टीम का अटैकर नहीं जाता भाई कभी ऐसा They're going to want to engage, but combo with them a champ Unite if possible. No, OG actually takes their own route there. A max range plus यूनाइट चला दे इसने all the way onto Gatlu for a little bit of survival. दोनों ने यूनाइट चला Find any angle to do the damage. ये भाई ये तो ब्लेसी के यूनिट वेस्ट हुए भाई दोनों की OG lands a gigantic Unite move in the top left side of your screen. Redmaw tries to fight back, but Pika Div shuts them down with a block and their own Unite move. They're getting back up and healthy. ये ब्लेसी गायब किया पहले सरीना अल्ट मार के Notably Nouns Hoopa going down. भाई लुकारियो ड्रैगन दोनों बचे हैं Can Nouns get in here and buy themselves some वो time? बचे हैं बट इसमें पहले ब्लेसी गायब करना ही मेन है भाई नहीं तो ब्लेसी ले लिया देती भाई रहती है खत्म है भाई 45 का स्कोर करने जा रहे हैं 50 होगा क्या इसका हो जाएगा Redmaw unable to pull the secure on this last and most important objective of the game. Can Redsu dug in? They do. बीसी डाल दिया कौन से मैच से किधर गोल कर गए हर टीम में ड्रैगोनेट है हाँ भाई हर टीम में सिक्योर के लिए ड्रैगोनेट लेके रखे हैं भाई बंदों ने Honestly, you never know. These Pokemon Unite games can be so close. 40 seconds left. 400 points. A outside goal zone still available. A Desu and Gatlu going to combine for a score here. 100 points is about to go in. But IX Gaming is 346 defending those stronger goal zones. Yeah, unless you are one cap away from being behind those outside goal zones are basically a free 100 points for the opposing team here. भाई ऊपर यूनाइट खोल देता Not nearly as much. Can Yeez make something of this Unite move that they were ये unable वाला to इतना इजी utilize? हुप्पा को गोल करने देगा क्या Notably cannot score while in this मैं race. 30 ओवर का स्कोर किया The timer is ticking down. 7, करने दे वो उसने जानबूझ के करने दिया There's some extra points going in, but I do not think it's going to be enough here. Yeah, there was इधर रुक दो सालों कितना गोल खाऊंगे Nouns Esports never giving up until the खत्म है भाई i9 गेमिंग क्वालीफाई हुआ है I want to see that final score line. All right, tally it up. Survey says Gaming with an over 200-point lead, 644 to 416 in ऐसे क्वालीफाई एक ही तो जीता है अभी representatives here on the world stage. IX Gaming gets a game win in the group stage. वो देख वो वाला पीछे देख दूसरा मैच चल रहा है वो वाला चल रहा है वो नहीं क्या नाम है उसका किसका फाइट चल रहा था गाया इंडमैक्स वाला मोड नहीं क्या वो वाला चल रहा था
see why exactly they're celebrating. We take a look at some of the वो भी तो देख 2-1 से जीती है ना। decent amount of knockouts on both teams. A lot of the engagements throughout the course of that were very close. Yes, absolutely. अगला हारती है 2-0 से तो। Happening almost all the time. X1S ब्राजील में हर रीजन जीती। X1S. Not to mention Pikachu. There's going to be a lot of HP and a lot of escapes going to be happening. Yeah, looking at the total damage here, I think it kind of tells what happened in the game in terms of engagement. So both of these teams felt like they played pretty safe overall when it came to how much they were pushing before they were pulling back. Let's take a look at some of that play here now. Early game, IX Gaming really had a great read on where Nouns Esports was group trying to D get है। around the map. हाँ ग्रुप डी XIS इस ग्रुप में तो 5 चारों टीम तगड़ी थी, चारों टॉप की टीम थी। I9 है और ये नाउन्स स्पोर्ट है और XIS स्पोर्ट्स है, मतलब XIS ब्राजील की टीम है ना। वही तो बोला, सब सारी टीम टॉप की टीम थी इस वाले रीजन में। This was the one that Nouns Esports did not let get away. Brub was able to take that one down. Now it was a very कोई रेंज पोकेमॉन नहीं ले रहे, पता नहीं क्यों। रेंज पोकेमॉन क्या खिलाएगा भाई, बताओ तो। इधर रेंज पोकेमॉन के लगे पड़े हैं भाई इधर टूर्नामेंट में। वो रेंज खिलाएगा ना सीक्रेट शिप में। हाँ भाई रेंज भाई डेसिड है भाई, दे दिया भाई, भर के दे दिया। यहाँ पे रेंज में गाड़ी खिला सकता है, पर गाड़ी के आगे विनर रख। भाई वो गाड़ी उसने RNS वालों ने खिलाया ना भाई, गाड़ी के आगे विनर रखना पड़ेगा ना। बिना भी तो बिना ब्लेसी के साथ और टॉप पे सिर्फ सरीना ही रखना पड़ेगा। बस सरीना ही काम कर जा रही है पूरा। क्रैमरन अच्छा खेले सीक्रेट शिप भाई, बट फर्स्ट मैच में ये हो गया ना भाई, फर्स्ट मैच में ही नहीं कर देते थोड़ा बहुत अच्छे से तो हो जाता है उनका कुछ। अबे उनने अच्छा ही किया, 50-50 के लगे पड़े थे उनके। They are not out of this tournament yet either. They do get to play some more matches upcoming. टीम फाइट थोड़ा ये जा रहा था उनका ना, पीछे पड़ जा रहा था उनका। Do not worry, but IX Gaming getting their first नहीं, टीम फाइट में भी निकल रहा था उनका, बट वो जो 50-50 कर रहे थे ना, वो लग गया। सब टीम का 1-1 विक्ट्री है, 0-3 दिख रहा है। COD में से होने का अभी थोड़ा, कौन जीतेगा? COD में से बचे है ना 2 टीम क्वालीफाई होने का। नहीं, सी में हो गई क्वालीफाई। क्या होने का है? अच्छा हो गई, नहीं हो गई, वो दोनों मैच नहीं हुआ, मैच नहीं रहा लगता, पर वो दोनों ही टीम क्वालीफाई। ब्लैक एंड और वो दोनों में मैच होगा ना। हाँ दोनों का मैच है, बट वो कुछ मैच नाम का मैच है। A lot of exciting moments and some really phenomenal players coming up out of, you know, with new Pokemon selections. I have never seen Pikachu Snorlax before, at least in an official capacity, and it looked great out there today. Now, there's going to be a lot of great looking things coming up here, so don't go anywhere, but we'll be right back, so stay tuned. भाई एक बात नहीं समझी गुलाइश, क्या नहीं समझा तेरे को? मैं 3 मिनट 4 मिनट का ब्रेक कौन देता है भाई? देख उधर ही हुआ था क्या? अभी जिधर इनके बंदे अभी देख बैठे थे मोबाइल लेके, उधर ही तो हो रहा था कार्ड वाला। अच्छा, वैसे टाइप एरिया में ही हो रहा था जिधर। तो ग्रुप ए में 4 है, बट बाकी में 3 क्यों? अरे बाकियों को वीजा नहीं मिला ना। वीजा नहीं मिला भाई, बाकी टीमों को 3 एक टीम थी जिनको वीजा नहीं मिला है। आई नसीब खराब भाई उनका भाई। ये टीम शफल तो नहीं हुआ ना? हां वो शफल तो नहीं हुआ ना टीम? पता नहीं। वीजा मतलब कैसा? अरे बाहर जैसे दूसरे कंट्री में अगर जाते ना तो उसके लिए वीजा लगता है उधर स्टे करने के लिए। कितने दिन के लिए जा रहे हैं उनको रीजन देना पड़ता है भाई अपने कंट्री में कि काय के लिए जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। तो उतने दिन के लिए रह सकते हैं वीजा पे, ऐसा सीन है वो। ऐसे फालतू नहीं बिना वीजा के नहीं जा सकते भाई इधर उधर। अच्छा ये सुन हाँ एक ग्रुप सी में ICLEN आइसलैंड है कि क्यूलैश है?
IC LEN वो टीम है क्या? हाँ ICL LEN शफल हुआ है टीम शफल हुआ है। अगर शफल नहीं हुआ है ग्रुप ए से एक टीम निकल के ग्रुप सी में है। अच्छा मतलब ग्रुप सी में कितने दो टीम थी क्या? और ग्रुप ए में 4 क्यों दे दिए इन्होंने ग्रुप ए में? ग्रुप ए के चारों टीम आई थी ना। हाँ अच्छा तो बाकी ग्रुप में नहीं थे। बाकी ग्रुप में मतलब सी में 2 टीम नहीं आ पाई, डी में एक टीम नहीं आई, तो इसके लिए ए से उठा के एक टीम डाल दी उधर। अच्छा अपन कब जाएंगे? कुछ प्लान किया है क्या? भाई कुछ प्लान तो है नहीं भाई, ग्राइंड करो रे फिर जाएंगे, देखेंगे भाई बाकी की बात में। अरे भेंडी पहले टीम बना रहे। हाँ भाई मेन मतलब तो टीम ही है रे, जो कुछ है भाई। सोलो नहीं जा सकता तू, सोलो जाना तो तेरे को लूका बनना पड़ेगा, लूका बनना तो सही। भाई फिर भी भाई टूर्नामेंट में थोड़ी सोलो एंट्री देगा तेरे को। नहीं तो फिर तो कोई भी आंडू पांडू प्लेयर तो उठा के खेल सकता है ना, जिसको थोड़ा थोड़ा आता हो। मतलब तेरे को पूरी टीम को कैरी करना पड़ेगा। हाँ वही, बट वो कैरी सिर्फ ऊपर वाले से ही हो सकता है। ऊपर वाला ही है जो कुछ कर सकता है भाई। टॉप लेनर ही खेल सकता है तो कैरी करने के लिए ना। जंगल में वो जंगलर तो भाई जब ऊपर और नीचे वाले बराबर से खेले तब कुछ काम करके आता है भाई, नहीं तो फिर उधर भी मार खा के आता है जंगलर। जंगलर तो एडिशनल है, जंगलर तो तू लेवल तो टॉप में जाएगा तो जंगलर को वही दिलाएगा फिर वैसा। इकोलश का फेस रिवील वर्ल्ड्स में होगा। हाँ भाई इविल का तो होगा, हो गया फेस रिवील इंस्टा पे। इंस्टा कब देख लिया मैंने? कहा इंस्टा पे डाला ही नहीं मैंने अपना फोटो। सी बातें कर रहा है, इंस्टा पे डाला ही नहीं फोटो, कहाँ से देखेगा वो? मजाक था भाई, सही है भाई। मुझे भी पता है कि इंस्टा पे मैंने फोटो ही नहीं डाला। उसका खाली तेरे को फेसबुक पे मिलेगा फेस रिवील। ऐसी बातें कर रहा है। अरे पीछे डेसिडे वर्सेस किसका तो भी मैच चल रहा था। 1v1। अरे साले वो नहीं है वो क्या? वो जी मैक्स वाला थोड़ी ना है। अरे देखना जी मैक्स वाला नहीं है, जी मैक्स वाला है या पूजा पता नहीं। वो तो जिम बैटल वाला है। वो टेकन टाइप वाला है रे। अच्छा टेकन टाइप वाला है, मेरे को लगा वही वाला है। थोड़ा पीछे करना, थोड़ा पीछे कर। देखना ढंग से देख, टेकन टाइप है। किसका किसका फाइट चल रहा था? डेसिडिया ही है। हाँ ये देखा है मैंने, ये वाला देखा है। इसमें भाई डेसिडिया बहुत गंदा है। डेसिडिया और म्यूटू का फाइट चल रहा है पीछे। इसमें कुछ तो 2 के 3 पोकेमॉन सेलेक्ट करने देते हैं अपने अपने जगह पे, फिर एक एक से खेलना पड़ता है। 3 हाँ शायद से 3 करने पड़ते हैं। इसमें डेसिडिया बहुत चलता है, मैंने देखा है। डेसिडिया एजे फ्लैश बहुत इकोलश तो इकोलश इविल का तो हो गया फेस रिवील इंस्टा पे मजाक का। ठीक है भाई सोच अगर डेसिडुआ लिया किसी ने, भाई लिया था भाई, सीक्रेट शिप वालों ने डेसिडुआ लिया था भाई। उनका मैच जाके देख लो भाई। मैच चालू करो रे, पकाओ मत भाई। भाई इधर टाइम पास हो गया अभी थोड़ा। पोकेन चल रहा है, पोकेन है रे वो। और क्या सीखने मिला वॉच पार्टी से? भाई बहुत कुछ सीखने के मिला है भाई। इधर क्या ही कॉम खेल रहे थे बंदे, इधर अटैकर का और ऑलराउंडर का मैचेस ज्यादा देखने मिला भाई। बॉटम लेन भाई बॉटम लेन एजे स्लैश जंगलर, क्या माचम जंगलर दिखा हुआ है। क्या क्या देखने मिला भाई, और कुछ ग्रेडियंट भी देखने मिला। ग्रेडियंट भाई, ग्रेडियंट से स्टील देखे भाई, जैप स्टील देखे। अटैकर वार्ड में जाए। हाँ भाई अटैकर तो भाई ज्यादा दिखे ही नहीं रहा। अटैकर जंगलर में तो कोई दिखा नहीं अटैकर, डेसिडुआ के अलावा।
पिकाचू ही नहीं दिखा। हाँ भाई एक पिकाचू आ जाए भाई, एक मैच में एक पिकाचू बस। माचम तो स्ट्रिक्स भाई भी मस्त चलाते हैं स्किम्स में। लड़की लोग भी पिकाचू का टोपी पहन के बैठे अरे हैं वो भाई। एक टीम में वो लड़की थी ना भाई, क्या नाम था? हाँ, उसमें थी औरंगाबाद में ही है। हाँ औरंगाबाद में बाहर हो गए एरी नाम है। आज हम वही खेल रहे थे, अरे हाँ 3 व्हाट्सएप ऑल चेक कर, ऑलराउंडर 1 व्हाट्सएप डिफेंडर और चेक सपोर्टर। हाँ व्हाट्सएप चेक कर। very strong competitor in their own right. But let's take a look at who is playing against them on the other side. हो गया तेरा नाम। आज हम वही खेल रहे थे, 3 ऑलराउंडर 1 डिफेंडर 1 सपोर्टर। सही है यार, कैसा गया फिर आज का? iClen Gaming representing the OCE region, the only team coming from that region. Let's take a look at the inner workings of their team. देखा? रुक लोड हो रहा है मेरा। लोड हो रहा है? यही We're Team iClen. Feels great to be the only team. क्लाउनी है ना ये? Really honored. I think our हाँ जीता भी तो कुछ नहीं थी, मजे करने कर रहा है बंदा। मजे करने के लिए गए थे भाई। Teams are overrated. ये दोनों बार हो गए ना भाई। Championships will be great for us. It's all been a dream for us for वो most of भाई our life. So बॉडी वीडी बना के आया क्या बंदा? कौन कौन? The key to our success in our team. देखना बाइसेप शोकेस कर रहा है। मिस कर दिया मैं। ये वाला? all been a dream for us for most. भाई Against all the top teams. कुलदीप तू भी ऐसा करेगा क्या? मैं कह रहा था तो मैं भी बना के जाता बॉडी। अरे स्क्रीन्स वगैरह खेलना है कि नहीं डायरेक्ट कॉम्पी में जाना? भाई देखो यार, स्क्रीन्स तो खेलना पड़ेगा रे, बिना स्क्रीन्स से तो कुछ होगा नहीं भाई। कॉम्पी में तो रैंक गेम में तो भाई रैंडम से खेल खेल के तो भाई और लगने वाला है इधर। Such a long time, you know, we can practice together, party together, eat together. अगले इंडिया के टॉप टीम में आने के लिए तेरे को दिन के कम से कम 3 से 4 स्क्रीन खेलना पड़ेंगे। वे अच्छी टीम से। किसका मैच है अभी? वो भी पता है कुछ है। इंडिया की अच्छी टीम है, उनके पास भी स्ट्रीम्स करने के लिए कुछ अचीवमेंट चाहिए। अभी खेलते हैं, नहीं तो नहीं आता भाई। जब हमारी टीम बनी थी ना तो हमको चाहिए था कि स्ट्रीम्स खेले स्टार्टिंग में, ये पर हमको भी पता नहीं आएगी कोई टीम बड़ी टीम खेलने। क्या 2-3 टूर्नामेंट निकाले ना, सामने की ऑफर आएगा स्ट्रीम्स खेलना है हमारी टीम को, तो मैनेजर आरएनटी से सीख लो भाई, स्क्रीम्स के बिना क्या होता है। अरे भाई आरएनटी खेली ना भाई रीजनल्स में, मतलब इंडिया में तो खेली भाई, टूर्नामेंट्स वगैरह भी खेला है। आरएनटी वालों का भी आया था भाई। क्या? अच्छा स्क्रीम्स के लिए? हाँ पर हमारी टीम आउट ऑफ प्रैक्टिस खेल रही थी, ब्रेक पे थी। उन्हें बोला हमारा भी खराब जाएगा, उनका भी खराब जाएगा, ऐसे बोला। हमारे बंदे नहीं बताया, खेल रहे नहीं 6-7 दिन से। हमने बोला कैसे खेलेंगे हम भाई, बंदे खेल रहे नहीं साथ में। ज्यादा लंबा ब्रेक हो जाएगा तो सीन हो जाएगा फिर तुम्हारा। नहीं चालू हो गया, आप खेलेंगे। दो कितने गए? 2 गए ना, 3 गए वीक। ये डेली वाला है ना अभी स्क्रीम्स, डेली टूर्नामेंट है, 3 छोड़ दिए। अच्छा अभी खेलेंगे, अगला खेलेंगे ये लोग। सब पड़ा है इनके पास, देख निंटेंडो से लेके सब पड़ा है, कंट्रोलर सब। आज वाला स्क्रीम्स तो कोई नहीं खेली भाई, आज खाली एसटीएल थी बड़ी टीम में बस खेलने के लिए। अच्छा मीन भी नहीं खेली आज तो, सब देख रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं सारी टीम्स। भाई ये बीच बीच में क्यों साउंड बंद कर दे रहे हैं? To your other teammates that want to, you know, help out for once finally. अभी देख नए कॉम्प आएंगे भाई। क्या कुलदीप कल ये से? लोगो तेरा है क्या? ये लोगो तेरा है क्या उनका है? कौन सा लोगो? ये जो पिकाचू और उसके अरे उनका है रे वो। मस्ती करे ना वो आदमी का, वो आदमी वाला।
Every now and then we कौन get सा a लेफ्ट player और राइट who में? hits it and goes beyond अरे that. बीच And I में अच्छा realistically think बीच में that वो मेरा है। Overlord is one of those players. वही Yeah, पूछ and रहा a था lot of the मतलब ऐसा characters कैसे that they लोगों play, के I think बीच में are आदमी some of डालेंगे the तो वो भाई really एकदम challenging from सेंटर में आ गया रे ये perspective in the game. Aegis/Zarina. These are स्क्रीन के characters that सेंटर में have kind of sub things you have कल to से be बंदे managing real time एजी बॉटम inside लेन of your खेलेंगे engagements, हाँ making sure भाई that you're sequencing all of your buttons and attacks in the exact right order to maximum effect. Yes, exactly. फिर कल से क्या मेटा ला रहे बॉस कुछ नहीं भाई एजे बॉटम लेना रहेगा भाई और भाई नहीं अटैक आएगा हाँ टेंशन मत नहीं ले नहीं इतना जल्दी नहीं आएगा बॉटम लेन इंडिया में इंडिया का पता नहीं है खेलने अभी कुछ पता नहीं खेलने के लिए 2-3 मैच के छोड़ देंगे खेलना एजे ट्राई तो करेंगे ट्राई करेंगे बट नहीं होगा खुशी है रे एजे अर्ली गेम बट खेलने वाले भाई खेलने वाले होते हैं भाई वो बराबर मैनेज करते हैं उसको हाँ वो है पर अर्ली गेम खुशी है बहुत मर जाएगा नीचे खेलेगा तो इंडिया वाले लोग में पता चलेगा भाई कल से क्या होता है तू एजे जंगल करा के खिला भाई यार बंदे माचान जंगल करा रहे हैं मजाक है क्या भाई सरीना भी करी थी ना जंगल हाँ सरीना भी करी थी भाई सरीना के मैकेनिक्स सीखना पड़ेगा 2 स्टॉर्म 2 डैश वाला हाँ रे वो जब तक पता नहीं चलता ना मतलब कैसे यूज करना है तब तक कुछ नहीं कर सकते भाई हाँ वो तो हाथ देखना पड़ेगा पूरे पोकेमोन पे कि तेरे को पता भी है 2 स्टॉर्म मारना है 2 डैश मारना है लड़ाई के बीच में तेरे को समझेगा नहीं क्या मारूं वो भी है और मेन तो उसमें बंदे पकड़ना चाहिए ना तेरे को जिसको मेन पहले तेरे को खत्म करना है उसको नहीं खत्म करेगा दूसरे को करेगा तो तू मर जाएगा उतने में सीधा ना ये सरीना जिसको कम मिलता है ना हाँ वो सीधा चढ़ जाता है एक तो हुपा पे चढ़ जाता नहीं तो जो भी मतलब कम एचपी वाला है ना उस पे चढ़ जाता वो नहीं तो ब्लेसी गायब करते पहले पल्ट मार के सीधा अल्ट मारते भाई 40,000 ले लेगा 40,000 नहीं खेलेंगे सिलिकॉन लिया है भाई 40,000 नहीं खेलेंगे भाई ओवरलॉर्ड का रिकॉर्ड ये देखो भाई लूका वीका पे स्विच होएगा एप्सोल पे जाएगा 40,000 पे नहीं रहेगा ये रीजन पे from any engagement is really good against opposing things like Dragonite that are looking to secure objectives. लुकारियो से जहर होता है अब भाई बस यही करा भाई जहर पूरे टूर्नामेंट में इसका ही लुका दिखा है मेरे को बस ओवरलॉर्ड का 113 रहेगा भाई ब्लैक हैंड की तरफ से 113 फर्स्ट पीस के पहले ऊपर टॉप बेसिकली जाता है ये रीजन पे या तो ब्लेसी नहीं तो ऊपर टॉप जाएगा पहले बी पे 3-3 की फाइट लेंगे टॉप पे इसमें बैन उनका कोई सीन नहीं है ना मतलब ये बैन का सीन अबे नहीं बैन का कहाँ सीन है साले यार ये लोडिंग पे लग जा रहा है मेरा नेट खत्म हो गया तेरा कैसे खत्म होगा वाईफाई पे है ना साले लोड हो रहा है ना अटक गया विंडी ऐसे ओवरलॉर्ड थोड़ी ना खेल रहा है अभी हो गया उनका खत्म अबे ओवरलॉर्ड ही खेल रहा है देखा नहीं क्या तूने अभी किनका मैच है ब्लैक हैंड वर्सेस इसका है ना भाई इक्वलाइज टर्नेटर ग्लेशियन हाँ वो तो है रे वो वाला नहीं रे ग्रुप सी का मैच चालू हो गया क्या हाँ आईसीएलई वालों का है वर्सेस ब्लैक हैंड हाँ ये टीम ग्रुप ए में थी तो ग्रुप सी में डाला है ये खुद शॉक हो गई रही टीम पता है बोली हम तो साला ग्रुप ए की तैयारी करके आए तो तुम ग्रुप सी में डाल दो They might get the AS energy deposit here. Looks like it. That is just enough to take them over to level 4. Qualified हो गए ना ये दोनों हाँ दोनों qualified So that way that 5 AOS energy would in fact evolve them. Micro gameplay is sometimes standing still. सरीना अकेले क्या करेगी भाई मर जाएगी अकेले सरीना Slash and now hitting their level 4 evolution onto the Blissey. A 4-player rotation in the bottom path for first piece. Yeah, 4-2 here in the ओ भाई लुकारियो का अकेला छोड़ दिया ऊपर वो अकेला ही खेल रहा है भाई अकेला ही सोलो टॉप देख रहा है 3 बंदों के अगेंस्ट तो नहीं कर पाएगा
Overlord does get pushed back. Their HP मर are गया absolutely plummeting on my screen right now. They do get knocked out, but notably 5 नहीं होता नहीं तो कर देता वो 5 नहीं करने दिया नहीं अर्ली गेम में 5 भी हो जाता तो कुछ नहीं उखाड़ पाता है 3 बंदों के सामने. little bit closer to the evolution. Look at iCleanse Blissey though, doing the same thing as Blackhand's Hoopa. A little bit of a central area invade on either side. Yep, we see Hoopa walking away from that with a blue buff here. खत्म अभी आएगा नहीं वो वापस मुंह दिखाने. Pokemon getting the experience from it and putting iCleanse Dragonite a little bit behind you. Oh, Overlord just getting out of danger. 4 लेवल गया वो 6 लेवल हो गया भाई. 5 नहीं दिया भाई उसको लुकारियो को. हाँ वो पीछे चले जाएगा इस 5 होने के लिए. Lucario rotating to the bottom for Black. वीना उनका हो गया ना शायद 6 का हो गया क्या वीना? 7 लेवल का हो गया. वीना 7 हो गया. शायद से वीना टॉप पे जाएगा फिर. This top path rotation to bottom for the set of second beast. I think it is a really cool play. North America has kind of become well known for it in a few cases now. We have Untamed here trying to fight against Ivysaur. Curios doing a lot of range damage, trying to keep just barely out of range of Chef's powerful Machamp. Really powerful boosted Venusaur attacks, getting those vines out of its back, stamping its opponent right into place of very small stun, in addition to dealing an damage. iCleanse going down there is very important because वीना छोड़ेगा नहीं भाई बहुत लेवल है वीना का. 8 हो गया भाई वीना. बहुत है भाई लेवल उतना वीना के लिए. अगली ड्रैगोनेट 8 हो गया. होने देना कुछ नहीं कर पाएगा उसका स्टैक भी तो चाहिए 3. ओवरलॉर्ड 2 किल ले गया बे. Yeah, we see Overlord getting completely caught up in this Lucario level. पावर पंच खेल रहा है. नहीं ई स्पीड. हाँ पावर पंच. ई स्पीड खेल रहा है वो. देखा नहीं मैंने. अभी उसका गेम नहीं देखा तूने पुराना वाला ना? अभी जो मतलब. हाँ वो पता है ये वाले मैंने देखा. We see Blackhand decline to push this point in the bottom path, instead looking to spread out here. उससे पहले का भी मिस किया था शायद तूने. उसमें जो डोमिनेट किया था 1 लाख वाला डैमेज करेगा क्या? नहीं देखा. वो मिस कर. उस देखना था भाई. लेकिन जल्दी तोड़ दिया क्या? 10 लेवल Venusaur खत्म है भाई इनका गेम. वीना 13 का 14 हो जाएगा भाई 13-14. 13 तो इजी है 14-15 भी हो सकता है भाई अगर उनको सारे ट्रेड मिले तो. Now, notably, not many times do I see Curios out-leveling Overlord. Usually he doesn't allow that to happen, so it looks like they're posturing up here to try to change that a little bit. We have Slash backing up Overlord as they charge in. A Dragonite finding a KO into Curios, but of course Jungle Book evens up the score. Yeah, the current experience spread on Blackhand's side, kind of a symptom of the fact that like Overlord was a little bit behind in the top path early because they were 1 to 3 at several points up there. They are a player capable of lasting that out and staying up in that top path despite that. They do take the red buff right out from underneath Jeff. Fantastic here using the Unite move, get that. अब भाई अभी उसके अंदर एक स्पीड बची रही है मेरे हिसाब से. ये क्या हो गया? Just rolled over, and on the back of Overlord stepping up to speed up the speed of that score. They get just under the wire. I know the Pokemon Unite animation doesn't show, but I'm pretty sure they. अबे जंगल से तो निकल रहा था ऊपर गोल कैसे कर गया? Amazing teamwork there. क्या बताओ skip कर दिया. Assistance comes in to get a couple of big KOs. Blackhand takes the first 2, and Curios ain't done there. Machamp का यूनिट उसका फायदा ही नहीं पड़ा उसको. उसने चार बंदे एक बंदे. लुकारियो भाई. And they find themselves a KO too. Puff stays from range. भाई लुकारियो और ये मतलब ये कर रहे भाई आउट जोन में इंडी. भाई ऐसा लुका मैं खेलता ना मैं बोलता इनका तो मैं रिप्रेजेंट करता भी. क्या बोल रहा है भाई इस तरह का लुका खेलता. इस तरह का भी नहीं रे लुटानो जितना भी खेलता ना. अब इसके 4000 कुछ मैचेस है ना. ओवरलॉर्ड क्या? Elo is fast on the portal and rotates up to stop a 40-point score. Yeah, and this is kind of the big advantage of having that Hoopa accessible to you, but iCleanse, seeing that Hoopa rotate up, does take the opportunity अंडर लेवल कितना ही अंडर लेवल रखेगा तू लुकारियो को एक बार सारे रख सकता है. लुकारियो को नहीं रख सकता ज्यादा टाइम तक तो अंडर लेवल. They get 1 KO, the Scald almost takes them down, but they stay up and available
Great healing coming out of Slash there. Untamed launches in with their own Unite move to try to keep this siege ongoing. Overlord resets with the Bone Rush all the way back to the goal zone, and they stay up and good to go. Ever in the bottom क्या ही घुमा रहा है ये देखा क्या ही घुमा रहा है भाई of the game board here. जिंदगी से खेल रहा है वो लोग की And trying to acquire some of these levels. They are currently a bit under leveled compared to Blackhand in a couple of these spots, and they need to kind of close the gap on these. ऊपर ले लिया रहे उसने ड्रैगन हेड में बंदे तो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए ना अटैक करके नहीं मार पा रहा तू छोड़ दे जंगल खेलना the entire time, staying right near them, making sure that they are never too far up there without ऐसे कि स्लो ब्रो लास्ट में पकड़ ले लुकारी को तो उसको पकड़े तो वीना को कौन रोकेगा not only does your pedal dance get wider, but it starts recharging even quicker as your किसको रोकेगा वो तू या तो को पकड़ या तो वीना को पकड़ इन दोनों को पकड़ ले तो ज़्यादा पे आने का चांस है तो इसको कौन पकड़ेगा ड्रैगन हेड को अबे तो इसके पीछे भाई बंदे वगैरह भाई ये दो Okay, Blackhand looking to get a free Dreadnought there, and Icon looking to maybe generate some value in the top path, but we see the Hoopa again. ये देख भाई पूरे बंदे वही घुमा रहा इधर भाई अकेला ले रहा वो ड्रैगन हेड उसको कोई दिक्कत ही नहीं जा रही देख रहा है वो रोटेशन बिगड़ गया अभी समझ रहा नहीं कुछ उनको क्या करना है अब एक ही कॉल रहेगा जैप 50-50 करो सच बोलता है इंडिया का रहता ना सब यही कॉल रहता है जैप 50-50 Elo needs to stay back and try to be protected unless they want to throw down a very aggressive portal. Pengu launches in with a double stomp, but they are immediately shut down. Hyperspace away from Elo, lock them in place, and they get knocked out. The Super Unite is on Curios, but they are able to outlast it and sustain and get out of there. Great support play from Slash. दौड़ा के मार रहा भाई लुकारियो dominant factor around this Zapdos pit. Yeah, we see them in चंपी यूनाइट है chilling up top, maybe looking to get किधर जाके मारा किधर मारा the rest of their team a chance to close in on them. There's that Championite trying, इधर and they're देखना भाई ओ भाई स्टील कर लिया स्लो ब्रो स्टील हो गया burn damage that was outlasting there on the Zapdos. iClan was able to take it. Not many players available for them to score, but Pengu is one of them, and Pops is going to put in 30 points. They do have a lead in this game. It is tiny, it is a fraction, but they are in the lead. एक पुश में खत्म कर देगा भाई वो लुकारियो बे देखना डिफेंड करने के लिए 4-5 बंदों को कूदना पड़ेगा ठीक है और वो लुकारियो के एक्सट्रीम रीसेट पे रीसेट मिलेगी भाई अभी टाइम नहीं है जल्दी आना पड़ेगा huge happen right now. The smallest amount of points in pocket, which is what you want, is 27 points on Jungle Book, but they are all the way back in the respawn zone. They gotta come back to win the team fight. This Blissey is coming back up in a second, but Machamp is down for a while, and there are no Unite moves for either team. Maybe favors iClan with their defensive goal zone. Yes, they are able to get one big knockout here, but Overlord and Slash are back as well as Elo. There is still 15 seconds left on this game. That is time enough to make something happen. No way, Frick found themselves another Unite move as well as a Blissey one. This fight is ongoing, and iClan's defense is standing strong. Overlord's putting in 50 in the top path, but the jump pad shuts them down. Frick able to stop it at the last second. निंजा सिंड्रेस आया था क्या नहीं भाई नहीं किसी ने लिया ही नहीं भाई निंजा सिंडिका तो भाई नंबर ही नहीं है भाई इधर भाई छोटा स्कोर किसी पे था ही नहीं भाई and Scald. Those are my MVPs of that match. लुका पकड़ो भाई पिकाचू उठा लो भाई able to secure the Zapdos despite everything. Blackhand played that game perfect. Shut down every single opponent that came in towards the Zapdos. Thrift had a hope and a prayer, but that was enough निकाल कर गया भाई साहब. To give you a scalding hot take, I think that was an excellent slow burn. अभी उस दिन निकाला था T1 पे बंदे खेल रहे थे. ठीक है. हमारे साइड में सबको मार दिया वो लोग ने ठीक है. मैं जिंदा होके आकर 3 बंदों पे मुंह से चुरा के गया वो खाली भर रहे एक दूसरे के तो वो एक दूसरे पे चढ़ गए तो स्ट्रीम कर रहे थे 8-9 जन देख रहे थे उधर क्या बंदे तो 3 बंदों से सिक्योर नहीं हो रहा है एक लोग आके चुरा के मुंह पे थे बोलते
जैप्स फेवर भाई। अरे इनका ये पहला मैच भी वैसे ही गया था भाई, पहले मैच में ही जैप फेंक दिया भाई। 1,02,000 का डैमेज। कौन बोलता है भाई लुकारियो नर्फ पे? इसमें भी 1 लाख का डैमेज है। यहाँ पे बंदे बोलते हाँ 1 लाख का डैमेज। यहाँ पे बंदे बोलते हैं नुका का इस पे नर्फ किया है, डैमेज ही नहीं आ रहा। डैमेज देख लो भाई इधर। डैमेज छोड़ भाई, कि वो जिस हिसाब से भगा रहा है ना उतना ही कर लिया ना बस ये मैच में, बस है भाई। डैमेज भले 50,000 का दे, पर जितना टाइम वेस्ट हुआ है ना वो लोग का। देखना बाकी बंदे कितने इजी लेवल पे बिना फाइट लिए। ड्रैगनहेड को तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, वो बस इधर से ये ले रहा था। ड्रैगनहेड ऐसा सिंगल में टेंशन ही नहीं है सिक्योर करने का। But their lead was just not quite enough heading into the end game. Now, let's not kid anyone here, but let's watch this Zapdos fight. This was all going down, but there we go. The Slow Bros effect lives past them being in the team fight whatsoever. They find the secure, incredible fashion from iClan, and they were able to take this game. Overlord almost got को रोकने के लिए अगर पावर पंच से तो वहाँ रुक जाता। We see iClan celebrating अरे छोटा स्कोर भाई, छोटा स्कोर नहीं था उनका। Slow Bros deal when push came to ड्रैगनहेड पे कितना था? ड्रैगनहेड तो मर के आया था ना, उस पे होना तो चाहिए। था उधर से उठाया था फुटबॉल उसने। Very true. The game's going to give it to Serena. I think you and I personally are giving it to one move on a slow bro. But if there is a Frif themselves looking at the camera, that peace sign, they played so तो बैठ के सोच रहे हैं भाई लुका को कैसे पकड़े। iClan Gaming with a game 1 win. Now, पिकाचू लेके आओ बोलना when we are headed into game 2, iClan Gaming is going to need अरे हाँ to सच्ची पिकाचू होल्ड टैकल वाला खिलाएंगे ना, रोक देंगे as strong as Blackhand. Yeah, I'm going to be interested to see if रोक देता है ना वो। in the same character roster again because like you said ये ऊपर खिला रहे हैं ना, ऊपर पे क्या खिला रहे हैं लोग? स्लो ब्रो भी खिला रहे हैं ये लोग। ऊपर पे अगर ये खिला रहे हैं ना, क्या बोलते हो धकेलने वाला जो खिलाते हैं। कौन सा? अच्छा हाँ, एस्टोनिश। हाँ, उससे भी कैंसिल होता है उसका। सिलियन अर्ली गैंग टॉप लेन ओवरलोड के लिए। अरे पिछले मैच में तो किया था भाई, अर्ली गेम में क्या किया उसने? 20 कितना फर्स्ट 20 के बाद भी वो कितना 4 लेवल का था ना, उसके बाद भी भाई कुछ नहीं कर पाया। वही भाई, अगर उसको टॉप पे रोकना है तो कम से कम 2 के 3 बंदे चाहिए। अगर तो टॉप पे स्टार्टिंग में 4 बंदे करेंगे, स्टार्टिंग में तो रोक लेगा, ई स्पीड खोलने का क्या करेगा? ये 4 बंदे गोल करेगा तो वीना लेवल अप हो गया, तो उसका फार्म वैसे पड़ा रहेगा। वीना बोलेगा नीचे आके ले ले फार्म। वो है ना सीन, वो या तो उसको डोमिनेट करना है तो 2 बंदों को ही डोमिनेट करना पड़ेगा टॉप पे। पीछे वाला स्टेज बड़ा सजाया है वो लोग ने। अरे उधर बड़ा मतलब वो स्टेज वाला मैच चल रहा है, स्टेज पे जो हो रहा है ना, और इधर ये ऐसे ही हो रहा है। ऑफलाइन वाला नहीं, वो वाला सेक्शन टाइप वाला क्या था उसका नाम? Pocket I like the swaps a lot. Shep off the magenta to crammer in a player Black switch. and वाला क्या किया? I believe we now have ग्रेडियंट लेके आया भाई, ब्लैक एंड वाला। on the slow bro this वो time. ग्रेनिया देखने मिल रहा है भाई तुमको। For some reason, Puffs thought ओवरऑल ग्रेनिया, हाँ ओवरऑल ग्रेनिया सर्फ खेलेगा ना। क्या फुल अटैकर ग्रेनिया जाएगा ये? भाई हेलो, कोई तो ग्रेनिया खेलो। लो भाई आज भाई तुम्हारा तुम्हारा इच्छा पूरा हुआ भाई। ओवरलॉर्ड ले रहा है भाई, क्वालीफाई कर चुके इसलिए अच्छा खिला रहा है। लो भाई एज भाई निंजा आ रहा है आपके लिए। अब तो भाई निंजा पे अल्ट देनी पड़ेगी। Is Greninja playing in the central area? तो निंजा पे अल्ट देते कैसे प्लेसेस है भाई, मेरे को पता ही नहीं चलता। We also saw JB, their center from the previous game, ट्रिक है तो बताना कोई। which is commonly a top path. वो तो भाई ये क्या बोलते हैं, इस सरीना वाले प्लेयर से ही कुछ होगा। हमको क्या पता भाई। Overlord usually wants to try to take over games, giving Greninja BC access से to कुछ BC प्लेयर से ही कुछ। what's going to happen, but everything will be answered as we मैं head खुद into BC game प्लेयर है, number 2. ग्रेनिया आता है दिक्कत देता है।
अभी देख लो रेंज ना पे ना वो दिक्कत देता है बहुत। इधर देख निकल जाता है बे आगे ग्रीन जाए अब मजा आएगा। हाँ भाई ये लोग टाइम पास कर रहे हैं, क्वालिफाई है इसलिए। हाँ भाई क्या करेगा भाई। Rather slow clear. Dratini not the best at knocking out central area Pokemon. Shep under a decent amount of fire here. वो ओवरलॉर्ड भी बोल रहा था क्या भाई, इतना करने के बाद भी जैप नहीं ले रहे। मैं ही कर लेता बोलते वो जैप का भी काम है ना। बोलता है ये भी मैं करूँ। हाँ भाई तुमसे ना हो रहा भाई। बोले ये भी मैं करता, तुम ड्रीम 11 पे जाके टीम बना। हाँ भाई Yeah, this time around, yes, we're going to have that adaptation and try to shut down maybe some of Greedent's early scoring potential that it has. बस सोलो टॉप ग्रेडियंट कर रहा है। Jungle Book, a player that we have often known as a attack damage player from range, but this time opting into a melee attacker of Greedent. Yeah, interesting pivot for them. The Greedent play नहीं ये लोग के रीजन में बॉटम 3 खिलाते हैं। बॉटम 3 खिला के हुपा टॉप जाता है 20 फाइट लेने के लिए। अपने भी रीजन में 1-1-3 खेल रहा रहते भाई, फिर 2-1-2 चल रहा है अभी। नहीं इनका रीजन देख, इनके रीजन में ऊपर नीचे खेलता है फिर ऊपर जाता है 20 के टाइम पे, ठीक है जब इनके रीजन में खेलते हैं। और जंगलर भी टॉप आता है, ऊपर 3-2 का गैंग होता है, ऊपर 3 नीचे 2 का ऐसा होता है 20 पे पहले। ग्रेडियंट सबका अल्ट बेट करेगा, फिर ग्रेडियंट सबका अल्ट बेट करेगा बोलते हैं और फिर ग्रीन जार्ड मारेगा। इंडिया में 2-1-2 होता है ना। हाँ तो इंडिया में 2-1-2 में हुपा ऊपर रहता है, और दूसरे रीजन में जो 2-1-2 होता है ना उधर हुपा नीचे रहता है। खाली हम ही ऊपर खिलाते हैं हुपा, पता नहीं क्यों। तो सच बोलो ना, ऊपर खिला के ज्यादा मतलब नहीं है, इतना नीचे खिला के नहीं मार सकता भाई। वो 30 का स्कोर कर दिया। Great heads up play knowing Pups was going to slack off. Yeah, and that was fantastic. You know, those scores, our Greninja on the left side is playing the attack weight stacks, which means every time they deposit that Aeos energy up to 6 times, they gain permanent निंजा attack को boost for the rest of match. दिखा क्यों नहीं रहे भाई, कितना दिखाएंगे वो, जंगल कर रहा है भाई। जब फाइट होंगे तभी देखने मिलेगा तुमको, जंगल करते हुए क्या देखोगे तुम। होगा तो दिखाएगा ना। निंजा को देखना है मैप में, देखो भाई ऊपर मैप में दिख रहा है। Trying to get as much displacement as they can, just giving opportunities over to Curios on the Ivysaur. We see Overlord hitting that level 9 on their Greninja, meaning that Unite move is ready to go. They're going to jump in on this Cramorant or Dragon. उठाया एक किल Do they even need मार to? दे सर, They got a किल। KO streak of 2 without using it at all. Elo puts down a great reset, but Overlord after ओ getting a भाई healing अरे from उधर the नीचे देखना भाई, वो doesn't भी मर even जाएगा। really need it. Pups gets chased down by Curios. किधर गया था भाई? Another kill. Pengu the only one 3 left किल up around this पीछे Dreadnought. जाके मारा। Doesn't get its HP bar reset, but हो गया भाई Overlord is लग गया looking इनके। for more members of iClan. मिल जाएगा वैसे तो। It's kind of saying, hey, this objective is gone. Maybe we could still अंडा लेना take चाहिए इन लोगों को, Dragonite अंडा। pivoting into the center, while मैं Jungle ऊपर Book भी on ले लिया the ग्रेडियंट green ने and the अकेले। top path push that Rotom objective in here to build up their attack weight stacks. Now, Greedent, a Pokemon that we normally think of as a great वो मेरे last टाइप hit वाला objective गेम प्ले है sealer ना। when it's running that fluffy tail. This मैं time क्रसल around, खेलता हूँ Jungle Book not भाई। taking it and instead opting into the split push like you just mentioned. Bouncing off of the उनका Hoopa जंगल and विंगल then गोल hitting बिल the ऑटम Greninja विटम stops लूंगा that score. Not exactly a game-changing moment, but a cool little interaction. Yeah, we see Venusaur grabbing one of देखो those देखो वो buffs हम in मैंने the तो एक लिंक central भेजा area था for एक वाला Black Hand here, टूर्नामेंट another का one of those हमारे, characters that scales जिसमें हम लोग really इन्वाइट well. कर रहे थे ग्रेडियंट Venusaur वीडियंट and से। Greninja being the two primary उसमें things हम that पहले Black ग्रेड Hand पे wants to जाते ही put नहीं as थे। much experience as possible into over the course of this game. मैं रहता था We're अपोनेंट के sitting at जंगल about में, 5 minutes and 40 seconds एक or बंदा so. अपना जंगल ले Black रहता Hand है, has a full बाकी सब roster बंदे of बीच का फार्म एक बंदा और Unite बाकी here बंदे to ऊपर utilize रहते हैं। if they खाली एक so बंदा choose नीचे once they get स्टील the के लिए push बैठा in. Gets रहता है, knocked back बस with an egg bomb. मिला तो Slash मिला looking for a नहीं little तो bit नहीं। more, but that dive keeps them भाई खत्म हो unadvantaged गया, मर गया for क्रैम। now. But no, they get rushed down. 1 Overlord kill। finds the KO, and then Smoke Screen stealths away. Love the shadow ball coming out of Elo's Hoopa here, fighting अब a मेरे को little भी bit लगता है of निंटेंडो पे extra स्विच होना suppression with पड़ेगा। the stuns that it lines up when Overlord wants क्या to करेगा dive in on this निंटेंडो Greninja. स्विच पे, That is तेरा गेम really खराब हो true. We've जाएगा। seen a lot of players opt into the Phantom Force for तो a इसका little तो bit of अच्छा दिख रहा है। surprise plays, but yes, sometimes the Shadow Ball stun is just too much to give up in that situation. Friff is just getting auto-attacked all the way back to respawn here by Overlord. Pengu gets इतना वेस्ट नहीं करता है वो लोग वेस्ट नहीं करते team decides they don't want any part of that, ये and क्या they are going बोलते to हैं retreat back to their own सर central area. Hoopa क्या and बोलते
सर्फ नहीं रे क्या है वो मूव का अरे वो जिससे अंधेरा कर देता है पूरा ब्लैकआउट स्मोक स्क्रीन स्मोक स्क्रीन एंगेज करने के लिए नहीं यूज करते बाहर निकलने के यूज करते ज्यादातर गेम तो डोमिनेट कर रहे हैं अबे अल्ट मारेगा ग्रीन जैसी था मुंह पे देख मारे वेट कर रहा है भाई देख रहा है किस पे मारू अबे ब्लिज़ी की तरफ लैंड कर रहा बराबर तो दिया खत्म भाई दो साथ में एक साथ में दो गए 5 क्यों होगा क्या इधर 5 क्यों है 5 क्यों है तीन बंदों पे 5 दिया क्यों था है उसने 5 बराबर क्यों 5 क्यों 5 क्यों मेरा इधर मेरा क्यों नहीं दिखा अरे नहीं उसने देखना और ये 5 बोला था वो हो ना गया पहले कैसे बोल दिया तुझे पहले दिख गया था नहीं भाई मैं पहले ही ये कर लिया था ना क्योंकि देख पहले ही 2 ले लिया था उसमें बंदे खत्म हो गए उसके बाकी बंदों का एचपी कम था ना इजी 5 किया था उससे मेरा थोड़ा पीछे चल रहा था ना गेम सेम ही चल रहा है कितना टाइम चल रहा है तेरे ऊपर क्या होता नहीं अभी मैं अभी पे इससे ला गया बराबर पे ला गया लाइव पे ला गया क्या बोलते निंजा ओपी है ना भाई बाकी बंदों से नहीं हो रहा भाई ओवरलॉर्ड बोलता मैं ही कर लेता हूँ भाई सब वो बोला लास्ट हिट का दिक्कत है अभी वो भी मैं कर पिछले मैच में पूरा ये कर रहा था टॉप लाइन डोमिनेट भाई बट जैप नहीं हो रहा था ये कितना बचा 3-2 कितना लेवल 14 का होगा 3-20 पे 3-20 पे ही हो गया था वो 15 हो गया भाई अभी हो जाएगा थोड़ा सा ही बचा एक भी स्पैम मिल गया था 15 रिकॉर्ड बना देता भाई इधर 2 ले लिया वीना भी हो गया ना खत्म है भाई वीना 13 का हो गया चलाने पर डिपेंड करता है निंजा ओपी है वो तो सब पोकेमॉन चलाने पर डिपेंड करता है अबे निंजा ओपी पर निंजा को पहले लो करके देना चाहिए एक बंदा लो करके मिल गया ना उसको तो उस पे वो सर्फ मार के दूसरे पे भी डैमेज देगा बंदे क्यों हैंग पड़े ऐसे खड़े हो बेस्ट निंजा एने का एक प्लेयर है ट्रेनर एलजीसी वो बेस्ट निंजा देखा है मैंने इधर देख लो भाई यार तो सिर्फ क्लोब्रो से लग रहा रहेगा इसको पकड़ेगा इसको वीना को ही पकड़ेगा तो और किसको पकड़ेगा किसको भी पकड़ा गलती होगी निंजा भेजा क्या है निंजा का यूनाइट कब चलेगा यूनाइट अभी निंजा यूनाइट ही नहीं चला तो मर गया हाँ चल वीना होल्ड करवा देगा बीसी भी बचा है वीना किधर है उधर लड़ेगा तो हो गया काम खत्म तेरा हाँ ये 50-50 करेंगे बोलेंगे छोड़ भाई निंजा आ गया तो लग जाएगा अरे उठा लिया वीना को यूनाइट देके उठा लिया फिर भी नहीं मरता नहीं मरेगा भाई जब तक ब्लिसी नहीं जाएगी जल्दी नहीं मरता ग्रीन जाके जैप को क्यों मारा क्या होता है अरे यार जाएगा शायद जैप अबे ग्रीन ले लिया ड्रैगन लंबा कूल डाउन पड़ा था इस बार भी जैप गया इस बार तो खुद की गलती से गया है चल कितना गोल हुआ नहीं होगा भाई नहीं जीतेंगे मुझे लग रहा है 50 ये भी मर गया कोई मार दिया ना अबे वो 6 करके छोड़ रहा है इसको 200 भाई अबे खत्म है हार गए भाई अबे हार गए भाई भाई क्या हार गया भाई और उनको थोड़ी ना अरे भाई 22 गिर गए
किसने मारा? नहीं क्रैमर ने मारा ना अभी चीव है क्रैम पता नहीं भाई 22 का स्कोर पड़ा था ना किसका तो भी पता नहीं किसका तो भी पड़ा था 22 का देखो पीछे करके थोड़ा हाँ ऊपर 14 किसका वाटर गोल किसका मारा नहीं ये वीना नहीं मारा हाँ वीना का है 11 का अच्छा 22 मारा ना 11 का भाई मैं बोला उस क्रैमर को छोड़ दिया और हारे ना भाई कितना गंदा हुआ वो भी जीतते क्या वो छोड़ता नहीं तो भी जीतते हाँ वही फालतू छोड़ दिया ना उसको पहले कैमो को मारने अच्छा तो पहले पोकेबॉल उठाना था उसको 91 का डैमेज दिया है भाई कौन बोल रहा भाई ट्राई हार्ड नहीं कर रहे लोग और कितना ट्राई हार्ड चाहिए इजी रेवेनेंट से ज्यादा ट्राई हार्ड इनका दिख रहा है अभी और एक मैच होगा ना हाँ 1-1 हो गया ना यूनाइट वाले को जल्दी खत्म करना है भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं अब क्या खेलेगा भाई बस अब भाई सपोर्टर खेल देना Yeah, really fantastic to see these teams flex not only the different Pokemon, but different roles too, right? Like Overlord and Jungle, we talked about how they work so well in tandem, swapping their positions here and giving incredible engages on this Greninja, like we saw here with the 5 Surf KOs and ultimately the Dreadnought secure on this Greninja. That is true. You know the way to not lose the game when Zapdos gets knocked out. Sometimes that is having a good enough point lead headed into these final moments. Overlord on that greeting, getting sneaky back caps the entire time with their Eos energy, seemed to give them just barely the lead they needed to get points in, and Kyrios was able to dunk in 22 to save the game. Yeah, those 11 points going in while under heavy fire there on the back of their teammates standing on the point was exactly what they needed by the slimmest of margins. Yes, exactly. Now, we are going to be getting into the next game very shortly. I cannot wait. What an amazing game from both of these teams. Blackhand showcasing why their macro gameplay really sets them apart in a lot of our minds and why we have them ranked so highly personally. But Iclan showing up and proving that they are better than people's opinions of them being the underdog story in this tournament. I'm interested to see here how this draft goes for Game 3, because I feel like we're in a position where we could see both teams readjust what they're doing, because now they kind of got to counter Ninja OP भाई अरे Warlord OP भाई Ninja क्या भाई Warlord खेला है भाई सब Ninja बहुत मस्त खेला मजा आया भाई Ninja भी सही खेला और Lucario भी सही खेला भाई और एक मैच बचा है और एक मैच में देखना पड़ेगा देखते हैं Warlord क्या खेलेगा भाई ऐसा लग रहा है भाई सोलो कैरी कर रहा है भाई Warlord is a direct counter towards a Cramorant. If they think that Cramorant is going to come out, Greedent is an amazing selection to rush down, use a berry belly flop, and get right in Cramorant's face. Okay, let's take a look at our player of the game here. This will be no surprise to anybody that just watched that Dreadnought engagement. 14 knockouts, 5 of which came in a row for Overlord. Yeah, Overlord. Central area. Overlord gets a Pensa KO. मैं भी सोच रहा गेम जब शुरू हुआ था अटैकर खेला था क्यों सपोर्टर डिफेंडर में गया this player really a phenomenal one. Muscle Man attack weight scope lens that full damage build. No bottom attacker की बात कर रहा मैं in the item loadout. Yeah, fantastic. Scope lens especially is such a powerful item on Greninja. One of the highest base critical सपोर्टर में नहीं गया डिफेंडर पे गया था क्रसल पे गया था पता नहीं क्रसल क्यों मेरे को पसंद आ गया जब तेरे को बता था सीन क्या मैं वीना खेल रहा था ठीक है ड्रैगन है लोग के साथ MVP मिल रहा था मेरे को हर मैच में ठीक है पता ना जीत नहीं पा रहे थे क्रसल मादर जब आ रहा था गोल पे गोल मार के उसके गोल के चक्कर में हमारे गोल हो रहे थे बार बार जीत रहे मैं बोला भाई रुक मैं खेलता भाई खेला भाई फिर मैंने गोल पे गोल मारे उसके बाद तो ठीक ही नहीं होने दिया भाई पोकेमॉन मेरे को सीजन 1 में
looking to do with their composition. And yeah, they ठीक really ही नहीं tried हुआ to भाई, dominate बड़े मुश्किल से फिर स्नोलैक पे स्विच करा है। could. It seemed like get Kramer in teed उसके up बाद position and get them to फिर पता नहीं fire कब on सपोर्टर the पे आ गया, masses पता ही of नहीं चला। Pokemon running after them. But in this case, yeah, you're right. मैं It तो didn't भाई work. But सीजन 1 Champ, में क्या though, खिलाता gives था? them yet another हाँ, engage tool. जेरा ही खिलाता था, Overlord's मतलब skill in जेरा that था ना Greninja. फ्री में। A very fragile Pokemon, a lot of जेरा movement खेला था, abilities, फिर a गाड़ी lot और of आया था ना, escape गाड़ी और खेला potential, था but still a Pokemon सीजन that if 2 it में। is 2 dove में आया था and ना it does सीजन not 2 have a में गाड़ी retreat और। option, it's probably getting knocked out. भाई Yeah, सोलो one में of ही the खेल रहा things था that's भाई really मैं true about गाड़ी और Champ into Wendy। Greninja specifically is if लगता you're है playing अगले the वर्ल्ड cross के chop पहले or कुछ dynamic punch skill set or even क्या? close कुछ combat, अच्छा you खाता just होता gotta तो fire सोच it के एक off in नई the टीम direction में they अटैकर probably खेलने का smoke सोचता हूँ screened बॉटम into में। and catch them even though you can't कर see फिर the बॉटम sneak लेन ninja. अटैकर We call ग्राइंड that कर। 400 IQ reads, I वो believe. तो अटैकर भी तो नहीं खिला रहे भाई। बॉटम लेन अटैकर स्पेसिफिक नहीं, मतलब कुछ पोकेमोन है ना वैसे कि जो मेटा में खेल सके वैसा, क्या बॉटम लेन रहे, टॉप लेन रहे, जंगल रहे, उस हिसाब से। मतलब अटैकर में कुछ खेलना है। हाँ, अटैक मतलब वही अटैकर ऑलराउंडर में। Having their Blissey kind of sneak over and try and grab a 5 before Blackhand could notice it, and being successful in doing so here. I would not be surprised if we see Elo go up to the top path shortly to go even help out Overlord and Jungle Book in that situation. But this time they are just fighting over this Autonos. They do not want this Machamp to level up, but it does find the last hit on that Autono. Yeah, that karate ये भी है ना, chop on बंदे Machamp मिलते नहीं भाई is no जल्दी। slouch when it comes to trying to get last hits, वो and this तो है Blissey भाई। is so tanky as we see Focus Band propping up. Is it भाई going तीन to तीन be बंदे enough? मार रहे It हैं is भाई ब्लिसी को। not. First knockout going over to Blackhand here in the bottom path. And you mentioned it, they got the knockout, but also that Focus Band cooldown, a held item that does have a सच बोलो, long one, so that Focus Band will mean ये that Puffs has to hang out a थ्री little देख के bit ना मेरे को एक safer ही on याद any आया। engages, notably this first beast. जब हमारे इंडिया में 1-1-3 का मेटा था ना, तब मैं और साइटी ने 2-1-2 खेलना स्टार्ट किया, ठीक है। हम दोनों बॉटम पे खेलते थे, ऊपर वाले को दिक्कत नहीं होता था कि उधर इसके साथ एक और बंदा रहता था। उनके यहाँ पे 3 रहते थे, हम खेलते थे क्रैमो स्नोलैक, ठीक है। अपना भी सिक्योर होता था, अपोनेंट का भी सिक्योर हो जाता था। और मैं मतलब क्रैमो स्नोलैक के साथ ना डिफेंड बहुत इजी है रे। एक 3 बंदे का पुश आएगा, ठीक है, जंगलर टॉप जाता है, हमारा जंगलर भी टॉप जाता है, ऊपर 3-2 का डिप गिरता है ना, अपने 3 बंदे उनके 2 बंदे, नीचे 3 बंदे रहते। 20 के टाइम पे मैं अंदर घुस के ये देता ले लेगा और मैं एक्सपेंड मार के पीछे आ जाऊंगा, कुछ नहीं हो पाता था क्रैमो की वजह से। अब इधर तो भाई 3-3 जंगलर घुसे हुए हैं भाई, भड़क गया लगता है लोग ब्लैक एंड पे, घुस के मारेंगे भाई। फाइनली निंजा भाई, पिछले मैच में निंजा लेके गया भाई मैच, 5 KO स्ट्रिक ले गया भाई पिछले मैच में। बेल्ट नहीं मारी ना, रैप पे हक दिया। जैप पे तो भाई फिर से आ गया भाई वैसा। ये भी हक दिया मेरे को लग रहा है, निकल भाई गया। मारेगा, एक साथ मारेगा, 2 मारेगा, 3 मारेगा। कूल डाउन पे रहेगा ना, एकदम टॉप पे लगा है बस सब उसका। खत्म है भाई। ओ भाई खत्म है। ये तो सर्फ के मजे है भाई खेलने वाले, अलग ही फील आता है ना सर्फ पे, सर्फ मारते हैं एक्सट्रीम वाली फील आती है। इधर एक बार स्लो ब्रो पे मारता ना सर, रेंज कम पड़ेगा, खत्म है भाई। सही ना देख, अल्ट है ना, इतना किल निकालने का क्या फायदा, यही तो फायदा है। with that extra boosted ले damage लेगा that your वो Unite move provides. Perhaps looking for a surf secure here on the अरे भाई, अगर सरीना Venusaur ना उस पे ultimately clutches it out there with a big वीना ले गया भाई। Curios has had their fair share of clutch moments in their season, but even in this game of this best of 3, Slash utilizing this Unite move, making sure that स्लो this ब्रो को goal वो zone खेलना siege for चाहिए। Blackhand is going to be in their favor. ओवरलोड कहाँ का प्लेयर है भाई? नॉर्थ अमेरिका, Untamed. So एनए का, एनए रीजन का भाई। and the secure, and guess where Jungle Book is? Yeah, this push up here really beneficial for Overlord to get their attack. 11 का हो गया भाई। 2 or 3 of those now, as Jungle Book is again split pushing in the top. भाई जब ड्रैगोनाइट आर्ट का नहीं हुआ, वो ऊपर ही मजे कर रहा है भाई। वो तो पूरा स्टैक भी कर रहा है ऊपर ग्रेडेंट, एक और गोल मारेगा ग्रेडेंट। देख वीना को जंगल भेज दिया तेरा करने
के लिए first game we watched in the set where तो it's kind तेरा of हो Black उसका Hand इजीली in the driver's seat all the way through. The question is going to be, can a Scald come on in clutch in the last minute if things get cleaned up in a similar way? That is true. A lot of Unite भाई moves ग्रेनेड coming पे ये online मजा for आता है खेलने में now. They're catching up to Black Hand in मैं that मरता ही नहीं regard. जल्दी They क्या are going to करेगा be भाई looking to अंदर take a team बंदे के fight. मुंह से Black Hand निकलने wants में to give अलग ही them मजा है none of it. भाई You see their spread out maneuver. iClan does not want to waste any of these options either, and they desperately ये need Shep कितने to का hit है 9. You see the क्या advantage here of hitting your ये breakpoints कितने का extra माचे early में for a Ninja. For Black माचे Hand मार ले already उनका has its Unite move है back, भाई looking इतना for its बचकाना second दिखता है use माचे of this भाई दे powerful दिया भाई skill, and माचे a हमको lot of इजी characters on iClan haven't even had their first Unite move utilized yet. Yeah, कितना exactly. 11 का विन है ना Finally catching up a little bit. Pengu at level 9, 11 का almost विन at के level सामने 10. कौन They 9 का do मैच में भी आता है combine तो for the कुछ ज्यादा KO उखाड़ नहीं onto पाता है Slash though, so Friff is going to hit that precious level 9. Slowbro's Unite move, one of the best counter Unite moves in the entire game. Overlord has got to keep their head on the ग्रेनेड swivel. डिप गिर रहा है भाई Black ग्रेनेड Hands डिप here looking like they're out of position, but remember they have that तेरे को पता है ना powerful वो ये rings unbound on क्या बोलते हैं Elo's शैडो बॉल है movement ना here ये that's gonna let them file in कौन सा clown car style. While ये iClan जो had मारा to all लुक walk ये over this हाँ objective. And look how they created शैडो बॉल space के बाद too दो with their अपना hypersphere, स्टैक giving them वाला so much बेसिक room अटैक that the स्टन portal was देता है completely हाँ safe this time around. Pengu joins the fight though, पोर्टल names भी are स्टन coming देता into है it. फिर Greninja doing a ton of damage. Overlord वो is भी still एरिया up डैमेज with देता है almost पोर्टल के no साथ ना HP. They are able to escape, get हाँ a little bit of healing. Pengu goes in for a bit of a जितने refight, इनको but they're शैडो बॉल caught लगा out उतना deep. इनको स्टन Curious पड़ेगा and एक Jungle झटके में combine for a अच्छा nice KO, and Puffs is on the run. Yeah, जब ग्रुप see फाइट में तो here, 2-3 बंदे साथ में Black आते हैं Hand ना looking to हाँ take this objective off the map तो before वही the शैडो बॉल Dragonite मारेगा can दो get को तो back down लगेगा here. The लगेगा Dragonite फिर उधर Unite पोर्टल moves मारेगा in, तो सबको but स्टन पड़ narrowly जाएगा still अच्छा secured by Black Hand with that hyper beam not इसके लिए quite being खेलते हैं charged up yet. Has iClan कास्टर select तक first नहीं has the objective थके secured, नहीं क्या run out. Who knows if they did not 8 get हर्ष that हो Dreadnought. गए Black वे Hand कैसे looking like अरे they're वो doing कास्टर भाई for चेंज it कर so देते far भाई in the early game एक that ही we know कास्टर the थोड़ी game कास्ट love कर them देता for. है Maybe even a little bit more ऊपर से कास्टर right को दो भी now. ब्रेक मिल कास्टर जाए Junglebook at हाँ a भाई mighty कास्टर level के लिए 12 कमी on नहीं the है भाई credits. Yeah, not quite the same level 14 and a half we saw at the 4-minute mark for Black Hand on the ये Ninja, थकते but हुए still ऐसे nothing to टूर्नामेंट्स के लिए scoff at. कास्टर We're almost at 14 at the 3:30 mark for them. Right. Yeah, they finally tick over to level 14. I believe it's called a caster blessing instead of a caster curse. So, चार well कास्टर done रहेंगे there. ना हाँ iClan चार set है themselves a चार rotom that's headed down that इंडिया के path लिए भी a चार little है bit शायद late. That दो 3:30 दो minute mark. बेटे रहते दो Curious करते is फिर going दो to हो be the जाते last one left up to defend it. It seems like Junglebook is going to go help वन out बाय the वन bro. स्विच Yeah, if होते you're on the रहते iClan side of the board here, the level differential between these teams is kind of increasing as the game goes on. We've got Greninja at 14 for Black Hand. We've got Venusaur at 12. ग्रेडेंट Well, just a फ्लपीटेल वाला है single ना character from iClan has broken level 11. लास्ट शीट के लिए वो खाली Use of the hyperspace हाँ लास्ट portal में there बहुत by काम आता था Elo आपसे to make sure that the engage from iClan was warded off by that danger of the backup of both निंजा Curious देखने and में मजा आ रहा है भाई Junglebook. देखो भाई निंजा Teams फिर doing an excellent 14 job लेवल of हो गया रे keeping उसका all निंजा का wild फिर से Pokemon off the map. These players are excellent at Pokemon. होगा They know वो the भी कितने best way मिनट पे है for भाई them अभी to 3 secure मिनट a पे आ गए victory मैं is to be big and strong by clearing गया the भाई wild. स्लोब्रो खत्म है Exactly. Knock out all your wild Pokemon so you grow क्लोरो up तो big खत्म है and भाई strong. Why not take a उल्टा है तो उस पे non-wild ग्रेनिंजा का Slowbro? डैमेज अरे ऊपर लास्ट शीट लेके जा रहा है 2 minutes and 40 seconds left. वो पक्की चोरी कर रहा है भाई But definitely not जब as से big देख of रहा हूँ one भाई as they've लास्ट had हील this पे किल ले entire रहा है game. लास्ट This हील objective is in danger of बोलेगा being बंदा ripped. देख We फूफा can को never count out उनसे iClan's किल ले गया composition. MVP ले गया है अभी तो Untamed is on this Dragonite. ऊपर ऊपर से लास्ट हिटिंग सीख ले दो बंदों पे जो बंदा लो दिखा उससे मार देने का भाई इतना इतना ग्रेड लेके रहता हूँ बस कि अभी कितना लास्ट हिटिंग करूँ भूल गया क्या वो ऊपर लेके आया था कितने लास्ट हिट लिया मैंने Almost got that 50 in there from iClan. Junglebook with the 400 IQ खुद चल के player गया mentioned भाई they're ग्रेडिंग waiting चल out के that गया था storm, मुझे hiding in the bush to waste as much डर ही time नहीं as उसको पता है possible 50 so होगा that ही नहीं iClan wouldn't be in good position for the Zapdos. Maybe a little bit foolish though. iClan is here and ready to go. भाई स्लोब्रो को देख बचा के रखे उधर देख छुपा के रखे उधर स्लोब्रो आते उठा लेना बोलता है स्लोब्रो बोलता है मैं हूँ ही नहीं भाई मैं स्टील के लिए अब आ गया भाई फाइट में आना पड़ा उसके It's so
tough to take this fight though, where not knowing where the Machamp is. भाई Machamp can completely feunard चल sweep गया this game in a direction. If भाग they गए need बंदे to, if they want to ड्रैगन use नेट that भाग Ignite गया to push them all किधर the way. ढूंढ रहा है Blackhand does take this team fight though around the top side. बंदे ही नहीं मिले उसको टीम फाइट के लिए Elo launching out a hyperspace fury trying to अरे ये पकड़ लिया वैसा रीना को तब तक खत्म हो जाएगा ना बीसी यूनाइट आ गया भाई पड़ेगा प्लेस यूनिट पड़ेगा पड़ा पर एक क्वेश्चन पड़ा ऐसे दे इसका पड़ा भाई भाई खत्म भाई मैं मार दिया भाई गिव निंजा ने 2 किल 3 किल अब वो ग्रेन ही नहीं दिखा रुक भाई नीचे देखूंगा इधर था ग्रेन निंजा इधर गया नीचे गया सर्फ मार के जी भाई
for Black Hand here. GG भाई ब्लैक हैंड ले गए भाई जैप भी सिक्योर कर दिया भाई आखिरी में बस ये काम भी करते हैं उसने 2 मैच से कुछ नहीं हो रहा था भाई बंदे से अगर मैं रहता ना भाई मैं तो वही मीम भेज देता रात भर तुम सुना सीधा सीधा इसको ढूंढता है एडिटर को उल्टा जल्दी ये मीम बनाया था वाला रातों रात burning on the scoreboard here, but if every member of iClan emptied every amount of Me their too, my pockets team. here, they would still पॉइंट ही नहीं उतना स्कोर करने के लिए इनके पास जैप भी मैं सिक्योर करता ड्रीम 11 की टीम अब स्कोर ही नहीं इनके पास स्कोर करने के लिए क्या स्कोर करेंगे छोड़ भी दिया ना तो भी क्या करेंगे स्कोर टूटेगा ही नहीं बेस फिर जी भाई आखिरी मैच था क्या इनका हो रहा है नहीं हो गया ना जीत गए ना भाई कितना कितना वो करवाएगा तुमसे मार लगाएगा ग्रुप डी के बचे होंगे ना मैचेस हाँ ग्रुप डी का भी हो रहा रहेगा लास्ट 2-3 मैच 2 मैच बचे रहेंगे लास्ट ग्रुप डी का एक मैच हो गया ना बैकग्राउंड में पता नहीं भाई बैकग्राउंड में चलता रहता है उनसे 12 किल भाई क्या कर रहे हो भाई हर इसमें 10-12 किल है उसके लुकारियो से 10-11 किल था वो 98 नंबर का लोअर लॉर्ड है both teams going on to top 8 tomorrow. There are some good vibes being exchanged from either of these teams, but still, Blackhand has to know they are currently the best that they have seen yet. Fantastic to be there. Let's take a look at some of the fantastic things that happened over the course of this third game that Blackhand just dominated. जीजी को हरा दिया था ना It's going to be quite the highlight reel for a few players. उस दिन लेवल पता चल गया था भाई टीम का ब्लैकहैंड My personal pick for favorite निंजा देख निंजा के बात ही अलग है भाई सही है भाई मतलब उस दिन जीजी को कैसा एकदम डोमिनेट करके हराया ना ये लोग ये लोग नहीं ब्लैक एंड तो जीती थी फाइनल तो ठीक है तो जीजी को हराया था ना वो पहले टूर्नामेंट के पहले इसमें इनने बाहर किया था नीचे लूजर ब्रैकेट में इनने डाला था शायद से so many of them this week and they've all looked competitive in combination with different things. That is true. Now Jungle Book, like they said, this roster is a little bit newer, but Overlord has stuck around for quite some time. That's right. They don't have to go to prom. They are here. 12 knockouts in this game. मतलब इनके टीम से इसको ही MVP मिला है Let's take a look at where we've gone so far in our first day of this World Tournament and where we are headed. We चल have ग्रुप डी का बचा बस that have punched their ticket to the top 8 of our ग्रुप डी खत्म एक बचा है हाँ तो ग्रुप डी का भी एक मैच है 2 बचे हैं 2 मैच बचे हैं and now Blackhand and iClan in those positions 1 and 2 for Group C. XIS है ना हाँ XIS उनके 2 मैच बचे हैं दोनों टीम से एक is going to be a great day of games yet to come. We are nearing the end, but we got a whole nother day coming up tomorrow. देख अभी ये 2 कास्टर है ना पहले वो 2 थे as we head on into our Group D matches and our last 2 of day 1 here at the Pokémon Unite World Championships. देखो जो आगे दिख रहा है रेड कलर का एरिया उधर चल रहा था कार्ड वाले secret ship. इसका मैच है अभी एक्साइस वर्सेस नॉस esports का मैच है खत्म फिर एक डिसाइडर मैच है
अगर नॉर्थ स्पोर्ट जीती तो उनका लाइफ लाइन बचा है, मतलब उम्मीद रह सकती है। देखते हैं अभी क्या होगा। डेसी पीटा था, निंजा ने पीटा हुआ है भाई। डेसी ने भी तो मारा था रे, पर तो उतना कुछ नहीं कर पाया भाई डेसी। लेसी क्या था ना टीम में? डेसी नहीं था भाई टीम में। भाई ब्लेसी रहता ना, खत्म था उधर। और वैसे भी 50-50 कर रही थी सामने वाली टीम। फाइट नहीं ले रहा था ना, डायरेक्ट 50-50 था। 50-50 में क्या करेगा तू, पता नहीं। और एक बार जैब ले ले तो इतना लेवल हो जाता है कि बंदे मार ही देते हैं इसीलिए फिर सामने वाले को। मैच चलो तो बताना, थोड़ा फन कर रहा है। चार्जिंग 10% है, मोबाइल फट जाएगा ना तो लग रहा है आज के दिन। कंटिन्यू से यूज कर रहा हूँ भाई मोबाइल। फिर इसमें 28% बचा है भाई चार्जिंग मोबाइल में। और निकाल। तू कहाँ यूज कर रहा है मोबाइल? मोबाइल में भी यूज कर रहा हूँ ना। मोबाइल क्या यूज कर रहा है? टाइम पास यूट्यूब। इस पे की यूट्यूब पे, उस पे भी यूट्यूब पे क्या देख रहा है? भाई चैट पढ़ने के लिए लगाया ना इसको, और टाइम पास भी हो रहा है भाई। तो चैट तो साले इस पे भी पढ़ सकता है ना? तो उस पर ही पढ़ रहा हूँ भाई, पीसी पे। म्यूट पे हूँ मैं, चुपचाप 26 मिनट बचा है। 26 मिनट बताओ, 26 सेकंड सॉरी। वही 26 मिनट बचे, मेरे को आराम से आता फिर 26 सेकंड। वैसे मैं जाएगा भाई, एक मैच ही देखूंगा। 9% बचा है, 3% में मोबाइल साइड में बंद करके 15-20 मिनट का चार्ज पे लगाऊंगा। कितना जीबी बचा है मेरे पास? We certainly do. Cease versus Nouns Esports. Never thought I'd say this. Nouns Esports tournament lives are up for grabs right now. They have their destiny in their hands. Let's take a look at Cease and Nouns Esports right now. Cease, Nouns Esports, two champions from their region. Hey, fun fact about Cease, they've never been beaten. That's a good place to be, yeah. For their first games that they're hitting here in the event. Bazo, squad sitting right there in the middle. Great. न्यू मैप कैसा लगा भाई? अच्छा तो है। कल कितने बजे स्ट्रीम करोगे? देखते रहे। कल सेम टाइम पे रहेगा ना, 1:30 बजे कुछ, वही टाइम पे करेगा भाई स्ट्रीम। क्या वॉच पार्टी करेगा कल भी? हाँ कल भी करेंगे, 3 दिन रहेगा ना, तीनों दिन करेंगे। क्या कल नहीं देखेगा क्या मैच? ना भाई मैं कल तो सोच रहा ना ही देखो, अच्छा देगा मेरे लिए। भाई कितना अच्छा देखने बैठूंगा ना तो फिर सारे मैच मेरे को देखने का मन करेगा। देखना भाई, बंद हो जाते रहो भाई। 8-9 घंटे से मोबाइल कंटिन्यूस हो रहा है, इतना कभी जिंदगी में यूज नहीं किया कंटिन्यूस मोबाइल। Como a gente ganhou os 5 campeonatos, né, os regionais, a gente está bem confiante sobre a nossa performance e como nós somos também os 5 melhores de cada posição do Brasil, a gente acha que vai ter uma boa performance com nós. We definitely want to prove that we are not ये रहता है ना coming up here and proving is by winning the क्या tournament बोलते is हो the best हैमस्टर? way to do it. Winning world championships would इंस्टा पे रील डाला है कुछ तो 2 हैमस्टर को खींच के एक साथ बीच में मैच स्टार्ट करता है, देख रहे
awesome feeling to hold. कल और बेटा देखने को, अरे कल तो टॉप 8 टीम्स का बैटल देखने मिलेगा भाई तुमको। We haven't lost a game yet. वर्ल्ड की टॉप 8 टीम का बैटल्स। मतलब मैं देखूंगा बट कल नहीं देखूंगा, आराम से देखूंगा एक एक करके। ठीक है। मैं देखूंगा तो ज्यादा नहीं, एक दो ही टीम का मैच देखूंगा भाई, इतना नहीं देखने वाला कंटिन्यू। I mean, what an incredible squad getting to play here on the world stage. Can anybody beat them? We're going to find out very soon because they're up against the Titan. Absolutely. On the other side, we have Nouns Esports. Got to be hungry for a little bit of revenge shot after taking an early L here. Looking across the way, AO's Cup first, regional finals first. Not very familiar to losing, but we see in that far right column, 1L. There we go, 1L. Let's take a closer look here at Nouns Esports. The threat from Nouns Esports will always be real, no matter what point it is in the game. We are not. Water, please. We are not water, please. Nouns Esports, and we are here to fight to compete at Worlds. We're going to do our best. I'm pretty excited to play in the Worlds tournament with my team because we have been competing for 7 हो गया, स्टार्ट हुआ गया। नहीं उनका चल रहा है भाई। इंट्रो 9 esports वाला। मेरा 9 से 8% हो गया। European region we create our own चार्जिंग पे लगाना meta उसको। to other regions like NA. ना भाई ना नहीं लगाना चार्ज For भाई। example, in the EOS Cup, one comp. डर लगेगा मोबाइल मरना जाए मोबाइल। North American region ब्राइटनेस कम करा दे इसका। composition. So I think that we are टकले है भाई इनके टीम में तो। As we also do as a team is टकले है भाई इनके टीम में। 9 वाले के। How we play in the late game. टकले टुकले पे हाथ लगा रहे भाई अंदर। I think unique from other teams. To be the first ever champion to lift the trophy would be absolutely amazing. हाँ भाई क्या करेगा? ये जैसे हारेंगे उसे टकला ही होगा। For the Unite Championship would be absolutely amazing. Our message to the other team is good luck. Look at them. Here we are. Nouns Esports, one of the titans of Pokemon Unite, up against the undefeated Cease. I mean, this is going to be an incredible match. Absolute slobber knocker. Haven't busted that one out yet. The great time to do it. Cease and Nouns are both sitting on top of their regions. Not only with just a regional win, but dominant performances all season long. And this is truly भाई the रोमन best को of each क्या भाई region हराएंगे कि नहीं हराएंगे? really who's going to get the upper hand. भाई अभी मजा नहीं आता भाई, अभी ऐसा लगता पूरा फिक्स है भाई, पहले मजा आता था भाई। रोमन के पास दोनों बेल्ट है साथ, ठीक है, दोनों वर्ल्ड चैंपियनशिप। ऊपर से वो दोनों उसके दो भाइयों के पास टैग टीम के दोनों बेल्ट है। हाँ दोनों बेल्ट लेके बैठे स्मैकडाउन और रॉ दोनों। क्या बोलूं 700 दिन के ऊपर हो गए भाई उसके पास बेल्ट है रोमन के पास। Here we are. Let's take a look at what we're locking in here. क्या भाई क्रसल किल है क्या? आज स्टार्ट हो रहा है। चल गया भाई मेरे को देखना है क्रसल। नहीं अभी लॉक होने का है। गोल मेटल ना क्रसल दिखता भाई, गोल मेटल Got a beautiful little Cramorant coming here. Cramorant है। Take a look at that. Blissey here from Cease. मैं तो बोला था Cramorant है मेटा। एक्साइस वाले लुकारियो और Cramorant है। Cramorant पे क्या खेल रहा है ये की क्या? डबल स्पेक्स और स्पेक्स डबल स्पेक्स और रेड वाला बैंड। रेड वाला बैंड है हाँ वो भी सही है। ब्लिसी और सब हील दे रहा है तो। और उस पे क्या खेला इजेक्ट क्या पोशन? किस पे? मुझे बताता हूँ। इजेक्ट है इजेक्ट। डबल स्पेक्स और रेड बैंड और इजेक्ट। And over on let's go. अबे उसको डिलीट मार भाई क्या कौन डाल रहा है? अबे कितने बार डिलीट मारोगे इसको? बैन नहीं मार सकता क्या? नहीं अरे बैन भी दे दिया उसको फिर भी वो दबा रहा है। हाँ
Mazo's going to be using that to leverage early because if they can scale quickly outside of Nouns Esports range, they're going to be able to take over the game. मैं तो क्लिक ही नहीं कर सकता उस पे और डिलीट कर दिया ना मैंने That's right. I wanted to point out Redmond. I mean, there's so many players to talk about. Ooh, little fight happening right here. Are they able to get this KO? It looks like Falb going down there to Redmaw. Redmaw, a Lucario player known for their power-up punch, and they are so incredibly good at securing on this Pokemon. And that's exactly what they need to do. हाँ मैं तो रिपोर्ट मार के हटा सकता हूँ मेरे साइड से ना. They know how to dart around the map, of course. And Nouns Esports might be behind on the scoreboard, but everything experience-wise is kind of a parity right now. Yeah, everything is looking pretty similar here. Some nice scores early from Cease, and now we've got the fight over these 850. ये बॉट है, आते रहते हैं, बंद करो बस. भाई कुछ क्या करे भाई? बैन अभी बैन कर दिया वे, फिर भी आ रहे भाई. क्या करूँ अब मैं? और क्या करूँ? रेड वाली कौन सी टीम है भाई? वो बता मेरे को जरा. नाउंस esports. तो 144 पे देख रहा हूँ भाई करीब 240 से. Brub no stranger playing some defense, and they got two in their face right now. That whirlpool's right around, going to try and stun them down, but Brub is still working hard with Sora, Mazo, and Soto. They're going to look to try and get the positional advantage on that odd note, and look at Gatlu, exactly where would they expect them, being an absolute nuisance in the face of Lel, trying to play some defense and just taking the other team's buffs. Look at the finesse there of that fluffy tail into that secure. Really impressive right here. Guizin going down here to Adesu and Redmond inside the central area of Nouns. However, the experience lead kind of stays at parity as Brub भाई does get a इन्वेट couple रोक points भी in. दिया, इन्वेट कर भी दिया भाई ये लोग ने तो. Again, as I've mentioned, but the experience not too off kilter just yet. ऊपर ले गया इधर से भाई. Also looking to get some scores in at some point. They need to stack up these Lucarios. Every बहुत बॉट आते हैं, हाइड कर सकते हैं बस. अरे हाइड करने के बाद भी आ रहा है भाई ये. Look at Mazo just chunking them down with those big fish. Absolutely. Level 6 is Mazo, को एक मैसेज आया था ना? getting a lot of their बात हुआ experience from actually Z's side of the board, believe it or not. And they're going to try and leverage that here into these Bs here at 720. Big fight at the Bs. E-Speed Lucario taking a lot of them there, but a nice fight. Ooh! Valve converting hard onto Brub. The Blissey goes down quick. They dart right through, get the clean KO, and now they'll be able to take some of the wild Pokemon and set up this Dreadnought. If you take a look here, we do not have a Dragonite yet on either side of the board, so it could be up to our Lucarios, maybe our Greedents to get the big security on Dreadnought. They are going for it. Nouns is pushing now. They're absolutely smothering it. They're getting all over. They're going to go for a big bell, see if they can close it out. Kramer and Mazo gets a KO. That gets it for Nouns Esports, however. KO streak of 2 for Mazo. Once in a while होता है तो होता है नहीं, but we can certainly take the other Pokemon on the map, and that's the opposing team, Nouns Esports. Feels like every fight that's been happening on every जिंदा तो बचे ही रहते भाई, कैसे बच जाते भाई इनके लुका जिंदा. I mean, these two teams are just going. देख ना रे, देख भागे वहाँ से. अरे नहीं भागा. दोनों बड़ी वापस पीछे भी आ गया, अब मारा जाके. They pour back through and they're on the chase. Lel gets chipped up, so does the Blissey, and just Redmond stuck on Rotom. They're trying to get this thing cleared out before that Dragonite who's trying to dart up in tandem with Mazo can take it out from under. Here comes that Dragonite. Combo breaker done. Nouns Esports at Rotomate yours. We're moving forward as Redmond's low on HP, but they're using this opportunity to score while they've got both the Brave and the Dragonite go down for C's. Great opportunity for them to get the points in, and they did. You know, they didn't need that Rotom, it looks like. They just need to KO that Dragonite and run those points in themselves. Exactly. Why do it the easy way? We can take the body, do it the hard way. You know what I'm saying? We're hyper beaming through these bees, and of course that E-Speed Lucario taking a good सब ग्रेडियंट पे यही है रे अटैक वाइड. जितने भी मतलब ग्रेडियंट तो सब अटैक वाइड लेके घूम रहे हैं. इतने टीम के लिए ग्रेडियंट दो ही टीम के लिए ना. हाँ दो तीन टीम के लिए. भाई खत्म है भाई. That's a cowboy Cramorant with a KO streak of 2. Let's go. Here comes Redmond trying to stop this score. Ooh, almost a close combat that takes down Guizin there, but a nice Dragon Dance gets them out of the way. Love the Unite move there from Mazu, but that means they're not going to have it here at Dreadnought. Nouns can mobilize, they might have an advantage. I'm looking at the Dragonite here to jump on top and land big butt on Mazo. Actually, they decided to do the पीछे अलग शेयर कर रहे हैं बंदे. They're trying to catch somebody out, and of course they get the KO on the Dragonite early. That's a great target. Nobody's secure. Mazo's playing back.
but they're getting caught out by Geese. They're getting targeted down by Gatlu. Everybody's trying to focus down Mazos. They know they're a clutch player. Oh boy, and now esports comes through in tandem with Gatlu. They secure that Dreadnought, and now Desu's taking over with this Dragonite. Huge secure here from Nouns, but this fight is still going on back and forth. Wow, the Dragonite goes down, the Cramorant goes down, everyone's going down. Hyper Beam ब्लीसी का बेस में चले गया भाई, इधर फाइट ही खत्म हो गया. For Guizen, and it looks like they might get Bruv as well. Bye bye Bruv. That's going to be a 4 KO for the Dragon. तो ब्लीसी ऐसे है ना साले यूनिट मार के बचने के लिए बंदा चाहिए साथ में. Burgers, different kind of burgers out here. We sear them down, fresh, never frozen. Beautiful scoring in this bottom path, breaking that goal. Cramorant up here in this top path, and they do want to stop Nouns from taking this here. They were able to do it once and see if they can do it again. Desu looking to like getting the hybrid beam on Soto, but they're going to force to back off a little bit. But of course, Valve is always looking for the engage. Bliss assistance is found. The Cramorant Unite is on target here as Mazo is going to try and use that boosted speed to get out, and they're pushing forward. Nouns Esports setting the road up in their face. Guizen uses their Unite move to get into the mix, and this is going to be a big barrier flop by the group trying to get into that action. They're burping all over, trying to deal damage. They get a KO on Mazo. Great target here as Nouns Esports pushes relentless. 2 players down for Z's, and so does the goal zone. Desu is absolutely heating up. उसका एक्सट्रीम खत्म हो गया नहीं तो भाग जाता हूँ. Wow, these teams came to fight. Here we go. कर देता 2 किल और मिल जाते. 5 KO, boom, 4 KO streak on the Dragonite. Desu looking unbelievably mean right now. I mean, they're just trading blows back and forth. It's like 2 heavyweight boxers and no one's going down. Yeah, nobody's pulling a punch on this one, and nobody's roping open either. They're chucking absolute hammers into each other's faces, and this is the type of Pokemon Unite I like to watch. As Bruv, अबे कहाँ 40 का स्कोर होने वाला है उसका? भाई ब्लीसी वो लुकारे के साथ 40 का स्कोर डाल रहा है. You're gonna have to KO me. I'm not leaving. नहीं वो टाइम वेस्ट कर रहा था भैया. Nouns in a great position to take this. Looks like C's might be looking for a steal, मैं आते ही possibly with खत्म. an egg or possibly with Hoopa here. But इनका 50-50 कॉम्ब है ना Nouns वाले का. Dragonite, and we've got Zapdos coming up here in 30 seconds. Scoring happening in the top path. It looks like we might have a break. पर 50-50 करेंगे क्या उसका भरोसा नहीं. करना तो चाहिए. पावर पंच खिला रहा है लुका इसके लिए. They only got 13 seconds to sort that out. The Dragonite uses the Unite move to chase down. They want Valve, and they want to get them out of this fight early. Wow, it looks like a huge Unite early from Dragonite. We don't have Zapdos yet for 5 seconds, so that could be a great play, or it could have been something that they wanted to save here. 50-50 करेंगे. Now it looks like they're starting Zapdos as Cease brings in a portal, and here come the fists flying from space. These pour in, but Valve gets chunked low. They're trying to find them and take them out and make sure they can't secure. Dragonite lands on top of a Desu. Hyper Beam might be able to take care of it. Blitz sorts them out. They're going to be able to push back the other way. Hyper Beam falls wide. खत्म है भाई. इनका यूनिट पहले ही फोर्स करा. Is anybody else going to from Z's going to be able to pull in and help? Dragonite को देना पड़ता है भाई. ले गए भाई. बोला तो 50-50 करे. Scoring some points. Nouns Esports, what incredible plays right there, and you can see they're raining the points. ये तो लुकारियो है ना. Like once they knew they were alone with that Zapdos, just for a moment, boom, it was gone. और 5 बजा था ना उससे. They were able to secure that. Huge plays from Nouns, and the points, like we said, भाई स्कोर देखो दोबारा है भाई. Just kind of toying with them a little bit. I felt a little mean from the squirrel. Well, they got it done. They got their points in, and Z's gets that KO. So if they want to make a push, now's a good time to do it. Fill your pockets and go for it. They haven't hit that 500-point threshold we like to talk about, so there's still an opportunity for them to win the game. There is some daylight here for Cease, but this is going to be very tough. We've got Redmaw coming up here. I don't think they want to fight for it too hard, but they do want to hopefully stop them from scoring, as Cease is going to continue to push towards this top path. 30 seconds left, and they need to put a lot of points on the board to make this happen. I don't even know if they've got enough energy in their pockets to do this. Well, they believe they do. They're going to try and make a push. It's just Bruv holding it down there, as there's another player for Z's pushing on the other side of the map. They're working through. That's another Unite move by Gatlu. They got that back very quickly, and they're belching all over this map. There's nothing sanitary about this. What about that 6-foot COVID protocol? Not going to happen today. There we go. Nouns with a commanding game 1 here. I mean, the question was, could anyone beat Cease? Nouns having an amazing fight at that Zapdos and taking down a big win. An absolute
great showing by Nouns Esports. They knew they needed this one and they win it in convincing fashion. Down, certainly not out. Aziz, as they still have tons of game to play. This is a best of 3, nothing settled out yet. A Desu, 200 clean points. Yeah, looking great here from Nouns. You know, I was watching some of their matches earlier, and they were struggling a little bit with a different Pokemon composition, but this feels like they're right at home. Gatlu on the green, a Desu on that Dragonite, and भाई 1 लाख का डैमेज है. I can't believe it, but look at these damage numbers across the board. What a slugfest. ड्रैगनेट का 120 है, लुकारियो को 105, मतलब अपोनेंट वाले का जो ई स्पीड चला रहा था ना उसका. 110,000 damage healed mark. Let's take a look at some highlights from game 1. Here we have डैमेज तो अच्छा सा है ये गेम में. डैमेज जब किल नहीं निकलता है ना. That was big for them. Bruv scoring in this bottom path while Mazo is pushing them out. And now we had Redma and Gatlu scoring after they weren't. हाँ, ओवरलॉर्ड का लुका बेस्ट था भाई. इसमें भी ये जो स्पीड चला ना उसने भी चलाया, बट उतना पता नहीं, बट डैमेज तो आया इसको 1 लाख. ओवरलॉर्ड का देखने में मजा आ रहा था भाई. लुका यहाँ पे लुका दिखाया नहीं ज्यादा. Just walking in, and here's the big KO moment. A Desu coming in with the. नहीं, अगर ये डोमिनेट पे रहता है ना, डोमिनेट साइड पे लोग. Is that the sound a hyper beam makes? I would फिर ये सेम लुका कर रहा है ना जो कर रहा था ना, तो ज्यादा प्रेशर आता है. Gets it done for a Desu. That hyper beam was finding its mark all over the map. That's right. It is a puke. Yeah, there's another one. I heard it again. We heard it from the game. That wasn't for me. Wow, huge moment there from Nouns Esports. The points again rain in after that Zapdos. They were able to just zone them out so well in that final fight and secure that. And that's something Nouns is known for. If you leave them alone with a Zapdos, it's their Zapdos. And all courtesy of that तब तक ले गया. दो लोग तक ले भाई. 200 points, clean numbers across एक the board, जंगल and of course great secure with that Dragonite. Without question, I mean, the players but there were so many amazing players inside of this match, and there it is. Yeah, you body got the chuckle, you got the wave. They're feeling pretty good after that game, and they needed it, Doob Snacks. They need wins right here because they went down earlier. Yeah, absolutely. For them, they don't want to leave anything up to chance. They want to win this game too, improve their tiebreaker opportunities here, and hope the C's can get it done in their matchup later on. But right now, Nouns Esports has another game straight ahead of them. That's right. Nouns and Cease are going back at it right now. And as you said, Nouns really wants to close this out 2-0 with only 3 teams inside of this group. Tiebreakers can happen, and you don't want to be on the wrong end of that one. They want to close this out in 2 games for sure. But Cease, one of the best teams in the world, I think they're going to bring something for this next match. I definitely think they are. कल BO5 वाले मैचेस रह गए ना? नहीं, कल अरे साले पागल है क्या? BO3 कल फाइनल में होता है. BO3 BO कल नहीं है, BO5 परसों रहेगा. फाइनल में. अब तक की सबसे स्ट्रांग टीम कौन सी लगी? We've not seen T2 any Pikachu today, and I would love to see a change up like that. Now, of course, these teams are bringing in the strategies that they think are going to be able to win the World Championships, and they're doing it right now. They're not hiding anything. But the question is, after a match like that, how do you want to recalibrate? What do you want to do? Is it strategic? Are you moving your Pokemon around the map in a different way? Or is it something bigger? Are you changing up what you're bringing to the table? I'll tell you what, Spraggles, I'm a वैसे 900 भी है, T2 भी है. I go with what my body's telling me. ये दो टीम. Anytime I feel like I'm on the brink of elimination, I'm back against the wall and I need to do something drastic. I throw away the strategies and I go with a comfort pick, something I know I can move around the map on, something I can play confidently. निकालने वाले निकाल देते भाई ये लोग. Gradient के 93 डैमेज आया भाई. Gradient तो दे रहा भाई. सबका डैमेज आ रहा है. लुकारियो का 1-1 लाख का डैमेज आ रहा है. इको 7 आवर्स का स्ट्रीम कर दिया आपने. बस 7 आवर्स तो नॉर्मल है अपने. मेरे को पीसी पे में 24 घंटा का कैसा. अरे आजकल टाइम नहीं मिलता ना, तो इससे ज्यादा स्ट्रीम होता है मेरा. And you switch off to it, you could be really disappointed that you made the wrong decision. But you're right, it might be time to lean on that old faithful, your best Pokemon. Bring it out and let's see what happens. Loading
into game number 2 here. Nouns needs these wins, but you know who else needs them is Cease. पंखा तो लगाया रहेगा पूरे दिन भर। पंखा तो है भाई, बिना पंखे कैसे बैठूं भाई, गर्मी होती है भाई। वही तो पीसी गर्म हो जाएगा। पीसी तो उतना गर्म होता नहीं है बोलना वैसे। नहीं है भाई, ज्यादा पीसी गर्म नहीं है, वेंटिलेशन अच्छा है मेरे पीसी का। क्यों भाई, खिड़की के बाहर रखा है क्या? उसको अंदर से हवा जाने के लिए जगह है भाई। पता चला बाहर बारिश हो रही, बाहर हवा आ रही है। अंदर अंदर पंखे लगे ना भाई, दो पंखे लगे, 2-3 पंखे लगे। Absolutely. Another thing Cram doesn't have is hands. 3 पंखे लगे। दो आगे साइड है, एक पीछे साइड है। कितने का सेटअप है? खाली पीसी 70 का पड़ा भाई मेरे को, मतलब ये क्या बोलते अपना CPU, बाकी मेरे पास पड़ा था। पड़ा था मतलब पहले लिया था क्या? नहीं भाई, मतलब मेरे पास पुराना था ना पीसी, उसका मॉनिटर अच्छा ही था, मॉनिटर चेंज नहीं किया, और फिर ये बाद में आराम से मंगवाया भाई कीबोर्ड और माउस। तो मेन तो CPU का रेट पड़ता है। इतना जल्दी क्यों ड्रॉप डाउन हो रहा है बैटरी? उम्र हो गया बोलते, उम्र हो गया बोलते तेरे मोबाइल का। वहाँ पे 3 से 1 पे आ गया। निपट जाएगा। कोई माचम प्लेयर नहीं दिखा जो माचम अच्छे से चला था। अरे स्टार्टिंग की वजह से देखना था भाई तुमको, देखता भाई तुमको। हाँ वो जो जंगलर माचम किया था ना, वो वाला मैच वो देखना था। उसमें सरीना इतना गंदा मार के जा रही है, तो माचम को कौन देखेगा? भाई सरीना ही काम करके जा रही थी भाई। ओह क्या इशू बचा है। चालू हो गया क्या अगला मैच? हाँ हो गया। भाई जंगल जा रहे भाई, दो बंदे स्पॉटेड है भाई। मैं जा रहा था। हाँ ठीक है भाई, मैं भी बंद कर रहा हूँ थोड़ा देर में, ये मैच खत्म होने के बाद। चलो भाई ये मैच खत्म हो गया था, अपन स्ट्रीम बंद करने का बहुत टाइम हो गया भाई। स्ट्रीम तो भाई चलता रहेगा भाई, कब तक चलेगा इनका तो पता नहीं भाई। We're all heading down here for this big fight. Everyone's coming. They're trying to catch them out. Mazo's low, so is Falb. Gatlu catches a reset. But something Gatlu just did there is they took away so much of Mazo's attention that they couldn't farm up, and now they're a little bit lower level than they prefer. Take a look at Adesu here, by the way. बाकी कल का मैच देखेंगे भाई, टॉप 8 वर्ल्ड की टॉप 8 टीम का मैच देखेंगे। Dragonair from Cease as well. You know something to notice, Cease is down यार here. मैं And if they गेम lose खोला ही नहीं this करे, Hoops next, देखने this will में be the गेम खोले कुछ first आया करे। series that they have lost in the Pokemon Unite Championship Series, so I wouldn't count them out. I would never count out Zizi. You kidding me? Adesu working through, getting some experience, but they've got the Hyper Beam ready to go for this Dreadnought and these bees. Oh, where are the bees? Where are the Lucarios? Adesu, you're so incredibly cruel. Adesu just was eyeing up the bees, but caught a Lucario at the same time. Can't be upset about that. No, not at all. We've got this level. क्या लगता है भाई ये मैच में से कौन जीतेगा भाई? नौ इसको जीतेगा, ऐसा उजी लाल जीतेगा। Dreadnought if they want. Cease is in such a tough position right here, and here comes that Unite move. Whoa! Dragonite catches the reset. Their Unite move is gobbled up, and that's a big misstep by Nouns Esports. Z sees that, and they're trying to capitalize. Gatlu is low. They get KO'd. They're moving through, and they take the कौन लेगा? अरे एक्साइज लेगा भाई, इजी भाई, नाउंस जीतेगा, देखते भाई भाई एक्साइज भाई Wow, I mean, has there ever been a more unfortunate place for Dragonite to land in the history of Pokemon Unite? Right through the hyperspace hole, completely wasting the Unite move. Incredible. Cease taking advantage of it in such a huge way. Unfortunately, I think Z's is kind of overstaying their welcome here. They might give KOs back the other way. They need to get out. They need to get out. Yes, you were just gifted an opportunity. You took advantage of it, but don't spoil it this quickly. Here we go. Rotom already at half. We see Adesu and Guizan up here. The question is which beam is going to secure it, and
and it is a Desu here. Oh, Baby Mazo getting so low and going down. Getting in the face of Gatlu. खत्म तो गया भाई 9 esports के साथ फाइनल मैच देख के जाना अगर एक्साइड जीतेगी तो नींद आ रही है मेरे को चलो देख लेंगे भाई होपी भाई नहीं मरे हिमाचल यूनाइट लेके आया भाई मरेगा खत्म भाई लुका को भाई ओवरडंक अच्छा खासा होगा भाई 40 का मारा तो नहीं होगा अरे एक के पॉइंट्स तोड़ेगा ग्रेडेंट नहीं Taking a look here, both of our Hoopas still अच्छा खासा ओवरडंक होगा रे अगर पूरा स्कोर किया तो ऊपर टॉप पे we just had to tick over to 9 for Cease, so 9 for both teams, so Hoopa's going to be able to bring them down here to Dreadnought, our next big fight. This fight's still going on. Absolutely, but look at where Nouns' Dragonite is. They're going to be able to catch this Hoopa and maybe force out the Unite move earlier भाई than यूनाइट पोस्ट हो गया था and I think that is the ticket here is Nouns Esports has the ticket to go through. We're coming through and Desu and Crowd and company are ready to go as those Hoopas are भाई Hoopa की अल्ट बचा लिया भाई दोनों को The damage is flying down onto this Dreadnought. The question is who's going for the secure. The big beams are coming out once again. Who gets it? 50-50 वे किसको मिला भाई लुकारियो ले गया नाउ स्पोर्ट का ही लुकारियो ले गया भाई and that's a Z's picking up the bliss assistance on their Dragonite as well, but it is all for naught as Nouns Esports ओवरडंक हुआ है ना 40 2 पे 40 मतलब कितना 38 का ओवरडंक हुआ भाई 164 to 143. What an incredibly close game once again. These two teams are just fighting the entire time, brawling non-stop. Mazo up here putting in some hurt on these Bees and Red Maw. I'm looking at this poor Blissey sitting at level 8 for Z's, and they need to catch up, and the experience just ticked over to level 9, but even the Hoopa's running behind as well. If they want to keep up in this game, they need to get some experience lead here, and hopefully don't give too many L's at this road. Big close combat right there. Mazo with the Unite move. When is he going to throw the big fists? I don't know if we already saw it or not, but there goes the Rotom. They were buying time right there. भाई 2 के स्कोर से तोड़ा है भाई जी भाई close out that goal zone, so the Rotom kept going down the path. Huge engage by Gatlu. They're coming through. Yes, one player down for Nouns Esports, but that's enough damage to send Z's. भाई वो कितना डैमेज दे रहा है देख रहा है ग्रेडेंट कितना डैमेज दे रहा है बंदे को but the Machamp Mazo gets a KO on the Hoopa. Machamp heading back, Foul fighting here, but I think they're going to be trying to get out of here. Guizin, I don't know if you're going to make it home, but wow, unites to survive and runs back. Doesn't need to head to the Pokemon Center today. Not just yet, using just the smallest of volume of their Unite move to get out, so they don't expend the entire meter and can build it up in time for Zapdos. And here we go. Hard damage बस दे रहा है 30 seconds, but these crowd control भाई पूरा वो कर रहा है This भाई is a fight that you don't want to throw all your resources बंदे पुश नहीं कर पा रहे हैं उसके स्टन में you could get some big KOs here. Great secure on Nouns Esports side. Of course, Z's has a couple weapons in their pockets of their own. Where they decide to contest is what's going to be important here for this next team fight. Energy amplifiers looking for that level 13. Nice break point, getting an upgrade on its close combat. Now around this Dreadnought, and I think Cease is just going to let him have it. But you know, they're moving in. They're kind of circling this here. Yeah, they're trying to see if they can get any opportunities or pick somebody out. Good egg bomb by Bruv. It seems like they're always great at sussing out where the other team is hiding. Now here we go. Nouns is ahead in this लो भाई final fight है देखते हैं भाई कौन जीतेगा and just try to take down this Zapdos, but that being said, I don't think they want to open this up to possibly being stolen by Cease. I think they want to win a big fight here. Redmaw gets a decent engage on Sauda, but we're looking to see where they go. That's the Lucario darts out, and of course that's a Unite by Gatlu, and they're going to try and chase it down. Mazo's working through the Dragonite. Where's the Dragonite going to land? Big question here. Down on the bottom side, and they're chasing that Hoopa. Lel is trying to get out. They're trying to throw their fists. किधर फाइट हो रहा है भाई सेंटर फाइट किधर चलेगा बॉटम में चलेगा भाई पूरा भाई सबका इन्वर्ट कर जाए नॉन स्पोर्ट्स के लुकारियो पे बचा है रीयूनाइट They catch the reset, but look at this. Mazu, Mazu taking one right to the face, goes down. Huge close combat. That's 3 down, 4 down right now. 5 going down for Cease. Nouns Esports cleaning it up. That's an ace. All those clean swipe by shaded orange, and Nouns Esports gets this. अरे Nouns Esports वाले लेट यूनाइट छोड़े रहे. Get that thing closed out in time. I'm going to make a little correction. Gatlu
got the hard reset. They got sent back because they got KO'd. There we go. Nouns with the scare. The question is, how many points can they put in right now? Because you got every member of Cease coming back, trying to stop them. Blissey, one of the hardest Pokemon to stop here. Bruv. नॉन जीत गया। अब भाई इधर लोड में लग गया भाई। लोडिंग हो रहा है। I think they're putting the points in. Here comes Redmaw trying to 50, dunk 100 points in this bottom path, and they 464. do. That is 464 to 185, 45 seconds left. And Gatlu with 50, pushing far forward. They're an absolute track star. They're going to get their 100 in. हो गया भाई। That's another 100 points on the board. 664 भाई। कुछ नहीं कर सकते भाई। मुश्किल है भाई। Now Cease is very far behind. 30 seconds left right now, and we could be watching the undefeated Cease actually go down in a series of Pokemon Unite. Yeah, this is routine gameplay for Nouns Esports खत्म being in भाई। this position. He's going to Nouns जीत गया भाई easy। hold them down just for a couple seconds. That's all they're actually going to need to go ahead and secure this one out. There we go. ड्रैगनेट और 50 डाल दिया भाई ये। 200-300 स्कोर कर ही दिया भाई ड्रैगनेट ने। Champions go down to the team that wrote the playbook. Nouns Esports, your EU champions, close it out 2-0, and look at that. They are elated. They needed this win. Needed is an understatement. This means that their tournament continues at least through the next match. Just depending on how these tiebreakers shake out, which means all the pressure is on Z's in their next matchup. That's right. Z's versus IX is going to be huge here, but let's take a look at this. Desu, once again the MVP, 10K. टकले जीत गया भाई। टकले ओपन द चैट वाइस। This is the Nouns Esports. हाँ देख लो भाई कितना डैमेज दिया है। भाई देख लो ग्रेडियंट का 1 लाख का डैमेज है। डैमेज भाई 1 लाख का डैमेज है और अपोनेंट लुकारियो का 1,15,000। भाई डैमेज देख लो भाई कितना डैमेज है। And the Blissies are both healing over 100,000, doing everything they can to keep him alive. Shout out to Sato. You want to talk about a key pocket support? ग्रेडियंट जॉर्ड भाई क्या ही डैमेज दे रहा है। And let's see how they got to those high numbers with our game 2 replay. Taking a look here, big fight down here at the गेट लुक क्रैक्ड है ग्रेडियंट ट्रेवेनेंट से 1.5 डैमेज निकालता है टॉप लाइन भाई। देख लिया भाई ये मैच में कितना ही डैमेज निकाला उसने। टैलोन चला नहीं टीम के सामने भाई। रेवेनेंट वालों ने चलाया था बट नहीं चला भाई उनसे। ऐसा रेवेनेंट को करने को क्या जा है भाई। रेवेनेंट मतलब रेवेनेंट वालों का भाई पहला था ना, मतलब ऐसा भाई इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा भाई। आज का गेम प्ले देख के कौन लग रहा है कि टॉप 3? देखो यार टॉप 3 के लिए तो अच्छी टीम है भाई। ये है भाई T2 की एक है, ब्लैक हैंड वाले हैं, और कौन सी है और एक कौन सी टीम है भाई। और एक हाँ अच्छी टीम है भाई जो लग सकता है जा सकता है भाई। तुमको क्या लगता है भाई कौन जाएगा भाई टॉप 3 में? भाई टकला ओपी भाई टकला ओपी। I mean, what an incredible match right here, and take a look here. एनर्जी एम्पलीफायर से ज्यादा डैमेज देता है जब यूनाइट देगा तो बड़ा। मैं सच बता रहा, अगर स्ट्रिप या ऑलमाइट गए क्वालिफाई तो टॉप ब्लैक हैंड गए रहते तो एक जीत के आते अपना भाई। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो भी अच्छा खेले भाई रेवेनेंट वाले। improve your tiebreaker chances because again, they're going to be watching for the side. आई नहीं नॉन्स आएगी शायद। ब्लैक हैंड हो गई क्वालिफाई तो ब्लैक हैंड, अरे ब्लैक हैंड हो गई ना क्वालिफाई। I don't know what happens if IX wins 2 but loses 1, or Cease wins them both. I really have no idea, but this is going to be massive. This next game is going to decide. ब्लैक हैंड वाली क्वालिफाई हो गए रे ग्रुप सी में से, अभी ये खाली ग्रुप डी का बचा है। देखते ग्रुप में से T2 ब्लैक हैंड एंड नो शो। हाँ नो शो वाली, नो शो
1-1 tiebreaker action there. We saw that secret ship heartbreak in person. We cast it. देखो ब्लैक हैंड ग्रुप सी में से क्वालीफाई हो चुका है। इसमें से देख ग्रुप डी में से हो गया भाई कौन क्वालीफाई करो। 1-0 is IX Gaming. Now Esports 1-1 Z's 0-1 and they are fighting for their tournament lives now. That's right. Z's is now fighting for their tournament life. It took the EU champions to take down the undefeated Z's, but can IX do the same thing, or is Z's able to shut that one down? It is going to be an incredible. RNT थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, नहीं तो डोमिनेट करती। अरे उनके लिए भी नया था रे। अरे बाकी जो इंटरनेशनल टीम्स वगैरह उनके पास भाई अच्छे मतलब कोच वगैरह रहते भाई उन पे ये करने के लिए, स्टडी करने के लिए भाई कि बंदे क्या खेल रहे हैं ओपोनेंट में वगैरह। अपने इधर उतना सीन नहीं है भाई। अरे टाइम है, चलो तो फिर आज का स्ट्रीम यही एंड करते हैं भाई। ये तो भाई और लंबा चलेगा भाई, लेट हो जाएगा यार, नींद आ रहा है मेरे को। कोई ना भाई, कल देखते हैं भाई, कल टॉप 8 टीम्स का मैच देखेंगे। ओके चलो गाइस बाय, और लाइक कर देना जिसने लाइक नहीं किया। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। हाँ भाई तुमको भी। काहेगा अच्छा, कल एकदम अनकोऑर्डिनेट चल रहा था, इनको इतना बुली करके लूजिंग पोजीशन से खेलना ही नहीं आता, इसलिए बेटर टूर नहीं चाहिए। कोई नहीं अभी। अरे भाई इधर देखो, इंडिया को इतना मतलब स्लॉट वगैरह मिला ना भाई, अभी तो अच्छे टूर्नामेंट्स वगैरह आएगी इंडिया में ऑफिशियल वाली, तब भाई अच्छा ग्राइंड करेगा बंदे। अगली बार देखते भाई, अगली बार अच्छी पोजीशन में खेलेंगे भाई बंदे। तो चलो बाय गाइस, मिलते फिर कल मैचेस देखेंगे भाई टॉप 8 टीम्स का। मिलते फिर कल, बाय बाय।